different strategies are specifically how you're dealing with Hoopa, how you're dealing with the Hoopa portal, or how are you going to get back to the Hoopa portal if you're on that team. We can take a look at Alter Ego here, of course, one of our great representatives for North America. But let's get into the game number 1 here of the day, as we're going to have a great match between 2 North American teams. One North America team will be remaining in the tournament after this one. The other will be eliminated. And currently, we are just starting into this best of 3. I can't wait. I can't believe we're starting with the Battle of North America. I'm so excited. I know, they want to get rid of our region. हेलो जुरोबा जी, क्या हाल चाल भाई? चलो बॉयज, सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज थोड़ा टाइम पे स्टार्ट हो गया. आई थॉट नहीं होगा. नमस्कार सिंधु भाई. ड्राफ्ट मिस कर दिया यार मैंने. सॉरी गाइस. आज सिर्फ वाईटी स्ट्रीम कर रहा हूँ. So Alter Ego versus Nemesis, NA versus NA, loser bracket में. वो भी loser bracket में यार. मतलब 2 NA टीम में से एक NA टीम की विकेट आज हो रही है. Alter Ego पे माचैम. तो माचैम पे खेलेगा. बचैम्प, लेप्टस, इंटेलियन, एस्पियन, हुपा और नेमेसिस पे क्लिफेबल. ये ईवी कौन सी है? गाइस व्हाट इज द टीवी? दिख नहीं रही है. ब्लास्टर्स, क्रैमोरेंट और क्रेसल. दूसरी भी कौन सी? आई थिंक लिफियन है. हां, ग्लेशियर. हेलो संपत्रा भाई, क्या हालचाल? वेलकम टू स्ट्रीम बाबू. अरे ले गया भाई, ले गया जेल, ले गया. माचैम में ग्लेशियर है. माचैम ग्लेशियर अभी करंटली मेटा में बेटर है. वो पर्सनल प्रेफरेंस है मेरा. हेलो सुमित भाई, क्या हालचाल बाबू? हाउ इज यू? दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं. ऑल्टर ईगो दे. ये मिड बीस गए क्यों? अगर कंटेस्ट नहीं करना था पूरा. अगर सिर्फ 2 बंदों को जाना था तो कंटेस्ट नहीं करना था ना फिर मिड बीस. कैसा टैंक कर गया भाई? अरे स्नाइपर हो गया. ये तो रिवर्स पुश हो रहा है. अब ऑल्टर ईगो ने रख दिया. मोटा मोटा डैमेज खा रहे हैं. अब सबका गोल हो गया. पांच चैप्टर में बहुत टाइम हो गया. अरे माचेदल भाई है ना, खेलते हैं ऑल्टर ईगो के. इस टीम वाइट आउट टू यस. सो अरे राम राम राहुल भाई, हेलो जोर भाई. सो कल एज यू नो ओपन ब्रैकेट हुआ, उससे 8 टीम्स आ गए राइट. वो 8 टीम्स ग्रुप्स में प्लेस हुई. वो ग्रुप्स भी कल ही हुए. मोस्टली वर ऑफलाइन मैचेस, कुछ ऑनलाइन हुए थे. एंड उसमें से प्लेऑफ्स के लिए दीज 8 टीम्स हैव क्वालिफाइड. लाइक दीज 8 टीम्स राइट नाउ. ऑल्दो कुछ लूजर ब्रैकेट में है, कुछ विनर ब्रैकेट में है. जैसे जो लूजर ब्रैकेट से क्वालिफाई हो गया है वो लूजर ब्रैकेट में, और जो विनर सीधा जीत गया वैसे. नहीं, नो स्ट्रीम टुडे यार, क्योंकि बस लैंडस्केप ये सारा, तो सोचा वाईटी अकेला कर लूं. ट्विच पे अपने वाईटी वाले होते हैं, तो मैंने आज यही कर दिया. सिर्फ ओनली ट्विच, सॉरी ओनली वाईटी. एकदम बढ़िया किरण भाई, आप बताओ. लॉन्ग टाइम नो सी. ये ब्लास्टी मस्ट टाइम पे आया. और दे दिया. रिजेक्ट कर सकता था क्या? नहीं. गया, ये वापस पुश हो सकता है. टीम माय टीम में फिर को वो पहले से बैन है. वो कुछ तो सीन था. डिटेल्स हैव नॉट बीन रिवील्ड बट ही वाज बैंड ड्यू टू सम रीजंस. 1 मंथ से ज्यादा हो गया उसको बैन हुए आई थिंक. योमुस भाई को, बट वो है उधर. ही इज विद द टीम. वेट नहीं, सॉरी नॉट विद. हां एक्चुअली विद द टीम ही है ना. Under to 49 Nemesis पे लीड है, पर अल्टर ईगो पे लेवल लीड है भाई. वो 11 का इंटेलियन हो रखा है भाई. ये लेवल मोटा कैसे हो गया इतना इंटेलियन का? कल नहीं मेरा एग्जाम होना. वो कौन से अफसर बन रहे हो भाई? डाल मत देना मुझे कहीं. माफ कर दे किरण पाजी, इतना ना करो. दे दिया जोगिंदर ने. अच्छा तो दिया. एंटी रे ग्लेशियर मर दिया है. ग्लेशियर मर गया था. 37 ओवरडंक बीसी.
great timing to be able to get Oh, nice, Karan just bhai. a little bit more time. And we're going to get another objective, actually. They're staggering them pretty evenly. मैं किसी भी स्ट्रीम करना सेट कर दिया है उससे बाकी सीम्स भी पढ़ सकता है नहीं भी पढ़ सकता आई डोंट नो पुश पे तो पहले स्ट्रीम करता था वो वाईटी पे अब आया है ना अरे हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम एक ही जगह करते हैं ना टीम भाई अगर वर्टिकल इधर करना है तो करता वो उधर भी वॉच पार्टी उधर भी अपनी बनते थे ना इन द एंड गड्डी जा रही है लॉरी जा रही लॉरी ब्लास्टर्स पे टकराएगी नाइस वन रे ये सही कर दिया ये सर कर दिया ये सही किया भाई पेल दिया ये भाई सही खेला ब्लास्टर्स मां कसम भाई ब्लास्टर्स आउटप्ले दे गया Dude! Literal outplay! Oh, भाई! मोटा आउटप्ले देकर गया ब्लास्टर्स में मोटा आउटप्ले लेवल भी मिल गया बिकॉज़ इंटेल मोटे लेवल का था Okay, one of the X factors for Alter Ego, though, even if they are losing these fights, even if they are behind, it's going to be Machizzle's Machamp. And every single time I see them hiding up in the tall grass, waiting for an ambush, you gotta know it could be a turning point of the match. They have 4 minutes to find an opportunity, and they're gonna start by trying to push on this first tier goal zone. रसल होल्ड कर लेगा अल्ट नहीं है बस और क्रैम ये थोड़ा सिनर्जी नहीं बैठा क्रैम अल्ट से दूर ले गए उसको ये हक दिया वो क्लिफेबल ब्लॉक से क्रैम के अल्ट से सबको दूर लेकर चला गया अगर ब्लॉक लगाता भी नहीं ना तो हो गया था ये किल मिलते थे इनको मोटे गाइस ये आप लोग जिस काम के लिए हैं वही बेकार कर दिया ब्लास्ट नहीं रोटेशन ठीक है वो तो मतलब आउटप्ले दिया है तो भाई क्या ही बोले बट भाई अल्टर को पिट गई नेमेसिस फेल रही है भाई अगेन 2 एनए की टीम्स हैं गाइस दोनों एनए की टीम्स हैं तो 2 ही एनए की टीम्स बची थी और दोनों की विकेट गिर जाएगी ये दोनों में से एक की विकेट गिर जाएगी लूजर ब्रैकेट से 2 एनए 2 ईयू 2 एशिया की हैं और आई थिंक 2 लैटम की हैं राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कौन टीम का मैच है आज सबका जितने 8 टीम्स बचे हैं प्लेऑफ्स में सबका मैच है अल्टर ईगो नेमेसिस काबिचांस शिंगड़ी की टीम है उसके बाद ईयू की टीम्स के नाम भूल जाता है यार मैं बैड बट वो अपर ब्रैकेट में शायद काबिचांस लोअर ब्रैकेट में इतना पता है मेरे को इसके बाद ब्रैकेट फ्यूजन है शायद फ्यूजन है ओपन ब्रैकेट से मोटी टीम्स आ गई हैं भाई I think T1 निकालना था इनको बट चलो येलो स्ट्रगलिंग आएगा इन पे all the positioning for Alter Ego is going to be around the top side of this map, whereas Nemesis actually spread out defending both of their goal zones, Cramorant on the rear one, and of course Glaceon defending the bot side. I mean, this is the case for most fights, but the Unite usage क्या is शांति so है ये important. There's so many Unites that can completely whiff on these teams, and so many that can be extremely high impact. The Cramorant फंसा दिया उसको almost. And so far, no full engagements. They are going to try to focus. I'd love to attempt to surf to prevent that, but now Metallic is बट ये फंस गया ये हक दिया क्रसल ने भी हक ये तो मस्त कर दिया अल्टर ईगो ने ब्लास्टर्स यूनाइट गया क्रसल यूनाइट गया जीजी और अब लेप्टस यूनाइट आ रहा है वो लगा तो बट क्रसल जा रहा है ओरे भाई क्रसल क्रैम ने ऊपर मेल्ट कर दिया और ये गोल ही नहीं कर रहे भाई सही खेल गए भाई माचम को वो नहीं दे रहे हैं माचम को वो नहीं दे रहे चांस कुछ करने का 50 हो रहा है ये 50 हो रहा है आई डोंट थिंक या 50 हो रहा है माचम उधर मेल्ट तो कर रहा है बट एज लॉन्ग एज वो चांस ना दे उसको अल्ट का इंटेल का यूनाइट है उसने यूनाइट नहीं बोला And so there are the members of Alter Ego still here available, slowly getting killed. The
one by one, losing the chisel, losing SP on their damage is so low. Rayquaza, Bye. only 8 seconds left. Is anybody even going to be in position? We do Dude. have on the side of Nemesis, but I don't know if उसने anybody Unite नहीं is खोला. going to be able to score. Not that it's going to matter. Yeah, Nemesis hold on. Metallic Blastoise Bye. absolutely unbelievable in that fight. But I honestly, I have to admit, Wonder Chef, I feel like शॉर्ट लाइफ स्ट्रीम ब्रो, वॉच पार्टी में शॉर्ट लाइफ स्ट्रीम कैसे होगी मुझे बता पहले. वॉच पार्टी है when Joey was भाई. ब्लास्टर्स और क्रसल भी कह रही है. वो क्रसल ने क्लच निकाला है भाई. वो एस्पियन any kind of defender that is enough pushing भाई, वो क्लच निकाला है. goal zone score sieges, वो क्रसल मर रहा था उधर भाई. ये जिंदा कैसे बच रहे हैं इनके आफ्टर यूजिंग 2 ults. time, no trap, ब्लास्टर्स का अल्ट वेट हुआ, क्रसल का अल्ट वेट हुआ एंड स्टिल and, it felt Ultra like got lost it the was a fight. little short. Yeah, just specifically targeting एशिया से certain members किस that really like कंट्री to के play गए देख. so smart in this काबी चांद exact जापान से saw इनवाइटेड थे, coming out of वो गए हैं. Nemesis. और शिंगड़ी First लोग puzzle, just in general, you're qualify always होकर gonna आए win, हैं. but obviously anytime Open you're bracket really के through, seeing फिर Joey, group stage you के gotta through. assume tree, right? You just make that connection, and a lot of times people might say, oh, well, you know, maybe Team we'll में go बाहर for हो Sean, गई. which, man, note again, I'm a chisel, absolutely incredible this match. That still चाहे तो worked चलता out रहता है. क्या 100% चलता रहता like है? they wanted it to, but altogether, नहीं, उसने अल्ट खोला था. उसने अल्ट खोला था. सेकंड फेज नहीं लॉन्च किया. that is really the glue. अल्ट खोला था. आई थिंक वो बेसिक से निकालना चाह रहा था ग्लेशियन को, बट वो मोटा डैमेज आ गया भाई एकदम से. It's a big moments for Alter चल Ego. मम्मी भाई. These pushes with 4 भाई members एकदम in से the वो middle मोटा area, डैमेज आया है and they're forced लिटरली. to push towards these goal zones, but this is one of वुल्फ की those शक्ल का moments बच्चा where भी है. Nemesis, नहीं नहीं, वुल्फ की despite शक्ल जैसा तो कोई नहीं हो losing सकता. an early skirmish, are still able to वो kind of push इंडिया से बाहर नहीं Alter आना चाहिए Ego नहीं again तो and again. देशद्रोह हो जाएगा. That's right. This is, I mean, how many times this tier 1 goal zone? Look at Close fight, भाई, 70 close out of fight. 80, it's Literal pretty close much fight. the entire game. Exactly. I actually don't know if it even Down, broken at the 0. end. I need to see all the way towards the end. ये ऑफलाइन मैच फिर कर रहे हैं क्या यार? दिस They इज managed to break the tier 1 goal zone on top of ये it. अभी भी ऑफलाइन मैचेस कर रहे हैं क्या? I truly cannot believe how many ये times tilting है. full committed Let me to open the I know, bracket. it was unbelievable. But Nemesis able to stop every single push in its tracks. A very creative draft. I mean, honestly, Metallic's Blastoise was having some hero moments again and again. Finally, Alter Ego would find a way to crack the defense and make it through, and then a Blastoise would roll up and stop everything. A nice combo. I mean, another thing to talk about Dude, was that these moment guys are where, still, it was like, a doing full this. committal. Oh my goodness. आप Full क्यों नहीं committal गए? भाई, वो कोई गया ही on the नहीं? path while we saw that Blastoise just sitting up top, just stacking, just leveling, and getting Open strong bracket to risky the है भाई. point became such इतना पैसा खर्च करके कौन problem. जाएगा? मुझे बता ना पहली Metallic, चीज ओपन you know, ब्रैकेट this में. team for this tournament is looking great. Oh, ये पूरे सब में से एक टीम आगे जा रही They है. were running that special attack specs build of the इंडिया से वैसे भी कोई नहीं गया है. Still had the experience मतलब share equipped. लॉस मेकिंग डिसीजन है. अगर जाना है भाई, पैसे एक्स्ट्रा रखें तो उड़ा दो. They were running that 40 भाई अपर विनर सेमीफाइनल ऊपर क्यों करवा रहे हैं यार? इतने मैचेस भी नहीं. या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच तो हो सकते हैं एक स्ट्रीम पे. Serves as well that really knocked people into some very specific positions. Just everything about it was very, very good. अभी भी ऑनलाइन करा रहे हैं, ऑफलाइन करा रहे हैं. Was not a match that I क्या feel यूनाइट like- बैटल अप पे हो रहा है? I लेट मी mean, चेक. definitely the score was one-sided, right? But it didn't यूनाइट seem बैटल like अप it पे was हुआ a तो देख सकते हैं, winnable राइट? match. You could just really tell kind of a lot of the draft was really what decided this one. It wasn't necessarily how they executed यूनाइट what they were बैटल trying to do. But you can see in those moments that I keep talking about, the Alter Ego trying to push down those नहीं, circles. उधर भी लाइव नहीं है They really ड्यूड. needed something else, like you mentioned, maybe something that's better as far as initiation, or maybe some sort of like damage that helps them break through. सब that पैसे मेरा परचेज करने में wall that खत्म they हो had गए to ना. run into. But unfortunately, with what they had, even though they had quite a bit of damage on their team, they just weren't able to kind of craft that. इसको बोल रहा है क्या वुल्फ? Yeah, I wouldn't hate something like a Snorlax as an option. ये It's JL है. more of a heavy इसका नहीं मुझे slam पता. beyond kind of initiation tool rather than what Lapras was trying to do with that bubble beam. You know, Lapras definitely has some options. The Unite move itself is incredibly powerful at doing just what I was kind of thinking needed to be done, but it felt like we just didn't have it as उधर जी impactful. का मैच भी Well, चल रहा है ना? Metallic's response to the पहलों one में. Unite move was catastrophic, right? Let me Inteleon getting KO'd in that exchange was been a nightmare fuel for Alter Ego to have to deal with. जी वर्सेस जीटा वापस से. Unite can be, I mean, that's another one, right? I was talking about how there was a lot of Unite moves in this game that were very much Osh. hit or miss, very literally a lot of the time. Machamps, Nemesis में ना first match तो जीत ही गए. one of, if not the most like impactful Unite move. फन डे स्ट्रीम लाए थे भाई. भाई स्टिल नॉट वर्थ इट यार. क्यों पैसा वेस्ट करना है? मुझे समझ नहीं आ रहा. We can see a little comp here of, or
comparison of JL versus Rex. Interesting. Okay, yeah, obviously both playing support for the team. I like that the captains are the support players. A 50% win rate on this Hoopa for JL, so kind of a hit or miss option, but Rex's Blizzy was actually sitting at 71% win rate. Not a huge surprise when Nemesis was able to go undefeated throughout that. सेबलाइक सब सेबलाइक क्यों दिखा रहे हैं बीसी इनको अलग अलग ही एक्सपेक्टेशन सेबलाइक है आपको भाई इमोशन अलग है सेंसिबल डिसीजन लेना अलग है ना भाई damper on some of those numbers just from at least defeating them once. Their only loss, I mean, we talked about that earlier. Ooh, I love this. Look at this, the little items here. But I mean, we saw Nemesis go undefeated, lose to a team, and then beat them. So nobody in this top 8 has defeated them. They've just basically eliminated their only tournament demon, which is great. Yeah, absolutely. So, oh my word, I can't wait to get into game number 2. I know these teams are getting all set up and excited about this one because Puerto Rico does not want to be going home already. Reminder for everybody, we are starting with 4 teams in the losers bracket. If you were defeated at all within your group stage, the only way you are getting in the top 8 is through that loser side. So this is an elimination match between Nemesis and Alter Ego. Currently, Nemesis up 1-0. If Alter Ego lose one more game, well, they are going to be eliminated from our tournament at that 7th spot. Yeah, and this is a really cool storyline, not only necessarily about this tournament in general, but about this entire season. You know, we're out here in London seeing 2 North American teams play against each other, so it is natural that something like that would be interesting. But, I mean, this is our clash of our 2 monthly champions so far, which is very cool to see. We got to see Alter Ego पहले मंथ का चैंपियन है या दूसरे का भूल गया और Nemesis पहले का है शायद. I think Nemesis पहले का, right? Nemesis पहले मंथ का चैंपियन और Alter Ego दूसरे मंथ का चैंपियन. Which obviously is the reason why they're here, invited, and then winners of the March Cup being Nemesis. So now they get a chance to kind of see the tiebreaker. Yeah, okay, and we are going to be jumping into draft here, everybody, and taking another look at this one. It will be Alter Ego choosing that first pick position again, and it looks like they will be banning away that Leafeon. So again, this ban strategy is going to be sticking out throughout this tournament. Now, Alter Ego is going to ban the Blizzy. I feel like this might be indicative of them grabbing a Hoopa first pick again. I think that would be a fair choice. I mean, again, you really have to fight for these supports currently. Though it looks like we might be seeing some sort of shit. Okay, Crustle. Actually, I think the Crustle is a super, super smart choice. Obviously, you do have to fight a lot for supports, especially with the support ban, but the Crustle is clearly a really, really big key part to kind of why they're able to shut down Alter Ego. Right, but now because of that, you get that crazy good defender in Crustle, but you gave away the Hoopa. So now Rex has access to that, and Metallic still gets that blast. Top pack Pokemon outside of Buzzwole, definitely in this region. And I mean, we're looking at these guys going again for Inteleon and Espion. The Inteleon and Espion, an incredible attacker core. It'll be the Cramorant emerging yet again. Cramorant enjoyers are blessed by Nemesis. Yeah, you know, Unite तो मस्त है. I mean, obviously Nemesis Almost same comp है. बस last time Hoopa की जगह क्या था इनका? 100% win rate with Elda था क्या? past like month and a half, which is not that many matches, but that's still very क्या था Hoopa की impressive. जगह last time? And being able to control space was also really gigantic. Oh, हरी खोपड़ी का Pokemon का introduction नहीं क्या हुआ था? हरी खोपड़ी कौन सी Pokemon? Over here, the Eldegoss we've seen very. Elda Garchomp. Yeah, we're gonna see the Garchomp. Blaziken NA में दिख नहीं रहा क्या? ना Blaziken उतना दिख रहा है, ना Gyarados उतना दिख रहा है. कुछ वालों को धोखा है. Sorry small bed भाई यार. एक स्ट्रीम करने का सोचा कर लेता हूँ आज because watch party चलता है. भाई इस टूर्नामेंट में कोई नई स्ट्रेटजी देखने को मिलेगा ट्राई कर. हर जगह मिल जाती है थोड़ा बहुत. पूरी नहीं तो कोई नहीं मिलेगी यार. पूरी नई स्ट्रेटजी तो कहीं नहीं मिलेगी. वेरिएशन मिलते हैं बस. एकदम नई स्ट्रेटजी मिलना तो मोस्टली रेयर रहता है. Very, very carefully make sure they're ये माचम के लिए नहीं गया भाई डैम. माचल कितना टाइम बाद गार्चम्प पे स्कोप मसल फोकस. उधर ब्लास्ट स्ट्रीट डबल अटैक और फोकस. ये एंटील नहीं लिया इन्होंने. No Antil. Pretty much any frontliner in the game is not going to want to deal with Glaceon.
but I do like it a lot. Yeah, and we actually see Joey making an item adaptation on that Crustle. It's still popular, but still a Oh, bit Clef. fest in which Yes, with Glaceon yes, and Kramer yes, and Blast yes, Boys. yes. All three extreme level actually whole roster. All five of them are special attackers. अरे ओनी भाई Is a very good option. It'll essentially be able to ignore. Welcome stream buddy, thank you for the 1000 super chat. How are you doing buddy? Props to the stream, just dropped in to say hi. Keep it away. Thanks man. How's you're going? I'm good. कितने patients की wicket गिरा दी ओनी भाई? Really Okay, we caught up. normally we see some attack speed items there instead. Honey-chan. We have Rex taking the लो भाई. buff, wanting to make sure that it's tough थोड़ा for lag Machismo होगा to हल्का सा. stack early game. So if Machismo is going to try to make it to the end, कैसा जा रहा है सब? that red buff slowing effect on both the Eldegoss and the Hoopa is going to make it tough for either of these top सब Oni-chan OP कर दो to make a guys. presence on these goal zones. Don't get much time to play. I would have डॉक्टर to का assume प्रोफेशन ही है it's ऐसा a यार. more of a slower top path क्या ही कर game सकते हैं. than we're seeing a lot more recently. Neither of these two अब wants तो to be चलो, family भी हो गई aggressive. आपकी. Obviously there's an opportunity for Busy either रहना one ही है. to, but I feel like they just want to be able to get या to तो the family power को spikes Pokemon in खिला दो. parallel, so we are going to see a lot of just kind of backing Duo that क्यों चालू game कर दो. safer here. We only या saw it for फिर. a moment there, but watching a trainer play this Cramorant in the early game is really interesting to see just a little Cramorant mechanics emerge. Your Level. offense auto-attacking into nothing to try to equip चॉम्प their को beak जंगल भेज with दिया a, एसपीएन with a ऊपर wild आके. Pokemon. काइंड ऑफ गुड डिसीजन बिकॉज़ ब्लास्टर्स के Especially हमने with that चॉम्प random विकेट chance, है. that's awesome, but most of the time you're gonna see या मैं ते Trainer कूदा सा enter ओपी into ठीक this है यार. fight with a यार big उनको हल्का सा पीछे करना पड़ेगा नहीं तो हल्का हल्का लैग You're करता often just रहेगा. auto-attacking into nothing to try to equip their beak with a, with इनका a प्लेबैक wild का पीटी रहता Pokemon. है. If they can get We'll be the Pikachu dropping in and numbers get in June. the Let's that's sure awesome. man, But most of the definitely time यार. you're gonna see Trainer Just hit enter me up, into you know. the team fight with a fish in his mouth. Yeah, just gotta, you know, you gotta make sure you're not. 1-0 कम था. ठीक है यार. ठीक है यार. Now going down very quickly. Thanks again Oni भाई. A lot of focus. Hope you guys enjoy the matches यार. Nemesis आजा watch party देख लो. Missing one. I mean, I guess you didn't say that was a lot. Normal amount for Nemesis. Less amount. Snipe for shot Ultra जा रहा है Ego, अभी. as Garchomp kind भाई of एल्डागोस evolve नहीं हुआ. backwards and maybe didn't get some of that EXP. Yeah, not gonna get Jumpy it. हो Otherwise, गया. Shale would have evolved with that. Blastoise, mostly Hydro. Final ball toy or Yep. Bumblebee will be enough. Can go to spin this match. Eldegoss, Let's surface, and surface they kind of will be better. Evolving, so JL now at that level 4 is obviously going to be going the Pollen Pop, the very popular healing option. The Eldegoss विकेट गिर has सकती है, विकेट गिर access. सकती है. I बच गया. love Sweet Focus. Tornado, but Pollen Pop's just a little too good. Hey, you know, you gotta love going fast. It's a whole lot of fun. But Pollen Puffs. एल्डे शॉट जाके लर्क करेगा तो अच्छा होगा. ठीक है भाई, ठीक है भाई. बाय द वे कल का वेलो मैच जिसमें विकेट गई थी स्ट्रीम की जीत गए. Here we go, the first 8 minutes spawns to the first bolt. So, enjoy. In numbers. Ultra Ego a little bit later, but that's all right because इसका फैंटम फोर्स नहीं आया, इसकी विकेट गिर सकती. वो एल्डा तो नहीं छोड़ रहा, एल्डा नहीं छोड़ रहा unless वो कुछ आए उसके. Capitalize. JL takes a lot of damage. Cramorant's getting the first stage. स्लोबरो को बहुत प्रेशर कर रहे हैं यार. With that dive air slash. वरना बी लॉन्ग इंटेलियन को There टरेट. will be a ton of burst ए लॉन्ग ऊपर बी लॉन्ग नीचे. Yeah, now it's really fully online and not only even just. इंटेलियन about to hit 7. क्रैम also 7 but क्रैम का स्पाइक आ गया. ब्लास्टर 7 हो सकता है. गार्चॉम भी 6 है. स्लोबरो कैम नीचे आ गया. हुपा स्टिल लुकिंग ऑन फैंटम फोर्स. 20-0 स्टैक्स नहीं हुए किसी के. नीचे गोल हुआ थोड़ा बहुत. Or Rock Tomb, right? We've seen this now a couple of times. So we've seen Joey try to. तो ऊपर अगर किसी हाँ ब्लास्टर्स के स्टैक्स हैं. ब्लास्टर्स के स्टैक्स नहीं हुए हैं. ब्लास्टर्स वाज ऑन स्टैक्स. गार्चम नहीं छोड़ रहा. लगा इन दोनों का चल रहा है. इनको दोनों का चल रहा है. पर ब्लास्टर छिल रहा है. ब्लास्टर छिल रहा है. Trainer going to launch the glacial stage. Snowcloak passive is gone. Thanks Regirock. And now Joey is going to be trying to chase Reset. down that target. Snipe shot goes अब wide. गार्चम लो हो गया. ऊपर उसने बैरीज ले ली तो लम्बा हो. Engage from Nemesis so चपाक far. करें मिस. Despite नाउन 1 FS अरे यार ये टिल्टिंग है यार. आप स्कोर अपडेट कर रहे हो. मैं टिल्ट और स्ट्रीम क्यों नहीं हुआ है मैच. नाउन्स के मोस्ट मैचेस स्ट्रीम ही नहीं हुए हैं. अच्छे अच्छे. क्रसल फिर फंसा ऊपर. नाइस किल भाई. मोटा स्नाइप शॉट लग रहा है. Down Hoopa at least to start this off. There is some damage, but the secure is not super gigantic. Trainer is really the वापस only thing फंसे. they have to worry about. Locking down both members into that rock tomb and the X. स्लोब्रो वापस गया. ये फिर रीसेट हो सकता है बट क्रैम. However, it's going to be focused very अरे क्या मेल्ट हुआ है. immediately Dude. down. Trainer going down as क्रैम well. मिनट में मेल्ट. ए मरेगा. बच गया भाई. हील हो गया. हील हो गया. There for Ultra Ego to try to take बटे वापस भाई तीसरी बार रीसेट हो रहा है ये रजी. ये tilting हो सकती है. Ultra Ego definitely getting the most of the KOs. इसने टाइम सॉल्व तो कर दिया. Asmongold's going to be returning as Yeah. well. It comes close for the Snipe. Inteleon is going यहाँ to out, secure it. पता नहीं There's भाई. definitely a chance of Surf Dude. stealing that one away, but not gonna This was fucking close. Rex does This was return fucking to close the भाई. This portal, was fucking takes the close. knife shot for their trouble as well. But Van, of उसका course, 40 हो will गया. get the opportunity to नीचे इन्होंने escape. बैकअप किया किसी ने. आई थिंक क्रैम ने बैकअप किया राइट. या क्रैम आई थिंक बैकअप किया.
40 का बैकअप हुआ, 40 या 45 कुछ। ऊपर चॉम्पी ने गोल कर दिया 40, क्रैम वापस नीचे गोल कर रहा पीछे 20 का। बट ब्लास्टर्स 0 stacks right now, remember that. I think Blasters the only ones running stacks and उसके stacks नहीं हुए हैं। बट स्टैक वाला सर्फ पे खेल रहा है, वैसे चलेगा, ये मिली पे क्या ही फाइट करेगा किससे। नाइस हर्ट बट फेल्स्टिंगर ब्रोकन शिट। ये फेल्स्टिंगर नर्फ करो भाई, स्टन में लगा होता निकल जाता है बंदा, ये गलत है। इट्स नॉट लाइक अनस्टॉपेबल शिट ड्यूड, जैसे बाकी एबिलिटीज कैंसिल होती हैं फेल्स्टिंगर भी कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो इंटेलियन तो पकड़ना नहीं आता। होनी चाहिए ओपी भाई, होनी चाहिए ओपी। वो गार्चम का कुछ रखा है, ये ओवरएक्शन कर दिया। आई थिंक अल्टी यूज करके उसको मारने का जा रहा था, ये थोड़ा हक दिया, ये ऑल्टरिगो ने आगवा दिया। मचिजल भाई ने थोड़ा पुकार दी। ए ब्लास्टर्स, अरे हुपा की विकेट, अरे ऑटो चाहिए था यार, ऑटो चाहिए था, स्नाइप नहीं। बट फाइट इनका है, फाइट इनका है, फाइट इनका है। They literally have no one. स्नाइप मिस हो रहे हैं। 41 वन का ओवरडंक क्या है, दैट्स सैड यू नो। हल्का सा इधर उधर होता, मोटा ओवरडंक था। यूनाइट वेस्ट टाइमस करा है क्या? ये वर्दी था क्या? अरे मेरा स्नाइप शॉट है ये। बट जिंदा बचना यूनाइट यूज करके, इज दैट वर्थ इट गाइस? चमकाल्ट आ गया, ब्लास्टर इन छोड़ ही दिया। ऊपर गोल हो रहे हैं 40 17। और दे रहा है। ए हक दिया, बच गया भाई, बच गया 1 HP, बट मर रहा है। एसपीएन ने मार देगा, नहीं ऊपर ने मारा एक्चुअली, माय बैड। एसपीएन तो उधर है, सॉरी गाइस, नो कॉल। ये क्रैम का लॉजिक मे बी 4 का स्पाइक है, इसलिए 4 and 6 का स्पाइक है, ईवीज के सिमिलर है। एंड प्लस इसका यूनाइट थोड़ा यूजफुल है, कंसीडरिंग के ईवीज थोड़ा आगे नहीं आती तो बाउंस होके पीछे जाता है, थोड़ा टैंकी भी हो जाता है ईवीज के कंपैरिजन में, अटैकर्स में, बिकॉज ईवीज में मोबिलिटी बहुत है ना, हर ईवी में मोबिलिटी काफी है इस पे, एक्सेप्ट टम्बरन में भी, बट उसमें स्टन्स है। ऊपर जाएगा सोब्रोल्ट वापस तो करेगा, अब तो किसी का यूज नहीं हो रहा, बट रोटा मारा है। These guys can melt. Chomp is ready. भाई ये कितना पॉइंट गिरा है इधर? क्या 50-100 पॉइंट गिरा है मिनिमम। लिंडा बच गया। But I don't think they're melting. ये बहुत स्नाइप मिस कर रहा है यार रोलिंग। वो एक भी स्नाइप लगता ना, या तो हुपा की विकेट या इसकी विकेट थी, बट ये मिल रहा है। एंड ऊपर लिटिल अभी 50 पॉइंट्स और पड़े हैं। 3 पॉइंट्स का लीड। जेम्स हमें से अनाउंस हो जाएगा थोड़े टाइम में, डोंट वरी। मोटा पकड़ा गया क्रैम, गोल नहीं करने जा रहे हैं ना, बट दे आर इन द लीड नाउ। 158 $100 $250 120 पर नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग, उनको पता है हुपा है। ये फ्लिप करने जा रहे हैं एल्डा को, ये फिर वेस्ट हल्ट हो गया। नेमेसिस को गया क्या? हाँ शील्ड्स गए, बट सब अल्टर ईगो विकेट गाइस। सैड हो गया ये, सैड हो गया। कैन कम बैक दो, 4 बंदों का शील्ड टूटा है आई थिंक, राइट? यूनाइट्स हैं,
उनके यूनिट्स नहीं आए अभी T1 भी है रिकॉल कर रहे हैं यूनाइट एडवांटेज है इन पे क्रैम का यूनाइट आ रहा है मोस्टली ब्लास्टर्स का भी आ सकता है बट इन पे T1 है मोटा डंक है एक गोल चाहिए भाई बट हुपा अल्ट का फॉर्म कर रहा है शायद यूनाइट नहीं है इन पे ब्लास्टर्स का यूनाइट है ब्लास्टर्स क्रैम का किल चाहिए नाइस स्नाइप बट ब्लास्टर्स का शील्ड है यार ऊपर भी आ गया और ऊपर का नेट आने वाला है जी एंटी ऑल्टरी को यार अच्छा पुश किया यार एंटी बॉयज यार एंड पे पप्पू कर दी थोड़ी ज्यादा जोन दे दिया उनको इन पे पोक था भाई ग्लेशियर मस्त खेला ट्रेनर यार ग्लेशियर मस्त खेला है लिटरली ये है ट्रेनर देख रहे हो ना करली वाल मस्त खेला भाई ग्लेशियर छोटे बच्चे ने वेट ये है क्या ट्रेनर तो उस पे क्या अच्छा ट्रेनर तो उधर जर्सी का नाम माँ कसम गलत नाम पढ़ दिया मैंने ये मैचेस अलग है इनके आइजन कैसे पता लगेंगे इंडिया के ऑपोजिट कौन सा अपॉर्चुनिटी भाई उनका टूर्नामेंट उधर ही रहेगा ना एसीएल अपना है एसीएल थोड़ी उधर होता है हर जगह सेम है भाई इंडिया ये जो ओपन हैं जो इंडिया ओपन मलेशिया ओपन एशिया में होते हैं बाहर नहीं होते एसीएल बाहर नहीं होता जो बाकी कप्स रहते हैं वो बाहर होते हैं एओस कप की जगह वगैरह एसीएल उधर ही एओस कप है बिकॉज उधर इन दी एंड कम्युनिटी ज्यादा है बड़ी है लोग ज्यादा हैं तो उधर टूर्नामेंट भी ज्यादा होंगे Swiss bracket to group stage and now in our double elimination bracket they still seem untouchable. Alter Ego is out guys. Trainer of course one of the most उधर क्या चालू है performing players that we have seen in the Unite Championship series 6 KOs on कल मैं 2 बजे तक जागा रहा था ये काबीचान वर्सेस फॉरफ्री का रिजल्ट देखने लड़का नहीं लड़का है भाई चलकर गूल वाले जीन्स जा करेंगे तेरे गूल ने भी लड़की बोला था लग गए उसके बैंगन निकला But Yeet Fan, certainly, like you said, is an extremely top-level player at this Pokemon. I mean, being able to secure that final ray was sad noises, guys. Unite moves and very sad noises. It felt like they never lost an early. Slowbro बहुत मस्त खेला, एल्डा को रोक दिया. In the end, they were the one able to secure Rayquaza and have a very strong Unite move. ऊपर ने मैं दे दिया that fight as well. हमारे qualification कब है next month से. Registration इस month चालू हो जाएगा, don't worry. This match was really Rayquaza was KO'd and then of course we have that final push by Rex knowing they almost had लड़की ठीक है भाई to bring the entire squad. कहाँ से लाऊं मैं? ये क्या बात हुई सुमित भाई? From Alter Ego's push. Shielding of ये देखो ये अपना बंदा है इसको बुलाओ जरा इधर है कौन जानता है इसको इधर बुलाओ ये अपना लौंडा है मैं पक्का बोल रहा हूँ ये मैजिशियन तो अपने लौंडा है बुलाओ भी इसको स्ट्रीम पे that much closer to qualifying for the world championships as well. It's what all these teams are fighting for is the most prized possession. And oh my word, I mean they're doing it well so far. Let's take another look at that game. What a fusion! Hey, Nouns wicket! Loser quarter rounds. And I do have to say their draft in game number 2 was so much. This is getting interesting. Mew किधर गया? अरे हाँ रखा था साइड में. Sorry. Mewty is here guys. Mewty is here. Say hello to Mewty. यार watch party इसकी होती है. मैं बस साथ में कंपनी देने आता हूँ ना. Emotional support animal मैं हूँ इसका. So Mewty is here. जी के गेम का क्या सीन है? Absolutely. I thought the new look from them in that second game, especially with that Crustle first pick, was very impactful. I liked that choice, but of course, अरे बादशाह भाई आ गए. a little too strong at that moment in time. One thing that I don't know if we're gonna see it again or not, but you pointed out that Hydra Typhoon in the final defense here in game number 2 was ridiculous. That hit every single member of the opposing team. But we've seen some really great stuff from Metallic in general, just being able to hold on to a lot of really good opportunities to use that Hydra Typhoon. I mean, यार cool भी लग रही है, अजीब भी लग रही है मेरे को. ऐसा like concept पहले कभी देखा नहीं है.
closer game, which you do truly love to see, Both but not the quite time. close enough to get the game. वो दूसरे से It's किधर interesting, right? Because so far we've seen a कौन? lot of teams target when you're targeting Nemesis in the bans, you're targeting Trainer or you're potentially targeting Rex on those support picks. We have not seen very much showing towards the top path Pokemon and try to force Metallic onto some strange stuff. Problem is, they do play a host of great Pokemon. Obviously, their Blastoise has been the most impressive that we have seen, but their Blaziken has Londa must also खेले, been भाई an Londa must incredibly powerful Pokemon. Nemesis ने पहला है भाई. So it's a really Literally, tough time Team fight when outplay. you're trying to Macro lock तो almost down equal था. specific Team fight player outplay in दिया भाई the बहुत गंदा वाला. Yeah, it might just be a thing too where you Gacham को जो value आना था वो आया नहीं. knowledge of a lot of the other members playing. Still Blaziken या Gyarados इधर better रहता है यार बहुत ज़्यादा better रहता है मेरे ख्याल से compared to Garchomp. Putting in a lot of work. I know the Duke Snack specifically has been. भाई Crow क्या? Oh yeah, I know they called it out अरे तो yesterday. He was the only मैंने game नहीं खोला आज. caster on our team to delve into the open bracket for a भाई player to watch. ये फिर Zoinks, Dupe Snacks और वो सब They're getting डिजाइनर सूट पहन के आ गए ये बेचारा फिर नॉर्मल सूट पहन कर आ गया है. कौन था यार ये मैं नाम भूल जाता हूँ. किसी को नाम पता है क्या? अंकल जी का. It was fantastic. But we're going to hear from a new member of Team Nemesis now as we have an interview with Trainer on stage. So, take it away. All right, here we are on the big stage with Trainer from notification Nemesis. अरे छोटा भाई क्या The हाल AEOS Cup trophy is so close you can almost taste it. But I've been भाई told मुझे I'm बिस्किट not लगे. allowed to. Trainer, मुझे बिस्किट what an लगे हैं वो ट्रॉफी incredible अभी. match right मुझे लगा there. बिस्किट है खाने के What are लिए. you looking forward to in चबा this दो. tournament? What do you think is going to be the big thing that ओ will ये है get you guys ट्रेनर together? ओके. When we face Kabi-chan, I really want to beat that team because I heard they're one of the best Japanese teams in the world. अपने Who गॉड do you नहीं think टाइम is नहीं the मिला best देखूंगा team in होपफुली. the world right now, भाई इस बार तो excluding पूरा your team चमकदार सूट and पहन कर आया है भाई. team? पर्पल पूरा सेबला लग रहा है. Personally, I think सेबला लग रहा they है. can adapt to many चमकता type of हुआ mons, सेबला है. and they have a bigger mon pool than most teams. Awesome. And before I let you go, Trainer, I want to know, if a Pokemon was a horse, any Pokemon, what one would you like to ride the most? ये गलत सवाल है. Good answer to that question. That was not a good question. Thank you very much. Do you have anyone you want to shout out before I let you go? अरे कास्टर दूसरे थे. देख दो चार होस्ट चार कास्टर्स हैं तो Give जब it up दो for Trainer, everybody. I'm gonna कास्ट कर send रहे it होंगे back मैच to the दो booth. होस्ट I've कर been रहे told I होंगे have to after that अलग अलग question. जगह पे. Take it away. भाई पर ये क्या भाई कौन सा पोकेमोन चाहते हो जो घोड़ा है जो इसको आप चढ़ पाओ. Just us, thank goodness. No, The no, fuck? no, we love Spraggles, and I love. Honestly, shout out to Trainer for being just a champ answering. ये those क्या सवाल था भाई questions बेचारा because- बंदा Oh boy. इंडिया वाला बंदा कुछ But great गलत work. जवाब देगा I उधर. really have a good answer. That was like very surprising. I Japan. didn't even understand the question at first. It didn't even make sense to me. वर्ल्ड तो नहीं That's अभी. top player adaptation right there. You know. क्या that's क्या awesome. उसने बल्बासौर. Yeah, I love Bulbasaur. that announce in the future, and of course, our player of ये the Yeet game fan है. award is actually going to be going over भाई to थोड़ा ढंग से 2016 पकड़ भाई. fan बेचारा ऐसा लग रहा है पोकेबॉल से Cramorant. मुश्किल से Such an उठाइए हाथ टूट incredibly जाएगा. powerful pick. So cool to see. Honestly, mostly because they're the only player really playing it in this tournament at the time. Yeah, we've had Is a few Cramorant players back, on and boys? off really be using Cramorant, but Yeah. I mean, especially I think we saw a little bit more in Japan for a little bit, but they kind of fallen off of that. So realistically, it is just 2016 fan, aka Yeet fan, who is really using it quite a bit. You know, used it in I believe he was in the grand finals of the March Cup, using it now obviously with a still 100% win rate somehow. So you know, I'm pretty happy about that. And I personally think this Pokemon is incredible into that Crustle. We were talking about it a little bit in Lapras that game अच्छा number था. 2, but just कौन सा? having that natural move of dive to किधर? get around those rock tombs feels so strong, especially because your early game you'll most likely be pathing against that Crustle in the early game in the bottom path. So just having that extra opportunity Lapras कौन to सा मतलब? outplay your opponent feels ये so board में yes, good. yes, I'm honestly surprised we're not seeing more Cramorant. It's tough, right? It's and it can definitely be a little inconsistent. But I mean, I think it's really good against a lot of what we see. Like I was mentioning before, it's really hard to lock down with snipe ये shot. macro क्या होता है? Map rotation and everything. Ton of damage, but it's hard to lock down with Objectives, snipe map shot. rotations. A lot of the auto hits that we see from some of the evolutions. Sometimes dive has some of that invincibility. You can avoid some of it. Very difficult to do, but it just makes it hard to deal with a lot of the meta Pokemon, right? Yeah. I mean, you can even kind of get away somewhat from Buzzwole sometimes when it's trying to like chase you down and catch you. There's so many different ways to just move away, get away. And then having to have any of these meta like brawlers trying to get through that unite, it's tough. Yeah, it is extremely strong, and obviously 2016 fan makes it look even better. Looks top tier. Prediction whenever क्या they दिखा are रहा है? Playing that Pokemon specifically, and so everyone Nemesis Prediction will be दिखा moving रहा है. on in our Kabi-chan bracket जीत रही now. है Of ये
course, टूर्नामेंट Alter Ego गाइस। will be the first team to be eliminated. जो बटन गेमिंग नहीं North होता वो America, क्यों obviously, in this माइक्रो battle, will 1v1 still be होता है। remaining in our 1v1 top तेरे 8 स्किल्स bracket. पोकेमॉन के साथ, A lot of teams तेरी going फाइटिंग forward स्किल to सारा। be looking forward to watching in our broadcast, though. I'm excited to see शिंगरी these लोग को rosters तो play सीधा out. बाहर कर दिया Kabishan's now awaiting प्रेडिक्शंस on ने। that loser side of the bracket. We're going to get म्यू to see साइड some रखो, more of them. ठीक है We got भाई। to cast them yesterday, and it was a great ये game. सब होता And तो just म्यू as a रखता ही reminder क्यों? for everybody out there, of course, just remembering the stakes of what this tournament is. Obviously, we're going to be seeing our first team qualified for Worlds at the end of 12 के होने today, वाले which हैं, is damn। awesome. Already, they're basically fighting through Worlds to get to Worlds, right? And then we're going to have $100,000 on the line. नहीं These वाइटी teams have टॉप पिट नहीं है, already देख made ये it बताता हूँ into ना, ये the पूल money, दिख रहा है ना even if अच्छे you get से। eliminated right now. So We'll see what other every teams can open make bracket it further team, into the money. We're going to take a short break as we set up our next match. So don't go चलो रुको ब्रेक करते हैं। तो इधर ये अच्छे से दिख रहा है कि जूम इन करो गाइस, मुझे ये बताओ। इज दिस विजिबल कि मैं जूम इन करूँ? मुझे नहीं पता स्क्रीन पे कैसे दिख रहा तुम्हें मोबाइल वालों को। इज दिस विजिबल प्रॉपरली? जू कर, जूम इन करूँ, कंट्रोल होता था ना। यस, अब बेटर दिख रहा। तो अब देखो ये जो ए ब्रैकेट पे टीम है, ये ऐसे ओपन ब्रैकेट खत्म हो गया एंड ग्रुप स्टेज जो था। अब 8 टीम्स ऑलरेडी थी जिनके मैचेस हो चुके थे ग्रुप स्टेज वाले, वो ये ए ब्रैकेट में थी। ऑल्टर ईगो जीत के इधर आई, एंटी की स्पोर्ट्स हार के इधर चले गई जो ग्रुप स्टेज से। जब ओपन ब्रैकेट की टीम आई थी वो हर पूल में ये बी वाले मैच पे आई थी। ओपन ब्रैकेट से 8 टीम क्वालिफाई हुई, उनकी सीडिंग हुई ये वाले बी वाले ब्रैकेट पे। वो बी वाले ब्रैकेट पे जो भी जीता आगे गया, हारा नीचे आया। अब इधर सी वाला ब्रैकेट ऑल्टर ईगो हारी, नाउज स्पोर्ट जीती, नाउज स्पोर्ट टॉप 8 क्वालिफाई। ये अब विनर्स फाइनल के थ्रू गए नॉन स्पोर्ट, तो विनर फाइनल में प्लेस हुए, विनर सेमीफाइनल में प्लेस हुए प्लेऑफ्स वाले ब्रैकेट पे। अब इधर जो हारा इनके मैचेस हुए, इधर जो जीता ऑल्टर ईगो जीती, E7 हार गई। ऑल्टर ईगो गई टॉप 8 में, बट वो लूजर्स वाले ब्रैकेट पे गई, अभी निकल चुकी है प्लेऑफ्स से। अब पूल 2 आते हैं, सेम इधर भी। इधर यूनाइट होलिक और रिवर क्रिस्पॉन था, रिवर क्रिस्पॉन जीती, यूनाइट होलिक नीचे। यूनाइट होलिक जीटी से हार गई थी, ये कल ही देखा था हमने, कल जीटी से हारी। एंड ये काफी मैचेस, ये जो मैचेस है काफी इधर ऑफ स्ट्रीम हुए, कुछ 20 बी बेस्ट ऑफ 3 से सिर्फ 9 स्ट्रीम हुए हैं। रिवर क्रिस्पॉन जीती टॉप 8, कैपी वापस हारी, जीटी से जीती, वो अगर नीचे लूजर ब्रैकेट से टॉप 8 चले गई। पूल 3 ये था अपना, ये शायद काबी चांद और शिंगड़ी वाला पूल। मुंह के साथ बैठ के रोते हैं रात को, ठीक है यार। काबी चांस फॉर फ्री हारी, काबी चांस आगे, शिंगड़ी लोग आए, शिंगड़ी लोग का आउटर बैंक्स के साथ हुआ मैच, शिंगड़ी लोग जीते। काबी चांस 1-2 गया, शिंगड़ी ने विकेट गिरा दी, लूजर ब्रैकेट में गई। फॉर फ्री ने आउटर बैंक्स को बाहर कर दिया, काबी चांस और फॉर फ्री हुआ वापस से, 1-1 था फिर 1-2 हुआ, एंड फॉर फ्री की विकेट हो गई, घाट 2 बाई चले गए, और काबी चांस लूजर्स साइड टॉप 8 आ गए। और अब टीम वाइटी वाला पूल, पूल 4। कुछ तो स्विस रैंकिंग का वापस बीटी हुआ था, जो इंडिया में बीटी हुआ ना ऑलमोस्ट, वापस उधर भी कुछ सेम हुआ है जितना मैंने ऑनलाइन देखा। पता नहीं क्या सीन कंफर्म है कि नहीं कुछ, बट स्विस ब्रैकेट रिस्की लग रहा है भाई अभी। लेगेसी फ्यूजन जीती, नेमेसिस और टीम वाइटी। भाई नेमेसिस टीम वाइटी से हारी थी पहले, टीम वाइटी फ्यूजन से हारी, नेमेसिस गई लेगेसी के अगेंस्ट, लेगेसी से जीती 1-2, वाइटी फ्यूजन से हार के आई, और फिर अब नेमेसिस ने 2-0 कर दिया, तो इधर से वाइटी बाहर हो गई और नेमेसिस टॉप 8 पे आ गई। और अब ये है हमारे टॉप 8। नाउ दिस इज आवर टॉप 8। एज यू नो, नाउंजी स्पोर्ट्स और फ्यूजन का मैच ऑफलाइन हुआ, जैसे ऑल्टर ईगो और नेमेसिस चल रहा था। नाउंजी स्पोर्ट्स हार गई, फ्यूजन ने 1-2 कर दिया, फ्यूजन अब विनर फाइनल में है। विनर सेमीफाइनल से नाउंस हार के लूजर्स क्वार्टर में जा चुकी है, और इनका अब ऑल्टर ईगो और नेमेसिस, इधर नेमेसिस आ गए है। अब जो इधर नेमेसिस का मैच उनसे होगा जो रिवर रिस्पॉन या शिंगड़ी लोग से हार के इधर आएगा। ऑल्टर ईगो आउट है, कैपी वाबस और काबी चांस से जो जीतेगा वो नाउंसी स्पोर्ट्स से लड़ेगा, ठीक है। और इधर जो गए फ्यूजन, और इधर से जो हारा वो गिरेगा इधर लूजर फाइनल में, और इधर से 2 टीम जो जीती वो लूजर सेमीफाइनल में मरवाएंगी। और ये इधर 24 अभी ग्रैंड फाइनल रीसेट भी है, ये जब ग्रैंड फाइनल में पहुंच गए ना तो रीसेट भी है, बस वो इधर मेंशन नहीं होता है क्योंकि वो जब हारेंगे तब देखा जाएगा। ऑल गुड।
भाई फॉर फ्री को काबिचान ने सेम टीम लेके 2 बार हराया है ना। सेम टीम लेके मतलब क्या मेंबर चेंज हो रहे हैं क्या? बहुत कहाँ कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज 3 स्टेजेस से क्वालिफाई, 2 स्टेजेस से क्वालिफाई ना, एक तो ग्रुप स्टेज से। ग्रुप स्टेज का मुझे समझ नहीं आया यार, ग्रुप स्टेज का इतना फॉर्मेट रखा क्यों जब क्वालिफाई होने का फायदा ही नहीं है। ओपन पूरा है ही नहीं कुछ फायदा इतना। बीटी है भाई बहुत ग्रुप स्टेज का। ऐसा लग रहा है ओपन ब्रैकेट से ज्यादा इजी हुई क्वालिफाई होकर लोग पहले चलेंगे। बट ऑब्वियसली ग्रुप स्टेज वाला जो क्वालिफाई कराए थे उनको ज्यादा प्राइस पूल मिला ऑब्वियसली, बिकॉज वो जीत कर आ रहे थे अपने अपने रीजन से। सो बेसिकली वही ओशियाना के विनर्स थे, सब जगह के विनर्स थे। अब अपने पे ये 8 टीम बची हैं, अब 7 हो चुकी हैं और थोड़े टाइम में 6 भी हो जाएंगी। अब इनका मैच है मोस्टली एंड यार ये ऑफलाइन नहीं करवाना चाहिए यार, ये मोटा मैच है। रिवर्क रिस्पॉन काबी चांस की विकेट इन्होंने गिराई थी, रिवर्क रिस्पॉन ने, राइट? यस, काबी चांस की इन्होंने विकेट गिराई थी। टीम कॉम सेम था, काबी चांस का दोनों मैच जीत के। वन इनका तो वो गया था ना, 1-1-2 दोनों बार गया था। यस 1-2 गया दोनों बार। काबी चांस का ऑलमोस्ट सेम टीम कॉम था तीनों मैच। फॉर फ्री ने हल्का हल्का चेंज किया था, फॉर फ्री का भी ऑलमोस्ट सेम था, इन्होंने बस जंगलर चेंज किया था। मैं ये मैच का लूजर्स फाइनल्स का नो इन्फो बिकॉज लूजर फाइनल स्ट्रीम नहीं हुआ। नेक्स्ट मैच कितनी देर में होगा? आई थिंक कास्टर्स आ गए हैं, बस चालू होने वाला है। इसका नाम दिखाया था, इसका नाम दिखाया था वंडर शेफ, वंडर शेफ, वंडर शेफ। Chance and Baba's on the official broadcast for the first time. I feel like this team has been taking names, taking down teams all day long. It's going to be so exciting. But before we get into that match, we have a really cool look back at Nemesis' Game 2 win from their perspective. We're going to hear from Nemesis. Take a look at this video. I'm kind of looking. और बस इधर ही Just flip it, bro. Just flip it. back to pool 1. Just flip, 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 flip. And I think Look at here. Nice, Chalo. nice, nice. Go score, go score, go score, go score. Yes, whoever wins the EUIC उसको एक अलग से स्पॉन्सर्ड स्लॉट है, बट दिस स्लॉट वोंट अफेक्ट एनी EU स्लॉट्स। EU के 3 स्लॉट्स रहेंगे, NA के भी अलग स्लॉट्स रहेंगे, EUIC का अलग स्लॉट है। जो भी जीता उसको वर्ल्ड में स्लॉट है। That's how it is. we got 2 seconds before this guy comes. CB वाले को फर्स्ट मैच स्ट्रीम है अब। हाँ ना, कैपी बॉल्स का पूरा मैच स्ट्रीम नहीं हुआ। I'm out. हेलो हार्दिक शर्मा भाई, क्या हाल चाल? मैंने सुना यूनाइट कॉम्पिटिटिव की मिनिमम मैच 14 होगी, आई डोंट नो, इंडिया में तो नहीं होगी। आई थिंक बाहर के एज रूल्स अलग रहते हैं ना, अगर हुई है तो आई डोंट नो, बट इंडिया में आई डोंट थिंक 14 हुई है, 16 होगी इंडिया में तो। आई हैव टू चेक द रूल बुक है मेरे पे, रुको देखता हूँ, लेट मी चेक। इट्स नॉट एक्चुअली इंडिया स्पेसिफिक रूल भी है काइंड ऑफ। लेट मी चेक द रूल बुक गाइस। The next matchup, like we mentioned before, Ruko is going Babus. to be Poppy Babas Eligibility. versus Kabi Chance. I cannot wait, Wonder Chef. I know I'm going to keep saying it, but I'm definitely going to mix up these two names. They're not similar in idea, but they start off the same phonetically. It's okay. I love capybaras, so I'll remember it very easily. Yeah, capybaras, I'm so excited to see for the first time. Obviously, capybaras we've had a chance to see on broadcast. क्वालिफिकेशन में एज का नहीं लिखा हुआ, आई थिंक वो स्पेसिफिक अलग beforehand, but capybaras, रीजन बेस्ड रूल बुक आएगा तब आएगी वो एज या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा। list of names to get here, just really representing their ये इवेंट own वही ना, region area. गवर्नमेंट के बेस पे। They got that EU buff, right? We are going to be भाई आपका playing with promotion EU चालू है, home Pikachu talent पे। हैं? for a few of these players. Of course, young बाडू? Leon just dripped it. किधर? On stage always. I love that jacket. They got the शिंगड़ी beauty option on it started. as well. This team is fantastic. ए, Think इतनी about गंदी this, quality क्यों है? Leon and Toast. What a roster. भाई शक्ल रखा हुआ है इसने। Strong roster, but Chat we just देखो। really haven't seen them. I mean, they did make top 8s in the monthly cup so far this season, but very similar to Nouns, they haven't really kind of made that super top showing as far as a team together. However, from seeing previous UCS seasons, I mean, these names are extremely good, and we've seen so many of them in regional championships, monthly broadcasts, etc., etc. क्या So चालू है? this is the moment where it's like, okay, hold on a minute. Is you just need a live tournament every घंटा single कुछ नहीं time दिख to रहा really मेरे को। pop off? Yeah. Lanimals. Every single one of them are ये right. मैजिशियन They are इधर locked in. क्या कर रही है? They might have to go up against the toughest opponents they have had to face yet. Kabi Chans, we've talked a lot about them at the beginning of this मेरे को तो कुछ नहीं tournament, दिख रहा है यार, are one अंधा हो of गया his हूँ। favorites to take this entire one. One of our 2 invited Japanese teams here. They are here boys, are टमाटर, champions कोको of the आटा, Asian विठोपो, Champions League, which happened विठो, ये recently. शक्ल देख लो guys, They're wearing. They इसने did 14 है। have a little bit of a stumble in the most recent World रोम भाई, Qualification नोड़ा preliminary बाजी for रो। Japan, the biggest tournament as of recently. They did come in 4th place, so not making it into their big regional qualifier quite yet in the first preliminary. But here at this event,
they have been playing out of their mind, able to take down 4-3 twice yesterday. ये कौन सी बॉल थी? ये भी लग्जरी बॉल थी ना शायद? ये भी लग्जरी बॉल है ना गाइस? ये तो नॉर्मल बॉक्स की बॉल, ये लग्जरी बॉल है, आई थिंक अलग वेरिएंट। I mentioned before actually defeated them in the ACL group stage and भाई apparently टोपो ने ड्रैगनेट क्यों पकड़ा हुआ है समझ नहीं आ रहा। That's not a team that we're going to see them fight. खेलता तो जोरो और ब्लेजिकन है। Yeah, that Shinra Day is going to I mean, ड्रैगनेट भी खेला ही था कल। So now they're down here in Thumbs up दे दिया है। only remaining team from Japan and again, you know, I'm not Woody trying to पहन कर आए हैं भाई आज say लौंडे। but I think if I had to talk to everybody Premium that I ball. talked to before this Ooh, I tournament, think the yes, yes, yes. majority overall, टाइम हो गया भाई the पोकेमोन की गेम खेले, majority ये बॉलने वाले chose सब भूल रहा हूँ मैं। Chons as the खेलनी पड़ेगी लग रहा है। पालवेल का भी अपडेट आएगा इस मोटा मोटा। भाई आज तो म्यूटू निकालेगा। किधर से निकालेगा भाई? और कौन निकाल रहा है? ए हेडफोन किधर से पकड़ के बैठा है भाई? ऊपर पहुंच नहीं रहा था क्या? म्यू से म्यूटू निकालेगा, ठीक है भाई। Yeah, one of the most terrifying groups for sure. But let's take a look at these Slow bro, win rate 14 50%. members, defender on both sides. Kokada on that Main Pokemon Blastoise. Blastoise. Oftentimes we see Kokada 71.43% with that Blastoise for the most part, but Premium ball है, Premier sorry, Premier, my bad. But let's face it, Gabi Babas has had to play so many games overall in this tournament. Slowbro getting a lot of statistics in the mid. तब लास्ट ईयर हमारी जो दूसरी टीम थी वो जापान वीजा नहीं मिला ब्रो, वीजा इश्यूज थे जो मेरे भी हुए थे। इसका हेडफोन गिर नहीं रहा क्या? बाल इतने स्ट्रांग है? हेड एंड शोल्डर्स गेमिंग। थम्स अप दे दिया एडमिन को। मैच स्टार्टिंग। थम्स अप दे दिया गया है। कैप्टन से पूछ लिया गया है। Yeah, another player that's going to be playing a lot of defenders on Kabi-chan's side is going to be I Am Tomato. Now, Tomato's defender play has been phenomenal for months now in the Asia Champions League. In this event, it feels like they just really haven't slowed down at all. Hello. Reminder to everyone, there's a lot of good press How are you, Babu? right? A lot of people very क्या excited. भाई इतना टैग करना पड़ेगा भाई सुबह सुबह भाव क्यों खा रहा है भाई अरे नहीं देखा Average नोटिफिकेशन। age of this team is 17 years old, just entering into the tournament. But we have our draft phase beginning for our. क्या चालू है भाई? अभी भी ऑफलाइन मैच करवा रहे हैं? भाई आधे से ज्यादा अच्छे मैचेस तो ऑफलाइन नहीं हो रहा है भाई कल के 20 BO3 में से 9 स्ट्रीम हुए हैं बस। Hello. YouTube is back. गॉड ऑफ लाइफ सच में अबे ब्राजील का सीट में क्या दिया है? बाजी बाजी क्या है ये क्या बोला ये? क्या बोला ब्राजील? ये क्या बोला ये? मेरे को नहीं कह ब्राजील बोला ये? ब्राजील स्पेलिंग क्या है? BRAZIL मादाचोर ब्राजील बोल रहा हूँ। ब्राजील बाजी अरे देखा है फर्स्ट टाइम देखा है क्या दिस इज फैमिली दिस इज ब्राजील बाजी इतना जोश में आके तोतला है ना बड़े ने प्रिंसेप वर्षे गड़ा हुआ प्रिंसेप वर्षे खेली है। आज खेलूंगा भाई हॉक। क्या खेलेगा? एक महीना बाकी है खेल ले भाई पोकेमॉन। ब्राजील अरे अंकु भाई आप ही जा रहे हो ओनुडिलू आप कर दो मेरे को ये टाइम भी जैसा भाई चले जाए आप बोलते फ्री पैस दे रहे हैं लोग। क्या ये मैंने तो बोल दिया भाई फाइनल असाइलम और ट्रू ग्रेविटी असाइलम सॉरी सोलर ट्रू ग्रेविटी फाइनल है और मैं तब आएंगे पगड़ी बन के बाजूल पे छोड़ देंगे भाई। असाइलम का रोस्टर स्ट्रांग लग रहा है, असाइलम का रोस्टर स्ट्रांग लग रहा है भाई। मुझे तो क्लाउड फाई का लग रहा है सबसे स्ट्रांग डबल पाजी गेमिंग है उधर। कल साइड क्लियर 2-0 कर दिया भाई हम लोग। यस बहुत छोड़ा भाई सड़क में भेंचे। अरे साइड में खेलता तो काफी जान को चुप अबे जिसो लास्ट रात में खेलेंगे ठीक है? 1000 गोल करके बोल दो भाई कि मैंने मारा कुछ भी। अरे अबे कौली खेलेगा क्या? हॉकाई खेलते हैं वो पान लेके आता कृष्णा से चुरा। ए भाई टेलन मेरा निकालिया स्नोई भाई को दूर रखो स्ट्रीम से। आज मास्टर पहुंचना है फिर गेम बंद करते रहे एक महीना। हिमा मारा चोट
ए माँ को मादरचोद बोल रहा है? What the fuck गुल भाई अरे लौड़े दोस्त है मेरा, उसका नाम हिमा है। लौड़े अच्छा हिमा लड़के का नाम हिमा है। लड़के लड़के लड़का हाँ तो लड़का ही अच्छा मादरचोद क्यों बोल रहा है भाई लड़की को? क्या है भाई? डिस्गस्टिंग। लड़का है लड़का। लड़के का नाम हिमा है। माँ बाप प्यार नहीं करते भाई। भाई ये काफी बापास का तो बेंजू मुंह पे स्माइल लग रहा है, पता नहीं है क्या लोग को काफी चाने सामने। भाई ये तो उस पे खेल रहा है जॉयकॉन पे। यस वो भी टोपो ही था, नहीं रोम था शायद। राम खेलता है। उसने हाथ खड़ा कर दिया ऑलरेडी। कुछ तो कांड हुआ इनका वापस। AFK हो गया। Bottom path clear is going to be very interesting. I believe the Dratini will be just taking the blue हो गया guys, remake है। We do have a pause, one player just having an issue on stage. We'll get that sorted out as सारा भी टीम के साथ ही हो रहा है। कल दिन के पहले गेम में जब म्यू 10 लेवल था वो लोग का, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कावी चांद वाला इतना गंदा खेल सकता है। कुछ तो हुआ रहेगा क्रैंक। अच्छा ट्रांसलेटर बुलाना पड़ा पहले। एडमिन कोई बात ही नहीं कर सकता। इसमें वो चाहिए क्या? VPN चाहिए क्या? नहीं सिर्फ डाउनलोड करने के लिए चाहिए। हो गया। इसका भी वीडियो डालता है क्या ग्रुप गुल वीडियो पे? हाउ टू डाउनलोड भाई गुल ओपी अबे वो तो मैंने सब पहले किया था इसका क्या कुछ लिखा भी नहीं, क्लिकबेट। अबे नीचे था वो जो डिस्क्रिप्शन। अच्छा माय गॉड you didn't say anywhere in the वीडियो में लिखा था क्या तूने कि डिस्क्रिप्शन चेक करो? हाँ दादा क्या हो गया भाई? I will be the mates। क्या बोला है? यूएमएलएन तो अकेले खेल रहा था भाई वीडियो में। अकेले खेलने तो लोग भाई कैपी बाबास में तो एक और बाबा है भाई। ब्रो क्रसल नहीं खेल पा रहा है भाई पोकेमॉन में, उधर अकाली खेलते था। क्या हो रहा है भाई? हवा लग गई सबको। आज मेरा भी गोट के साथ स्क्रीम 6:30 बजे। भाई टीम डिस्बैंड मत करा देना 1500 गोल मार के। अभी हम लोग का भी है 7 बजे द गोट आरएनटी। ये सारे मूवीज रॉन्ग के साथ होती हैं शायद, पता नहीं हैंडल पे खेल रहा है इसलिए। गुल भाई तो सिर्फ चिप मारने वाले चिप। हेलो ट्रैवली वाइज 0-2 करके चल रहा था, फिर बोल रहे मारना मत। ये रॉम नहीं है बट ये रॉम मैंने अच्छा मैं म्यू था क्या जो लास्ट नहीं दिया? रेवेनेंट था ना, मर गया आके लौड़े। वो वाला गेम बोल रहा हूं। कैसा मर रहा है? गोल भाई कॉन्ट्रासेटर में जो आगे आ रखा है भाई म्यू गोल भाई बीच मार सकते हैं। आई ओनली नो लीजेंड भाई। एसेट रोडल का अगेंस्ट स्क्रीम्स होता है क्या आपका? एसेट रोडल सिर्फ नहीं करती भाई नुक टीम के सामने। इधर बंदे नहीं है स्क्रीम करनी है। स्क्रीम तो रोज होता है। अच्छा टेलर टीम जी बस स्क्रीन करती नहीं, डायरेक्ट मुंह बोल देते। भाई स्प्रे का तो चमकता हुआ सेबल है बनकर आया भाई। अबे इसमें तो एंजेला बोल के वो है, तो मेरा नाम पीछे तो क्यों लिखा है? ए यूने एंजेलिका रे। इसका तो मैं बनवाऊंगा भाई। भाई वेलकम का कुछ तो स्टोरी सुनता हूं मैं। अच्छा Your voice is cute though. Your voice is cute though. Your voice is cute though. क्या बोला था इसने? Anna is becoming very big. अरे वेलकम का वो चले। अब तक जवानी छुपा इनकी एक नंबर है। तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। ये वल्कन गाएगा, गन्ना हिला के गाएगा। गन्ना हिला के गाएगा भाई। अभी बोला मैं बुलबुल है। गन्ना हिला के
ridiculous, especially just seeing कैसा जीती है भाई? here. I feel like this is something that's completely new to ये शक्ल का प्लशी तो अच्छा है ये देखो देखो ये शक्ल का प्लशी मस्त दिख रहा है दिख रहा है क्या भाई ये सब मत बोलो भाई टूर्नामेंट में प्लीसी लेके मारेगा वो वर्ल्ड कप मेरे को कैसे मारेगा भाई क्या बात है संतोष भाई स्लैप हिम रे he'll put this solo. Game will on. He will die there. Who is going to continue on at that winners bracket? भाई सबसे बेस्ट है एमएस वाले स्क्रिप्ट में मजा आता है सबका 30-30 हजार डैमेज रहता है और सेबल ही रहता है ना सामने तो टीममेट को मार के आता है डैमेज The winners side out of their group stage. उधर क्या सीन हुआ I mean, one of those teams that realistically हम लोग का अटैकर फिक्स हो गया क्या हम लोग का Yes. yeah, they have not lost a 2-0 every single आ रहा है क्या खेलना अटैकर नहीं गुलबाई प्लेस खाली है pretty impressive thing ले लो गुलबाई but again the only team आउटफिट कैसे डिसाइड हुआ भाई ये बहुत लंबा गुलबाई बोले हम लोग काफी लूब है तो छोड़ रहे हो तू थोड़ा स्ट्रीम पीछे कर लिया मैंने पूरा समझाया था लंबा फॉर्मेट था थोड़ा फिर से समझाऊंगा आधा घंटा चला जाएगा यार क्योंकि म्यू मैं तब क्या हुआ जो भी म्यू खेलता है उसका गेम क्रैश म्यू पकड़ रखा ये बीटी है क्या कौन निकाल रहा है ऐसे पीवीपी किसी टीम से मैं इतना बुरा हो गया ये कौन बोल रखा है भाई वैसे पीयूपी मिस करने के ऊपर निकालना था टीम से तो but Crustle, Hoopa, those getting down there, we've seen a lot more. पीयूपी मिस किया क्राउली ने टीम में हटा दिया with the 52 picks 50 some bans like ये कौन थी रंडी पतली आवाज में बोली साली रांड we actually had किसका आवाज था लेकिन अभी जो आया किसका था भाई ये आदि का रहेगा आदि का तो माइक बंद है अरे बच्चे ओए मैं म्यूट को थप्पड़ मारूंगा बेंगलोर नेपाली तेरे समार साले कोई भी नहीं ना म्यूट बैठ टूर्नामेंट बहुत बड़ा गेम है सैड फर्स्ट ओपन मीटिंग माइटी यूनियन काबीचान क्यों ये समझा दो क्योंकि काबीचान इनवाइट के थ्रू आई थी एंड वो जीत के आगे गए वाइटी हार गई बीच में वाइटी लॉस्ट ग्रुप स्टेज ओपन ब्रैकेट और प्लेऑफ्स ग्रुप स्टेज में 8 टीम्स इनवाइटेड थी इंक्लूडिंग काबीचान एंड मामेलो ओपन ब्रैकेट से 8 टीम्स आई जिसमें से वाइटी एक थी ओपन ब्रैकेट्स और ग्रुप स्टेज वाली टीम्स की भिड़ंत हुई उसमें से वाइटी हार गई काबीचान जीत गई अलग-अलग टीम्स के अगेंस्ट बट वाइटी जीती थी लूजर्स में हार गई तो बाहर हो गई उधर से काबीचान लूजर्स में जीत गए काबीचान आगे चले गए maybe it shouldn't have been on the list. Who knows? Let's take a look इधर at तो some players to watch that we've each. अबे यार अभी भी नहीं चालू हुआ क्या? ओ मेटालिक है ये नेमेसिस का हो गई. घुंघराले बराबर मेटालिक है. अल्टारिया और azumarill लग रखा है. Look like it is literally the best Pokemon in the game. Yeah, you know, another player. I also chose a Scyther player from this weekend. So I think we are kind of... Actually, we should talk about Scyther later. But Reggie is my pick from Rework Respawn. And both Xingdi and Reggie both doing incredibly well with not just Scyther, but Manaj all Paji, of their picks. And both of those teams are not only actually Sumit in the bhai, winners no, bracket, no, but no, gonna no. play against each other. No. Which is a very cool thing. Score क्या चलो जी का? Ooh, 10-6, not bad रे. सही है? We talked about Metallic earlier, actually. So I feel like गैस्ट्रोडॉन पकड़ रखा है इसने तो टून ने. Toon Slim, what can we say about Toon Slim? सारे पोकेमॉन आ जाए यार. ये पिंक बॉल कौन सा था अब? पिंक बॉल नया आया था क्या? ये वो है क्या फ्रेंडशिप वाले पॉइंट्स बढ़ाना पोकेमॉन के साथ? वो वाला बॉल है क्या? या फेरी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए पोकेबॉल एक्स्ट्रा. भाई इसका देखो भाई, इसके बाल बिल्कुल नहीं भाई, टोपी पूरी परफेक्ट फिट आ रही है एकदम भाई, एक जगह से कुछ वो नहीं है. आपके पास नहीं मेरे पे नहीं है यार. ये देखो भाई पूरा सीधा फिट हो गया एकदम भाई. भाई मेरे सिर पे ऐसे से होकर आएगी. हील बॉल नहीं हो सकती यार, वो हील बॉल अलग दिखती है. भाई कुछ और सर्च किया तो कुछ और. ओ हील बॉल ऐसी दिखती है क्या? पहले तो ऐसी दिखती है. Friends within the scenes, a lot of people are ऐसे having दिखती है teammates. There's been, let's be honest, there's been a lot of मेरे पास teams सारे struggling हैं, in सारे तो Pokemon. नहीं होंगे भाई. So, पोकेमॉन कार्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, रेयर वाले भी. मोटे रेयर वाले
वाले हैं भाई. Successful with, of course, you want to try to qualify for that World Championships and have the चालू कर most दो यार. championship points within your region कितना to buff खाओगे? guarantee your spot. It's a very, very competitive setup for our game. Provides some great matches, but definitely players are doing everything they possibly. इनवाइटेड के जाने का खर्च, आने वाला खर्चा वाला. Yes, इनवाइटेड का पीओ वाला कर देते हैं. It's Yes. getting more and more competitive as time has gone on, especially Open not bracket just amongst your own region, which Hey, is something RR1? we are seeing, but also Bench amongst, talks. basically every region. Yeah, exactly. Now we have a player to watch on Copy Baba. शिंगड़ी को दे दिया गया है. On camera is going to किसने दिया? रिवर क्रिस्पॉन 1-0. There's been a lot of talent flames, no. a mixture. चिंगड़ी का actually United पे चालू तो रखा था मैंने कल इधर. Mostly playing on that central area. मेनाटो जी किडनैप वाला आदमी मस्त खेलता है वो We टीम talked में. about it a little bit yesterday, Wonder Chef. A Pokemon that we ये मरकरो पकड़ रखा है इसने. टोस्ट ने. छुट्टियां website. Usually means you play to that bottom path, but Mew can do well with a little bit of an abundance of experience. That's normally भाई why तो you're round in बना के मारा central सामने area in the वालों first ने. place to level up as quickly as possible. Yeah. I mean, Land, there's so much land flexibility बना के as मारा, far as what you land. can actually do with it. And RR Sherlock 1 लाख चलेगा सही है best of. time it's there be very, very important. बाप But रे. I want to talk about Talonflame because I'm really in love talking about Alolan. I guess I like a lot of the bird Pokemon too. It's pretty funny. किटेंस की टीम का नेम भाई एसआर का ड्राफ्ट तो अच्छा था सब वो लोग पे सारे हीरोज मिले वो लोग के ब्लीसी साइटर म्यू परसल a lot of the evolutions. It's so good at dealing with a lot of बैन नहीं दिखता ना गेम का यूनिटी पे No. attackers in general that don't have a lot of mobility to get Outer out of the Banks. way. It's great at Outer dealing Banks with ठीक इंडिया के है. हार बाहर गए. स्क्रीम कैसे रखते हैं मैनेजर्स रहते हैं ब्रो उनको पता कॉन्टैक्ट्स रहते हैं Back and बस forth, नो right? आईडिया Because you can dodge the icicle spears, but also if you Talonflame and you fly Outer and Banks you थी, land ये on a target group who, stage में हार गए. Still has snow cloak, then it falls a little bit short. Well, let's talk about Rom on the other side. स्विस ब्रैकेट का फिर से बीटी हुआ देखा क्या? कुछ तो बीटी हो गया स्विस ब्रैकेट का. क्या पता नहीं ट्विटर पे देख रहा था. टॉप 8 पे आगे गए इसके लिए क्या फ्री के उससे नहीं 2-3 टीमें थी अकेला टीम वाइटी नहीं. It's all about their Mew. कुछ तो ट्विटर पे बीटी देखा. रुको मैं देखता. एक बंदे ने डाला था कि इन्होंने स्ट्रीम पे भी डाला बट स्ट्रैटेजी पे कुछ अलग दिखाया तो अलग बीटी हो गई. इनका था Nemesis E7 कैपी बाबा शिंगड़ी लोग नाउन्स एग्जाइल आउटर बैंक याला बिंगो थे टॉप 8 पे पर जीटी टीम वाइटी गई है. और आई डोंट रीजन रहेगा ना विन रेट या कुछ तो रहेगा ना लॉजिक उसका पता नहीं. ये इन्होंने स्ट्रीम पे दिखाई स्विस रैंकिंग्स जो टॉप 8 ये वाली बता रहा हूँ और स्टार्ट जीजी पे अलग दिख गई. अब पता नहीं क्या हुआ. सोता रहेगा भाई वो बालो खेल रहा था रात Probably not a sign of a Blastoise that can love for them, or maybe it is because सबकी रोस्टर का बताओ भाई मुझे किसी का पता ही नहीं है. So maybe Copy Baba's playing the mind game and be like, look how cute Wartorn is. You guys should just stay as Wartorn. मुझे मेरे रोस्टर का टाई ब्रेकर्स अच्छा होगा टीम वाइट. टाई ब्रेकर्स मतलब टाई ब्रेकर तो किसी का नहीं हुआ. टाई ब्रेकर नहीं हुआ किसी का. आई थिंक एफएस डिसबैंड नहीं. आई थिंक एफएस के अंडर नहीं है वो. second evolution stars Pokemon, but आफ्टर एसीएल एफएस के अंडर नहीं है. see it as like a this is not मुझे भी नहीं पता वैसे. right? And just an update for everybody watching, we do have the lobby remade. The draft is already finishing up, so the game is just moments away. क्या बात है मनराज भाई. Copy Babas and Copy Challenge kicking off. Only we're currently at 0-0. Of course, it's a best of 3 set. Whatever team can get to 2 wins first will be moving on in our tournament. The other will be eliminated. I think we're all asking ourselves, how far ये can क्रॉली this भाई का Copy वीसी Babas team take it? नहीं भाई नहीं करते सिम सबसे भाई. रेयरली करते हैं. एकदम बड़ा अभिषेक भाई. लाइन पे टफ है बहुत ज्यादा. बिकॉज दीज गाइज हैव ऑर्गेनाइज्ड यू नो इनका लाइक जो भी लाइक मैनेजमेंट है उन्होंने क्या बोलते हैं कार्ड गेम वीजीसी सब किया हुआ है. ये थोड़ा आई गेस उनके एक्सपर्टीज से बाहर हो जाता है कभी कभी. ये कौन बोला ये चूतिया. फोन इज इजी टू प्ले बेंच शो. स्विच पे आधे कॉम्बो तुम्हारे इजी रहते हैं. फोन इजी टू प्ले है तो Saturday we'll see if they can do it here. Our first game of Copy Babas versus Copy Chans in losers. All right, let's first game of Copy Babas versus Copy Chans in losers. All right, let's get into it. We're right here in the crowd supporting. I have to assume it's for Copy Babas. They got that home crowd advantage, right? So you're going to see that extra little bit of love. You're going to see that your team moving into the central area again, slowly clearing. As Decisive has a really nice early rollout, is able to steal away that contestable ball toy and push it onto their side. Yeah, this is going to be. I mean, we were talking about before, but seeing how बेंच इतना पीछे था. Almost 40 seconds.
45 seconds. अरे नहीं और भी है 50 seconds of procs. The longer you channel it, the farther you can jump, but it also gives you अभी announcement नहीं हुआ जुकरल भाई you could play around आ जाएगा तो थोड़े दिनों में don't worry. In that moment, channel that move, and then of course don't get hit. Or a Blastoise Unite move is a great use of that. Don't get hit by the Hydro Typhoon, just charge your bounce. Yeah, especially if we're seeing a Hydro Typhoon to try and stop a secure. It's such a good way to just kind of say, मच्छी बॉल होने वाली है. all I gotta do is time the move correctly. So far, no KOs up on the top half. कैबिचन को लड़ फर्क नहीं पड़ता भाई, गैरेडो देके छोड़ते लोग। Gyarados इतना लिया नहीं है ना ये टूर्नामेंट में किसी ने। ओवरलॉर्ड ने लिया था। लिया है बट ज़्यादा पिक नहीं। Yeah, Copy Baba is playing their Espeon into the central path for a little bit to try to get the most experience, but they are not going to be alone for long. Copy Chan is actually sending 3 members of their team into the central area to try and stop them, and they are going to take the ball toy experience as well. Just going to have to grab that ball toy in the central to even keep pace. Yeah, I wonder if it would have been worth it to try and run down that Magikarp to get a little bit closer. Brave Bird वाला talent है, बल मारता है ट्रिक मार के वापस आता है। कल भी किया था कोई। Right now, no points scored for Copy Babas, which is not the greatest in the world, but they do have the Gyarados popping off now. Yeah, the Copy Babas does have Gyarados, so finally a bit of an answer, so maybe they can chase down Tomato, who is able to take a lot of that damage. Their passive healing starts going in their direction. Gonna try to make a dash with the Citrus Berry, but great cutoff. Young Leon gonna be stopping that and earning themselves the KO. In the meantime, we're just kind of rotating. Looks like we're going to have a few members heading up top for Kabi-chans to try and defend against this push. Now they've got a little bit more or a lot more aggression from Nils on the Gyarados, who is going to be going down pretty quickly. And we are no longer in a situation where pushing is viable. This Dragonite, finally a Dragonite. All of these power spikes finally hit, which is really enabling a great opportunity that Kabi-chans has perfect advantage of. जंगलर तो 2 लेवल पीछे हो गया. One more KO before they maybe break this. Yeah, Copy Babas with a really slow rotation. I mean, Gyarados and Espeon are both just clearing wild Pokemon, and this Talonflame, which has been 11-12 का ये mostly वो तो regional dates है ना. May 11-12 regional dates है. मैंने announcement नहीं देखा. Rotating whatsoever. A lot of presence on this bottom path. I'm trying to play with priority around that. He's already spawned in, and Dragonite is already within range to secure, I am sure. Hyper they have all the positioning in the world. Tomato misses that Woodhammer stun. Not gonna find it. We do got a pause. वो तारवार हिला दे रहा है क्या वापस से कुछ? We'll see what actually happened. It looked like everything was going quite well, but at the moment we बाकी सबका ठीक है तो वाईफाई का बीटी तो नहीं हो सकता. Just about to head to तारवार हिला दे रहा है वो. Reggie there. We're just getting to these objectives, which is going to be a really big deal. And I do want to talk about exactly what we were talking about how we had the bottom Talonflame, the bottom path Talonflame. And I'm pretty there. We're just getting to these objective timers, which is going to be a really big deal. And I do want to talk about exactly what you were talking about how we had the bottom Talonflame, the bottom path Talonflame. And I'm pretty surprised about that. I kind of expected, or I should say normally a lot of the time when we see a Gyarados, a Magikarp attempt, we see some sort of like assassin that can really jump up there, help them try to get some of those KOs. So I expected maybe we're going to see the Talonflame. Of course, the early aggression of having मैं बता रहा ये रॉमी रंडी है just as good, but you could have seen something where it was like Talonflame starts bottom, grabs like the second half of the center area, and then they 4-stack top, some sort of big aggressive move. But 2 मिनट के बाद रीमेक नहीं होता ना, ऐसा कुछ सीन है ना? Yeah, Toast is pretty comfortable playing that bottom path matchup and just earning as much experience as they can, even despite not having access to as much as possible. So playing it a little safer on that Talonflame. Of course, is one of the best, like you were mentioning, burst damage options. You have Gyarados to kind of initiate some of these moments, have some big. देखा नहीं ये तो होने वाला था शायद चालू करने वाले थे. वो ले लिया. Right back into this Talonflame does land on Tomato, but the stun was still there. Makes it really tough to re-engage. अरे बाप रे मोटा इलेक्ट्रो बोलता भाई. बल स्पाइक कर रहा गिरा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा. Tomato lines up and absolutely ये तो फ्लाई खेल रहा है. ब्रेबर्ड भी नहीं है. Woodhammer, Horn Leeches, Good afternoon, bye. makes that impossible for Copy Babas to deal with.
Yeah, Toast even landed directly into that, getting hit ये टीम ने इस बार है जो लूजर मैच है ना काफी and वापस now they're going to be rotating up top where बट हरा के मैच क्वालीफाई तो मस्त है ओपन ब्रैकेट में तो पहला है भाई बहुत लोग set up an overdunk if they so choose. They are going to be able to push it in. Nils getting extremely low, getting KO'd by that Mew with the enhanced auto attack. GT को हराया They है only got 5 seconds left. They've got to put in their points. There's not as much time because of how low it was. They're actually not going to be able to get the full break, but setting up low for a gigantic overdunk is huge. And actually, they're just going to beat a very tiny overdunk. Make sure they're able to break it. Yeah, I mean, this is looking so tough for Copy Babas. इसके बाद वाले मैचेस अच्छे रहेंगे. विनर फाइनल वही सब आज जल्दी खत्म होने वाला है जिससे आपसे उन्होंने स्पीड रन किया है. Back on time. I think they only gave up 1 KO in the entire moment, and Mew was able to steal away the blue buff after getting into the enemy central area. So the options for Copy Babas at this point in time are just so few and far between because of how holistic Copy Chance is playing. And it's playing a little bit sneaky right now. Oh no, you got caught. Very nice little read right there where Nils was going to be. So this top path being really controlled. I love this. They're sitting for vision almost like it's about to be a Ray fight, but it's about to be a Regilecki fight. But just make sure that not a single angle is uncontested here. They know 100% of the information that the enemy team is going to give them. Right now we are going to have to run away. The Unite coming out to get away from that solar beam, but the Unite to counter it as well. I like that a lot. We are going to see the KO on the Eldegoss. Psychic Slayer get a second over to Toast. Wow, Copy Babas have a really successful towards that bottom side, but the final boss of Copy Chance is going to be Tomato. Telekinesis picks up the Trevenant and pulls them away, but it only अरे telekinesis करना ही था तो सीधा अल्ट कर देता सबके स्कोर हो जाते. Pulls them all together again. 10 points go in for Copy Babas, but that is the only moment of success on that top side. 4-10. Currently a Regilecki was given 55-54 आगे कर दो. नहीं वो लैग हो रहा था थोड़ा आगे ज्यादा वो पूरा करके 2x करके वो स्टटर हो रहा था स्ट्रीम. और तो अभी भी हो रहा है. वो इसने में पीछे कर दिया इसे हल्का सा पीछे आ गया. बहुत ही गंदा स्टटर था वो. You can see all of the wild Pokemon that have spawned on the side of Copy Babas, and they just cannot get as much as they want. Hello Mythic X भाई. So many different things. In fact, who's going to be getting all the wild Pokemon on Copy Babas' side? भाई ये अलग कूदा है ब्लास्टर्स के मुंह पे जाना. Copy Chance is just unrelenting at this moment. Blastoise going to get in for a KO as well. We're actually going to Unite move onto the Slowbro. We have a Hoops unbound. ये क्या कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है. एक ने ब्लास्टर शॉट मारा वो साइड में हुक कार्ड के थ्रू जा रहा है. दिन का पहला गेम रहेगा भाई लोग का. Of that damage thanks to the rapid spin defense and the pollen puff. Hydro Typhoon going to defend themselves as well. Talonflame with a late sweep in. Psychic Solaire picks up. Copy Chance वालों का मैच में थोड़ा पीछे है. But still Copy Chance has not lost a single member. And they are going for more. Okay, maybe not. They're deciding to back up just a little bit. They could have scored something in that center gold zone, but maybe they were just afraid of giving a little bit too much reverse EXP, making sure they don't fully overextend as they do have a significant upper bracket के एक भी टीम दिखाया नहीं ना अभी तक ऊपर. नो स्कोर देख कर आता हूं रुको. जितना ब्रेक हुआ था एक मैच तो हो गया होना चाहिए. नहीं 1-0 है अभी भी. This game is not over, but कौन से टीम के बीच में? ओ नहीं दे दिया 2-0. ऐसे यार नीचे? Yes. Nemesis के अगेंस्ट. मजा आएगा. ओपी मैच रहेगा. अभी वो है ना अभी अपर फाइनल दिखाएंगे वो लोग स्ट्रीम पे और फिर एक गो में लूजर रहेगा ना लूजर सेमीफाइनल. क्या बच्चे देना तो सर नीचे आ गए. What the fuck? भाई लूजर ब्रैकेट में बहुत मारामारी है भाई. काफी चांद ऐसे हारना उनसे. Team can secure this Regieleki. मिनाटो ना जीत जाए भाई. मिनाटो जीजी. Dragonite is the number 1 in that list. But Leon is going to drop the Unite. ये तो एफर्ट करने. भाई वो टेलन क्या किया ये? पर मिल गया इनको. Copy Babas takes it. Leon with an absolutely clutch secure. But there's so many resources being used. पॉसिबल है भाई जितना स्कोर कर देंगे फिर भी जीत जाएंगे ये लोग. भाई वो एसपी अलग कूदा दिखा रहा है चार बंदों के बीच में जाके. वो छोड़ स्कोर भी नहीं हो लगता. डायरेक्ट प्ले. हे इसमें क्लीन फ्लिप है ना वो लोग का. लास्ट रिजल्ट टीम ड्रैगनेट भी मर उसकी. We talked about how the slow beam had to target that, but it was just no. हवा चल रही है टैलेंट वाली. हवा. भाई टेलन पता नहीं क्या सोच के हाइपर बीम और सोलर बीम के बीच में लैंड करा है. ये लोग बड़े लोग हंसते थे ना ट्विटर पे यार ये इंडिया क्या रीजन है अभी क्या मार दिया तब पता चलेगा.
this is, I would say, pretty much guaranteed for them. We do see Toast up in the top path, going for a little bit of a back cap, but unless they somehow have the ability to hold गाट लोगों को क्या 2-0 आ जाएगा काफी चंद निकल रहा था नहीं 1-2 दोनों 1-2 गए to hold 450 AEOS energy in their pocket. It's not going to matter, and somehow I do not think that's something that you can do. गाट वाली टीम गंदी तो नहीं है वैसे काफी चंद के साथ मैक्रो अच्छा चल रहा था लोग जो अपर रैकेट वाला गेम था बस काफी चंद प्रोटैगनिस्ट थी या फिर लोग में जीती हो गए क्या क्या बैन करना है भाई ये बंदे का क्या क्या बैन करना है जोरो भी है ब्लेजिकन भी है ड्रैगन नाइट भी है ये सब बैन सब उड़ गया फिर ग्लेशियन खेलेगा वो मतलब क्या है भाई अरे प्लेस ग्लेशियन एसपीएन आल्सो डोडरी आल्सो गॉड गेम है हजार जा रहा है फिलहाल इवन चारिदर आल्सो ही प्लेस अरे रिकॉर्ड टूट चुका है मतलब है हम लोग ऑलरेडी वो तो है सिंगड़ी भाई ने तोड़ दिया है रिकॉर्ड ऑलरेडी I mean, they just went with what they were solid with, right? And these comfort picks on every single one of their members. Nothing from theirs was really taken away. And पर इनका तो कोऑर्डिनेशन में दिख रहा है कैपी बाबास का you know, they had to go for the Gyarados, they had to go for the talent. कोऑर्डिनेशन अभी सिर्फ सोल दिखा सकती है काफी टाइम हां ब्रो गुल भाई दिखाएंगे Yeah, so far का ट्रैप का ओनली बादशाह भाई का स्माइल एक आदमी डेड डायरेक्ट एक ओनली तो दो स्किल मिस ये भी हो सकता है ये तो मेरी टीम पे होता है going through this tournament unimpeded except for Shin and Rude, the only teams able to take them down. And I'm so excited to see that team play again later, who is just making a gigantic statement. But this is not over. We've seen some very dominant games. In fact, Kabi-chan's themselves losing the first game of the entire tournament that we got. अभी तो जोरक नहीं है वो भी आएगा आज लेकिन अभी तो बैन भी नहीं है ड्रैगन प्रेफर कर रहे हैं शायद ये लोग जोरक तो बैन भी नहीं था shut them down. And everybody was like, "Whoa, hold on a minute. What is going on?" भाई इतने बाल भी नहीं हटा रहा है जो साइड में यार रॉम भाई भाई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है समझ गया ना वो बाल लगता है उसके I'm never going to say any set is over. छोटा छतरी वाला हेयर स्टाइल है लोग पता छोटा छतरी Copy Babas have genuine chances to be coming back in this event. एडमिन बुला दिया उन्होंने Now their backs are against the wall. One more game and you could be eliminated. 2 more games and you're moving on in this. ये क्या बात Now when it comes to draft, I feel like we will see some adaptations from Copy Babas in this next game because you gotta find an answer to what Copy is able to do at any given moment. I feel like a lot of that's enabled by the Eldegoss. That much healing, that much damage reduction would make those pushes and these aggressive positions possible for Kabi-chans at any moment. I mean, Pollen plus Blastoise is a equation of doom for most enemies to have to deal with. Yeah, and not just the Blastoise, but the entire comp that Kabi-chan's managed to put together is so damage resistant, to be honest. I mean, of course, Trevenant, Trevenant doesn't even need an Eldegoss to be able to stay up forever. That's just kind of what it does. Extremely amazing Trevenant play over the course of the game. Tomato is so good at this game. It's Tomato तो Trevi खेल रहा है ना पूरा tournament बैठ के. Win, please. Although I guess you can't. Let's let them both pick Trevenant for one match. You know, can we just break the rules of the game? We're gonna have a 1v1. Yeah, we can break the rules. I think that's in the rules. We'll do that. We'll do that. We're actually gonna cancel the rest of this. ओ VLR जैसा वेबसाइट है वैसा दिखता नहीं क्या पोकेमॉन का शेड्यूल किधर किसका मैच कब है क्या है और वो सब which they're really don't have to worry too much about that. Starting screen में रहता है great defensive options from Mew, great defensive options from Dragonite, so they're just chilling. Yeah. One thing that Copy Babas did that we kind of were both at the beginning of the draft was that Buzzwole ban, right? Especially on the purple side, we don't see Buzzwole ban too often there on that side of the draft screen. But also, Kabi-chan's in their tournament matches have enjoyed playing into it. They're very comfortable with that matchup. But still, it feels like into Blastoise, Buzzwole feels like one of the best matchups you could possibly have, especially Rapid Spin Blastoise for that natural counterplay of the superpower. Yeah, and can I note too? I don't think stream slow जा रहा है दिन slow जा रहा है समझ में नहीं आ रहा. Yeah, feels like a big call out. We don't really know the answer for it yet. Like we don't have that history yet, but you're right. It feels like it was potentially a correct decision. Well, whatever, every single decision they made is correct. But let's take a look at one of these players. अब सारे matches stream होंगे. I hope so. Hope so, भाई. Oh, I'm with Copy Babas. I did it. I knew it was Casual, भाई, Rom भाई. I know the team 132992. Such a strong option, and I was just talking about this, but wait, is that
look at that damage, 132,000. But this is a Pokemon that's so good at countering a lot of the dive as well, especially if you have the Unite in the great situations. We saw that used to dodge so many attempts to dive as being kind of the only vulnerable backline. Yeah, and Mew honestly has a very high defensive stat, like way more than you would expect. But oh man, this is going to be another epic game, I guarantee. I mean, it's AEOS Cup Day 2. It feels like we're always at that moment. So let's jump into the draft phase, which is already underway. A Blastoise ban on the left-hand side, and a Buzzwole ban to follow it up. Leafeon banned by orange side. I wonder if we'll just see the Sylveon again. Yeah, just repeats on the side. Ban, but we are going to have the Blastoise be included on Capybabas. खेलते हैं क्या सामने वाली टीम भी ऐसे ही मेटा की सबसे बंद कर रहे लोग पता नहीं And I'm excited to see सामने वाले टीम के मैचेस ही काट रही होंगे as we like I mentioned we've got a very different meta overall for Japan. We could किसका म्यू बेटर है रॉन्स का या नाइट में फॉक्सी तुम्हारा है टीजी फॉर्च्यून भाई बेटर That'd be huge. I feel like it would be. Okay, we're going to have the Mew and Eldegoss locked in. That means the Trevenant will not be taken. However, the side of Capybabas, they've already grabbed the Slowbro. So Capuchons is okay. They can just take that later. Espeon will be locked in. Ooh, we can take away the Trevenant and play it into the top path. So now we're going to have to see where Tomato will go. Crustl's still available in this draft, though. I would be so surprised if it was not Crustle. I swear I was saying that as it was happening, but I mean honestly I'm surprised Crustle made it this far in. Once again, obviously a really भाई तेरे को Capuchin underdog कैसे लग रहा है भाई? KCL जीतती है भाई? कौन सा underdog ये main dog है भाई ये? बिल्ली और बिस्सी आ गई है finally. I will say I am honestly surprised to see. भाई इसका Dragon Knight Psycho है भाई इसी के सामने भी eject पे खेलता है. A Clefable, गोटी बहुत बड़ी है इसकी. Beam is one of the toughest things you're going to have to deal with so far in this Foxy बात पे रॉम का. Follow Me is one of the very few things in the game that can redirect the aim of a Hyper Beam. बोलता रहा वो टीजी फॉर्च्यून है बाप. Mew best Mew player. We're going to go with just kind of the all around. Mew pick करने का, eject लगाने का, उसके ऊपर emblem लगाने का plus 36 special attack 5 level पे 10,000 damage. ये भाई ये तो पेटल डन जा रहा है. Sense, focus और rapid fire scar. हाँ वही है पेटल डन. तब बिल्ड यही खेलता है हमेशा. ऑटर भी मस्त खेलता है वैसे Mew. ओपी खेला कल उसने. विकेट वाइट टीम है ना ऑटर. हाँ. Is going to go top path here for the side of Capuchons. Ooh, interesting. Yeah. तो कॉम्फी के zap steal के बाद भी अपर ब्रैकेट पहुंच गए रे मेटा बोलो. If you do, I feel like Trevenant is going to kind of have a field day, or by that I mean bulldog है वो. Stacks at the beginning of the game. We do know that Nils लंडेरू का भी विकेट हो गया. लंडेरू. So very difficult on getting those early game scores. अरे ये वाला भी तो मस्त है भाई. वाटर डाले ना. Yes. So we are going to be seeing a lot of big moments from Nils if that early game can go their direction. Yeah, we could also see the Dragonite up top. ऐसा ही रहता है. मुंह सूज जाता है. जापनीज टीम आती है सामने जब. Right now than ever before. और दूसरे का फूल जाता है. There was certainly a time where Dragonite up top was not the most unrare thing in the world. Most rare thing in the world? I don't know. That was too many negatives. Let's go into the most rare thing in the world. Game number 2. भाई कहाँ तक पहुँचे group stage? भाई जोरो ब्लेजिकन दोनों पे. एक मैच दूर थे क्वालीफाई होने पहले. हार गए. But I believe we might be some kind of लूजर ब्रैकेट में तो मुझे लग रहा है सिक्कर लेके खेल रहे लोग. अरे ये मादर चोद का बच्चा वापस से. वही है कोई और है. वही है. We've got once again a disconnect. Something about Mew. Mew. I feel like a lot of Mew players have had problems. Just the bad luck. You're honestly your APM is too high and you're destroying whenever you're playing. ये रॉमी है ना? Yeah, too many. Certainly. महंगा वाला स्विच है क्या भाई? उसका कलर भी अलग दिख रहा है. Splatoon edition. Well, and that's what you've always talked about on that Pokemon, right? You've always brought up the fact that Peach जैसे मेरा है switch Scarlet Violet वाला गेम के बेस्ट edition पूरा. अच्छा. ये सामने वाले का सुपर मारियो वाला है जो ये ग्रीन रेड दिख रहा है. Player skill expression. Nintendo है तेरे पे मैं था. I think that is green pink, right? क्या जी सर? One of those unique effects in the game. इसक्यों नहीं किया Nintendo पे? 6 overall माफ moves. कर भाई. चांस दे रहा है भाई हम लोग को. चांस दे रहा है. भाई. फोन पे खेल के Nintendo पे OP all good might कर देता था हम लोग के साथ. कर दे भाई. तो स्पेल दोनों साथ में दबा सकते हैं ना उसमें. Every single time you Nintendo switch में. moves and Try नहीं करा भाई. So if you are क्या हुआ? rewarded as a player for constantly swapping between these moves as frequently as you बोल रहा है can to make sure that you were of course
set up for game and have some big moments there. Yeah, it's real easy when you're playing Mew and you're not experienced. मैं last game पे लोगों का क्या disaster गया है भाई कैपी बाबास का Hang on and not really कैपी नून नहीं पकड़ लियो लोग सामने वालों ने you know, of course build a lot of unite but kind of let yourself get those like बाबा going over and बहुत over हंसते थे ट्विटर पे हम लोग को हंसना चालू करना पड़ेगा but yeah that's why I say काविचन ये भी जीत गए तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा गेम से जापान जीत रही है their switches or whatever it is but not हर एक मोबाइल गेम का ये स्टोरी है भाई जापानीज लोग चपा नेशंस अभी चाइनीज नहीं आए चाइनीज भी आए नहीं है यप भाई चाइनीज लोग तो मेरे को लगता है रेक्स को आसान छोड़ के स्कोरिंग का स्ट्रैट निकालेंगे भाई कुछ उधर से गेम भी अलग है थोड़ा बहुत talented on it. Nouns Esports has two incredible Mew players who are currently playing on the winners bracket side. Well, definitely, we're going to see a lot of that Pokemon. Yeah, which I'm always excited to see, right? I mean, खेलता है we भाई see so many special attackers right now that एक तो बेबी तो उठा के जाएगा क्राउड में से ये बुमराले बालों वाला one of the reasons why we were saying earlier that we see a lot of Talonflame is there are a lot of really strong special attackers that don't have the greatest escape. इसका इशू हो रहा है ना कुछ तो नेट का कब से ये तो वही स्विच का बेटी है मेरे ख्याल से which we do see quite a bit but when people really try to hard commit to पगा बेंच का भी का मैच हर गेम के पहले राउंड रोना है इसका and so seeing Mew which kind of has an answer एक ही मैच हुआ है ना मेंशन टीम पे अभी तक if you can be good enough नहीं to दूसरा actually use all of its tools at all the right मतलब एक हो situations चुका है ना एक हो चुका हाँ वही एक हो that's a चुका big reason now why we saw I think that first game go so हमने एकदम बढ़िया for Kabi-chan's was I was talking about it a little bit before but they had the Mew as kind of the most vulnerable in the back line but that's उसको स्विच में वायर क्यों लगा के रखा है वो लोग ने we had अगर Dragonite who is वायर क्यों certainly लगता है मैं भूल taking गया a lot of the other attackers कौन सा वाला वायर trying to dive वो जो वायर लगा रहे हो much लोग as I नीचे को personally love Talonflame नीचे ऊपर अरे जो कनेक्टेड रहता है ना स्क्रीन से वो तो एलगाटो करेगा एक एलगाटो का एक पूरा रहेगा चार्जिंग वाला और एक वॉइस वाला Let's take a look back at that game. इनके में से यूज कर रहे हैं Still शायद waiting on these players on stage to get all set up. Let's take a look at some of the highlights. या फिर गेम का of that साउंड सुनने के game, लिए which, well, let's face it, it's going to be a bit of a Kabi-chan's highlight reel, right? But और शायद गेम का साउंड तो यूएसबी से जा रहा होगा ये look at to तो see गेम का साउंड खेलता है क्या उसके साथ खेलता है वो तो खेलना लाइक स्किल का साउंड आता है ना कभी कभी वही पूछ रहा खेलता है क्या तो गेम का साउंड के साथ तो प्लेयर भाई इसके लिए एलजी को आ रहा है ठीक है यार कहाँ आ रहा है not something that we always see from a lot of these more safe teams and Kabi-chan's while पहली बार पोकेमॉन इंस्टॉल किया था टेन वाले आवाज में बंद कर दिया था भाई उससे उस दिन से चालू नहीं हुआ आवाज हमसे जो टीम खेल दी 21 पेंड हुई है but they found the opportunity here and Yeah. they ran with it which हमसे खेलने के बाद 21 पेंड हुई है एलजी yeah, I completely agree. This is one of the only moments from Capybaras where they're even able to get तुम into लोग ही थे scoring भाई attempts. दस मैं बार तुम एलजी लोग ने ने मेटा सिखाया है तुम लोग ने लोग कोलैप्स का Capybaras Yep, yep. at every अगले moment. मैच में वही चौथा दबा कर गए एलजी को दबा दिया भाई Questioning about their draft phase, एलजी but को दबा नहीं दिया भाई changes निकाल in दिया this game number 2 in the अरे game. हाँ निकाल दिया भाई हेलो कॉम्पिटिशन लेजेंड जैसा भाई है We've seen the Trevenant ना in there कोई है ना so कल कोई ये हो गया उसके साथ and they're going to नो राहुल भाई नहीं away from Kabi-chan's because All Tomato right, the is goat. just truly built different on this Pokemon in particular. पानी से लेके जाएगा यॉन्ग को उसका गेम अभी लोडिंग पे क्यों है यार शिनचे का सिंचे का ग्रैंड द लाइन राफ्टेल जाएगा ये राफ्टेल लेके जाएगा got to see a few of the other teams or sorry not the other teams the other यॉन्ग को मत नाम दिया भाई मानना तो पड़ेगा potentially be a high एलजी का पता नहीं क्या हो रखा है हार गए I want to know how you think it's going to do in मैं इनका मैच हो रहा है कि नहीं लोडिंग तो दिख रही है चालू हुई है उसकी And of course is the Unite move change after साहिब भाई मेरी गलती भाई मेरी वजह से वापस बीटी के बाद उसके बाल उखाड़ के उधर ही फेंक देंगे भाई पिला रही able to use that maneuver as Admin. much as इसकी क्या गलती भाई कि उसमें नहीं चल रहा है right option. ये रॉम हैक्स यूज कर रहा है इसके लिए डबल डैमेज दे रहा है इसके लिए उसका गेम क्रैश हो रहा है जी मेरा भाई जो नो 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 अभी ये सिर्फ ये थोड़ी है वॉर भी क्वालिफाई And है I do think meowscarada's just raw damage output. ओ हाँ ना विनर वर्ल्ड का स्लॉट भी तो है फाइनल में बहुत मारा मारी है दोस्तों फर्स्ट टीम टू क्वालीफाई फॉर वर्ल्ड्स सेकंड थर्ड को कुछ है पॉइंट्स कुछ क्या पॉइंट्स हैं पॉइंट सरप्राइज फुल रहेगा
to be on these speedsters. This high damage, high mobility. पॉइंट सिस्टम भी अच्छा है भाई, सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले को काबीचन नीचे से फाइनल अगर जाती है लंबा गेम होने वाला है भाई, ब्रैकेट रीसेट वगैरह लौड़ा लसो भाई टीम बनाते हैं और एनआईसी में खेलने जाते हैं। बढ़ रहा पैसा मेरा एने जाने का Yeah, बढ़ रहा है तो so बोल much everyone for नहीं। your patience as we are jumping in हो to गया भाई game चालू। number 2. मैंने हाथ तो खड़ा नहीं करा है। Having their chance to tie up the series. बनाते हैं Capuchons having their सिदक chance से to send क्या the चौके में UIC टीम home. बनाएगा। हाँ इस चक्कर में तो बनाऊंगा भाई। Low right now on that Phantom, just trying to Fanny stay player. alive. Fanny भाई। Melee खेलेगा। actually low extremely as well. आएगा तो मजा आएगा Good भाई amount उस टाइप of का। harassment damage, I would say, रहेगा कोई ना early भाई। on, and these paths are pretty chill. Oh yeah, look at that. There's an invasion. Yeah, Espeon from ये us attacker is Espeon actually तक running over है the enemy central एडवेंचर पे area. गया I जो love अच्छा that. After both of their teams have gotten vision on the top and bottom side, they know that Dragonair only took one of the buffs, and that is the perfect green go button for us to charge into the enemy central area and take away their red buff. Ooh, and now trying Slow दे रहा होगा ना। to jump on this poor little Bulbasaur. It is याद able to याद get आई out रही at हो least for a फुली little लगे bit, but नंबर के Nill's टाइम gonna knock it back into place with that wood hammer, doing a great job, also stealing the citrus ये भाई वो personal क्यों देना चाह रहा है LD को? है हो गया। really far away. Same Another rotation quick तो हुआ है turnaround मतलब wood दोनों hammer जगह। did not quite catch नीचे with that score hit नहीं हुआ buff, रहेगा but लेकिन pulled him a little स्कोर के bit सामने। closer, but built more than enough space for 37 points already to go into that top tier goal. मार दिया Yeah, भाई and Nill's already at level 6, and you have to imagine that's due on the back of course, Stack that पे क्या early Blissey? damage push, Yes, but game also भाई। getting those scores in those stacks so important. अल्लाह बोलोगे भाई इसके साथ तो बफ लेगा, बफ लेगा हमारा। एक बफ लेके खुश था आगे के आगे और गांड मस्ती करनी है। Rock Tomb lockdown, and now it is going to be the Crussel's turn to go on a wild flank. If you're looking भाई at the ब्रो menu, को मिला नहीं फार्म स्लोब्रो को मिला वो फार्म दोनों फार्म। जीरो है ब्रो का स्लोब्रो टिक दे रहा है भाई रॉम भाई को Go where they want to after that 8-minute mark experience. मैं मदर ए यार We're gonna have another अब उसका इशू है शायद। another pause, but yeah, this time on the other side. So we're trading. We're वापस trading. गया क्या? Both sides getting नहीं अब इनका time इशू and है। pause, but अब ये that's तंग all करेंगे right. उसको, उसकी Jumping कुछ back तार in वार the बीटी दे रही very, है। very shortly, everybody. So sorry about the delay, but कैसे as लौड़ा soon as we मैच get में back था into भाई। it, I know we're going to be looking at an यहाँ तो इसका वो कंसोल निकाल के अलगाटो वाला उधर देखने वाले हैं। The Espeon getting caught by that rock team might be what's going on, but that is but still सोचता हूँ master से ज़्यादा powerful होगा। कब? अच्छा इधर। very well. That Meowscarada has hit level 6, and you saw how quickly they were able to delete a Bulbasaur on the ये क्या हो रहा है भाई enemy team CC? just with that high damage option. yeah, and so that's another thing that we were talking about before. Well, I should say in the draft, right? Of course, we had that little bit of a pause earlier, and we kind of didn't get back to talking about it. But the way that this comp is crafted on the side of Kalichan's is really interesting as far as who they were going to send up top. And of course, we did end up seeing that it was the Bulbasaur, which is going to give a little bit more for and I think नहीं इधर गेम तो चल स्ट्रीम तो चालू ही है कम से कम और बिना स्ट्रीम वाला था नहीं इवेंट को तो extremely aggressive. आधा स्ट्रीम हुआ था कुछ तो। Really far past that tier 1 goal. Hello, Stalman भाई एकदम बढ़िया। Far past. And so they were इनको पिघले नहीं करने that top path. While a few levels it'll be quite strong, very hard to push down. पता नहीं मैनेजमेंट किसको दे रखा है। ई है कि कौन है पता नहीं। Oh yeah, Esports इंजन ही लग रहा है that is very true. ये सल को दे देना चाहिए भाई। About Nils on this Trevenant. I thought the draft decision to steal it away या तो इन हाउस रहेगा in that दोनों में top से pack position was really ये close. सब अच्छा करते हैं वो। In-house तो भी ठीक है। Rewarded for just that. ट्रेडिंग कार्ड और VGC तो होस्ट करा इन्होंने हमेशा से यूनाइट में पिंग विंग का चक्कर। I like that कहाँ हो clever रहा? steal of the red buff. Very, very cool. I wonder how aggressive Kapibabas is going to be towards that enemy central area as the match goes on, because certainly that's Kabi-chan's play style. And all right, the game is going to be beginning again. इमेज तो नहीं कम से कम Jumping back into game number 2. All right, now time to catch up on these action that's happening. More points going in up top. The goal zone already down to 22 left. So already the score lead just slightly in the favor of Capybabas, but it's so early on for even that amount of ये रिज्यूम हुआ ना यहाँ से। Yeah, doing quite a good job up there. ड्रैगनेट देने वाला है। 8 हो गया। Yeah, यहाँ में उनके लिए अच्छा गेम नहीं है ड्रैगनेट को तो छोड़ दिया ऊपर कि मरवाता रहे। Birds fight, which I believe that Kabi-chan is able to win most of. So a lot of अल्लाह experience को बुला लिया being गया on है। their side. Kapibabas with 4 players on the bottom side, just leaving Nils alone on the top side to take that little आराम से मेरा engagement. भाई But now we are going to have ये मैं बोल रहा हूँ ना हीरो बन रहा है पूरा। themselves. Really excited to see this. थोड़ा साइको है ना स्पिन प्लेयर अरे ब्लास्टर्स के मुंह पे घुस रहा था भाई। 1 शॉट हुआ है। Really good target. We're going to be starting off with the
Crustle is going to rock tomb a lot of members together with that extra. That's a huge deal. The Jaldi circle mar diya, Bim. not really connecting on too many members. Mascarada is very low. Had to get away from it. I thought that was the hyper for sure. Wow, Osh able to just throw in some special attack damage and take it out Tournament pressure. momentarily. Toast even throwing in a double team. Ult आ गया उसका. दो का channel था उसका, तीन का नहीं था. And now Copy Bob is in a bit of a score. Unite move from the meowscarada doesn't Button खुल गया ना उसका. trick enough for the बटन खुल के दब भी गया. set the cooldown on that move. Toast can drop another one, but they are going to get deleted too quickly. The Dragonite swinging back into this has too much damage. Level 9 on this Dragonite, so impactful. Yeah, things were going okay when it wasn't there, but Time now तो buy कर it's दिया. just kind of undefeatable. And they're going to be chasing down. There's ये just क्या a हुआ? return कुछ KO, अजीब सा but sound they're आया. able to get it. Everybody else except for the Dragonite was extremely low in that situation. And finally up top, we're going to be able to check back in. भाई ये तो never ending battle. Venusaur ओ has तेरी. finally become Venusaur, hit its power spike, and at this point, getting any more scores in is going to be nearly impossible as long as that Venusaur manages to stick around there. One of the best goal zone defenders in the game. Interesting to see Niels on the Trevenant go with Woodhammer and Pain साथ खेलना को ult. crowd control maneuver in Woodhammer, but into a pedal dance Venusaur. Pain Split will be constantly returning that damage while you're taking Drag rate पे दे रहा होगा वो, I think गलती it's से a चला गया really शायद. clever decision for that moveset. A double team from Meowscarada sometimes can be easy to tell which one is the clone currently, but you still got to respect it. Meowscarada can always appear as that clone anytime. Nice. Yeah, and right now, oh my goodness. we're अरे gonna- अरे हवा हो गया एक They उस पर. are going to be able to get it with the Hyper Beam. The Fang तो Force Venusaur coming out खोदने from वाला Trevenant था. as well. Not sure that really hit too many targets, but we're going to have Cabochons winning. It looks like the Yes, rest I of be this make लगा. fight, they are going to be melting down. The Cycler back up again. Comes back up so quickly. I Kalis. feel like we saw it 20 seconds ago, but not going to be enough. A great defensive option, but not when you've got a runaway, powerful Dragonite like this. मैं उसका पैसिव कैसे वर्क करता है गांड फटती तो भाग जाता है. Up to par with that, but I mean, goodness, Dragonite. I'm surprised we गांड haven't फटती seen तो more गायब हो of जाता है. other हाँ सॉरी गायब हो Yeah, जाता है. honestly, at this point in time, Cabochons have stolen away और the debuff भी है. lead from Copy Babas. Copy एक Babas यू not टीम with घर a जाने lot of वाली है. priority on this ये bottom सब side जब of the जाने map. वाले मुझे लग रहा है Very धीरे slow धीरे. clear. The Trevenant earning experience on the top side of the map. नेमेसिस का मैच दिखाना चाहिए ऑन स्ट्रीम. अभी विनर फाइनल दिखाएंगे ना सबसे पहले. क्या है विनर फाइनल? 13 off वाली टीम दूसरा? रिवर्क रिस्पॉन और the Venusaur to ये क्या नाम है यार इनका? Yeah, I mean, with the fact they're already level 11, I think the level... नाम उसकी विकेट किसने गिराई थी? inevitable. That's फ्यूजन. going to be the Mew. The secure on the side of Cabochon. ये विनर ब्रैकेट फाइनल है. What the fuck? They are just running through. Rework अच्छा collecting as a खेलती है, team, which they're so good at doing. The Unite coming out from the cross. हट तो दिया पर कुछ हो नहीं रहा. Took so भाई मैं much उसका damage. They can pick up the Mascarada, pick up probably everybody else. Phantom Forest is going to do a हीरा नहीं मारता भाई. damage hitting everybody, make you that much stronger, but it's not going to be enough to even keep GG up लग रहा है ये Mills. So there's another tier 1 down. एक है ने एक ही टीम बाहर. Only slightly in the favor of Cabochons as far as points, but their team fights are all going their way. This नेमेसिस का मैच ये लोग के विनर के मतलब काफी चार नेमेसिस देखने मिल रहा है नेक्स्ट मैच शायद. Yes. अपर मतलब अपर ब्रैकेट वाले मैच के बाद. We even had the slow ये हवा हवा किया क्या विनर ने भी तो. हाँ एक ही लगा. दे दिया भाई. finally find a way to अरे 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 चार बंदे हैं नहीं शायद एक तो क्लोन है. experience back the other मस्त हाइपर direction. बीम खा रहे हैं. Double team does take a whole lot of that damage. Niels is getting enraged, but they gotta find a target. इसके उनके लेवल में खड्डे नहीं दिख रहे थोड़े से. ज़्यादा ही है. Of course, redirect. Aush is going to go down that hyper beam. It's just uncontestable. इतना मोटा मोटा फार्म पड़ा है हम क्यों नहीं करा रहे? Again, Copy Baba was forced to fight मैं सोब्रो के लेवल territory as सोब्रो के लेवल जाता. so aggressive. शोब्रो क्या रहा है बीसी. Just looking so tough. I'm ये actually स्कॉर्पियोस का विनर का शोब्रो को मिला रहेगा. नेक्स्ट नाउंस के साथ है केस का वो. levels. They're super in the lead. They've won every single team fight. केस वैसे नाउंस है क्या? अच्छा अच्छा टीम ब्रैकेट कंटिन्यू नहीं होगा ना ऊपर नीचे जाएंगे. वही ऊपर नीचे फिर वो आगे होगा. 1 minute वेट left करें. to try and even things up. This Regilecki is going to एक राउंड आगे मुलाकात होगी With how अगर दोनों Cabochon जीते तो. plays, I would not be surprised if they Oh, decide to commit to push it down. Huge rock tomb. 3 members trapped up against that wall. That is unbelievable. Tomato, I don't know, you were an artist when you're setting up these walls. कोई शोर है लग रहा. Lock down Copy Babas. I don't believe the Sulfur is going to be able to make ये it तो out वापस alive. 300 हो And रहा now है. Copy Chons have taken down 2 members. Unite moves in on this SP1 defense. पहले एकदम राउडी खेल रहा है अब सीधा एक बंदे को अल्ट मार रहा है. For a moment, but that is a level हो गया 13 उसका. Venusaur now, and the recovery of खत्म हो HP from them is just too strong. Regilecki might भाई लेवल में खड्डे देखो भाई गेम में मां कसम. going over to Copy Babas. लेवल खड्डा और ऊपर साइड पे नहीं है अब SP1 पे. To remember what happened in game 1, they gave too 15 much level space Dragonite भी for है. just a few एक seconds. दिन Venusaur लग गया going सामने way वाले को slow, कभी. and
5,000 डैमेज का तो भी मैं 15 होने वाला है काले भाई वर्क हो जाएगा वो भी तेरा ही है भाई मीना भी तेरा है ना ना ये नहीं जीत रहे भाई चांस ही नहीं उनका एक हक भी दे अरे have to play this so safe, and unfortunately we got another game pause on stage. Really sorry about this, everybody. I'm sure we'll get it sorted momentarily, but well, we're gonna be headed into the final stretch when we come back. Loading हो गई थी thumbs up दे दिया A game back against Kabi-chans, who currently lead this series 1-0. Yeah, I mean, just looking back at the kind of strengths here now, it is certainly ले बाल थोड़ा ऊपर ले भाई टीम फाइट में दिखेगा नहीं आगे पीछे क्या चल रहा है push in that final ridge like it means the score difference is actually not the worst in the world. They're only 3 points apart in our currently paused game. The level difference is only about maybe 1-ish across the board for some of their stronger attackers, so it's not an unwinnable situation by any means. It's considerably closer to this final moment. भाई नींद आ रहा है रे बेंच पका दिया Here सीरीज they're ने both unpausing and they're getting ready for potentially VCT जैसा रखा है भाई हाँ VCT का जैसा हो गया है बालरो जैसा The points do matter in a scenario like this. Venusaur पे लोग का वो है Be trying to push away those targets. अश्वत्थामा Meowscarada clone at the moment. All the positioning has been going over to Kabi-chans right now. The entrance to the लोग इधर गायब हो गया भाई जाप वो जापजुक हो गया क्रसल ने क्लोन पे नेट दिया दे दिया भाई क्रसल ने तो फंसा दिया Impossible team fight. मैंने ने डाला घुस रखा है ने शायद एटा मल्टी जल्दी मार दी थोड़ी वो क्रसल ने मारा it has begun 4 यूनाइट है वो लोग के पास मटका तो नहीं करना चाहिए काफी ये लोग करना अरे लो मटका क्यों नहीं कर देते मैं हमें अल्टी में वो क्या इस पेनल्टी में हमें अल्टी में टीम फाइट व्हाट द फक नानी मेowscarada पे अल्टी नहीं आया उसका भाई कितना लो था मटका ही करना था मेरे हिसाब से ब्लिसील्ड भी था मेowscarada भी था ब्लिसील्ड मेowscarada एस्पियोनाइट सब था Impossible team fight है भाई बहुत प्रो है भाई बहुत प्रो है लोग बहुत प्रो है 2-0 हुआ ना Feels like Kabi-chan's HP bars were so frustratingly stubborn, would not go down to 0 as they feel immortal in that final fight. Eldegoss, Venusaur, so much recovery and defense. Kabi-babas could throw to them. Kabi-chans, one of the representatives from Japan, the only one left in the tournament, will be moving on. आज एक वॉच पार्टी वाला मैन डाउन होने वाला फाइनल के पहले लग रहा है Both of the guys. Cappy Babas need to learn draft. They're only representative, like we said, of Japan. They're going to continue forward. Of course, we've got to say one more congratulations to Cappy Babas, the biggest dark horse, the biggest surprise. ये लोग का रिएक्शन जीरो रहता है ना भाई काफी ज्यादा लोग लड़ फर्क नहीं पड़ता है लोग का भी And they've certainly made a statement as far as how they're going to be doing in the चलो लंदन टावर घूमो बाजू में ही है like many teams have said before, the UK team, right? potentially is I almost messed it up again. Kabi-chans will still be moving forward in our bracket. Absolute terrifying team. No one is going to want to have to go up against this squad because of how formidable they have become. I'm looking at the stats right now on my screen. You'll all see this in a few moments, but I am Tomato on this Crustle was 72,000 damage on a Crustle, 96k on a Venusaur, 90,000 on a Mew, 95,000 damage. तो भाई हाथ हाथ मिलाओ फक हो जल्दी अगले गेम चालू करो बेंच तो 2 घंटा ले लिया एक सीरीज The game actually just has ridiculous अरे in general, but again, the last chance. But the last chance for Japan. ए भाई बोरा क्या नहीं अच्छा जैकेट है भाई मेरे को लगा बोरी निकाल ली उसने 6 teams and technically we now have 6 regions and 6 teams left in this entire tournament. Yeah, that is भाई गोटे जाम हो गए थे लंदन में भूल गया सुबह सिगरेट पीते हाथ पाव कांप रहे थे भाई ऐसे थर फुल tournament run from a Kabi-babas, just so many squads not giving them the time of day, and that felt like a mistake is now they made their way all the way to 7th place finish, finishing at the same moment of the tournament as Alter Ego.
Yeah, and they just, like so many teams before them, were not quite able, I think, to kind of counteract this aggression that we're used to from Capybabas, where they're, oh my god, I did it again, Kabi-chans! Oh no, please! We can be at least happy that they're not playing each other after this again. But, I mean, they're both great teams. Now we can see these stats that you were talking about earlier. Yeah, Kabi-chans, their Dragonite at 11 KOs. It's a phenomenal जरूर हाँ काबी-चान शिंगड़ी वापस होने वाला है अगर आगे जीत के आते हैं चांस तो अभी देगा भाई चापा-चाप ये तो ब्रैकेट है ड्रैगन नाइट खेल रहा है, लोगों को लग रहा है ड्रैगन नाइट खेल रहा है, फिर आएगा ज़ोरो कॉफी गेट टू द रिंग शिंगड़ी लोग वर्सेस नेमेसिस नाउन्स वर्सेस काबी-चान अरे भाई शिंगड़ी नेमेसिस भी मजा आएगा देखना और फ्यूजन और रिवर के रिस्पॉन्स अभी अपर फाइनल आएगा पहले और लूजर क्वार्टर में कर क्या ही पता जिस हिसाब से चल रहा है अपर फाइनल साथ में चला दें लूजर फाइनल साथ अपर फाइनल तो दिखाएंगे ना भाई स्टेज पे प्राइस मनी काउंटिंग स्टार्ट हो गया अब तो EUIC का है कितना प्राइस $50,000 क्या चीज 100 है क्या टाइम मोटा Absolutely, and there you can see the story of the match in terms of score. सेकंड ईओ टीम नाउंस का भी टाइम आएगा नाउंस से टक्कर दे सकते हैं नाउंस डिसेंट है भाई आडेसो तो भाई आडेसो ने तो स्टील कर रखा है मस्त वाले अरे तो स्टील वाला गेम था ना भाई वो मोटा मोटा स्टील किया वापस गोल भी करा नाउंस के बुरे दिन चालू हो गया भरोसा I'm really excited to see who they're going to be going up against. Dragon Knight ban होगा फिर ज़ोरो कौन सी लेगा Anybody who has any आडेसो ड्रैगन ना ड्रैगन kind of predicted to potentially win this entire tournament. Of course, nobody could really guess anything with how wild the Pokemon blaziken भी तो है भाई बोर होता है वॉच पार्टी में तो बिना बुक वाली बुक लगती है on भाई par with each other. It's unbelievable. It's so cool. It's the best we've ever had. And right now, though, I mean, they're still in, right? They're still in. They've still got a अब chance. किसकी मैच है बताएंगे मोस्टली विनर फाइनल है फ्यूजन और in the past, they have an issue with them right now. किसका ये who we may be seeing. We'll definitely be seeing them later at least once. But रिवर रिस्पॉन गई फाइनल से जीत तो सकती है Get an update for you as soon as we have those scores in for the winner side. But we do have a interview on stage with one of the members of Kabi-chan, so we're going to throw it on over. Take it away. Hello, I am here with जंगल में Let's have a little discussion about how strongly you started your day. How does it feel getting a swift 2-0 in a dominant fashion this early in the event in the top 8? 第2日が始まったばかりなんですけれども、初戦で本当に大勝利できてすごくいい結果を出せましたけれども、これはどのような気持ちでしょうか。はい、今戦った相手はオープンブラケットですごい良い成績を残していたので、警戒はしてたんですけど、勝つことができてよかったです。So now we played against a team from the open bracket. It's a new experience and they played very well, but we managed to just get the win, show our strength, and here we are. Yeah, it was a great win. It was a terrific win on stage to kick off your day. I have to ask, what would it mean for Kabi-chans to bring home the AEOS Cup Championship to Japan? この EOS カップを優勝できて、日本にこのカップを持っていくことはどのような価値を持っているんですか? देखता हूँ साइड वाला वो थर्ड मैप चला गया बाद 4-5 EUIC क्या है भाई फर्स्ट मैप पे तो पहला था भाई बहुत गंदा जीत रहा है 113 BC EUIC क्या है जीटा इनके हमेशा स्टार्ट होता है भाई पिछले वाले जीटा से स्टार्ट था ना make more excitement around the stage. 1164 है third map. हाँ जीटा से start होता है. Well, listen, it's wonderful having the ACL champions here on a great run to take home the AEOS Cup as well. We've got more action underway. So let's kick it back to the booth. Thank you so much. Congratulations. कल्चर होना शुरू है ट्विटर में अभी से हो जाएगा अगर एनयू बार हो गए एक बार है एक और लूजर में है यू एक बार हो गई यू और एक लूजर में है वापस बहन जो दोनों एनएल हुई एनयू तो लूजर में है एनयू भी बाहर हो जाएंगी वैसे से Yes, I mean there has been a ton of momentum जैसल भाई quite a while now even before this ये वॉच पार्टी जरा बोरिंग हो रही है बीच में एचओके का गेम स्क्वीजिंग करना है क्या अरे मिलो यार very very strong win for them वालो पागल है क्या भाई 30 minutes 30-40 minutes आजा भाई 1v1 खेलते हैं मतलब वालो में खेलना है क्या आ जाओ जी 1v1 वालो 2-3 करते हैं यार टीम डेथ मैच लेट्स गो
करना है क्या भाई मेरी कल की तरह स्ट्रीम ना क्रैश हो जाए पता नहीं वेलो में कोई पीटी दे दी थी स्ट्रीम को अच्छा है भाई हो जाएगा तो फुल डे नहीं कर पाएगा आ जाओ नहीं वो तो कर लेगा वापस वो वापस चालू कर देगा भाई उसमें साइको आईडी पासवर्ड मान दूसरे का यूज करता हूं फुल मैच खेल लेते क्या जा रहा है फुल मैच नहीं भाई इतना ब्रेक नहीं रहेगा डेथ मैच खेलते ना एक बीच में अरे एक रिस्टार्ट हो जाएगा कैबिचन का मैच नहीं है ना बिड़ा अपर ब्रैकेट है चुके हो भाई बट पहले अब इंटरव्यू अभी पीरियड बैक वापस आएगा अभी कमिटमेंट कर दिया है वैलोरेंट में वैलो खेल रहा है ना भाई ग्रुप मेरा अपडेट हो रहा है कुछ तो ब्लॉग वाला अपडेट किया नहीं मैं तब रोज खेलता है क्या तू वैलो नहीं हफ्ते में 2-3 दिन मुश्किल से एक मैच वो भी मैं 3 महीने में एक बार खेलता हूँ ज्यादा मत मानना मैं भी अभी चालू किया एक थोड़ा टाइम पहले रैंडमली खेल रहा हूँ I thought had some really big impact, especially early in the game, and it felt like one of their best answers to finding a way to KO that Venusaur. Not an easy task when Eldegoss is on the case. Yeah, overall, in general, it was just so much better for them. Yeah, Wait, that guys, moment again was 73% what? ridiculous. I mean, that was a perfect rock tomb. And that's them up for such a nice set of KOs here. They weren't able to push that Regilecki in, but it didn't भाई म्यू के साथ अपनी रशियन फैंटेसी पूरी कर रहे हो उनको एक रशियन का नंबर दो अरे बड़वे दलाल दिखता हुआ मेरे को रशियन का नंबर मेरे पास क्यों होगा अपनी माँ का नंबर भेज उस आगे भेजता हो बड़वे 2-1 बाकी सब 2-3 आ जाना technically not even doing anything. ये भी 2-1 नहीं मान सकते हो एक रीस्टार्ट भी हुआ है भाई ऑलमाइटी इमॉर्टल है बोल रहे लोग चैट में अरे तो था भाई है नहीं था 1.5 साल पहले था तो अभी तो राइड बना के मानना चाहिए ना तुझे हम लोग दोनों को क्यों भाई आजा भाई 1v2 चालू हो रहा है क्या हो गया क्या आजा भाई स्ट्रीम पे भी वो सेटअप करना था क्या गेम कैप विंडो कैप्चर रहता है क्या रहता है गेम के लिए विंडो कैप्चर आई थिंक गेम कैप्चर करके भी तो दिख रहा है कुछ मैंने ट्राई नहीं स्पेसिफिक विंडो वैलोरेंट नहीं दिख रहा है भाई वैलोरेंट गेम कैप्चर में काम नहीं करता है क्या भाई पता नहीं गाइस अगर बाय चांस मेरा स्ट्रीम एंड हो जाता है तो कोई ना वापस आ जाएंगे डोंट वरी मैं तब मारेगा तो स्क्रीन एप्लीकेशन को ठीक है मैं तब भाई क्या दिख रहा है क्या ओके दिख रहा है मैं तब अगर डेथ मैच में फर्स्ट आएगा तो स्किन गिफ्ट करेगा सबको कौन सी स्किन चाहिए भाई बताओ नहीं भाई सिर्फ बोल रहा है इसे नहीं वो प्राइस पूल तेरा आ गया तो दे दूंगा ना तू दे दिया मेरे को अरे भाई राइट दावा दूंगा नहीं कि किसी के इस पे जसल के साथ तो खेला रहा हूं मैंने शायद दिस और ऑनलाइन नहीं कर सकता लिस्ट में यस दावा दूंगा ऑलमाइट का तो इनवाइट किया मैंने हां दो भाई बताओ भाई राइट आईडी किसी का या मेरा कैसे दिखता है भाई राइट आईडी इसका ऑलमाइट का ऐड कर लो मेरा कुछ तो नेपाल है हां क्या है बता ऑलमाइट ए डबल एल हां एक ए कैपिटल है हां स्पेस एम कैपिटल माइट ऑलमाइट के बीच में स्पेस है हां ओके हां और #4620 4620 भेजा है ये क्या नाम है भाई अरे मेरा आईडी नहीं है भाई मेरा आईडी अंकु ने बैन करा दिया बड़वे ने वो एडेड है मेरे में मदर चोद साला डेथ मैच लगा भाई एक सेकंड कस्टम केयर पूरा ओ गाइस वो तुम लोग के ऊपर है एक तो ऐसे फन वाला लगा दो क्या अपन फ्री फॉर ऑल खेल सकते हैं क्या तीनों के बीच में हां कस्टम में तो खेल सकते हैं हां खेल लगा ना भाई आपस में ही चोदते हैं फिर लोगों को बाहर वालों से क्यों चोदे आपस में चुदाई खाते हैं किधर है कस्टम राइट एकदम राइट पे टीडीएम में ये सिर्फ कस्टम मुझे दे मैं करता हूं रुक लॉबी लीडर बना मैप कौन सा रखना है मैप छोटा रख भाई सनसेट वगैरह रख छोटा मैप असेंट खेलते हैं ना मिड पे आ जाना हां असेंट भी चलेगा यस असेंट लगा दे अरे ब्रीज रखता हूं असेंट अरे ब्रीज बहुत चूतिया मैप है भाई सर्वर कौन सा टोक्यो ब्रीज बहुत बड़ा हो जाएगा भाई टोक्यो हां असेंट ठीक है टोक्यो क्यों रखेगा चूतिया होती है अरे मुंबई रखना भाई पागल हो गए चलो साइको है भाई साइको नोड़ा वाजीरो दिख रहा हो क्या मतलब कौन सा गेम खेल रहे ये वेलोरेंट दिख रहा है ना स्क्रीन पे गाइस वेलोरेंट ये ना हो कि तुम्हें दिख ना रहा हो
SAR versus Nemesis in 4 minutes. Okay मेरा भाई. 4 minutes नहीं, वो VR भी 4 minutes से चालू नहीं हो रहा भाई वो भी इतनी जल्दी. मैं तुम दोनों में से किसी को मारता नहीं रहोगा तो डायरेक्ट बंद कर दूंगा भाई गेम. Warm up. चुदना तो नहीं है. एक सेकंड कंट्रोल्स कर रहा हूँ. Give me a while. Reset to game defaults. General sensitivity. पता लग रही है भाई बहुत. Fight. Good luck. एक सेकंड मेरा सेंसी बहुत ज़्यादा है. 0.4. इधर मिड पे आ भाई. इधर हो. ये गलत बात है भाई. दो क्यों पेल रहे हैं? अरे वो पीछे से पेट. अरे भाई. अरे वो ले रहा था भाई मैं. सैड. बड़वे शेरिफ खेल रहा है. कम रंग दिख रहा है क्या अपना? यस. अरे भाई ये तो हेडशॉट मार रहा है भाई. साहब ये क्या है भाई? शेरिफ बदल ले भाई. ये तो शेरिफ वाला है भाई. मैं सीएस अरे मादर चोद भाई क्या मार रहा है भाई? ये तो एनिमे कैरेक्टर है कोई तो. आइसो. मैं तो गैंगबैंग सीन है भाई. सिर्फ हेडशॉट मार रहे हैं भाई लड़के लोग तो. होली ए मेरा एक हेडशॉट नहीं लगा है. सिर्फ हेडशॉट मार रहे हैं भाई लोग. न्यूट्रलाइज. हेडशॉट नहीं लगा है यार. बेचो पहला है भाई. कुछ तो रहेगा ना. एक छोटा मैप खेलते मैंने देखा है भाई. मेरा बिल्कुल बॉडी पे लग रहा है खाली. चुप गोलियां. कोई तो पीछे से आ रहा है. बेच. अरे सैड. अरे यार. यप. मैं तो आपको टीम अप करके मारता है. बहुत मारने वाला है रीजनल्स में. ये गेम में मारता है. अरे मार. अरे इसमें भी जज लेके खेल रहा है गुड़वा. अरे एक गेम में शॉटगन बंद कर भाई. आँख खुली अंडे की. किधर है? पीछे आगे पीछे गैंगबैंग है मेरा. ओ तेरी. हेलो दवा दूं. ओ भाई तेरा साउंड सुनते मेरी भी गोली निकल गई है कपल में. अरे सैड. अरे बेंच कोने से मारना है. मुझे लगा क्रॉल्डी भाई ने डैमेज दिया होगा. वॉल बैंग देता हूँ. अरे नहीं भाई हवा हो गया थोड़ा. चलते गोली. इसको भी ले चलते गोली. अरे क्रॉसर बहुत छोटा है भाई आईडी पे. अरे भाई मैं की चुत गर्दन पे मार रहा हूँ. मैं चुतिया हो गया. इधर देख रहा हूँ भैया. अरे उधर सोलो देख रहा था भैया. दिस माय. अरे जवानी एचपी था क्या? यस. नो एचपी. अरे पैच उसका पीछे से आवाज आती है तो फपली चल रही है भाई. अरे साउंड. एक सेकंड भाई. साउंड सेट्स फक हो गई भाई. मोबाइल गेम खेल के फपल चल रहे. अरे भाई शूटिंग इतना क्या ट्रैश हो गया ना. बेंच शूटिंग मर ही नहीं रहा है. Next. अरे मैं था भाई. ओ तेरी. नाइस वन. फ्लिकर. अरे भाई स्विच करके बाहर निकाले. सासा बहुत मार रहा है भाई. प्रो लग रहा है सादो प्लेयर. ऑल जाता है भाई. ऑल माइट के लिए मार रहा है. अरे भाई इमॉर्टल लो. नूब ब्रो. बराबर भाई. पपल मैक्सिमम. खिड़की उड़ के तोड़ दिया मैं. अरे मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ. मैं चल के बेंच लग रहा है. ए इमॉर्टल लो. जज लेके पहुंचे ना इमॉर्टल बड़ में. सच बताना. नहीं इमॉर्टल तो जज नहीं भाई. क्या उधर की ऐसे ही गोली मार रहा था. अरे भाई 1.5 साल पहले की बात है भाई. किधर हो भाई? इधर थोड़ा मैं एक्सपोज्ड पोजीशन में हूँ मैं. सॉरी आराम से. अरे आरती उतार रहा था क्या? लौड़ी मेरा.
So bhai, where are you? ब्रैकेट दिखा रहे हैं अभी तो। ये भाई साउंड आउट नहीं दे रहे थे, सो हेलो। पीछे देखो जरा। अरे भाई अरे भाई गैंगबैंग था भाई, आजू बाजू दोनों जगह से था। वो किधर है? भाई आजू बाजू किधर, आजू बाजू किधर? वो तो आयर कुछ के नहीं पता, मेरे को पता था करते आ रहा है। ठीक है यार। भाई ये तो मेरा टीम ऑफ कर देगा, व्हाट द फक। आगे पीछे पपल हो गया। घुंघरू बजा के तो आ रहा हूँ मैं। ये गन चेंज कर, ये तो नहीं हो रही है लॉन्ग रेंज में। यप फैंटम ने हो रहा है। अरे ऑलमाइट भाई यार पीक पिक ले तो भाई। अरे बेंच मैं तब तक पूरा दे, इसके लिए नहीं मार पा रहा मुझे, सो दे रही स्प्रे भी का आवाज आ रहा है भाई किधर से तो। ए भाई वो पीछे किधर घूम के जा रहा है भाई, इधर आना मिड पे। हेलो सॉरी मिड पे करनी है ना भाई, मारा वही कर रहा हूं मैं तो से। इधर तो गैंग होने वाला मुझे लग रहा है। अरे दूंगा। ये सॉरी अरे यार हियरिंग लेने भाग रहा था भाई लाउडू जैसा उधर। भाई रडार काम नहीं कर रहा है लग रहा है। भाई पीछे से भी आ रहा है, रुक एक सेकंड। अरे भाई अच्छा तेरे पीछे से था क्या? अरे यार तेरे को दे दिया। ये शेरिफ वाला कौन है भाई प्लेयर हो? अरे 90 देर कैसे लगा? वॉलबैक लगा था क्या? भाई क्या उड़ रही है भाई सेंसी? गैंग अरे माफ कर दो भाई। भाई सीएस और वैल्यू की रेंज सेंसी तो बहुत ऊपर नीचे हो रही है भाई रुको भाई भाई मैच चालू है क्या? नहीं अभी टीम दिखा रहे हैं। अरे भाई चलो भाई हिट शेरिफ टाइप निकालो सब लोग शेरिफ। अरे शेरिफ टाइम आजा शेरिफ ऑल द शेरिफ। हिल लेन दो। ये तो और नहीं होगी लग रहा है। अरे भाई क्या है भाई, क्या कर रहा है? अरे सिर्फ पैर पे मार रहा है मैं तब बेंचर। और टिल्ट हो रहा है भाई उसमें बेंच पीछे देख। अरे यार तो लग रही है भाई चीटिंग मत करो, रुको। 10 kills remaining. हीलिंग पे जाने दे यार। 1 minute remaining. और बेंचर क्या है भाई? मेहता भाई ये गेमिंग करता थोड़ा। बेंच चेक ना छुपी। अरे भाई क्या मार? अरे भाई 50 साल रुका था भाई उसको मैं उधर कनेक्ट करके एक गोली मार दिया उसको। हेडशॉट। अरे क्या मारा है भाई? आ गया भाई इमॉर्टल प्लेयर ऑनलाइन। खुली 10-12 राउंड के बाद 15-20 मिनट बाद खुली है। अरे दोनों क्यों मार रहे हैं भाई? क्या हो रहा है भाई? अच्छा वो वाले को मार। अरे पैंचो क्या मारा है भाई इसको मैंने? क्या हो गया भाई? हेलो मिस्टर ऐसे टाइप ड्राफ्ट आ गया। हां वरना छोड़ना पड़े, नींद आ जाएगी उस पर। इजी। Oh, it's a OP game guys.
Nemesis, and now we have Espeon and Nemesis बोल दिया उसने, finally Nemesis. two evolutions getting banned out. We're not going to be seeing Mimikyu, and of course, no one wants to run into Buzzwole. Oftentimes, the second pick team is banned. Hello Vanshki bhai, welcome stream. Hello Alpha bhai, kya haal chal? That here we are on the big screen. And we can actually, we are part of this phase ये now. कौन As लेके we're आओगे taking a look, Akura locking in Blastoise first. Buzzer India first में ban हो Great जाएगा. tree, and they're नहीं. giving Blaziken to अच्छे Metallic, बंदे which हैं. is a Pokemon you and I have seen them play multiple times in a row already. Yeah, I feel like Metallic has been absolutely crushing it on Blaziken. I'm wondering if he's the kind of player that you would start to. ए भाई वो सोलो था कि देव था जो नाखून बोल रहा था? देव था ना? And the Blaziken has just been going crazy in a lot of these games. We see Inteleon, we see Crustle, we see Blastoise. सिर्फ वैलो में बॉम्ब फेंक के भागता रहता है इधर उधर भोसड़ी वाला. I can't believe it. Let's go. अरे मैंने एक मीम देखा था उसमें था कि मुस्लिम फ्रेंड ने स्पाइक प्लांट करने से मना कर दिया. But it keeps working for them. But now we have the Comfy Zoroark combo. And how do you shut that down? They're saying it's through a Glaceon. Yeah, we're gonna have to see. I mean, भाई वापस क्रैमर ले लिया इसने तो. it's just crazy. ये क्या नहीं खेल रहा है? जीत रहा है भाई, कुछ चेंज करेगा. Overlord on Zoroark and just being, saved by that Comfey over and over and over again. When you have a Pokemon that you're able to outplay your opponents so incredibly well on, and then you attach this 8-9 चालू है भाई. Close है भाई ये. Crazy Unite move that will save you from so many 9-9 sorry. नहीं wait. सो तो सकते हैं, समझेगा भी नहीं किसी को. That Comfey until it pops off of Zoroark, it is really difficult to deal with. I haven't seen a lot of teams running Comfey lately. I know Nemesis was running it in the bracket. Can't wait to see what game over. here in game number 1. Sar versus Nemesis. This is OP game. Oh my god. This is OP game, guys. Zoro comfy. Oh my god. Chingli bhai. बीच में चुत्ते गेम चालू हो गया. I think Valo is not a good idea. Valo is a good idea, guys. Yes. You have to make sure that when you're ready to go, it is collapsing on Zoroark, getting the Comfey, and really dismembering the team, because all of a sudden you find yourself HOK का application stream पे खोलने मेहनत लगेगा क्योंकि बहुत. Absolutely. We're taking a look at the two. भाई ये बंदा तो सपोर्ट है जो चिल्लम चिल्ली करता है. लिसी खेलते खेलते करता है. क्या आवाज है बेंच? Captain of Nemesis, Rex. अरे ग्रे उड़ी वाला T2 में था, पता है कि नहीं? भाई आइस ने टीम शिफ्ट करी, टीम कैप्टन बन गया. वाह. ग्रे उड़ी वाला कौन? अरे वो जो कास्टर है ना. Here we go, heading into game number 1. बच्चे ऐसा दिख रहा है थोड़ा. First world में आया था. हाँ, yes. अरे कर लो भाई फ्लेक्स, कर लो. मार लो. क्या? First world flex कर लो. Captain of dinner today. Ice. Main Pokemon comfy. Squirtle, great pressure. First Early. world. Of course, they're making sure Zorua gets to Flex थोड़ी Zoroark. ना होता है. मतलब भाई खून पसीने गिरा के कहते हैं. ठीक है यार. वही ना. Flex क्या है? तुमको क्यों नीचा दिखाएंगे मतलब भाई बता. मेहता भाई तब कितने नंबर पे आए थे आप फर्स्ट वर्ल्ड्स के टाइम? 7 मिनट नहीं, छठे पे. छठे 5th 6th I think. भाई ग्रोथ देख रहे हैं प्लेयर का. छठवे से फर्स्ट, दूसरे में भाई no one can छठवे से फर्स्ट, फर्स्ट से नॉन क्वालिफाइड. छठवे से फर्स्ट भाई. बिल्कुल. स्टार्टिंग का केस पे से. तुम्हारा भाई तो कंसिस्टेंट रहा है. या तो फर्स्ट या तो सेकंड. वो एक बार थर्ड आ गया था. क्या पता कोई तो था प्लेयर टीम में. I don't know. डेल्फॉक्स खेल रहा था. Take something away. Obviously from the side of Nemesis, we didn't get to see it, but it's possible they were able to steal away that blue buff. Well, it's going to be Sorry, coming up. Ice jumping on to Xingdi as well, as they're eviscerating those birds, clutching them all up to the side of SAR, and that's a heck of a start. Yeah, a great start there here for SAR, and this Pokemon is just going to be so dangerous. Zoroark, you often forget that you are essentially fighting two Pokemon right now. It looks like one. टाइम पे देख लिया, मेरा खाना आ रहा है. मेरा टाइम खाना आ रहा है भाई. मिडवेज मिस कर दूंगा शायद. It is to have that Comfey on you. Rex getting a little bit of a stack right there and then going down. Yeah, K opener to SAR, but did you see what Rex did? As soon as the Zoroark went for the engagement, they used their मक्की की रोटी साग बनाया है मंगाया. स्विगी से मक्की की रोटी सरसों साग मंगाया ना बहनचो. घर पे ना बन जाए वो. And all in all, pretty decent exchange. मक्के की रोटी सरसों साग. Sometimes, right? What's the best सरसों सा साग and मक्की की रोटी. पैंचोदा. ठीक है भाई, ठीक है. पैंचोदा. चलो मैं एक सेकंड आया. मलाई लस्सी.
That Zork's already level 8. Next skill effect है क्या जोरो का है? Yes. Wow, purple goo. GC putting a slow smoke Paisa down. paisa. Shinan today. Glaceon cough 5,000 sponsor. able to make it out. Rex was pulling up for the support because they are the support, but they're going to find themselves knocked out. Yeah, it feels like Rex is like, all right, I'm going to be the one they KO if they have to KO anyone moving in on trainer right here. किसके लिए फटता शायद मेरे को मार रहा है भाई वो तो. मैं तो overload आ गया शिंगड़ी पे तो overload. And it is just destroying here at the start of game. 720 level 9. Even metallic is going to die. Shinrude are Yeah, Shin and Rude are इसने हरा दिया भाई moving लोग now, को ऊपर से. stacking up in this top path. This is almost a level 10 Zoroark right now before the 7-minute mark. 7 मिनट में 10 level का जोर है guys. Extremely scary for Nemesis. Holy shit. So far behind. Trainer well जैसी 12 नहीं हो रहा है game. Rude don't make a lot of big Passive mistakes. खेलना This है. is going to be really tough to come back from. Yeah, Rex making it down just enough to top off Azumarill on the tree. And a snipe shot actually going right across the beak of Cram. Can't quite get King EOR भी stream कर रहा है भाई. EOR King. Another EOR that's King. going to be free for Shingdi. They can't even contest against Shingdi standing alone. Yeah, nothing they can really do right there. I like this play by Nemesis. नहीं ये लोग free में क्यों दे रहे हैं वाला objective? ये था ना लोग का. They are able to दे get रहे that थे. secure even though the fight does not go particularly well for them. Again, they're just looking for whatever good moments they can find. Here comes that Zoroark once again, looking to make that combo happen. नहीं यू टीम इंडियंस फर्स्ट ना एशियन टीम मारती है करके. No, Asian teams are no. With a big unite move, the overheat not able to get them taken down there. Big time snipe shot, Azumarill and a lot of trouble. The Blastoise is pushing him back. That's a double KO for the Inteleon. Wow, and the goal zone closed out. बहुत मार रहे हैं भाई लोग. Expertly done Hydra. अरे नहीं हम क्यों कर रहे हैं? That fire or the fireworks there, and Shingdi delivered on the KO. जोरो की गाड़ी पे थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए मुझे लग रहा है. गलत लग रहा है कुछ. Bad vibes. ए भाई 2 मिनट के लिए गया था. ये एक स्कोर क्या दिख रहा है? बॉय क्या इल्यूजन मारा भाई इसको. मिड बीच पे गेम बदला क्या? Overheat on top of Crustle gets a knockout. Crustle is down. Azum's very हर जगह गेम बदला भाई. who else to split the wood right there and see if they can get another follow up somewhere else. They're on the motor though. KO Shriek 2. मारा जा रहा है जोरो. Fan got put down. Now all the उसने सीरियल ला दिया भाई. उसने सीरियल ला दिया. नहीं हो रहा. they're getting gigantic. We have a level 12 on the battlefield right now, and this is again just what you're able to do with this combination. क्या टाइम पे हो? Is already a 5:30 पे 12 22 जी 21. सेम. Now it's way harder to punish them. भाई मेरे साथ खेलो भाई. उन दोनों का मैच चल रहा है. उनका खत्म होता है तो पूछ लेना. For Nemesis. Shingdi is living on ये देखना ये दो Nemesis' टीमों side का of the मैच चल map रहा and है. saying I'm your Nemesis. Nemesis, let's get after it. They're going straight after Rex. भाई वो ब्लिसी ने अल्ट मारा. ब्लिसी के अल्ट का डैमेज नहीं लगा जोरो को. Their unite and they're trying to pivot away. Metallic's on the chase. चालू हो गया Nice क्या जोरो का? coverage by the Blastoise to make sure नहीं अभी तो अल्ट बाकी है. fighting the tall weeds. Almost हो गया था. ओ भाई बच KO गया. numbers are Shingdi with another one. Blastoise. बेजियर का फटका नहीं पड़ा 3 उसको. players down for Nemesis. Make it 4 ये तो चोद नहीं रहे भाई लोग. राड बना के चोद रहे भाई लोग तो. Jeez, takes down the ठीक है अपनी आईडी बता. अरे सामने वाले मैं थोड़ी खेल रहा हूँ. सामने वाले खेल रहे try to get a KO हैं. उनसे मांगियो. They were not able to make it happen, and the entire Comeback to team impossible is है भाई. wiped by Shin and Rude. नहीं ये टीम नहीं दे रही कमबैक इतना खुशी से. बोलते मर गया रे एक और बेंचो. There was that beautiful type of Blastoise, but right now this match is ये तो जा रहा है 350 for Nemesis. They have fallen into the quicksand, and ये सर every ऑटम. play they make, they seem to continue to dig themselves deeper. Well, we've got the Cram Unite is out, and they want to secure their second The base. base rotom में. ये तो comeback but how hard are है things तो look a little dire? Let's see if they can make some magic happen on थोड़ा those बहुत goals. तो They're pushing हो रहा है forward. क्या? Rocktomb is out. X scissors Ults तो through, नहीं and है. I think Nemesis Ult just नहीं needs है. to deal. Yeah, Nemesis Tank pulling की back विकेट गिर right गई. here. Here comes the नहीं Zoroark ये once कैंसर again. ब्लास्टर से Just a सामने नहीं level होता है. 4 वो एक्सपर्ट मार के दीवार लगाने पीछे पड़ा है भाई उनके पूरा. This match might ये be लोग पे भी 15 अल्टी नहीं है. and another minute right here. Just so चलो इसका incredibly 50 तो difficult लग to रहा deal है. with, you और know, did I say दोस्तों ये सब 50-50 वाला गेम लग रहा है मुझे तो how पता नहीं क्यों. powerful your Pokemon are is ये बहुत how 50-50 वाला गेम लग रहा है. ये कर भी सकते हैं. powerful they are inside this match. This Zoroark is an Cram absolute anti-flip. beast right now. Let's I go. thought Buzzwole was the क्या ultimate. ब्लेजिकन 1v2 फ्लिप करने वाला है क्या जोरो कॉम्पी के सामने? नहीं वो ब्लेजिकन का कॉल जा रहा है. रामी आ जाओ बेस रोटा में फार्म करने बैठे हो. Force out the Comfy Unite. हाँ? the last Comfy? opportunity for X to let's see if they can make it Poply. 3. Why not? No, they decide to peel as Rex gives just सिंगरी भाई तो enough ओवरलॉर्ड cover जैसा for खेल the रहा squad. है. Right now, at the 3.5 minute Lord. mark, there are a couple No of promotions, thank you, bro. situations Shin and Rude can make. Obviously, they don't want to give होल्ड away तो कर लिया the भाई Zoroark लोग ने KO, बेस they रोटम. don't have to. At the same time, if that Pokemon doesn't get KO Cram कम मर गया. at the end of the match, its Side damage impact में मर गया is किधर going ना. to be massive. So if they are going to go down, this would be the time to do it. But रेवेनेंट भी साइड डैमेज में चल they're दिया. not going down at all. It looks like they are keeping the pressure on, as they say, picking up a triple. 15 भाई वो 15 हो चुके हैं 1.5 मिनट पहले. एफ फाइट के. Trainer running away
from this moment, denying that वैसे आ रहे हैं भाई नेमेसिस का हिस्सा मार रहे हैं अरे कंफी और उसका लेवल सेम है हाँ बढ़ गया अभी कॉफी बारह हर गेम 15 लेवल होके आ रहा था ना भाई ट्रेनर एलजीसी कॉफी 12 है वेंचो इनके बंदे 12 है मैक्स अरे रे शिंगड़ी भाई आराम से 2:30 पे डायरेक्ट डब्बा है क्या पहला अच्छा है भाई 50 सेकंड कूल डाउन डायरेक्ट mobile in a lot of these situations. चलो बस सुना लग रहा है Giving it the ability to survive some of these fights. And that mobility just makes it so difficult to punish. Moving back in here for another fight. 2 minutes 18. Here comes. ए डब्बा बच गया भाई इल्यूजन ने बचा दिया. They are not able to pick up that KO. Primality जब ये guys 2-13 पे. If they did, that's why they threw that unite move. That's why they went for that play right there. Almost. पहले लोग सोचेंगे जोरो के किल लेके फ्लिप Hoping, praying they could pick up Zoro Let's see, analysis coaching. their only shots. भाई वो प्लेस हिल किसको दे आधी भी हो जा रहे थे किस को हिल देगा भाई बेचारा अरे रिकॉल कर लो भाई अंडा खत्म हो गया है इसका ठीक है मैं भाई इंटेलियन का बैकलाइन मारने हीरो ही नहीं है अब ते क्रैमल्टी भी जो थी जिससे शायद डाइवर खा के मर जाता तो भी नहीं है क्रैम क्यों लिए चोद रहे हो लोग क्रैम से इतने गेमों से मेरा क्रैम अरे बच गया अरे बाबू एक और अकेला भाई एनिमेशन तो क्रेजी दिख रहा है नहीं क्या फ्रंट अटैक का रेवेनेंट भी अलग ही ये अलग मारा है And Rex gets out. Now Nemesis needs to take a deep breath and saying, what can we do? Yeah, they have to catch Zoro somehow. डीसी का भी अल्टी यूज है शायद Here comes the huge unite move. Yeet fan dashing ओ away with तीजक मारा है भाई मस्त पर फिर बच गया वो खेल रहा है having to run from this fight. Zoro You actually see inteleon possibly going down right here, but a beautiful blast. इंडिया से कौन सी टीम गई है एलजी प्रो मेरा भाई लैंडी गेमिंग Here comes Zoroark one more हार गया time. पहले राउंड Picking up one, possibly looking for another. The overheat doesn't find its mark. 45 seconds left in this match, and Nemesis is just ये पसीना छूट रहा है उनका running out of options. They've not देख ना उसने क्या रिएक्शन दे बोलते दोस्तों लौड़ा लग गया ट्रैप गया दो मैच खेलना है देखो भाई किसका इसमें ट्रेनर है किसी कौन है ये लोग में से पता नहीं अरे उनकी जर्सी के पीछे सबके पीछे ट्रेनर लिखा है ऊपर क्या है जोरो का डैमेज नहीं गेसेस गाइस 1:20 1:50 1:30 तो मिनिमम लग रहा है क्रैम कार्ड वापस आ गया है क्रैम कार्ड चला गया है भाई वो कॉम्बो में नहीं लगा उसको नॉर्मल कॉम्बो में गया है वो अरे एक और किल ले लिया मैंने मरा मुबारक हो गाइस पहला किल गेम का पहला किल नहीं दूसरा किल मिल रहा भाई दूसरा किल मिल गया गेम का ये आइस का झूल रहा है भाई फॉरफिट करने ऐसे कर रहा कि सारा प्रेशर उसका था 140 तो दिया रहेगा लग रहा है मिनिमम को तो 1.5 लग रहा है पूरा काले का पूरे कैसे जाता है भाई भाई वो लीफियन का लटका रखा है फांसी लगा दी क्या उसको ये जीजी रे है ना जिस रे सबसे पहले वाला 21 KOs, get out of here. Come on. 21 किले भाई Zoroark के Now come on. 20 हाथ पहुंच रहा है भाई ये शिंगड़ी है ना हाथ पहुंच रहा है बीच वाला अच्छा बीच वाला सबसे लास्ट वाला है डिसाइड ए भाई डिसाइड कर लो बीच वाला पहले वाला लास्ट भाई सदमे में चले गया भाई काली है अरे चुमी लिया क्या इधर ये का जो कर रहा है वो शिंगड़ी है has actually been up the entire game because as they're playing comfy अरे what the fuck भाई क्या कर रहा है भाई उसकी वो मेटालिक की नींद खुल गई है उसकी नींद खुल गई है वो मेटालिक की मेटालिक फुक क्या ऐसा लग रहा है ना पता नहीं पर नींद जरूर खुल गई उसकी भाई ये मैच के बाद ऐसा कोच गेम में बोलते रहेंगे I mean, the thing with Comfey is it is one of the most powerful Pokemon in the game when it, you know, मैं डैमेज दिखा नहीं रहे यार ये लोग जल्दी वेट कर रहे हैं ब्रो वेट कर रहे हैं big moments here from game number I got you bro don't worry यूनाइटेड पे देख लेता हूं That's true. When you get 21 knockouts. टूर्नामेंट में बॉट में लग रहा है डीएम भाई ठंड रखो डीएम भाई On, we are moving. टूर्नामेंट में इंडियंस का अपना स्किल तो मैं तब मैं पहले से है ना घर बैठे टांग उठा के बजना गाइस द डैमेज वाज
inside this game. 136k from Zoro and 130k from Inteleon. Everything they could, they expended all Zoro कॉम्पी 0-24-0 है भाई स्कोर और उसका 21-24-0. भाई कॉम्पी का डैमेज कितना था? सामने वालों को लेकिन टॉप 1 टीम को और हमें सुरेश बना के मार दिया भाई स्टैट्स देख भाई कॉम्पी और जोरो के व्हाट द फक. No, I mean, if I'm Nemesis and you're not getting rid of that Zork like you said, got rid of the Comfy, you're gonna have some abilities to trap. They didn't have a cross, they didn't have a mine, they didn't have an Umbreon ये to लॉस look किसके it down. सामने भाई ये लोग And when you don't have any of those, ये जोरो हीरो लोग के सामने भी खेले ये लोग ने बट साइतर भाई अरे भाई वो सामने वाली टीम में साइतर वन ट्रिक है बंदा वो सीटीवी रेजी 195 हर गेम साइतर खेला कल से इसने broken Pokemon and enabler. You saw it there in game number 1. Nemesis डैमेज दिखाई नहीं रहे ये तो बता दिया ना बर्ड में तेरे को स्ट्रीम पर दिखाना बनता है ना क्या हो गया भाई यू वालों की कुटाई नहीं दिखा आ गया डैमेज आ गया नहीं बैटल डेटा दिखाना पड़ता है वो नहीं दिखाया बैटल डेटा का ही डैमेज है वैसे बट सबका शीनन रूडे राउडी also look at that. भाई जोरो का नए स्किन के साथ डैमेज भी बढ़ गया रहेगा ना पोकेमॉन में होता है ना नई चीज जो आती है डैमेज बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है yes less of a defensive item on Zoroark, some double stack, you know, they'll have the AEOS cookie. They had the Comfey and they had the focus band. They just had so many ways to get Levi's back. Things Oh fuck, freezer में को डाला था बर्फ हो गया Nemesis really going to need to figure something out. नहीं एक सेकंड आया भाई ड्राफ्ट होते से रुको मैं ड्राफ्ट देख के जाता हूं Nemesis is your purple team right now. We're going to go ahead and see. भाई वो जो नेमेसिस का बड़ा टीम कैप्टन है ना वो शायद नहीं हां टीम Nemesis. I was wondering. नहीं टीम कैप्टन तो पता नहीं That's exactly हां what I राइट was going to say. Let's see where Metallic's Pokemon मुंह उतर चुके हैं once सबके the blaziken is not an option. Ban phase going. खुद की टीम को ही बाहर करके आ रहे हैं और मुंह उतर रहे हैं Not pick anything. Okay, certainly something's up. Oh, The ban phase is back and forth here. Guys, वो 15 मिनट का बॉल वैल्यू बहुत महंगा पड़ने वाला था to go over the top and say we're not banning anything. रेक्स का कैप्टन नाम थोड़ी पता है नाम थोड़ी पता है शक्ल थोड़ी पता नाम से To just say whatever, play whatever you want. Did you see that last game? We don't need to ban anything. I think we're doing just fine. कुछ तो बेटी हुआ रीस्टार्ट हो रहा है ड्राफ्ट शायद यहाँ पर रिज्यूम होगा आई थिंक रीस्टार्ट ही होगा क्योंकि ड्राफ्ट तो पॉज नहीं होता एक सेकंड आया But I mean, with how that game went, you can really say that played through. मैं तब आ जाऊं पकड़ने सपोर्ट के लिए That was pretty tough. For Nemesis to come back from this, it would be extremely impressive because that was one of those. You can see it on their faces. That was. भाई शक्ल तो उतर गई है भाई. Yeah, unfortunately, I think the issue really was just, I mean, it was a draft screen differential, and then, you know, you had no way to Switcher खेलेगा अभी ट्रेनर एलजी से मैच तो नहीं चलने वाला है लोग के सामने समझ गया रहेगा इतने चुपते तो नहीं रहेंगे. It's just tough. Like, they didn't invade, they didn't do anything to try and slow it down, and, you know, if you notice, they actually gave up a lot of just, you know, the birds in the middle. The 8-minute birds were free to Xing Di. I saw you long ago. So that much experience and that much time, like of course they're going to take over. Yeah, I like that we get to लौड़ा लग गया है see उसके दिमाग में that they're doing while they're waiting for this. They've got some Rhydon, they've got Mewtwo, we've got Zacian on the other side. It's ये आइस किधर में किधर भूल जाता है भाई कम भूल जाता है भाई play. All right, let him out. Nerf him a bit. Let him out. Let him out. But nerf him, but let him out. Let him out. Hey, it's nerf or nothing. Hey, but let him out. You know what? It is nerf or nothing. Let him out. I want to see these EX Pokemon as our players are getting ready here for game number 2. This is such an important game for Nemesis. Obviously, they want to win this series. It's hard to bounce back from a loss like that. We've seen great teams do it. We've seen great teams have those moments. Yeah, absolutely. And, you know, I think Nemesis is the energy that we saw them have, you know, yesterday when they got to be on stage. एशियन टीम ही जीतनी चाहिए भाई टूर्नामेंट मजा आएगा पेंशन Not feeling the pressure of the moment. नहीं भाई आइस बढ़वा नहीं दिखना चाहिए काफी चल energy, you know, Rex stabilized that second game yesterday, just ये वो लोग into their favorite stuff, having a good time. देख भाई ये लोग नहीं हरा सकते एशियन टीम को नेमेसिस को मुझे नहीं लग रहा कोई और हरा रहा है. Yeah, it's a बट लूजर ब्रैकेट में थोड़ा मच्छी मार्केट का हो गया ना फॉर्मेट की वजह से टूर्नामेंट भी नाउंस वर्सेस ये भी तो है केस नाउंस वर्सेस केस I do feel like that was just the Comfey diff
That was just, you know, they didn't expect that they were running into sort of that, you know, speedster with the support that you can't stop. Asian players mobile पे खेलते हैं ना maximum I guess. Even in a पर जो देते हैं वो स्विच वाले लग रहे हैं. चीन एंड रूडो में तो सब लोग ही है मोबाइल प्लेयर शायद. काबीचान में शायद एक ही मोबाइल प्लेयर है ना? कि एक भी नहीं है. SAR वर्सेस काबीचान में कौन जीतेगा? SAR ने एक बार तो दिया है काबीचान पे टूर्नामेंट में तो 1 fired at Shingdi and they left with what, a third of their HP. You know, Ice hopped off and was able to, you know, eat some of those attacks themselves. Overload ग्राउंड में बैठ के ताली मारता रहेगा कि शिंगड़ी भाई ऐसा ही होता रहेगा. Incredible stuff right there. एक कौन है भाई क्यूटी? Oh no! Don't you aim him towards Nemesis, you. भाई शिंगड़ी बोल दिया उसने इसको. ये शिंगड़ी थोड़ी ना है. रेसिस्ट पड़े हुए हैं उसने. He's being. Holster your fingers. Holster your fingers. Holster the fingers. And he did have the grips on, you know, for his mobile device. Well, sure, and the firearms, literally a firearm. Get it? That's where that comes from. Has to. क्या भाई? पहले चालू करके रखना है क्या कैसी? Here we have here again winners finals. Fusion, Rework, Respawn. LatAm doing great in this tournament. भाई विनर फाइनल के नीचे नाम देख के here in the losers round 2. weird लग रहा था. Everything in this losers bracket means the team that loses. Pokemon Unite, anything can happen. This motherfucking game. Right now, अच्छा GT भी क्वालीफाई नहीं थी क्या? थम्स अप तो दे दिया. हाँ GT उधर ग्रुप स्टेज में हार गई. Guys, I have screamed 6:30 onwards. तो मैं तुम्हारा साथ उधर तक हुआ I guess. क्या टाइम हो गया? अभी तो टाइम है. 4:30 है. अपर फाइनल तक तो देखने मिल जाएगा. And if their draft is staying true to what they drummed up, right, when they locked in the blaziken, I'd be surprised if they weren't going to go back to that selection. Okay, Crowley, bye. I just want to see where Metallic goes. अच्छा तू ये क्या बड़वा? अरे मैच देखो भाई क्या करोगे स्क्रिम के लिए भाई +1 भाई. अरे वही ना साइड कैंसिल करा भाई स्क्रीम. उसका बॉल मर गया है झारखंड. अरे डिले करो ना मैच देखो पिक देखो चालू करो नहीं पिक से. तू बोल भाई. झारखंड में ना बोलते ना पौधा गिर गया तेरे ये के ऊपर खेल नहीं सकता कुछ तो बोलते भाई. Here we go. Trevenant. चश्मा पर लगा लिया है. डार्क टिंट वाला ग्लास. ये भाई जोरो कुछ बैन नहीं करा. ये जोरो वापस बैन नहीं करा इन्होंने. अरे स्विचर खेलेंगे लोग जोरो के साथ में नहीं खेलेंगे उतना ही करना है खाली. बैन करने का जरूरत नहीं. And they could, yes, trainer on the leaf. Hey, ना trainer LGC का Pokemon. Razor Leaf वाला. Rarely picked. मैं Radiant पे item देख जरा कुछ तो वाइल्ड दिख रहा है. There's no way they're bringing green now. I mean, I would love it, but it just seems so unlikely. Just I was gonna say interesting pivot here, but they switched up and Akura grabbing the Crustle again. मेरे को कोई इतना बता दो BKC खुद से गेम छोड़ के गए कि ये लोग जानबूझ के विकेट डाली उसकी सोलो के लिए. ये जानना है बस मुझे. Yeah, we're gonna see what we करना पड़ेगा पता. Watching कितने आ रहे मतलब तेरे? 32. 50 आ रही है भाई इधर भी खाली. आज लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है बॉयज Pokemon देखने. Looks like we're gonna be locking in the Eldegoss. Shingdi right now, they're deciding once again. Nope, they're going for it. Zoroark comes again. I almost want to grab the Umbreon here and go straight mean look and see what you can convert on them from that point. Okay, they're going. Sarina तो नहीं लेना चाहिए. Sarina. Whoa. So we've got a couple options here. मुझे लेन की विकेट लग रही है. We have the slow beam, which will shut down the Zoroark, hopefully long enough so that they can KO it. ग्लोबरो तो लिया है. ड्राफ्ट लेट गेम तक पहुंच गए थे लोग का भी अच्छा ही है ना. What you're essentially doing again. लेट गेम तक पहुंचा तो 400-500 पॉइंट्स यूजर के वहां खड़े बना रहेगा तो नहीं पता भाई. As you take them up into the air with Zarina, the combination of these two unite moves. चिंगड़ी ने बोला रिटायर हो गया बट अंदर का सीन नहीं पता. एचओके खेलने क्या रहेगा आई गेस. We're gonna have to figure it out. It sounds like a refreshing drink. I'll have a Shingdi and Ice. Yeah, Shingdi and Ice serve me up twice. Come on. शायद खेलने जा सकते हैं. Again. जोरो के लिए लिया होगा सरीना. टीजी फॉर्च्यून भाई माफ कर दो भाई हमारा अल्ट्रा वाला दिमाग से मेरे को. क्या करता है रे सरीना जोरो को हम को बढ़वे जरा बताना मुझे. अल्टी मारते शायद. उसका स्टॉप कैंसिल हो जाए वो नाइट डैश में. ये शैडो ग्लव में सॉरी. बचपन में मारा नहीं ना माँ बाप ने तेरे को. बचपन ही तो चल रहा है. एक्चुअली वही है.
We have our players. भाई माँ बाप ने नहीं मारा तो आजा भाई एड्रेस देता हूँ. Not surprising. आदि का. There's a gold badge on that Zoroark. HLK में रैंक क्या है सर आपका? प्लैटो मेरा भाई. Plat 1. Less impressive. Green badge on ice. Plat 1, Diamond 4 ऐसे कुछ है. Game up, buddy. Come on, you need a gold badge on that thing as we get ready अरे आज for game मास्टर हो number जाएगा. 2. अरे अबे आज रात को मास्टर हो जाएगा. One game right now. Diamond 2 तक तो हो जाएगा. Forward in this tournament. Nemesis, your purple team. Shin and Rude, your orange team. It all comes down to this for Nemesis. They have to win. मटका गेम. Will it have esports team? पता लगाइए. 3 महीने में ड्रैगन बॉल टीम है. Try and slow the Zoroark, even though the Comfy is there. If you can disrupt and just. Is this one ADC player or tank player? Rex going straight across is actually a little too late to do anything to distract there. But आशिकी तो क्या खेलने वाला है? ADC खेलेगा ना आशिकी तो. Ice chasing this down right here with that red buff. It's going to be very annoying. देखना पड़ेगा. Chansey to get out of वो here. बोला खेलेगा तो खेलना है. They should do just fine as we actually have Trainer jumping into that central मैंने area. उस They गेम are तो देखा है diving Indian towards that tournament का. Zoroark with the Leafeon right now. Seeing if हंसता they रहा can steal देख something away. नहीं नहीं अच्छा निकलते. They are able to take that blue buff. नॉर्मल है बहुत गेम. नाइक्रो एक इतना स्ट्रांग नहीं है. और ब्राजील वाला गेम देखा था ना, एक बार भी बफ इनबेड होता है ना उसका, सांस लेने नहीं देते हम लोग उसको. उसके बाद मेज और सपोर्ट कंटीन्यूअस पुश करके जोन करते रहते, जंगल रख लेते रहता है बफ. ब्राजील में इतना अच्छा नहीं खेलते. चाइनीज वाले अच्छा खेलते. तो देखा ही ना मैंने चाइनीज गेम. बट तेरे को पता है क्या, तो जंगल इन्वाइट करते हैं ना अर्ली गेम 3-4 मिनट के आसपास, एक बफ रहता है जंगल के अंदर. तू नॉन स्माइट वाला हीरो रहेगा तो डैमेज लेस डील करता है. ये पता ही नहीं था. अर्ली गेम 4 या 5 मिनट तक होता है, मतलब जब तक फान टाइमिंग होता रहता है ना. मैं श्योर नहीं हूँ, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे ही कुछ है. कुछ तो है डैमेज रिडक्शन. Do any damage right here? Completely different look. अरे ब्राजील वाले लोग एडीसी लेके आपके फार्मिंग करते हैं. चाइनीज वाले एडीसी लेके भी रोम करके मारते हैं. समझ करते बट एएफके फार्मिंग का कांसेप्ट समझा ही नहीं मुझे गेम में, क्योंकि लेन का फार्म तो बहुत स्लो आता है ना. एक बार बेस क्लियर कर दिया तो भाई लोग अच्छा इसका बेस. Yeah, they do pick up that knockout. Obviously, Rex knew that. पहले से तो बेटर ही जा रहा है. As much time as possible. अरे भाई in the central area. आंसर्स तो है जोरो कॉम्प्लिकेट है लोग के पास, मतलब एकदम अपाइज गेम तो नहीं है. We're going to see what they पिछले गेम में बस पता लग गया ना. स्लोब्रो है, लिफियन है, मार सकते हैं लिफियन भी. By the Zoroark, the eject button to try to get out of there. The auto attacks barely able to make it. 1 HP in a dream. Fine, I guess I'll flip on to A nice little surf through, but they're keeping the pressure on. Now everybody's engaging on Nemesis. They want the Arey, almost. No, the slow smoke creates the separation. Everybody getting lost in that sauce. What a beautiful slow smoke right there. It just feels like they have given Shingdi so many options to get away from these. किधर घूम रहा है भाई दोस्तों? किधर घूम रहा है भाई? Of Nemesis, all converging on this player. Not even as over leveled. वापस भाग हो गया देख राइट वाला स्क्रीन. जोरो बड़ा हो गया बट छोटू दिख रहा है. Zoroark stashes the illusion. ट्रॉफी खेल रहा है, क्या खेल रहा है? The slow smoke, the combo shield. There's just so many options. Shingdi waiting in pocket, goes straight with engagement. Espeon Unite is out, takes Nemesis वाले लॉस एक्सेप्ट कर लिए. कितने हो गए गाड़ी? going on up there for me to go back in. I'm going to chill out for a second. जोरो की आंख नहीं खुली ना गेम में? Nope. On the side of Nemesis, they're there to stop Zoroark. बोला ना मैं स्विचर खेलने वाला हूँ खाली. जोरो बैन करके आंसर नहीं है उसका. फ्री गेम था ना जोरो के लिए. 3 फ्री किल्स थे उसके पास वो गेम में. Used to stop this one Pokemon, and after last game, yeah, I get it. ये रेड कभी मिला नहीं है लगता. And literally everything under the sun to throw. भाई डीवाई पाटिल बन रहा है दोस्तों पर. Drink that's been serving them up all day long. नहीं बन रहा. स्मार्ट खेला लो. Incredible stuff right there. Served ice cold, but that's what Nemesis is looking to do, is get that revenge. ये जंगल से जो जा रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है. ये दो का गोल मारना जरूरी तो नहीं था ना ऊपर. जा सकते थे नीचे. और यहाँ पे ये जंगल में फंसने वाले हैं जो कर रहे हैं. Eject भी use. सरीना ना हो जाएगा तो जीतेंगे फाइटर. क्या ही किया पता नहीं. पता है वो आ रहे हैं फिर भी फाइट. ये तो हक दिया भाई. फ्री लेवल दे दिया. That slow bro in hand.
Beautiful stuff right there. They do break this goal zone. Serena looking to make something happen. Actually sends the Mew up into the air. Might not have been the target, but they are. Here's the Bliss assist. Mame. They're looking for something. Mame क्या इतना आदमी उसमें? The Comfy is broken off. Ice is in trouble. Ice. Comfy पकड़ दी. They continue the chase. Now Blaster penalty थोड़ा सा. Right back with the combo of their own. They're gonna pull back. Fight करके मारेंगे? नहीं मारेंगे. देख तो देखना पड़ेगा. They are moving back towards the side of Nemesis. नहीं फंस गया. इज्जत तो दिया शिंगड़ी ने उधर. They like to fight and they're taking one with a big old bully on the yard. They actually eliminated Ice, but they couldn't sort out Shingdi, and then the rest of the team solo Akura. Shingdi ने Shingdi बोल रहा है उसको. Shingdi. Do some work while Indian accent थोड़ी ना भाई वो लोग है Shingdi है ना. It really does feel like this Zoroark right here is like they must be streaming this game, and it is Ignite the streamer time because this is what is happening every moment they see this Zoroark, and I do not blame them one bit. If they can shut this thing down, like you said, a little bit of BOGO action, 2-for-1 KOs right there, and honestly they would shut down the entire team if they lose that Nemesis के लिए along with the छोड़ दिया. Getting great support out of the other three players. Z-Ray, Solo, and Akura, I mentioned, they've been setting up Reset हो रहा है ऊपर से I think. Macro diff तो दे दिया शायद. कुछ तो नहीं हो रहा है. ये भाई इतना आगे आके reset कैसे नहीं हो रहा वो? पता नहीं भाई मेरा तो हो जाता था अभी तक reset. Guys, Mew का level थोड़ा slow लग रहा है थोड़ा. Fight नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है अटकने वाला है level Mew का. S20 इतना ही अप्रोक्स चलता है. दे रखा है दे दिया. ये हगरे लोग. इसका रेजर लिफ्ट मिस हो गया था भाई 1 सेकंड के लिए गाड़ी पड़ गई मेरी. एक गेम 3 लेके चल. ब्लास्टर्स कार्ड मिस हो गया वो स्कोर में चले गए. पकड़ इसको. भाई इनका बस वो ये सारी ये एस्पियन सारी क्या खेल रही है भाई एकदम एग्रेसिव झपाझप कूदे के बादशाह भाई भी ऐसे ही खेलते हैं यार ऐसा भी बोल रहा है. वो तो स्लोबर के मुंह पे जाता है. एग्रेसिव प्लेयर बादशाह द डिस्ट्रॉयर अरे उतना एग्रेसिव पूरा एग्रेसिव नहीं हो रहा था ना इसलिए मैं अटैकर खेल रहा हूँ. देखा ना मेरा अटैकर भाई क्या खेल रहा है भाई प्लेसी सरीना ईगो और वो लग ओए ओ नेपाली विष्णु चैटर्जी option for Unite. You know, this is the last gas भाई मेरे को आगे का लिरिक्स नहीं आता था मैं तब तक गा रहा था मार रहा था भाई लिल नास एक्स. फिर पकड़ दिया और कैंसिल करा दिया. आगे इस बैक देख गाना गा रहा था मैं मार रहा भाई. no nothing now just no माइक हो गया भाई. भाई घर पे आके मारेंगे बच्चे बाहर वाले प्लेयर हम लोग. इधर तो तीनों प्लेयर बैन ना हो जाए भाई लवड़े लग जाएंगे. अरे ऑल मैट का स्ट्रीम देखता रहेगा मालूम पड़ा भाई. ये भाई ट्विच पे नहीं कर रहा है ना स्ट्रीम मेरा भाई. आज नहीं कर रहा. अरे नीचे गोल हो रहा है. सैड छोटा ही. नेमेसिस की तो चूक गए बट आईपीएल में क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं. मैच हो जाए आईपीएल. इसका मैच है भाई. मुझे भी नहीं. अरे आईपीएल कौन देखता है भाई. ये देखो भाई चिंगड़ी. Yeah, I mean, you could actually see that Nemesis is starting off there, but Rex was just sitting in the tall grass waiting for Shingdi. Here we go. We're going to see how they want to take this fight. अरे तुम आरसीबी वाले फैंस इतना अंधे भक्त हो रोज चुटती है तुम्हारी टीम. सॉरी भाई. फिर भी आरसीबी करते रहते हो. लीटर 14 लेवल है भाई. बाप रे. इजी फाइट में है वो फ्री गेम. We have members of SAR scoring in the top hat. That's Shingdi and Ice putting the points. ये सरीना लो ना हो जाए भाई फालतू का. RCB versus Alt cancel. Knight is out. Shingdi's looking for an opportunity, but pushing forward is LGC. Shingdi collapses on top of him. They got the Z-Ray support, forcing out the Zoroark Unite move. Plus assistance just in team fight तो better है. दे दिया. They're keeping the pressure on, and now Ice is on the chopping. दे दिया. इसको मार पड़ देखो रंडी बाज. कॉम्पी खेलेगा. भाई मस्त काम खेलना है ऑफिशियल के. और सरीना का डब्बी भी है. मैं क्रसल लेकर गया तो दादी का है पहले गेम जीतने के बाद ना. एक मैच बचा था. उछल कूद करना है भाई. वो नेमेसिस वाला उछल कूद नहीं कर रहा है. पता है उसको पता है कौन. चैट क्या लगता है कौन जीत रहा है.
नेमेसिस ने सही में ईगो पे ले लिया भाई. God they remain. टॉप 1 आने की टीम है भाई, टॉप सीड. And they should be able to get it, wasting as much time as possible. Only 35 seconds left, and they need to run to score right here. They are running. They're going to decide what goals are खेला है going भाई to pick up सरीना as ने much पर. chaos energy as they can. मानना They are पड़ेगा. not out of this game, but it is very, चेक very करो भाई साइड नीचे से माँ में तो नहीं पकड़ के बैठा कुछ. looking for that massive back cap. मामे की If गोटी Rex is able पकड़ to के get this झूल right रहे here, I थे. don't think there's enough scoring that can happen मामे on की the गोटी side सिकुड़ of गई है भाई. सिकुड़ गई है. रौडे के लौड़े लग. मुझे लग रहा है गोटी थोड़ी बहुत बरकरार थी जब से इंडिया से आ रहे तब से पूरी सिकुड़ चुकी है. 3 टूर्नामेंट I will win tomorrow I will. I will do it. I will do this. That. 14 कल चिल्लाना ज़्यादा. इंडी खुद को ओवरलॉर्ड समझ रहा है, जोरो को हमसे खेलना है. भाई इंडी लोग तो मोह मस्ती है भाई. ऐसे यार ये ओजी नॉट बॉल तो वही है ना, बोल रहा था ऑलमाइट बड़वा बसबॉल खेलेगा 18 के डैमेज. अरे याद आ गया भाई. ले भाई वोट ले तो. भाई जिसको बोल रहे थे फूक क्या है उसने फूक दिया भाई. वही मेटालिक है, वही सरीना है. पता है. I mean, Giga Brain plays out of Oh, that दिखा रहे थे. पप्पी दे, अभी पप्पी दे. माता ने चुप पप्पी दे रहा था. The biggest bait of the century. They win that game. And game here they set it up perfect. Who will win? Never know. Thought that the Zorak Comfy going back to that well was going to be safe water to drink, but it's a trap. नीलाश का गाना जीता देगा भाई. ओल्ड टाउन रोड गाएंगे नेक्स्ट टाइम. लिरिक्स देख के रखो. मैं भी खोल के रखता हूं पीसी पे. देखो कॉपीराइट है तुम्हारे चैनल पे भेज दूंगा किसी को. अरे हम लोग के गाने से कॉपीराइट थोड़ी आएगा. हम लोग निकल के. अरे इसकी आवाज इतनी अच्छी है भाई. सोल की क्या बात कर रहे हो? हम लोग नीलाश से क्या लौड़े. एक सेकंड का कॉल आ रहा है. दिल चाटू. Shut down this combination. Nice fight here from Shin and Rude as they're going to continue pushing towards this. ऑलमाइट मारते रहेगा बट हम लोग हो जाएंगे ना. You could see the plan come together. It was a little बस तेरा ना तड़ पावे. ये क्या गा रहे हो? क्या हो गया? अरे तुनक गाएंगे भाई. ऑलमाइट खेलते रहेगा. तुनक. And they were able to get it done. Yeah, they were. As we can see, pushing गले पे को कटक क्या भाई. attempted defense here. जमा होगा तो सही है भाई. ये हमको कॉम्पी और भाई क्या चाहिए है भाई तुम लोग का. Fraggles, but to watch all weekend long, and every time we've seen them, they've stepped up in these late stage moments. Whether it's this arena, they're finding their targets, they're doing their job, they're executing their role, and they're winning games. हेलो मिस्टर जसोवर, आज पहुंचा रहे हो ना भाई? हाँ भाई. आज पहुंचा रहे हो ना? हाँ आज खेलेंगे ना भाई. आज स्क्रिप्ट नहीं है. बट मेरा तो है. अरे कैंसिल हो गया है. Nemesis versus Shin and Rude. I'll tell अरे you where. ऐसे ऑलमाइट भाई ऐसे ही खेलते हैं भाई फन के लिए. स्क्रिप्ट पता है कौन जाने वाला है. तुम्हारे बंदे ने बोला कैंसिल हो गया है. Team composition on the side of Nemesis look like a counter for this Pokemon. They can just simply walk away from it. Taking a look at the player of the game, we had भाई बहुत ऊपर हो गया. There's that sword power. आराम से करो ले भाई. जिंदा रहना है. Good into so many nightmare for something like Dodrio to deal with, and you see it right there. They are able to dance around a Pokemon like Zoroark with that shuriken move. But what's critical about that Espeon is its Psychic Solaire, lifting everyone up with that big pulse of damage. And of course, Slow Beam, Psychic Solaire, the Zeranian Queen something. Queen Scissor Kick to the sky. लिखो भाई. सब पंजाबी में लिखा है. कैसे पढ़ना है भाई? And that was specifically dialed in for Shingy.
What the fuck? भाई लिल नास एक्स के तो उपयोग पे गाने थे कोई This is massive. One of these teams will continue on in the AEOS Cup. One of these teams Star are walking heading है ना? home. We can see our Star banners walking right है। here. We have Mimikyu हाँ, and वो गाना Espeon. पड़ेगा लग Obviously, रहा है। they do not want to deal with Yeats Espeon again. We have the Buzzwole and we have the Leafeon here. First pick. अरे भाई 10 इसमें तो सेकंड नंगा रहता है भाई। Taking that blaziken and then they are stealing away that crustal as well. First opportunity. ये losers bracket है ना? Selected the crustal. Yeah. भाई विनर ब्रैकेट में नाम पढ़ भाई दो टीम के लूफी देखा देखा रीवॉक रिस्पॉन्स जीत मैं तो बोला 11 मैंने कल ही बोला जिसल को विराट कोहली इज गेटिंग टू नॉक टू We have Z-Ray on the inteleon. रिवर्क रिस्पॉन्स जीत जाएगी सिंधी से कल ही बोला प्रेडिक्शन टाइम विद मिस्टर कावली बड़ी माय प्रेडिक्शन इज आदि की मां आज नहीं आएगी मेरे घर पे अबे ओ उठा लिया भाई जोरों सीधा उसने ब्लॉक पिक ट्रेनर एलजीसी दिखाने वाला है कि आज लौड़े को जरूरत भाई चिल्ला रहे हैं भाई वो रेक्स वो साइड घूम गए I don't like how you covered my face. I don't ever do that to you. Come on, what are you doing? This is भाई वो पहला वाला प्लेयर फुल तावल है उसको लान खेलने का मजा ले रहा है वो We've actually seen it. अरे भाई क्या है तुम्हारा क्रैमरन से रिश्ता इनसे पंगा नहीं रह गया Back to Cramoran. Thoughts? ये फैन है ये तो ये का विनर आउट भाई इस बार तो सार का ड्राफ्ट अच्छा है for Nemesis. So you can't really say it was the Cram. Like, no, it was. ये जीरे कैसे स्नाइप्स मार रहा था भाई मैग्नेट की तरह So चिपक we're रहा gonna have था to see what game पहला number गेम बहुत मारा है 3 भाई looks like. As इससे मतलब मैग्नेट की तरह चिपक रहे are the एकदम kind of team that will go all the way through this losers bracket up to the grand finals. I हो गया cannot मुंह wait उतर to गया see बाजू who वालों का wins. भी This match is so important. For me, I'm just taking a quick look at these comps here, Spraggles, and Z-Ray with the range of this snipe shot, you know, also building up range with Mew in game 2. अरे बट ये तो बता ट्रेनर एलजीसी कौन है पांचों में To adjust with that. वो वाला है मेरे को बताऊंगा वो सबसे राइट टॉप में are going to be in their face. They're going to be pressuring them from कल्लू रेक्स है ये जो मोटू वाला मोटा मोटा मतलब वो मेटालिक है ऑफलाइनर कल्लू मेटालिक मेटालिक हाँ कल्लू मेटालिक है वही तो बोल रहा हूँ और फिर फर्स्ट वाला जो बड़े कैमरा में है वो रेक्स है हाँ। और बाकी एक छोटा बच्चे जैसा दिखता है ये फैन है और एक और प्लेयर बचा हुआ है ये ट्रेनर एलजीसी जो दिखा देता ट्रेनर ने तो सबसे पहले स्टार्ट किया था ना फ्लॉप बेटा खेलना You have the opportunity to eject button, you have the opportunity to dash, but Zoroark can keep right भाई with इसने the तो तुम्हारा audience there. Getting ready for टाइप game का वो किया है number 3. हेयर कट And here it is, Shin and Rude, your ट्रेनर purple एलजीसी team, Nemesis, your orange team. Game 3, थोड़ा बहुत everything is on the मतलब line for these बाल two बड़ा teams. रखा थोड़ा हाँ मुच्ची उच्ची थोड़ा Fan and Asinable taken to the bottom path. ये रेक्स मस्त वाइब वाला आदमी है लेकिन फुल चिल्लम चिल्ले ब्लिसी खेल के कर रहा है भाई चिल्लम चिल्ले देते हैं मार दर चोट को अरे बहुत टॉपी खेला अर्ली गेम इसमें तो पूरा जोराक का गैंग क्वेश करा दिया दो टाइम गेम मन के बाद ही बोला मैंने दोनों गेम स्पिट से खेलने वाला ट्रेनर एलजीसी देखते हैं कैसा खेलता है Eldegoss has been phenomenal. Ice has been playing. जोरो खेलते देखा तो नहीं मैंने कभी इसको या इनफ मैचेस नहीं देखे हैं कि मैंने मेरे आंखों के सामने इसको लीशन के अलावा देखा ही नहीं कुछ जिंदगी में खेलते हुए मैंने Almost always defers to this Shindi with the K opener for SA. ये लोग का ये वाला गैंग हमेशा काम करता है एसआर वालों का नोटिस किया किसी ने नीचे वाले लेन वाला They're going to be able to take away from Nemesis all of it on भाई वो वाले लेन में अच्छा stacking up. ये रेक्स रजत दलाल लग रहा है विदाउट बियर्ड This is so bad for Nemesis. विदाउट बॉडी भी Yeah, but we do have trainer LGC on the Zoroark with terrific combo. Lil Nash X Star Hammer's got a little bit of a stun, ripping right नहीं गलत लेन में नहीं गया through जोरो solo. इधर तो Is नहीं मार पाएगा LGC, but now the pressure is on because that's just what Eldegoss does. It's there and it's very Shindi bhai is coming to invade and Zoro is half HP. What will happen? वुड हैमर नानी फुल एचपी हाँ टॉप वाला वुड हैमर ही खेल रहा है हाँ वुड हैमर फेस स्प्लिट खेल रहा है ये तो स्लो स्लो खेल रहा है ये तो मेरा जोरो है अरे भाई 7 लेवल के बाद मारते फास्ट फास्ट उसके पहले सीसी थोड़ी ना होता Chef said yesterday, it's like yes, it brought ब्लेमर हो भाई मैं तब भाई तुम तो अरे मेरा जोरो दिखा मैंने बोल दिया range on it, and then you can lay that क्या down, भाई एक बार follow LG up को for मार दे damage, पता है or भाई just क्या cause enough damage to अरे go ये back out मैं तब भाई तो एनएस प्लेयर है ना Ever since we saw those, nice little scissor scyther buffs, we've seen a lot more of both of these Pokemon here. And there you go, picking up another KO. भाई की तो आँख Solve खुल the गई है Zoroark वापस problem, but are they going to be able to solve the भाई ये second स्किन वाला जोरो गेम जीत गया था आई डोंट नो गाइस just desperately कौन सी स्किन है भाई नई स्किन है क्या भाई पहली बार देख रहा हूं मैं ग्रीन
कलर खुद का पहली बार देख रहा हूँ अरे भाई ये कौन सी स्किन है गाइस व्हाट द फक is looking good early stage of this game. I believe that's solo for भाई सामने बैटल पास नहीं रहेगा प्रेशर गेम वाला जोराक ये तो देखा नहीं इज इट माय गॉड बाय कट लिया क्या They now do have Inteleon in this bottom path. Things are not going well for Nemesis. They're going to need to pick up some KOs, but we already have a level 9 on that side. साइतर का तो बटन खुला हुआ है गाइस शिंगडी का शिंगडी शिंगड़ी ने डी दे दिया है ऑलरेडी आराम से अरे 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 भाई 2 दिन पीछे हो भाई इनका ग्रीन वर्जन आया था वो होगा वो मैं तब क्या चल रहा है टाइमिंग तेरा 658 57 अरे ज्यादा 2x कर दे तो स्टटर हो रहा है स्ट्रीम इसके लिए कैसे चल रहा है चलने दे रहा मैंने 2x नहीं किया तो तुम लोग के पीछे चल रहा था आगे चिंगड़ी भाई नीचे भी मैं क्या अकेला रुका देखा मैं ब्लास्टर्स ने पुश 7 मिनट पे 7 लेवल का जोड़ा ये तो सोलो लेने वाला ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है भाई इन लोग को क्रैम की अल्टी जोरो का अल्टी क्यों नहीं आया अभी तक Well, Rock Tomb tried to bubble the match. Now with Cram United sitting right on the pad. Actually, आएगा भाई ये फाइट तो होल्ड हो जाएगा लग रहा है क्रैम वाली टीम कि नहीं अरे क्या पड़ी है भाई इसने little soft-boiled action. Now Azumarill on the run, but that's the भाई इतना जोश में गया ब्लेजिकन मुझे लगा 30 ना बनने वाला है भाई एक का गोल दबाया रे बड़े this goal zone they're starting to score. On top of Akura is LGC, but his carries took a 2 for Hoopa Chingdi as the Trevin score is cursed. They are following up and they are knocking them down. ले गया लेवल ले गया Nemesis, and now Azumarill थोड़ा रुका देख रसल स्कोर but I think it's a little too late. Yeah, trying to pull up and make Hammer or pin split in this bottom path. And I mean, game number 3 between these two teams, it's like सीसी ने ना टीम में इसके लिए खेल रहा है ना ब्लैस्ट तो ही से भाई अकेला है ना लेकिन रिलायबल तो नहीं है ना जोरो के सामने काइंड ऑफ सीसी चाहिए था तो ऑनली खेल लेता था भाई हां game number 1 and that's what's happening here for Shin and Rude. They क्या are रहेगा और right now. थॉट प्रोसेस लेकिन ये दोनों लेने का Get shut down on this Scyther. We're going to have to see if there's anything Nemesis can do. They पता रहेगा experience right here and they need to find a big KO on this Pokemon. They need to get Yeet involved. I feel like Yeet has not been involved in game 1 or game 3. उसका भी ट्रेवनेंट जाता रहेगा इंडियन ट्रेवनेंट जैसा सॉरी कुर्सी जा रहा हूं मैं अंदर पाकिस्तान में चला जाता रहेगा हैमर के साथ इज्जत से खेलता रहेगा टीम के साथ I feel like we haven't had much of those moments. Yeah, Cramorant's a really interesting Pokemon because it is able to put a lot of pressure all over the map. It's got great mobility with dive. साइतर का लीड लेवल तो इक्वल हो गया वैसे मतलब काइंड ऑफ engagements, right? Because it's able to किल मिला ना तीनों कोर का किल मिल गया but at the same time you often don't feel its impact as much as ब्लेजिकन हो जाएगा 12 शायद बहुत कम अब तक Rex quickly getting repositioned. कुछ हो ही नहीं रहा है ट्रेवनेंट Mark 440 and now they're pushing on top of LGC and it's just so much pressure when SAR इल्यूजन अच्छा लगा भाई the pain split gets the KO there. We're forcing out the Inteleon. Snipe shots are lined up. हवा चालू लग रहा है बहुत स्कोर में गया बस कार्ड ये तो नहीं बच रहा आ गया तो अरे भाई क्या स्नाइप मारा है their mark and just enough for SAR to get out. That was such a crazy fight right there because नीचे दोनों डिफेंडर का चालू है चिलिंग अरे अपनी टीम लड़ रही है अरे मेरी टीम जीत रही है तुम आशुदा लोग आपस में देख रहे हैं really fantastic stuff as they just had an amazing brawl there in the top path heading down to see if they do something. ये थोड़ा जवानी का जोश वाला फ्लिप नहीं चालू है नीचे a blaziken near an objective. Things could नहीं आ रही टीम नहीं आ रही They're just going to have to जल्दी इल्यूजन दबा लिया here comes the Bliss. भाई ब्रिसियड लगाना पड़ा भाई They get it. Bliss assistance secured. Last time, okay. There we go. Now they're putting the pressure on. I mean, back to rally is down. Metallic 0 damage है भाई ट्रिप पे doesn't hit their target, which means they can put the pressure on, and Z-Ray puts one right between the eyes. भाई जोरो तो आते स्टन हुआ Forward right here. Here comes the Zork looking to pick मार up देगा but not able to make it अरे happen. Inteleon is fine. The Trevenant doesn't. एक तो ये स्किन वाला जोरो जीतता नहीं है D is here pushing forward. Nice little crush to Unite. See if they can get a stun on it, possibly pick up a KO, but it looks like they're going to make it out. I know that we've talked a lot about Ice and Shindy, but again, Akura solo and this game especially Z-Ray have really stepped up. They're like a 3. मिली रोज जो लोग तोड़ नहीं सकते अच्छा है ना with the Trevenant, हैमर का and then it's just snipe shot, रिडक्शन ब्रोकन है क्या डैमेज रिडक्शन है क्या हैमर में time Shindy actually showed up, all he had to do was press a couple buttons and lock डेव up the फुट last बोल रहा तो पता ही रहेगा बेंच Stuff from Shinrude right there, just stealing away a buff, stealing नानी experience. डैमेज रिडक्शन सुना तो नहीं बनेगा अभी है क्या
क्या ना नहीं है, रुको देखने दो वापस। बढ़ता तो होगा। हैमर प्लस का डैमेज रिडक्शन प्लस में प्लस हो रखा है। अभी हुआ शायद, हाँ अभी हुआ। वेट नहीं 11 पे होता है ना तो प्लस। Wow. Big win player for at least keeping up in this level race right there behind. भाई BCBC है भाई, मटका करो बाहर भेजो SR को फटफट। Unfortunately they can't quite push into their side of the map. नहीं भाई which is एशियन टीम exactly की what they're trying to do. Yeah, they were trying to grab right there. We have 2 minutes 15 seconds. So अरे काफी चंद देगा ना भाई। ट्विटर पे मसाला मिलेगा। one of these teams will see in this tournament. अरे It's all coming down to this. We're looking for एक गोरा टीम तो कंफर्म है ही ना फाइनल में। snipe shot onto the crossbow right there. Nemesis लैटिन अमेरिका और ब्राजील है ना ऊपर way up. Nemesis is going to have to get ब्राजील नहीं है, लैटिन अमेरिका साउथ और लैटिन अमेरिका नॉर्थ से। दोनों लैटिन अमेरिका के न्यू पोकेमॉन रीजन गाइस। क्या चालू है इतना? EU का टूर्नामेंट EU वाले नहीं है भाई ग्रैंड फाइनल में अभी तक। नाउन है ना अभी तक। अरे ना लोअर में ना ग्रैंड फाइनल में अभी तक नहीं पहुंचे। रिवाइव भी गए स्कोर। ये मैक्रो गेम पे भाई ये लोग तो। देख लिया। वो ब्लिसी ने 2 अंडे मारे, 2 अंडे मिस कर दिए जैप पे। ये चालू हो गया मटका है मटका ये कैसा मटका हो गया। ओ ले गया। मटका ए चिल्ला के अरे गोल कर ले पहले। गोल कर पीछे का भाग के जा रहा है, गोल कर। अच्छा अरे भाई चिंगड़ी के टीम आ गई लग रहा है। भाई पागल हो गया, रेड तो पागल हो गया। ये रन जाना है भाई, ये ब्लिसी प्लेयर मस्त है भाई, मजा आ गया। भाई आंखें निकाल दी उसने तो। चलो ट्विटर खोलो, राउंड रोने वाला ट्विटर डालो। पहले मैच के बाद उड़ना है मेरे भाई ट्रेनर एलजीसी ने कमबैक तो कर लिया भाई जोरों से। स्टार्ट तो भाई बहुत बरम बराई कर रहे हैं भाई उन लोग को देख के। कर उधर मैक्रो होटल हो गया। ये तो होना ही था जिससे ये गोल करने गया। जो डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन किया है नौकरसल ने, वो चेक मार के घुसा है भाई पिट के अंदर। रसल और वो भी था ना, क्या बोलते हैं, क्रैमोरेंट की अल्टीमेट था। मजा आ गया। ये तो मटका कॉपी लेकर चल रहा है। देख उसका मुंह देख भाई, वो बंदे जाते हैं लाउडे। 5000 में वेस्ट हो गया भाई। अरे कूद रहे हैं भाई। फूकने वाले ने फिर फूक दिया। अपी लेना है, चुम्मा चाटी करना है। क्लोज मैच गाइस। अब मेटालिक किससे का चिंगड़ी को। नेक्स्ट मैच गाइस। भाई आइस का मुंह फिर उतर गया होगा। अभी चाहते हैं भाई जितना अभी अरे भाई जापानीज टीम थोड़ी ना, सब आउट क्यों कर रहे हो लोग टेंशन करने के बाद। अरे Listen, I'm taking a look at that game 1. हगवक दे रहा है भाई और कंटेनर है इसको देखना एकदम फुल विलेन जैसा बिजी रहे। But we've seen it in NA specifically when a team can पहला गेम ऐसा चुदे उसके बाद कमबैक जाएगी भाई टीम आगे। मजा आएगा। आंख खुली भाई, आंख खुली। ये भाई एमवीपी टूर्नामेंट का मेरे लिए रेक्स भाई मस्त रिएक्शन था इसका। शील्ड भी कनेक्ट हो रहा है भाई। one-on-one. We can't face them योंको का नहीं होता है क्या? Split the attention. Rip away. Use our योंको का तो होना चाहिए भाई 5 मैन डिवाइड डिपार्टमेंट कामुसारी We're taking a look at this moment right here. एक एशियन टीम इज आउट गाइस। 2 एशियन टीम्स आ रहा है भाई। वो क्रैम जंगल से आया है भाई कैसे? भाई जो गए वो लोग इंटेलियन के पीछे साइको जैसे। टीम से क्यों है भाई? चुदाने वाला प्लेयर एक भी था क्या? नहीं था, कोई नहीं था। पॉसिबल ही नहीं है भाई। 3
रिजल्ट पड़ गई 40% से डायरेक्ट डिलीट हो And गया. it doesn't really tell the story of this game. I'm going to be completely honest with you, Spraggles. This is one of those rare moments where you need to watch this thing from minute 10 to second 0, because this was an absolute fiesta out here. These numbers don't tell you anything about this game besides who won. And honestly, this screen doesn't either. This game is truly strategic. प्लास्टिक को अल्ट मार के अंदर की तरफ इजेक्ट मार दो तो ठीक Really रहेगा. great stuff. I mean, we saw some incredible सर्च मार fights के from बाहर लेके जा Shinrode, सकते थे. and just an amazing decision there by Nemesis. I feel like हाँ the मतलब कुछ तो difference कोशिश कर सकते हो. between some of the चिंगड़ी को सबसे राइट वाली फीलिंग आई रहेगी ना. वो जब चला गया गोल करने गोल करने चले गया. वो तो होना ही था. गोल करने चला गया चिंगड़ी और एक इंटेलियन को जोन कर दिया. बचे 3 टैंक. पकड़ो. वो तो नहीं आ रहा भाई इंटेलियन वापस रसल के सामने. जापान वाले तो पिज्जा खा के कास्टिंग कर रहे हैं भाई. They had to make sure that they secured Ray, and with enough members to tournament SAR, that was their moment. I loved that final Ray fight so Siddharth bhai, stream cancel karao na bhai. And Yeet fan are the diversions. We मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? unite. We X scissor through. We push them back, and while the rest of the team rips and like you say, charge up for the big time security. करने का वेलो वापस. I should have pitched. अभी तो 2v2 है. लूफी भी आ गया. रुक क्या मैच है. मैं भी आ गया. With Metallic, what a beast. And क्या किया हो? मैं तब भाई हाथ दो करा रहे हो. अरे खाना खा रहा था भाई. ओके. आ गया फूक के आ गया भाई. ये तो सही में क्या शक्ल बना रहा है. मक्के की रोटी सरसों का साग. Bro, easy game था bro. We knew we were gonna flip it, bro. Fuck. अभी दांत भी दिखा रहा है भाई थोड़ा बहुत. कल तो ऐसे ही सीधा फैमिली भी आई. मार रहा था. सबके आई इसके. चालू हो गया इसका. फैमिली बफ. फैमिली बफ. अभी अमरियन भी बॉक के क्या लिख रहा है भाई कोई. Last game, I literally said, कैसे हो भाई तुम just for 1 second, flip it. Flip. इसका बापू भी आया भाई आज तो. मरियन भी भौंकेगा लेके आया भाई. कैसे लोगे भाई. Now, obviously, you had to make a comeback in this set, and you all had some really interesting draft decisions throughout the last couple of games. Of course, like Serena and stuff like that. भाई 16 साल का है भाई. चपाचप रैप कर रहा है शेज में आके. To Shinrode again. I think once I saw the Zoro pop off that first game, I was like, we need to have something to shut down the Zoroark. And I know Serena ult is like one of the best shutdown ults in the game, especially against speedsters. So I was like, just give me the Serena, I'll put in work. All right, and then you're like, oh, well, then we'll just take the Zoroark as well. That works too. All right, any last comments before we throw it back? I'm a win. That's all that needs to be said. They're gonna win. We'll see if it happens. Let's send it back to the casters. Amazing stuff right there. Team आदि के एक और भाई बहन को विकेट गिरा Doomsday. के आया होगा My player to इसमें. watch. My player to watch, says Doomsday. I'm a win is pretty good. I mean, from their last line. That's what I expected of my player to watch. I'm a win. Yeah, I think they're gonna win. He's the best. Did incredible Metallic stuff for life, from Nemesis. 100%. And again, you could see either. I mean, these two teams could have been facing off. I feel like in the grand finals, they were that good. Oh, guys. That series was That that match. good. I can't say enough. Let's take a look at the highlights because this was just. Metallic ने इंटरव्यू में क्या बोला? Game number 1. If you remember game number नहीं उतना टाइम अभी तो हाईलाइट चालू फिर बीआर भी होगा. after winning that series. आजा भाई फिर चालू कर फटफट के. They were just dominant from top to bottom. There was nothing Nemesis could do about this Zoroark coming. एक सेकंड में आया. अरे एक मैप रहता है जिसमें शायद एकदम छोटा मैप रहता है और ऐसा 2v2 वाला टाइप. मेरे को याद नहीं आ रहा. खेलते तो है लोग स्ट्रीमर्स जितना पता है मुझे. वो टीडीएम वाला मैप टीडीएम है. वो टीडीएम खेलने के सिंपल डेथ फ्री फॉर ऑल खेलने. टीडीएम में उसमें फ्री फॉर ऑल नहीं लगाया क्या बीच वाले में? अब पता नहीं टीडीएम का शायद मैप अलग रहता है कभी-कभी. टीडीएम का नया मैप आ रखा है ना कुछ तो. हाँ चालू करना देखना एक बार चालू करके देखना बिना उसके एग्जिट तो कर ही सकता है ना. हाँ को मेरी चैट किधर गई भाई. मेन चैनल पे तो इंडियंस ही दिख रहे हैं भाई चैट करते हुए. बीसी कोई तो शिवा मारिया बोल रहा है ताइवान हैज इट्स ओन गवर्नमेंट इलेक्शन के वो ध्यान दे रहे. टीम डेथ मैच के हैं मैप्स अलग 4 मैप्स है. एक सेकंड रुक मैं यूनाइटेड पे देख रहा हूं लास्ट गेम का. एक सेकंड देखना है कि
ये विन कोई बड़ा लॉस अनलॉक दिखाए, कर सकता है क्या? अरे दिखाए ना डैमेज वैमेज चैट तो। हाँ दिखाया है स्ट्रीम पे ही दिखा था। लिल नाज एक्स का डैमेज देखना एनए होगा। वालों ने जापलिप कर दिया, वही बड़ी बात है। 50,000 इनवर्ट दे भाई। ओपी फ्लिप किया भाई बट 40% पे रिक्वेस्ट गायब टू हो जॉइन। पूरा। सबको दे दिया। वैलो दिख रहा है क्या स्ट्रीम पे? मेरे भी स्ट्रीम पे दिख रहा है क्या किस वैलो? तभी तो दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा शायद। ओ बेस बाजू वाले स्क्रीन में ना देख सकते। पूरा गेम मारा है। लास्ट में रिक्वायर्स ऑफ पोकेमॉन यूनाइट। नहीं दिख रहा वैलो। दिख रहा है क्या? दिख रहा। जॉइन पार्टी यस यस। लूफी भाई 1-3 करेंगे क्या? अरे वो लगा ना टीम डेथ मैच क्यों लगा है? डेथ मैच मेरे लगा टीम ना? में 3 लोग भेजो भाई। टीम डेथ मैच में मैप अलग है, मैप अलग आ रहा है। फ्री फॉर ऑल नहीं है क्या इसमें? नहीं फ्री फॉर ऑल मैप्स पे नहीं है। अरे सनसेट लगा ना फ्री फॉर ऑल, छोटा मैप था सनसेट। डेथ में या तो असेंट लगा ना, ठीक ही था असेंट। अरे ब्रीज लगाता हूँ भाई। अरे ब्रिज बड़ा हो जाएगा भाई, हाथ टूट जाएगा भाई। तो पर लगाता हूँ फिर। नहीं एसेंट लगा। अरे मेरे को आता नहीं है, मैं वाला मैच आता नहीं असेंट लगा है, असेंट लगा। फ्री फॉर ऑल क्या है भाई? ये 2v2 कर। अरे मतलब एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। हां वो तो पता है 2v2 कर। स्ट्रीम वालों दिख रहा है ना वेलो? बोल दो कुछ। मेरे में तो दिख रहा है आई गेस। अभी सबसे खिलाड़ी प्लेयर अपने पार्टी में लूफी है। ओके रोज खेलने वाला प्लेयर है भाई, ये तो अकेला मानने वाला है। रोज खेलने वाला कहा भाई? एक हफ्ता रोज खेला वो बस। वार्म अप। ओके कहाँ मिडिल में फाइट लेना है क्या गाइस? हां मिड पे मुंह लगा। जो पीछे से मारा वो बड़ा। अरे मिड पे रास्ते पे तो मुलाकात होने ही वाली है। If I may, I'll go in नाइफ first. फाइट करो भाई। ऑल Thin out their numbers. सब चार ये क्या बदतमीजी है भाई? Take them one by one. मैं बहुत ज्यादा स्लो कर दिया लग रहा है। किधर है भाई मिड पे? लोग दिख रहे हैं। ओ भाई क्या है भाई? जज क्यों खेल रहा है भाई? कैसे कैंसर आते हैं? दबा दूंगा। ए भाई ये तो दीवार कवर लेके मैं था। अरे भाई क्या है भाई? हेलो क्या भाई अभी कौन हुआ है भाई? अरे ठीक है भाई। इधर उधर से भाई मारते जोश में बीच में आना तो बहुत क्राइम है भाई। जोश में बीच में आ गया तो बहुत पीटी है भाई। मारते आर पार गोली पड़ रही है बेंच। भाई मैं तो टेलीपोर्ट हो रहा हूं भाई, गेम लैग हो रहा है बेंच। ठीक है यार, किधर है बंदे? अरे यार गेम लैग। अबे 10 किलोमीटर दूर से आवाज आता है भाई शॉट से आने वाले का। बोल रहा हूँ ना भाई, रोज खेलने वाला प्लेयर आ गया है। देखो भाई हगा हूँ मैं मस्त पीछे वाले नानी भाई ये ऑलमाइट तो प्रो बन गया है वाले टाइम सडनली। क्यों? मैं तो मारा ही नहीं। रिवेंज ले रहा है भाई। 2 किल तो है मेरे। क्या रिवेंज? अरे भाई गैंग एक्सपेक्टिंग अ गैंग। अरे साउंड सुन के भाई मेरा पिंग आई हो गया। Got one. भाई पिंग आई हो गया गलत टाइम पे। ओ तेरी डैम वन टैप्स। दे नो मी फॉर माय वन टैप्स। ओके अरे भाई लोटा लेके बैठ रहा था भाई, अच्छी कम था। अरे यार ऑफ का बटन तो नहीं दबेगा। अरे तू जब मत मारो भाई, एक मारो भाई। भाई ये तो साउंड सुन के टाप दे रहा है। टाप। ये वॉल बैंग नहीं लगा क्या? सैड भाई मैं तो बहुत बीट यार, इतना दूर चल के और बिना मार के मर गया तो राइड वाली फीलिंग है भाई। सासा भाई मार रहा है भाई मेरे वॉल बैंग क्यों नहीं लग रहे हैं? इसके लग रहे हैं उसी एंगल से। भाई वो वही जगह पे बैठ के चोद रहा है भाई। तो लाइफ हैक लग रही है उधर। भाई पोजीशन लो भाई उधर। What now? घूम रहा है भाई बहुत। भाई
ये इधर किधर बाजू में स्पॉन हो गया। अरे दिया था। कुछ नहीं दिया भाई, 0 फुल एचपी। अरे हेडशॉट दिया तो लगा ही नहीं। एक और साउंड था इधर, कोई तो साउंड दे रहा और नहीं दे रहा भाई, चिमटी करके खेल रहा है कोई तो। अरे कौन है भाई? अरे भाई उधर वो वाले एरिया में जाना है भाई, लुपी वाले एरिया में, उधर हाई ग्राउंड है बेंच, नीचे एंगल चेक करना पड़ेगा। अरे आगे पीछे सब जगह से मार रहे हैं भाई। रोज वाला प्लेयर दे रहा है भाई टॉप 2। ओके सॉरी अरे चाकू निकाल के भाग रहा था। अरे माधव क्या कर रहा है भाई? मैं दूसरा एंगल देख रहा था, तू आ गया। भाई वो तो ऊपर बैठा है भाई। अबे अरे पीछे आ रहा था। गांडी ना वो खुली हमारी। अरे भाई क्या मारा? अबे यार वॉल बैग चाकू निकालना है मार के। अरे मार क्यों रे भाई? ऑलमोस्ट ये बेंचोट मारते उल्टा हो गया बबल मोबाइल प्लेयर। अरे ऑल टाइम हो गया था ना भाई, क्या हो गया? अरे भाई ऑल टाइम से वापस आने थे 1 सेकंड लगा। हम ही नहीं तो इसका एंडिंग लेने जा रहा था भाई। मैं पीछे से आ रहा था। सर पे मारो भाई, बॉल पे मत मारो मेरे। अरे सर पे ही मार रहा हूँ भाई। कोई तो गेट तो बंद कर दिया भाई इधर का। अरे बेंच से साउंड सेंस फेल हो गया भाई, माँ की चुप, मुझे लगा पीछे। भाई कहाँ कैंप कर रहे हैं भाई? अरे भाई गोली लगने दे भाई। अरे क्या मारा इसको? ओके पीछे देखो। देखी? अरे नहीं गोली। अरे मेरा किल था। अरे भाई कूदने थे भाई। भाई ऑलमोस्ट यार हैकिंग तो कर दिया भाई, माँ की चुप। भाई इधर है प्लेटफॉर्म। भाई ऑलमोस्ट छुपा है भाई कोने में। अरे भाई ये बंदा तो वन ट्रिक है भाई। ऑलमोस्ट जिधर बैठा उधर मारते 3 जन जाके भाई। मैं बोल रहा हूं मार दिया। सॉरी भाई मतलब सॉरी भाई। ए भाई बिना मुझसे देखे आया ये तो चीटिंग। लुपी को निकाला क्या वाले पोजीशन से? नाइस। कब से उधर से ही मार रहा है ये? अभी ऑलमोस्ट को भी उधर से ही मारता पड़वा। तुम लोग भी लग रहा है कैंप वाले पे लेके आओगे मुझे भाई। एक तो मिनट पे 80 मिनट पे जस्ट साउंड देना बंद कर दिया बट मैंने बेंच गैंग अबे इधर ही छुपा है क्या? अरे भाई छुपा मार रहा था भाई, उसको छुपा थोड़ी था। ओके 10 kills remaining. तो अरे भाई आराम से भाई। भाई राइट क्लिक कैसे हो गया बटके में? भाई हीलिंग लेते जो 15-20 फुटस्टेप्स आती है ना उसमें तो विकेट है भाई। आउटलॉ कौन खेल रहा है भाई? ये कौन सी गन है? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिलोड कैसे हो रहे भाई? ये कौन सी गन है भाई? हेलो व्हाट द फक? मेरी गांडू। अरे यार सेकंड साउंड था आई थी, मैं बोला अरे हेलो अरे भाई अरे यार Stand aside. ऑलमोस्ट कुछ भी खेल रहा है भाई। इसको किक करो भाई। भाई क्या गन लेके खेल रहे हो? इधर से हैंडल पे आना। Enemy down. Time to fight fire with fire. मैं तो हेडशॉट मार रहा हूँ मार्शल से। 5 kills remaining. ऑफ थोड़ी खेल रहा हूँ। ऑफ थोड़ी खेल। लूफी भाई गांडी वगैरह। अरे यार देखो। अरे बॉडी कपा बॉडी हो गया थोड़ा।
नहीं लगता है भाई, सॉरी भाई। नहीं सिर्फ जीजी कर रहा है भाई गुड़वा गेमिंग। अरे भाई सिर्फ टॉप पड़ रही है भाई 4 राउंड से। अरे भाई वेट गया भाई उधर। सॉरी भाई सॉरी। अरे पीछे से मार दिया भाई। 1 minute remaining. अरे इसको मारो भाई। ए ओडिन वाले को चोदो भाई। एक लोग को मारो। मां की चुत्तर किधर है एक लोग को मारो। मारो भाई। अपन दोस्त है। बीच ड्यूटी। अरे उधर दिख गया। किधर है वो मोटरी वाला किधर है? भाई सिर्फ ये गेमिंग कर रहा है भाई कब से? अंकल इधर है ट्री मादर। अरे मादर ओपन नाइस करो इधर भी 1v3 कर दिया था बस। ए वॉक करके कौन आ रहा है? नाइफ कर इसको लौड़े को। अगला मैच स्टार्ट हो रहा है वैसे। चलो 20 सेकंड। अरे दूसरे अरे यार बंद करो गेम पे। Back to training. भाई उसके पास खाली ऑप नहीं तो उसको शॉटगन लेके भी रेडी था। शॉट के लेके बैठा है बड़वा। अरे बाकी यार ऐसा है भाई। मैं तो बैकअप रेडी था भाई। बैकअप प्लान रेडी था बढ़ेगा। और ऊपर से डेथ मैच में तो एमओ रिस्टोर हो जाती है किल पे। शॉटी की एमओ रिस्टोर हो गया। कैसा मादर चोद है भाई। मैं सोचा ऑफ की गोली मार के शॉटी का कैसे मार रहा है बेंचुद उसके बाद। नहीं एक एक में गए थे वैसे वो। तुम दोनों एक एक में गए थे। कूद स्लिम तो अंकल जैसा दिख रहा है भाई। क्या हो गया इसको? मुच्छी लगा दिया ना। मुच्छी लगा दिया भाई। फर्स्ट वर्ल्ड में एकदम बच्चा दिखता था भाई। To this AEOS Cup stage. चलो guys, be back. Last year, so yeah, draft started. A little less international flair in that one, but that doesn't mean the achievement doesn't matter. And let's get into draft, sir. Here we go. भाई आदेश तो सुने भाई की याद दिला रहा है। टकले की फोटो लेनी पड़ेगी। Esports banning out the Mew right away, not surprising. Kabi-chan's getting rid of that hoopa. क्या लग रहा है गाइस तीसरे गेम तक बात पहुंच रही है? 2-0 ही विकेट लग रही है। Kabi-chan's their final ban. ये तो 2-0 लग रहा है मुझे। बंदे पूछ रहे डज इंडिया लूज? ने बोला वो खेल ही नहीं रहा है। ब्लेजिकन सिर्फ ड्रैगन एक्स बैन कर रहा है। ब्लेजिकन बैन कर रहा है। अरे फर्स्ट पिक में मत ले भाई। रुक जा भाई थोड़ा। भगवान से डर। टिकॉस ले लो। ठीक है भाई आराम से भाई। Yeah, here we have Russell being locked in. Kata, we saw them so much on this Blastoise day one. Eldegoss also being picked up here. Now these next lock-ins here for Nouns are going to be really important. We're going to have to see what kind of roles they want to bring into this match. It looks like they are bringing out that Buzzwole. They put Mega on it. They say, look, if you're going to give us third pick Buzzwole, we are going to take it. Yeah, it is incredibly powerful. It just needs to be facilitated a little bit and it can really pop off. We're hovering the inteleon. I believe that would be Rom doing that for this team. And we'll see where the other pick ends up. Are we looking at a potential situation? Buzzwole ले लिया फाइनली। खुला गया है। Tomato on the ए टमाटर हरामी लग रहे हो। सॉरी भाई मेरी गलती। And that inteleon right here. Final pick. ये आउटप्ले दे दिया भाई। Want to see what Utah wants to क्या आउटप्ले? I think he's teasing a little bit. माइम छेड़ दिया उसका। Tickle pink, but I doubt it. Let's see what they bring out. उसका मतलब दरअसल ट्रिक हो गया था ना भाई। भाई टमाटर ने तो अपने गाल वाला पोकेमोन ले लिया। टमाटर के गाल भी तो मन जैसे। Screwing with us. Always messing with the casters. I honestly think if टमाटर ने टमाटर उठा दिया है। Let's go. then we see a comfy combination. You think so? Two picks out now. And unsurprisingly, the Dragonite goes last, but the Dragonite has been literally the वो फिर Dragonite दे दिया भाई इसको साइको को। If you were watching their games yesterday, उसके पास इंटेलियन आ गया भाई। ये तो जोवर लग रहा है। so systematic
It's like मुक्का versus beam. and then everybody just बैन कर क्या करने हैं दो प्लेयर लोग के सामने समझ में नहीं आ रहा है अच्छा करना पड़ेगा भाई बैन से तो नहीं चल सकते टीम को उसको सिर्फ अगर है ना म्यू और इंटी बैन किया तो ग्लेशन लेता है चला तो देखा नहीं कोई एसपीएन भी नहीं लेगा ऐसा तो है एसपीएन भी शायद नहीं है बट उतना वैल्यू नहीं देगा ना जितना ये दोनों हीरो पे देगा वो मैंने सुना विनर्स को एम्बलम पकड़ा देंगे क्या विनर को एम्बलम पकड़ा देंगे कोई भाई क्राउड तो आई है भाई आ जाइए भाई आ जाइए गैराज विराज में चल रहे क्या भाई टॉर्नामेंट आखिरी उम्मीद ही बैठी है वो क्राउड की आखिरी उम्मीद सामने बैठी है हां ये लोग नाउंस हार गए तो क्राउड साफ हो जाएगा लग रहा है 17 or 18 years old and to have that level of discipline is really ये मेको है ना across all our teams we've seen this weekend नहीं मिलता लग रहा है Kabi-chan's again dispatching quality teams front left and लोना center वाजिरो you got two players looking to get it done here the captains are both supporters of course हर मैच कैप्टन बदलते रहते हैं भाई भाई इसका रोल सपोर्टर नहीं लिख के रखना चाहिए रोल हार्ड कैरी लिख के रखना चाहिए इसका हार्ड कैरी तकलेगा Esports, your purple team. Kabi-chan's, your orange team. Buzzwell heading up to this top skin effects ऐसे लगे नहीं है मेरे पास बराबर with the inteleon, looking to get some of those early water gun secures. Yeah, they're actually assisting here through to get a little bit more experience onto Tune before they hit the path. Bruv working right there, and they are no strangers to a Mr. Mime, so I think they'll be able to navigate the walls fairly well. Yeah, that's true. I mean, you're playing Mime into one of the best. Kabi-chan के पास sustain है पर उनके पास intimidating actually. आउटप्ले कर दिया भाई In some trouble right now. You need to run away from this situation. Grab some berries here as Megu is looking for a secure up in this top path. They obviously need to get that Buzzwole to hit level 5 so that it can become an absolute monster. Only level 5. What a Pokemon. Yeah, Desu actually trying to do what we saw Rex do earlier, which is run and draw all the attention, but Kabi-chan's again staying disciplined, staying on the objective that matters, which is keeping this Buzzwole down, and now they're putting tons of pressure, 3v1, they're looking at Megu, they're putting tons of damage on Megu, they're trying to get points, and at the same time, बड़ी नहीं हुई छोटी which सी means they've फिर got भी a लग रहा window. है Finally with Desu is back, but they're not level 4, so they don't have that nice soft-boiled move to give them the support, and now all the birds go to Kabi-chan. Yeah, really great stuff there from Kabi-chan's. I mean, it was an excellent play. They kept them away from that entirely. As you can see down here in this bottom path, looks like things went pretty well for Nouns as they're looking to try to score right here. Tune having to pull back there on that Espeon. We've got the Dark Bear, but look at this. They're just clearing the central area before they get there. They say, oh, how low that they are. They get अरे मुक्का नहीं लगा अरे मरता था क्या ड्रैगन नाइट मुक्का नहीं लगा ओपी स्टन मारा था ड्रैगन नाइट ने बफ के थ्रू मैं तो चार्ज कर लेता मुक्का बफ भी who is still a chancey dog. Yeah, he needs to get some experience. हर गेम कर रहा है भाई ड्रैगन नाइट सीन में अरे उसका मुक्का भी वो नहीं लगा मेन वाला मुक्का नहीं लगा नहीं तो मर जाता ड्रैगन नाइट उधर Things are going very well with Kabi-chan's. चार्जिंग नहीं होता ना मुक्का पूरा नहीं चार्ज हो गया तो साइड वाला पार्ट लगा They are ready to go at 8 minutes. That is exactly where you want मरने से पहले मार दिया था an उसने opportunity for more birds as well. And we're taking a look, the score line is close, but that's not the story here. As Kata is kind of getting collapsed on. We got a 3-player push. And they're टून भाई किधर किधर घूम रहे हो टून भाई into the पार्क pocket में here so they can उन भाई के गाफ में हाइपर बीम क्या टाइम पे हो Just insane amounts of damage there on Tune. 7:30 अभी See if they decide to go top or bottom. They are going to head down towards this bottom path right here. Buzzwole only level 6 up in this top path. We've got the 9 on the Dragonite. Yeah, but the pressure is all around these birds as that was a nice push back. माइन के दीवार पे चॉइस टेक्स ड्रॉप And होता है that is just tic-tac-toe like play out of Kabi-chan's. Yeah, it's just beautiful stuff, right? It's like just as you talked about, you know, easy push, ready with the hyper beam. 1, 2, 3, let's go. मोस्टली इसलिए ले रहे Holding it down in the face of 3. Of course, Toonslim is there for a little bit of support. The wall is put up. The crossbow can't quite get back. The cake is still intact for now as we are on top of Registia, lining up the hyper beam, a go, and it's the Inteleon that takes the snapshot. Beautiful stuff here from Kabi-chan's, and you know this Dragonite is such a problem to deal with, but it's so क्या टाइप hard. का सिग्नल मारते हैं भाई वो लोग 60% HP And a lot of teams deciding not to ban it. I'd actually be really curious what they would इकट्ठा भाई पूरी ऑडियंस रेजी मिला पूरी ऑडियंस चिल्ला रही है बाप रे Mega with a little poach putting down the Eldegoss, and now Kata is trying to hold it down. D9 मार के आ रहा है Dragonite crash lands. अरे
धक्का दे दिया हाइड्रोपन मार के उसको and is ready to deal with this Regieleki as the rest of now टकले को peel away, but they ये do तो find a इंटर great मार रहा है target लग रहा from अंडे से मार Pick up a KO right here, and you really take what you can get at this point for Nouns. They're a little behind right now. ड्रैगन ने इजेक्ट के फुल ही ले रोम्बाई तू करे छे चोदी ना भाई ये तो अखिल भाई की याद दिला दी कल वाली लौड़ती वाला गेम प्ले था फुल ही लेके इजेक्ट है ड्रैगन completely, and that's the hallmark of a good eject वाला deny फिर तो पकड़ सकते हो value in terms of getting knocked out is different than a lot of players on your team. So Only sometimes Coca-Cola मेरा भाई is the right thing to do. Here we have the गंदी Buzzwole चीजें right नहीं here करता being hit by that hydro pump, able to take some of that experience, but you know this Buzz is quite far behind. It feels like for a Pokemon that normally steamrolls throughout. आउटरेज और हाइपर बीम में तेरे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं ब्रो दिमाग ब्लाइंडनेस है But at the same time, it really does feel सेम like तो नहीं दिखते Kabi-chan दोनों does not worry about this Buzzwole. They shut them down. अरे भाई मिला क्या उसको Yeah, I think it's just because of how they take their team fights. It's a little disjointed. It doesn't allow it to be snowballing behavior. हाँ भाई बसोल भाई फाइट करो जरा वरना फाइट नहीं मिलने वाली है टीम के सामने ले 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 Comes out now. We have a Urshifu Unite. Aldegas takes this guys to heal up. Hydro pump back the other way. We're spin pumping all over this team. Plus assistance back. भाई शिफू को देता ये मैंने कुछ गलती बोल दिया था कि पिछले बार के ब्लिसिक यूनिट लग रहे Whoa, slow down now. Slow शिफू बेचारा मर गया माइम क्यों ले रहे लेकिन इन लोग ये गेम में अच्छा कैसे लग रहा है माइम उसको अरे बर्फ को दिखाना होगा अच्छा तो है मुझे तो लग रहा है इसको सिर्फ दोबारा में पोकेमॉन खेलना रहता है बड़े ब्रसल वसल को तो काउंट करता है मतलब अर्ली मिड गेम वगैरह पास नहीं आने देगा ब्रसल को तो बाकी पैटर्न अरे ज्यादा है ना दीवार फेंकने का रेंज ज्यादा है दीवार फेंकने के बाद क्या करेंगे वो लोग अगर माइम ने आगे दीवार डाल And we're looking to push this Regieleki a little bit. Low is Tomato on the Mr. Mime, but Kabi-chan's वो stun देने नहीं आ सकता है saying this isn't the scrap we want. Let's peel back. Yeah, Kabi-chan's, they just take their advantage when they can get it, and then they peel away. They go find something else on the map to do. It feels like some teams are वैसे भी very अर्ली पिक concerned किया with ना how सामने much वाले volume ने and how much पोकेमॉन fighting के they लिए get to do. जिसको I stun think नहीं लगता Kabi-chan's just, you know, Dun, very dun, 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 intelligently decides that they want to worry more about what objective What are they're you moving doing, to next. Kumbai? So they want to worry more about getting some of these wild Pokemon. They don't care to prove that they can out. उल्टा भाग एसपीओ तेरे को ही चोदेगा उधर कमार मार के And again, they see their opportunities, they take them. They never really seem to be बहुत overextended, damage which is है भाई critical. उसके Now साइड Dragonite वाला actually grabs the basement Reggie. Hydro Typhoon's going to kick up 3, but is this going to be a chase scenario? They do trap Bruv behind the wall. Can they get a KO? High spin pump will get it done with the Eldegoss right there. 3 minutes 30 ये तो seconds on विकेट the है clock. Kabi-chan's up right now, हो and it गया looks क्या like उसका Nouns is having अनस्टॉपेबल a चालू hard time kind of breaking through. Obviously, Kabi-chan's would love to put some more points on the board. ओ भाई यूटाउ ने खेल लिया ले We have multiple members of Kabi-chan कहाँ sieging पे this हो top guys goal zone right here. They're looking कितने to टाइम पे होगा ऑलरेडी भाई Mr. Mime Unite तीन into the तीन hyper तीन beam. दो We've तीन got अरे the आगे हो hydro pump. भाई तुम लोग आगे की कमेंट्री दे रहे थे 2x कर लिया मैंने मुझे लगा मैं पीछे हूँ बहुत They go down, points right दबा हुआ है बटन आगे Buzzwole trying to stop him, not able to do it. Now 61-2-12. A couple go down. भाई बहुत क्लच मारा वो शिफू ने Moving around the side here, looking for a kill. Not able to make it happen. Yeah, Tomato actually saw them pop over the wall and immediately pivots, throws a confusion blast into the tall weeds to see if अरे they अरे can Guys, इन लोग के पास सिक्योर तो है और शिवू का बट they don't have flip. What will they do with secure? अभी कितने पे हो 37 36 जी 35 जी 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 11 though. Massive power नहीं फाइट कहाँ हुई अभिषेक भाई अच्छा खेल रहा है वो फाइट हुई कहाँ है so that could be huge. The next एलजी बाहर हो तो कल ही हो गई थी an engagement right here. This is just पहले gonna स्टेज be में बाहर हुई फर्स्ट चुट गई है ये टूर्नामेंट in the top path as they are going to लास्ट प्लेस थी ना अरे उसको स्नाइप लग गई यार सबके बीच Yeah, they do trap Tomato. Of course, Bruv up front taking these snipe shots. और उड़ गया Pump is so ये तो गोल vicious. नहीं हो रहा है अरे और And now every single ये snipe तो shot नहीं रुक रहा है भाई range 5 इंटेलियन seconds till Ray spray. Now ठीक looks है like मैं they तो can really इंटेलियन put के the लिए pressure काइंड on ऑफ right here. Two अभी members ये of पोजीशन Nouns पे आ are गया down. था They are well aware they can't get Best it. Inteleon in They're Asia. pushing out Mega right now. So बज़ोल को खेलने नहीं दे रहे थे check भाई button to get away, so they're not going to be able to reposition any of their क्या moves खेलता है because of भाई it. चालू They're कर gonna दिया lose a combo. Ray ओए, quickly getting flipped right ओए, now, ओए, taken down here. ओए ओए Kabi-chan's ये तो sitting हागी in फुल जैसे नहीं लगा है तेरे पास ये गंदा आइडिया लग रहा है ओए ओए ओ ले लिया ले लिया लिया भाई ओपी चला ब्लास्टर्स में आई अरे भाई ये बंदा ब्लास्टर्स ने चला दिया ब्लास्टर्स ने परफेक्ट टाइप मारा It's Kabi-chan's time, and that was beautiful from them. They just recognized after they picked up those 2 KOs with a snipe shot, they were controlling him. KO5 भाई KO from the inteleon. उड़ा भाई
भाई वो 2 स्नाइप ने गेम बदल दिया वो। भाई वो ब्लॉक करते उसका गोल होता सब ठीक जाता। अभी भी टाइम है गाइस, कुछ तो किल्स मिल गए तो लगता है। एक पार्ट तो छोड़ देंगे ऊपर, एक माइम दायरा जा रहा है ना स्लो करने, बॉट इवन नहीं करेंगे शायद डिफेंड जितना वो अपना ये हो जाएगा डिफेंड बॉट इवन भी, बट छोड़ दे। It's a motherfucking 14 level blasters with AEOS. पॉसिबल तो लग रहा है लेवल देख के। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, शिपू एक अल्ट मारेगा पक्का विकेट है। ड्रैगनाइट को तो डैमेज नहीं पड़ा। 28 पे तोड़ा। अरे 14 लेवल का माइम आ रहा है यूनाइट लेके, और एसपीओन रिकॉल कर दिया। गाइस ये बजवल का डैमेज कितना लग रहा है? 25,000। हां रॉम्बा भाई उसको पर्सनल दिया है भाई। बट वो एसपीओन रिकॉल क्यों करवाया? गोल तो लग ही रहे थे। और डैमेज टुनबाई ने क्या दिमाग लगाया दोस्तों? उधर T1 तोड़ने जा रहे हैं। पहुंचा भी नहीं है। एफके खड़ा हो गया भाई, बात कर रहे हैं जीएम के बारे में। टकलू उठाओ तुम्हारा डैगनाइट, दो सपोर्ट मेगुमी को वापस। टकलू का ड्रैगनाइट तो देखना था गाइस। टैंक प्लेयर था ना मेगुमी। टैंक प्लेयर था, टैंक से टॉप गया भाई। सपोर्ट तो खेल ही लेगा भाई वो। अभी टकलू ने दिखा दिया अपना ड्रैगनाइट तो जोवर हो जाएगा। एडे से खेलता था ना जंगल पहले। सिल्वर ड्रैगनाइट। अरे फर्स्ट वर्ल्ड तो उसी ने तो दिलाया ड्रैगनाइट से, डॉज वॉच करके ओपी बीम बीम सब। ये लोग वो खेलते थे ना लूका ड्रैगनाइट को डायरेक्ट उड़ा देते थे फर्स्ट हेड। और टकलू तो 1v3 1v4 डॉज कर करके स्पेल। आया भाई स्पेक्टेटर को इनवाइट आया भाई 8 मिनट पे 6.5 का I have to tell you, Dupe Snacks, I really don't feel like I've ever seen Buzzwole look underwhelming, except when it plays against Kabi-chans. I mean, Kabi-chans just has its number. Yeah, and I mean, we've even seen teams adjust to try and mitigate what Kabi-chans does in the top path to limit Buzzwole, and it still doesn't seem to matter. Actually, this is a great moment in the game. Kabi-chans is really good at अभी तो मेन हीरो नहीं दिखा है ना इसने अपना, मेन दो हीरो। वो लगता है ग्रैंड फाइनल। मेरे को भी वही लग रहा है। सीधा ग्रैंड फाइनल से दिखाएगा जोरो कंपी। अनएक्सपेक्टेड उठा सकते हैं। भाई आने वाले में तो चांस है। कहां उधर चांस पता नहीं अब क्या भी होता है इसी का भी सेक्टर। इसके बाद कौन है? अगर ये लोग जीत के कौन है? लेकिन नेमेसिस नेमेसिस वर्सेस दिस काबीचान। भाई उस बंदे ने बीम I am tomato. बीम लॉकिंग भाई 30% पे की है। यस तक भाई अब मिल गया ना उसको। मैं भी सोच रहा कैसे मिल गया भाई। अरे सब डैमेज दिए भाई, वो स्नाइप मारा है दूर से। लगा है क्या स्नाइप? हाँ बॉडी ब्लॉक कोई नहीं कर रहा था, स्नाइप और ये दोनों लगा है। ब्लास्टर्स भी चक्री घुमा रहा है, ओपोनेंट भी डैमेज दे रहे हैं। पता है उसको डैमेज आने वाला है, दे दिया अभी। स्नाइप तो हाँ स्नाइप तो लगा है मस्त वाला बीच में से। स्नाइप लगा है यस। Just straight brawling with the clown. Just brawling, man. Just brawling. We've got the must call you right. Top players. Looks like Rosander's a little sad with that. You can do it sign right now. I don't think that's the happiest you can do it sign I've seen. भाई ओपिस्टन बड़ा है, लुटाव का चार्ज होता था ना, नहीं तो पंच चार्ज होने पे नहीं मिल रहा तो नहीं है फुल चार्ज बीम के सामने। That's a sad one as we see and right away now it's esports going to have the माइम पिट में चक्री घुमा रहा है, ब्लास्टर्स ने अल्ट मार दिया, फिर हाइड्रो पंप से और स्टन दिया है।
चांस ही नहीं है कुछ। Okay, so अंडा बैन कर दिया भाई। Kabi-chan's onto some other support. बेंचो इन लोग का अंडा भी बैन करो, प्लीसी विनोसर खेलते हैं, क्या बैन करने हैं लोग के सामने? But now the Dragonite is finally भाई हम लोग भी फर्स्ट टाइम स्क्रिम किए थे, फर्स्ट मैच के बाद सीधा एल्डा बैन हो गया। बहुत डेंजर है इसका एल्डा। नोडा बाजीरो। I don't really know. I mean, we've been seeing it as like we talked about the last pick, that gutter pick on the side of Kabi-chan. हर एक प्लेयर का है इम्पैक्ट है ना टीम में। वो भी होता है। They grab Crystal first. We've seen how important that is. Kada एक भी वजन नहीं टीम में। to get off this blast. Why would they? Yeah, I mean, it's just been so amazing for them. We've got the Blissey here on the टी side. वाई राउंड बना के मारता है कुछ तो। जादू है। बट उन लोग भी बहुत टाइम बाद मार रहे हैं ना। It's possible that we have न्यू मैप हर साथ थोड़ी आता है मोबा में, रिवर्क होता है, न्यू मैप थोड़ी डाल देते हैं सीधा। Yeah, Kabi-chan, of course, Kabi-chan's quickly snagging up that Blissey, and another defender gets into the mix here. So we're going to most likely see that Trevenant in the top. इसमें से विटोपो कौन है? Yeah, it might be time to just go all in. जो जंगल खेल रहा है। ये बॉटम राइट वाला, हाँ, बॉटम राइट जिसने जर्सी नहीं पहन रखी। पर मेरी शक्ल दिख रही होगी बॉटम राइट पे। सब तो शिंगड़ी दिख रहेगा इसमें मेरे आंखों से। डूसने से भी शिंगड़ी लग रहे थे, बोल दिया उसने किसी और का ना। is going off in my brain, Spraggles, because you know how many times Kabi-chan's has eliminated a team that's played support Umbreon this weekend? I don't know, is it? भाई दो मैचेस खेल रहे हैं भाई, ये लोग के तो लोले लगने वाला है, ऐसा लग रहा है। But here we are. I hope Nouns proves me wrong. I hope they do something different. I hope they get सोचते तो रहेंगे। बर्फ को माइम लेके चोट दिया तो। There's their composition for it. We've got two कुछ तो दिमाग लगा रहा है। सस्पेक्ट अच्छा लग रहा है। माइम पे प्रॉप्स नहीं होता है ना दूसरे स्पेल्स पे माइम के, सीधा कंफ्यूजन पे होगा और फिर अगले कंफ्यूजन तक फिर से आ जाएगा। मेरे पसीना आ रहा है भाई। I guess Kada on the spin pump is a reasonable mean look target. You know, I don't know if you necessarily. I don't know. Like वाली feeling आ रही है ना? Get a Dragonite in that mean look. It means they're just going to continue to get भाई दूसरे का टकला क्या चमक रहा है भाई, मानना पड़ेगा। Sylveon can rip them apart. पॉलिश करके आता है रोज। इसलिए तो एल्डेगोस खेलता है भाई। One thing I do think is interesting about this Nouns composition is it feels like they are agreeing, you know, with Kabi-chan's to play a slightly different game. It feels less, you know, fighting, brawl. एक्स पोकेमॉन बैन ही रखना इन लोग को, तो लाए क्यों गेम में बेंचो? Yeah, well, वर्ल्ड्स में अनलॉक करने के लिए 5% win rate Noda is not on the pass for this game, giving maybe a little sign of भाई life. काश ना आए भाई वर्ल्ड्स में बेंचो लौड़ा लग जाएंगे। अरे आए भाई फिर ही मजा आया। हमको तो देखने के लिए मजा आएगा ना भाई, तुम खेलोगे इसलिए तुमको नहीं चाहिए। अरे कुछ भी भाई, कुछ भी बोलता है। हमको तो एक्स पोकेमॉन देखते हुए मजा आएगा। ओके भाई, फिर से वॉच पार्टी करोगे ना भाई? करूँगा ना मैं। ऑनर ले ले, आप ही कह रहे हो सर भाई। मतलब यार ग्राइंड करना तो इंडियन टीम भाई। I'm gone case. रोज वक्त की रोटी मिल जाए, खाने का पैसा पोकेमॉन से, खुश हूँ भाई मैं। Just so mean, always impressive, always buying time. मैं बंगला खरीद लिया जलंधर में। घर आपने चेंज करा, बंगला मेरा, ठीक है? घर आपने चेंज करा, बंगला मेरा। मैं तो आप सर्विसेज लोरी वोरी चल रही है बेंचो। भाई क्या? भाई ने भी भरा है घर का पैसा, अकेले नहीं भरा मैं। तो भाई भी पोकेमॉन में होगा कहीं किसी इंडस्ट्री में। Yeah, now they're moving as 3, but again, sussed out by Meta Kada private right there. Hyper voice right into the middle. The birds kind of split between these two teams. तो evolve भी नहीं हो रहा है अभी। भाई मैं तब भाई पोकेमॉन में भी चोद रहे हो, नौकरी दे देना अपना, उधर ट्रक चला लूँगा। शुरू ब्रो, क्वालिफाई हो पहले। वाटर बॉय बना के लेके जाओ भाई मेरे को, पानी दूँगा। मेरी पिया ऑलरेडी उसके लिए।
अरे सैड है और आपके पास तो है ना डिसॉल्व ऑलरेडी इतना अच्छा मसाज भी दिया बैग भी लिए बैट भी पकड़ रहता है मैं सेक्सी था भाई तेरा वाटर बोलते एकदम कुछ भी बोलते भाई वाटर बॉडी आपने दिया है चिप मारना गेम के पहले बता रहा कि चिप मारना ये सिद्धक तो लोले ऐसा क्या बोलते भाई नीचे वालों का लेन खोल जा रहा है Delphox getting into the mix a little bit with that fire blast. Delphox साथ हो गई Cash in right there. ये वो इंटेलियन कहाँ रखा है See what could possibly happen throughout that match. Anytime this Got dragon it. gets aggressive, anytime क्या टाइम पे दोस्तों ऐसा position itself 43 42 for an objective, they are able to counter it right there with the mean look. And as soon as we get a few of these moves online from the side of Nouns Esports, we could see some big KOs. I'm actually interested to see how this pays off for Nouns. All right, well they take care of Tomato. Now they're moving on this Dragonair. It is in mean look range, so if they can सवाल है ऊपर ब्रैकेट वाली टीम क्या सोचती रहेगा अभी जो सामने टीम है उनको हराना है यार है काफी चार नीचे से क्या सीन and now peeling back to make sure they get the bird. So not a value in the knockout department, but definitely in the wild farm department. Yeah, it definitely feels like they are controlling this match a little bit more while being, again, less focused on brawling with सबकी copy गांड तो shots. फटे If they रही है are able to काबीचंद catch से them, they can get a big KO. Same thing with Inteleon, either Inteleon or Dragonite. If you can get them in that mean look, they wouldn't be too difficult to take down. This looks कौन like बर्तन मांज रहा है easy work here for Kabi-chans. Yes, great secure. सॉरी भाई खाना खाओ नहीं खाओ भाई क्या है 40% 50% पे मार रहे All the hard work that Mayhew's putting in, but now they're going to scrap a little bit. Regieleki puts a little electric मेटा तो ढूंढ के आते हैं भाई काफी Desu चार right there with the mean look, so the spin is staying in one spot. ये डेलफॉक्स इन्वेड करते करते टपक न जाए गया 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 ये तो गया Esports, and again, I feel like this mean look, we've seen some नस्तर looks तो है on भाई it that have पंजाबी been नस्तर pretty good. I mean, mean, you know, obviously for Kabi-chans, but pretty nice. बल्ले बल्ले चखना नहीं खा रहा भाई चिकन और राइस खा रहा भाई Well, that's the Balla, thing. Like, they put balla. in the mean look, they started retreating, and Dragon वो माइम के विकेट होने वाले हैं नेवर माइंड hyper beam KO because of the range it has on it. So you know, it's if you're getting the correct mean look target, you have to ये be तो there कुछ to नहीं आ रहा है follow up. पेज भाई वो डेलफॉक्स भी ढीठ है नहीं जा रहा Follow up is no value. Yeah, you're not ये gonna क्या get a ढीठ ton out of it, भाई obviously, and मर तो this गया is आ रहे more आ रहे and more hopeful अरे for रिकॉल Dragons where कर ले some कुछ of कर these ले bigger fights. Now, if they're not able to make that happen, भाई then it is 2000 just one घंटे of से those उधर ही picks था that रहे हो doesn't work पर्सनल out. मारे उसने उसको अल्ट वर्ल्ड दबा के शायद नहीं अभी ना हुआ Fox going down. नहीं भाई Well, now Bruv is तो बत्ती में क्यों नहीं दिख रही and the है snipe नौ shot is वाली certainly अल्टी there to मारा put अल्टी them in मारा range. अल्टी मारा अच्छा है एंड पे मारा शायद Might be where they want to be. Mean look in a right spot. अरे Here, अल्टी but दिखी Blizzy ना stays जब in गया the था pocket. टाइगर They're looking जंगल to brawl a little bit. Inteleon runs in a circle. फ्लैश भी Please get नहीं this KO इंटेलियन to पे make it worthwhile. बच गया They're तो on the मान chase. लूंगा Blizz is ले 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 मान ले लो भाई मान लो back on a Desu. भाई Now मान गया running मैं away क्या is खेलता the है भाई Sylveon. लोड़ाबाजी का ना ये तो नहीं छोड़ रहा है भाई Can't लोड़ाबाजी cash रो in either. We have a fire blast that's just a bit इसका shy ब्लिज़ी of कहीं his कोल्ड डाउन पे नहीं जाता है क्या भाई Really nice stuff. हाँ I can't believe both of these लोड़ाबाजी चप 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 जब दिया जा रहा है भाई वो इंटेलियन के पीछे पड़ गए हैं भाई रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट करना है मान जाऊंगा अगर बच गया तो मेरे को भाई गट खुल गई गेम में लग रहा है ऑलरेडी माने हुए हैं ना अरे वापस मानूंगा 3 बार मानता हूँ भाई Yeah, not overextending, not taking fights they don't need to, but Bad great Xbox LT communication. push Tomato, time. Put a wall down so I can get out of here, please. Thank you. माई मल्टी नो पुश Okay, टाइम they're looking to make a push. माइम को ही Right उड़ा on दिया top of a Desu, but मरने वाला है वो Tomato using the Mine, the showtime. spear fingers right on top Mine of मार देगा it. लग रहा है Typhoon oh kicks up no two, mine KO लगा two, and all of a sudden a Desu भाई इन लोग का finds blasters himself बहुत with ओपी Mew. खेलता भाई है इनके इंटेलियन ओवर खेल रहा है लग रहा है ये वाला Tons गेम of थोड़ा damage getting rained in. Tomato tries to वो मर ही नहीं रहे ना भाई ट्रेवेनेंट क्या है Who एचपी else बीसी but Kata? Now they're moving forward themselves, and what looked like a हम लोग की push टीम on की the ट्रैवी tier मारते हैं भाई 1 of Kabi-chans turns into a nightmare for Nouns. क्या चालू है बे आगे पीछे Kabi-chans retreats. Yeah, Kabi-chan's pulling back right ये there. गेम तो because क्लोज it's जा like, रहा we है एकदम actually just did this, where they नस्तर डाल रहे क्या कर रहा है zone kill, उसी में खेल रहा है रॉम थोड़ा नहीं लग रहा and then we'll pull away from this right here. Really amazing stuff there from Kabi-chans. Everything now ये said तो they गया were able to counter in that अरे is अरे now just continuing this push in the top path right here, looking for So this flip red time. flag. Obviously, they are मेरा तो मरना nowhere वाला near लग the रहा है bottom objective, so that was छोड़ able दिया to get secured there by Kabi-chans. You can't leave Dragonite alone with anything. No, you really can't. Okay, ये गया Delphi माइन Giant, we're माइन going तो forward गया again. Tomato is the one trapped behind Eject the रहेगा rock, शायद। and the Unite move, and everything नहीं। under the sun. It is fire, लोड़ा so वाला can खेलते क्या they भाई? do anything with that player advantage that they have? They try to trap the Dragonite, but it's Inteleon still You hanging out never with snipe know. shot cover.
ये लोग का टीम फाइट तो गंदा नहीं है टाइम नाम वालों का भाई डिनाई टल्ट मार के कर दे ओला हु एब्लिसी है ये वो है लोग कहते हैं भाई ये क्या टाइप है कुछ भी And they secure 1, 2, 3, go. Everybody gets it. All 5 players for nouns were there. Oh, right into the आ गया माइन का शो टाइम और अरे फंसा सबको दिखा देता है शो टाइम रेवेनेंट ने टाइम तो मस्त बाय किया क्या टाइम बाय किया है भाई पूरी टीम ने फार्म वार्म ले लिया देख बर्तन तोड़ रहे हो क्या भाई घर या वो एक टाइम मोदी ने बजवाया था बर्तन पूरे कोविड के टाइम ये भी गो कोरोना गो भी तो हुआ है ना इंडिया में ये तो मिन लोग के मारा है देन फॉक्स पर्सनल अल्ट मारेगा 100%। अरे भाई बट ट्रैक वाज पे जेट में अरे आ जाएंगे किस को तो भाई इनका अलग चालू है दो बड़े मुर्गी की मौत दे दी है the Pokemon Unite version of play action. मत तारे पर चारों बंदों को एक कंफ्यूजन ये गया और गया And they're converting ये तो गया नहीं बच रहा है भाई चटनी लोड़ा का आंसर बोल दो दोस्तों एक स्नाइप लगा टाइम लग रहा है ओ नो भाई लो गया अरे क्या पकड़ा है भाई इसने That's all with the hydro pump right in the back line, but they've got no support. Nobody followed Kata into the will load up Wajji roll, let them flip or no. Looking to see what they can do, but they're flipping on top of मैं वापस आ गया बट और ये फंस चुका है अकेला मार दिया भाई हीलर नहीं है इन पे वो फ्लिप कर रहा है बीच में कुछ भाई सिक्योर ही नहीं है लगता क्या कर रहे हैं कुछ अच्छे ऐसा ये क्या मुंबई ले लो ये जंगलर का कुछ ये वो जल्दी में काम कर दिए एक साथ रह रहे थे पहले वैसे ही करना था 4 बंदे अमरियन अलग चले गए तीन अलग चले गए उसने मारते ही डेलफॉक्स मैं ये डेलफॉक्स याद नहीं लग रहा मुझे किसी की डेलफॉक्स थ्रो किया है पूरा गेम किक करो बेंच इसके लिए very toxic Mr. Wall fight. No bro, it's not wall fight. It's not 19 of wall fight, it's someone else. फेक प्रॉमिसेस करते हैं टीम में आके ऐसे ही गांड मराते हैं फिर बोलते चांस देते मैं तब हंस नहीं रहा है भाई जोक तो फनी है हंस क्यों नहीं रहा है भाई बस ऐसे उसने तो विकेट डाली है वो क्यों हंसेगा assholes man मतलब भाई सुपर पावर इसको मानना है जसोल को बहुत बोल रहा है मेरे को भाई मैं तो राइट को काटने के लिए भाई टीम में मारते भाई टीम कम तो अच्छा था ना उसका भाई क्या क्रिएट आ रहा है भाई आप लोग का क्या अच्छा था मैं तब टीम का पार्टी निकली नहीं लेकिन डेलफॉक्स ही हो गया अरे हमारी तो रेकबाज तक बात ही नहीं पहुंची थी भाई रोशना पे एंट्री नहीं खुल रही है भाई नाउंस वाले तो एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे हैं भाई जॉनी सिंह साइड हो गया भाई आसमान देख रहा है सपोर्ट अभी चिल्लाओ क्राउड ये सिकट्टा देख के बोल रहे क्राउड अभी चिल्लाओ भाई ये टीम भी मुझे लग रहा है चेंजेस होने वाली है रिकलर के पहले मे बी कौन सी नाउन उसको लाएंगे भाई उधर भी हालत सेम है प्लेयर चेंजेस में रोल चेंज हो सकता है आ जाओ गाइस वेलो वापस भाई बहुत खा लिया भाई आलस आ रहा है वैल्यू नहीं हो पाएगा अरे भाई क्या है नेक्स्ट में भाई चप खट्टा डाल दिया भाई बिरयानी में मैंने शायद 2 लोग की लेती बिरयानी EU वाले ताली बजाएंगे अभी क्या कर सकते हैं कि एक भी फॉरेन टीम में है ना अभी टूर्नामेंट में वो लोग है खाली लैटिन नेमेसिस है बस एंड की आखिरी अभी नेमेसिस वर्सेस कैपिचान है कि नेमेसिस के एक मैच है फिर
काबीचान I think Nemesis versus काबीचान की है एने और यही लोग है भाई एने और जापान की टीम है सब स्क्रिबल खेलना बोल रही है चैट स्क्रिबल खेलना है गाइस आज तक नहीं खेला मैंने करना क्या नहीं खेला ड्राइंग बनाने रहता है अरे चारों लोग को ऐसा रैंडमली कुछ भी लिख देना है ड्रॉएबल मतलब हाँ तो रैंडमली किसी को भी वो चले जाएगा नाम और तुमको ड्रॉ करने बताए और कोई और गेस करेगा वही है ना स्क्रिबल हाँ वेबसाइट पे है 2 राउंड खेल के देखते हैं नहीं हुआ तो बंद कर देंगे और क्या डिस्कॉर्ड पे भी है शायद एक क्रिएट प्राइवेट रूम कर रहा हूं क्रिएट रूम वेबसाइट पे जाना है ना हां scribble.com प्लेयर अरे वो बना के रूम बना के लिंक शेयर कर दो scribble.io ना रुक जा लिंक भेजेगा ना मैं तब डायरेक्ट खोल लूंगा ये सर्वर पे भेजो हिंट्स कितना रखना है 2 3 3 ले लो भाई आप आइस लग रहा है अरे हिंट मतलब 3 टाइम तुमको वो देंगे ड्राइंग ओ हां ना वो साथ दिया तेरे को भेजा लिंक अरे गाइस scribble.io लेट्स गो एट आवर स्कोरबोर्ड राइट हियर यू सी गार्लिक फोन भी मस्त है बट पुलाव खाशी आर मांगशो भाई एक और पता नहीं चार लोग में कैसे खेलेंगे भाई Chance was perfect right there. They were able to take down members of Nouns that had any opportunity. भाई मेरे तो ऐड आ रहा है And then they just turned around on it, and of course, भाई क्या है नहीं यार भाई नाम एंटर करके प्ले दबाओ भाई I use Brave browser guys no ads at all Yeah, and you can tip the cap to Nouns. I mean, they found a great pick. प्लेयर कौन है भाई पाजी क्या कौन पाजी कौन रख के आया भाई मैं ही हूँगा ना 10 सेकंड तेरा वर्ड है तेरे को वर्ड ड्रॉ करना है और ये करना है तेरे को अच्छा मेरे को करना है अच्छा आप लोगों को गैस करना है और हमको गैस करना है वो ड्रॉ करेगा ओके ओके ड्रॉ कैसे करना है भाई टाइमर किधर दिखा रहा है टाइमर कहाँ दिखता है अरे तू ड्रॉ अरे ड्राइंग हां ना मास्टर टाइमिंग पूछ रहा है 1 2 3 5 वर्ड का है भाई चल दे अरे ड्रॉ कर भाई रुक जा भाई माउस नहीं घूम रहा है क्या बेंचो इतना गंदा भैया ड्रॉ करा ये किसने टाइप किया वर्ड बट अरे माँ कसम आलू है क्या साइडक ये क्या है अरे ये क्या है लॉरी लिख रहा है मैं चैट पे लॉरी ये सोच हेलो लूजर है गाइस हक दिया इसने ड्राइंग में नहीं हो पाएगा किसी से किसी की शक्ल बना रहा था मैंने लग रहा है 3 हिंट डाल के हक दिया दोस्तों अरे हम लोग का नाम लिख देता था भाई ठीक है भाई अरे बंगाली बना रहा था हक दिया अरे हिंट्स कम करने पड़ेंगे एक्चुअली वो आया और वो ये बाप रे तो प्रोफेशनल ड्राइंग है अरे ये क्या है बना रहा हूँ भाई रुको नो नॉट गर्ल ये तो मस्त ड्राइंग है भाई अरे क्या परिचित बनाया क्या ये क्या है अरे रुको बना रहा है मां की चुत ये 4 वर्ड है देखा ही नहीं अरे गेमर कौन लिख रहा है भाई ऊपर वर्ड देख गेमर कौन भाई ऐसा लग रहा है कीबोर्ड लगा रखा है उसने क्या है ये अरे कुछ तो फेक मुंह से निकाल रहा है भाई अरे भाई वापस बनाना पड़ेगा तुम लोग को अरे भाई अबे ये मुंह से निकाल रहा है इधर किक मुंह से किक निकालेगा कौन है ये या तो मैं बहुत अनपढ़ हूँ आईसीयू क्यों है और आईसीयू में मुंह से क्या निकल रहा है नीचे से क्या निकल रहा है भाई उसके ऊपर अरे लिकिस क्लोज अबे मुंह से क्या निकाल रहा है मुंह से थोड़ी निकाल रहा है
पाजी ने देख लिया भाई। मुंह इसमें अरे कलर दे, अरे मुंह से गूं निकाल रहा था कलर। अरे वाका भोसड़ा बंद कर गेम। लकी की नॉट खेल रहा मैं, बंद करना कुछ। रुक जा भाई, इसकी बारी है, रुक जा ना। ये क्या है? ये क्या है सोचो तुम। ये हो गई क्या ड्राइंग कंप्लीट? ये हो गई क्या? ऐसा है गाइस ये। ये लौड़ा बाजूरो कैसा है भाई? भाई सबसे इजी है भाई ये तो। हैंडपंप नहीं है भाई, इट्स अ मोबाइल ऐप ब्रो। मोबाइल ऐप? ये तो डंडे अरे नहीं। ओ अरे तुम लोग कलर विलर भी तो डाल सकते हो ना, थोड़ा इजी बनाने में। हाँ ना? से क्यों खेल रहे हो? भाई मैं नहीं यूज किया हुआ है। वो तो दिख जाना चाहिए। क्या है एफ में बॉक्स में बना के रखा है, या तो कीबोर्ड पे रहेगा या कुछ साथ रहेगा। लेकिन थोड़ा भाई ये बहुत चूज करने का। भाई मैंने गलती से इसको वोट किक कर दिया भाई पाजी को। एक करा तो किक होने वाला है। ठीक है भाई। ये क्या है भाई? ये क्या अंकल? ये क्या है? ये क्या बना रहा है? अरे स्ट्रीम कर रहा है डिसेबल भोसड़ी का। कैसे कर दिया? ये तो स्ट्रीम टाइप किया लौड़े ने। गोटा से पहले बच्चे में इतना दिमाग है। ये गोटा क्यों बनाया है? स्ट्रीम टाइप। टिड्स कौन लिखा है? 8 वर्ड है भाई, टिड्स कौन लिखा? गोकू है? सुपर सयाजिन। बाल तो नहीं लग रहा है इसका सयाजिन जैसा। कैसे बना भाई ये? और इसके अलावा मेरे को नहीं पता भाई, कैसे बना ये? ये क्या है ये? फिगरिन। मेरे को डिजास्टर का ऑप्शन था, मैं आरएनटी जीनियस लिखने वाला था उसमें। अरे नहीं भाई, ये स्ट्रीम स्नाइप वाले को किक करो भाई। कौन है लोड़ा बाजीरो? अरे वोट किक होता है, रुको वोट किक करो भाई। लोड़ा बाजीरो कौन है? पहले बताओ कौन है? मैं तो नहीं। लोड़ा बाजीरो इज डिसेबल। डिस्कॉर्ड पे नहीं है। डिसेबल कौन है? तो डिसेबल लोड़ा बाजीरो कौन है भाई? लोड़ा बाजीरो कौन बना रहा है? किसकी ड्राइंग है ये? अच्छा ये कौन सा ड्रॉ कौन कर रहा है? ड्रॉ कौन कर रहा है? टाइम स्टोन और हो रहा है। क्या लिख रहा है? प्लीज डोंट किक, आई हैव फैमिली। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है ये? ये क्या बना है भाई? आईज नहीं है, नो आई बॉल। ये क्या बना है? ये क्या है? पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? गुयम। हिंट्स का 3 को 5 आ गायब। नो आई। हॉकाई। नहीं 10 वर्ड थोड़ी नहीं इसमें। इनविंसिबल लिखा है लाउड। करेक्ट। अबे इनविंसिबल और इनविजिबल में अलग होता है, वो गायब लिखा है इसने। अबे यार। अरे हाँ रे ओके कौन था ये मदरचोद? कौन था? अरोरा। ओह माय अरे भाई माँ की चूत भाई, मैं इसलिए लिखा नहीं भाई। भाई 3 वर्ड का है, किसको आया भाई? सेक्स नहीं है। एम लर्न तो 4 वर्ड है। ये क्या है? अरे ये क्या बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है क्या बेंचो? अरोरा डिसलाइक द ड्राइंग। भाई ये लोड़ा बाजीरो कौन है भाई? किक कर दो इसको। कौन कोई भी है? ये एक बिंदी पे आके क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहा है? भाई कलर के बाद तो और कंफ्यूजिंग हो गया भाई। भाई क्या बना है? चीकुड़ी है क्या? बेंचो क्या है? क्या है ये बेंचो? कम कौन लिख रहा है भाई? अबे ठीक। एक गेस किया? कौन गेस किया? मैंने। तू क्या किया? ये है क्या भाई?
ये तो जैसे ड्राइंग कर रहे कम ही लग रहा है guys, पत्ते पे ही जाके रख। डिप लिखा मैंने चैट ऑलरेडी, डिप तो नहीं है। It's due guys, due. ये पत्ता है बेंचो। ड्यू ये ड्राइंग का मतलब ड्यू ड्यू मतलब क्या वाला ड्यू लिख के अरे कुछ और वर्ड भाई आसान वर्ड चूज किया करो भाई। अरे पाजी अरे पहले तो वोट किक करो ना उसको जो भी है। ओके उस पे दबा के वोट किक करो, लेफ्ट क्लिक दबा के। बूंदे बूंदे वाली ड्यू। ओके ये फिर से क्या लिखा है पाजी ड्राइंग। ये समुराई है क्या भाई? क्या लिख रहा है जापानीज में? अरे इंग्लिश में लिख, बढ़ पे क्या लिख रहा है? तोतले लिखा है क्या? तोतले क्या? तोतला। ये लौड़ाबाजी को निकालो भाई। ये स्ट्रीम देख रहा है। हाँ ना ये क्या है भाई? क्या मेथड का है क्या वर्ड? हाँ कितने टाइम में चालू हो रहा है? अरे क्या हो गया भाई, ऊपर लिखा आ गया वेटर करके। यस ये अरुणा को अभी भी नहीं समझ में यार घुल भाई बनाए हैं, थोड़ा तो देख लो। मैं बोल रहा हूँ अपने सर्वर का ही है ना कोई, तो लिंक तो इधर ही डाला है मैंने। चालू नहीं हुआ भाई, 2 मिनट से ज्यादा आके बोल देगा भाई विदाउट वीसी नो कार डीलरशिप। अभी तो 2 मिनट का ब्रेक बीआर भी लिखा हुआ है। 4 वर्ड है भाई। ये क्या बना रहे हो ओए? ये क्या इन्फिनिटी क्या बना रहा है? इनफाइनाइट क्यों लिखा है? 4 वर्ड नहीं दिख रहे आपके की दुश्मन बेंचो। दोस्तों मुझे व्हाट द फक ऐसा किसका पूप होता है भाई? पाया अबे 4 वर्ड का है। क्या है ये? अरे इतनी बार बनाना, इतनी बार क्यों बना रहा है? अरे घंटा ला रहा है भाई। गुड अरे नहीं हो पाएगा तेरे से, मत कर, दिमाग पे स्ट्रेस मत डाली। मेरे पे स्ट्रेस आ रहा है। नहीं हो पाएगा, नहीं बना दिया। इनफाइनाइट जिसने ऊपर तो आ गया उसके उसका वो अलग वर्ड है। ये क्या ड्रॉप किया है मिडिल में? लूप अच्छा। अरोरा का 0-0 आया जा रहा है भाई तब से, इसमें भी डब्बा। भाई ये तो बेस्ट है भाई, ये तो बेस्ट है। टेस्टिकल्स नहीं भाई ये सब वर्ड नहीं आता है। लोरी क्लोज ब्रो। ये कौन है बे जिसका राइट हुआ? कौन है ये? राइट नहीं हुआ भाई, वो है ओसामा बिन लागी आ गया है। अच्छा ये देखो गाइस, इट्स इजी ब्रो, यू वर क्लोज ब्रो मिस्टर। खेला नहीं है गाइस, वापस बना भाई ने। व्हीकल क्यों लिख रहा है रियल आरसीएस में? बाजी बाजी ब्रो, बाजी को कैसे बाजी समझ गया भाई, उसका ही है भाई। बाजी को जैसे समझ गया जो हंसी निकली ओ भाई भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकता है गाइस, समझ जाना चाहिए भाई, डेली वर्ड यूज होता है भाई। ओ भाई साहब, इजी गाइस इजी। ओसामा बिन लागी इज गॉन। भाई भाई अच्छा इरेज ऐसे करता ना, थोड़ा टॉर्सो बड़ा बनाना पड़ेगा एक सेकंड। क्या है ये? वजन है क्या कुछ? ये टॉर्सो है? अरे मतलब वही थोड़ा जैसा बन रहा है बनने में लौड़े।
देखो ऐसा इधर इधर समझ जाना। अरे 5 वर्ड्स तो यही रहना चाहिए गाइस। एरो एरो फोकस करो। ना ये तो इजी है। डिसाइपल तो स्ट्रीम स्नैप कर रहा है, इतना दिमाग तो नहीं है। नीचे मूंगी लिया मड़वे ने। ये देखो स्कॉलर को स्कर्ट बोला नंगी लड़की बना रहा है। अरे भाई तो तुमने ऐसा ड्राइंग बनाया है, नीचे का कौन फोकस करेगा? भाई अरे मैं तो स्लग लिखने वाला था, सोचता था 4 वर्ड है। जानबूझ के मैंने तकलीफ ही बनाया उसको। इसने तो डिसलाइक कर दिया आती ड्राइंग बनने तो दे। ये क्या है? टेंटे की ग्लू है। ये राइट किसने करते हैं? नानी हिम हर कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? प्रोनाउन थोड़ी चालू है। अच्छा अरे झोपड़ा है भाई। अच्छा झोपड़ा। ए उधर चालू हो गया, ये कब तक खत्म हुआ? 1 राउंड बचा है ना, तुम कर दे। एक राउंड। अरोरा का ड्राइंग देख के बंद कर दो। 8 वर्ड वाला सीधी लाइन तो सीधा वर्ड ही टाइप कर रही है क्या? ये क्या है? ये फिर से ट्रैक्टर बन रहा है क्या? व्हील चेयर भाई 10 वर्ड का है भाई, कैसे लिख सकते हो? वर्ड भी गिनने पड़ेंगे क्या? रोले भाई पहला वर्ड बताओ जरा। इजी है ब्रो, इजी। अरे बताओ रोज यूज करते हैं हम लोग, रोज यूज करते हैं वर्ड खेलते खेलते। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। कितना आयरॉनिक है ना सबसे। भाई ये क्या भाई, जीसस क्राइस्ट क्यों बनाया इसने? हाँ ना नहीं लेगलेस हैंडीकैप। सैड। निखिल मादरचोद लिखता है कि राहुली भाई का हाथ रंडी का बच्चा। मेरी बारी। अरे भाई 10 ये क्या है? 10 प्लस 1 2 3 4 5 10 और 8 भाई 18 वर्ड। 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या है भाई ये? 18 वर्ड का है भाई कुछ तो। आदि की मारण नहीं 16 ही आ रहा है। क्या है वो बता मुझे। ऑलमोस्ट देयर। क्या रक्षाबंधन? नहीं हिंदी में नहीं। अरे भाई हिंट देते भाई, थोड़ा 18 वर्ड नहीं होगा भाई, पागल है। अरे दोस्ती का सबूत, तू मेरा दोस्त है। फ्रेंडशिप आगे का क्या है 8 वर्ड? मैंने तो मेरे चैट में स्पॉइलर दे दिया गाइस, मैंने खुद का दिमाग खोने लगा मैंने। अरे फ्रेंड जोन हो गया, फ्रेंड जोन की निशानी। किक करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है क्या? अरे जो इल्यूजन हुआ। Has been kicked? नहीं कर रहा हूँ सबको किक। मैच दो, आ जाओ, गेम चालू हो गया। इतना वाहियात ड्राइंग है, लड़ किसी को पता चलता था। अरे 18 वर्ड का क्यों भाई इतना हार्ड? अरे तुम जल्दी गेस करवाओगे लोगों को, तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे भाई। यार मैंने तो इजी वर्ड्स चूज करो और है ना फ्रेंडशिप ब्रेसलेट चूज कर दिया भाई। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट उससे ज्यादा क्या इजी होगा? भाई ये अभी भाई विनर ब्रैकेट फाइनल को हंसते रहेंगे काफी चैन वाले नीचे से देखते ये कौन सा गेम चालू है बेंच। लैटिन अमेरिका साउथ वर्सेस लैटिन अमेरिका नॉर्थ। ये तो कोरिया नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया जैसा हो गया गाइस।
And so we're going to see how these teams start off. We're getting some relatively free scores up here for Sherlock, who's going to run very far south, trying to maybe see if there's anything they can steal over in the center area. And they may get a chance. This is going to be a weird little low power attempt to get the last hit, but it's going to go to the, well, now Blissey, a great way to defend that EXP. Yeah, but at the very least, KO has that experience share, isn't able to share that EXP at all with the rest of their team because of the urgency that Sherlock was able to enable on the enemy side. They are going to pay for it, though, as Anemo is going to strike first. I believe the K opener going over to Fusion as Leafeon, the first one to take a knockout. Sherlock going pretty far forward there, but now they've got to deal with this initial combo. This is what we're Anemo. this entire game. This Zorak plus Comfey is going to be so hard to deal with. I mean, भाई लोग का जोरो ऐसा लग रहा है स्लो है भाई कॉम्बो मारने में technically, you don't want to even try. नहीं 5 लेवल का जोरो तो ऐसे मारता है कॉम्बो चीलिंग वाला. Kind of force it if you are the Zoroark, who's going a little bit far forward, trying to see if there's anything they could find. Decided not quite. भाई तो अच्छे वाला जोरो है बेंचो. नहीं पाए. नहीं पाए. NEIC and EUIC both. This duo always shows up. The Zorak and the Fusion तो और a lot of their moves require expert हाँ. and aim. Fusion. हाँ, reverse response और थोड़ी है. In-person environment is just a perfect enabler for these high skill Fusion तो है उतना पता है. most rewards क्योंकि यूनाइट पेज ने टैग तो किया था उनका पेज खोल के देखा तो था. amazing mechanical prowess. Valorant का और content creator. Hold on, let's look at this right now. Speaking of Zorak, Reggie is just playing super good defense, and that was an invincibility. Oh, bye. Reggie bye. God gamer लग रहा है दोस्तों ये अच्छे वाला जोरो. Every 30 seconds, Zorak will have access to that, and pro player Zoraks are able to dodge instances of damage, instances of crowd control by using that illusion to transform into a different Pokemon. But slow निकल रहा है combo. Avoid something like a Mew boosted auto or even a mean look from Umbreon. If you're able to time it perfectly, you can ignore the stun into गेम जीत गया भाई कॉम्बो भी नहीं लगेगा चलेगा. जल्दी जल्दी कॉम्बो मारने के चक्कर में. ये तो ब्लिसी मार सकता था ना भाई आराम से पहले. भैया जी ग्रीडी हो गया दोनों मारने. क्या रेड बफ का स्लो मार रहा है क्या पहले कॉम्बो मारने के पहले क्या चल रहा है भाई? इतना कुछ ज्यादा ही स्लो मार रहा है ऐसा लग रहा है. Rework Respawn actually showing a lot of focus on the Reggie Alecki. They're not going to have any Stun है तो time लेके मारते हैं मिस ना हो को. zone down there, which must have been to a pretty large overdunk, seeing as Fusion is sitting at 141 points. इन लोग के रीजन में फर्स्ट कौन सी टीम है यही लोग है क्या रिवर्क रिस्पॉन्स फ्यूजन है. No idea. ये तो मेरे वाला जोरो अल्टी था. Anemo takes so much damage. Regirock's shield does get put onto all the members as soon as it's KO'd, but Reggie दे रहा है भाई गोल जाए भाड़ में पहले देंगे. in the backline. But the Reggie shield is nice, but Comfey is a whole lot nicer. They are किसी की टीम में रिवर्क लैटिन अमेरिका नॉर्थ और फ्यूजन लैटिन अमेरिका साउथ. नीचे ही लिखा है भाई नाम टीम नाम के बाजू में. LAN मेरा 5 के मारा होगा 5 के. ब्लिसी को मिला क्या उन्हें? I've got a little bit more for you. There you go. I actually really love what Rework Respawn is doing with this draft strategy. They are behind in the scoreline, but they've been putting so much pressure on the top side. Despite having an evolution that you could try to power up. ये Zoro के हाथ तो very slow लग रहा है guys. In the Zoro, they want to make sure they're also enabling this Blastoise of Sherlock. Early game तो हो जाएगा, late game देखना पड़ेगा. They got access to the Hydro Typhoon, and now they early game तो दिया है spin. Not going with the pump, which we've seen very, very common. Just going all in on इन the जितने भी चैट में लिख रहे हैं ना, स्कूल जाओ तुम मदर चोद साले सब. A team or a strong brawler. Realistically, either way, it just क्या works हो गया together, भाई right? इसको? If you have a Blastoise that's really strong, a lot of times Aurora will be confident कैसे बोला? Sai Krishna Nalluri, are you listening, bro? What is this? Turn around, get focused. But if you can see teams, that's when the pain really begins. Anna, give them your Ganna. Yeah, Walter, Anna, give them your Ganna. Hey, what you said about my princess? I'll pack you, Ray. No leave, no protection, all night, all day. हमारे इंडिया के मैच कब इंडिया प्रमोट नहीं है bro. Extremely strong, of course. Solar Blade, or I'm really sorry, any move that we have from Leafeon. मिनाटो भाई क्या खेल रहे हैं भाई? Great options at getting slow bro. And of course, always got to say it every single time. Number one security. Of course, yeah, it's already in the game. It's locked
in, so that's why we need Espeon to even compete with the unbelievable egg bomb secures. It'll be Solar Blade as well for Leafeon. So speaking of secure options, we definitely have those in spades. Of course, we have that are exceptional depending on the situation. Electro Ball, my personal favorite because it does splash damage. अरे भाई पैसिव गेम होते तभी हम लोग चुते ऐसी बातें करते हैं भाई लोग की गलती है क्या है कापिचान बेंचो कापिचान का गेम किधर है भाई फटफट खत्म करो टूर्नामेंट अरे बाय 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 क्या पकड़ा है भाई 5 चुक गए कापिचान तो मस्त पैसे कमा रही है भाई यप खुल के बाजू वाली टीम की दोस्तों जोरों पे मरते 16-17 साल वाले पैसा कमाते रहे आज मैं मस्ती करके फाइनल विनर फाइनल भाई ट्रेवलेंस ने तो ये जोरो तो आते जाने वाला लग रहा है अरे भाई भाई ये बूस्टर देने जा रहा है अलग से म्यूजियम में मिस कर दिया Unlike poles attract each other, अनपढ़ और टॉपर की लव स्टोरी क्या बंदे लोगों का लोग बोल रहा हूँ भाई अंदर को टेस्ट मत करो आ जाएगा फ्लाइट पकड़ के विद गन Hey, what are you talking about? Online comes. ऐसा टांग उठाएगा कोयता निकालेगा रे ओपन बाय को पूछो मैं ओपन बाय को भी सेट बाय की ऑफ पता नहीं Why are you talking a lot on YouTube? Open your mouth. Reggie's going to back up. Realizes there's a few too many targets. As I love that fusion. 2 members coming from the bottom, 2 members coming from the top. family stream के लौड़े लग गए is sitting on that at Trevenant right now. An unbelievable power spike for them. They are looking huge. The damage numbers they've been able to output are massive. But more importantly, I think their Unite move has been a perfect answer. Guys, that fight, 30 seconds. जोरो का Unite अभी तक लगा नहीं है. ये फाइट में लगेगा क्या? Even remotely went their direction. And this Horn Leech has been कुछ क्या ना पड़ेगा भाई रुको. for displacement. दो मिनट को. Any good Unite अरे जी साल भाई आपको सब जानते होंगे. सीधा कॉल घुमाओ मैच के. We are 10 seconds away from the final What the fuck भाई को मेरे को क्यों जानेंगे भाई लोग आपको जानेंगे ना आपने थोड़ी है यानी कि मैंने थोड़ी है आपने उनकी तोड़ी है जिनकी जिन्होंने यानी की तोड़ी है fight. It's all going to be about the engagement, and already we're starting to get a little bit of poke, maybe playing a little bit game of chicken on the side of Fusion, but hey, with all the Pokemon they have there, I don't know if they know, but they could probably just burn this down at this point. Yeah, but as soon as you burn it down, you're inviting both an Espeon and a Blastoise Unite move into the mix. That's so much control to have to contend with. So they have to be extremely careful. If they are going to go for the Rayquaza, it needs to be a very open and clear option, despite having the भाई ये लोग सिर्फ ज़ैप को मार रहे हैं भाई ये लोग नहीं Respawn is going to be trying to utilize उसका गोल नहीं हो रहा गोल लुकाने जा रहे हैं the scales a little bit, and Reggie going to try to take. ये तो अपना इंडियन गेम चल रहा है गाइस ऊपर नीचे स्कोर हो रहा है उधर फ्लिप नहीं चालू हो रहा है From tempo. And Sherlock actually went in to get Leafeon गया the slow beam on the Leafeon. That's huge. First KO going to the बिना टोबा ने पकड़ लिया है and they're going to continue with the engagement. Multiple members chasing different members of each team a different direction. की तो गांड मार दिया अरे म्यूटेक सामने वाला साइको पेंचो अरे भाई मैं तो मर गया एसपीओन कूद कर आया था कूदना है यो भाई तुम दोनों विनर ब्रैकेट फाइनल में गाइस because the name of the game is Pokemon Unite ये अल्ट खाने जा रहा है अरे तूने एंजेलिका रे बात नहीं ये फिर पेनल्ट मारे मैंने मर गया talking anyhow about the princess you guys yeah appa Blastoise able to take out the Trevenant, and with that, it looks like we are looking at rework respawn. Starting our match. देखता रहेगा हिल नहीं मिलेगा भाई तेरे को गेम में Great defense there in the middle as well from Sherlock. There was an attempt slightly to burn down that ray, but I mean, what else can you try to do at that time? So a ये ज़ोरवार वाला इतना कैसे चोद रहा है भाई चोदने वाला ज़ोरवार मिस कर दिया तुम लोग ने Leafeon getting caught. वो चुट के चला गया प्यार मोहब्बत से खेल रहा है वाला ज़ोरवार वो वाला ज़ोरो चला गया भाई
परमा मिस है वो एक दिन में कलर कर लिया क्या बाल वो भाई तो वही है ना भाई बच्ची चुराने वाला यस वाओ किसने भाई बाल कलर किया ना उसने किसने अरे बच्ची चुराने वाला देख नहीं कल भी ऐसा रंग था रे कल वो पर्पल हुडी पहन रखी दिख नहीं रहा था अच्छे से पर्पल हुडी पहन रखी थी भाई कल भी सेम कलर ही था दिख नहीं रहे थे बस बच्ची चुराने वाला बोला डायरेक्ट बच्ची आ गई भाई भाई उसके बाल के पीछे की तरफ क्यों ला ले भाई व्हाट द फक पीछे से क्यों रहे मैं भाई आँख का काम होता है पूरे वन नवा बिग मम्मा they just set them up in a situation where it went from a nearly deadlocked tie to a situation where they were able to really push any advantage they had and made Fusion come to them and go into unfavorable. वो कौन सा प्लेयर है वैसे जीतने वाली टीम का प्लेयर था टूटने वाली टीम का प्लेयर था मिनाटो है ना नाम मिनाटो है जीतने वाली चोजी चोजी है दिखने में चोजी चोजी फूड पिल का क्या है तुमको सोच रहा था trying to ignore the Hydro Typhoon with the Horn Leech plus the Unite move, all of that channeling, giving them unstoppable. But in भाई मतलब फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम कैसी चल रही है another moment here, another KO streak of 2. Just स्क्रिबल में भी नंगी लड़की बना दी भाई मैंने उन्हें उसमें भी गलत गेस किया भाई लोंडो ने क्या बात भाई अल्ट्रा वर्ल्ड का प्लीज स्क्रिबल में चूज मत करो अल्ट्रा वर्ल्ड कौन क्या कर सकता है भाई इधर 4 वर्ड कर रहे गोटी से कोट रही है अरे इल्यूजन बनाया था मैंने we'll be okay and then you're like wait we're not they were really good at defending it's like these teams know exactly what the other team can do as far as responding to their own aggression and so nobody ने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं कर लिया वाले जैकपॉट में थोड़ा चिलिंग में खेल सकते हैं अरे एसपीएन को भी देखो वो कौन सा रुका है सीधा उसके बाद दोनों अटैकर ही सबसे ज्यादा साइको लग रहे हैं अरे एनए के एसपीएन मजाक नहीं कर रहे एनए की भाई घुस रही है पूरा मौत पे साइड शॉट चल रहा है भाई वो नो मर्सी गेम प्ले इसका भी उसका पैच भी अलग चल रहा है ना साइड शॉट खेल रहा है ऊपर से उसने गुल भाई को देख लिया रहेगा भाई गुल भाई तो खेल रहे थे ना साइड शॉट सुबह नहीं कब 3-4 दिन पहले गोल भाई बोलते के लोग खेलते हैं वो स्टोर पावर शाइचक खेलता है शाइचक में वो है Let's talk about Reggie as the player of the game. How could we award it to anybody else at this point? Yeah, I mean, not only with, of course, the scoring with all those back caps, but with so many KOs, so much damage. गली बॉय दिख रहा है भाई गली बॉय Should be happening when you've got a Zorak दिख गया मुझे When you've got a comfy on you, there's something going wrong in that game. So, but knowing that you can have a player like that you can focus on is huge. And as we get into draft number 2, I really want to फोटो में डेंजरस दिखते हैं फोटो के बाहर ऐसा कैसे दिख रहे हैं combo like that. Are they going to steal away comfy? वाले कैमरा पे जो कोड़ी है खुद को भी दिखती है वो भी दिख जाती है भाई Obviously, going to start with the ban. Yeah, we've seen various answers to that, right? And all the way back in NAIC, we saw some banning of the Comfey in the past, and even इसके बाद काबिचान वर्सेस नेमेसिस फिर winner versus इनका loser, right? Yes. Definitely options for Fusion. I know for a fact they have some players quite confident on the Zorak themselves, so we could see that exchange. Now, bans are going to be extremely similar. Russell going to be on that list. बादशाह भाई is here. Oh my god. किधर बादशाह भाई? बादशाह भाई वो है फर्स्ट कमांडर योंको का फर्स्ट स्क्वाड कमांडर अच्छा जिसको वो मारता है ब्लैक बियर्ड यस बादशाह तो ब्लैक बियर्ड दिखता है पेट नहीं है ना लेकिन ब्लैक बियर्ड वाली उसके पास हां पेट मैं कर सकता था एक्चुअली ब्लैक बियर्ड कॉस्प्ले पहले दाढ़ी काटने के पहले अरे इन्फी करेगा ना रुक जाओ इनकी मोजान है भाई अभी फोटो भेजूंगा तो खपल जाएगा किधर वो बता दिया तो भाई तू रोड मैप का अपडेट दे देना बस मुझे रोड ही है मैप नहीं है भाई जलंधर में बहुत बोल रहा है अच्छा बटन दबा जा रहा है इंटरनेट वाली बिल्डिंग पे Everybody's just giving it up to each other. And at least you have the Slowbro. I honestly would have loved for Blissey to be omitted from that piece of the draft. Grab Slowbro and Leafeon would have felt like a very confident option. And no way, does my pin? Oh. I was so excited. I was like, my Meta Rose pin, it's going to be real. But that's okay.
I'll take a meowscarada. I'll take a meowscarada, and I will absolutely take a Snorlax. Last time you and I were the ones who were able to cast rework respawn, and that Snorlax I was talking about so much. You got to remember it if you want to hear Snorlax poetry. That was last time. Well, maybe on the side will choose Snorlax. अरे तीसरा भाई होते मजा आता उधर हम वॉच पार्टी करते चीयर करने को भी नहीं है कोई करेंगे ना तुम्हारे लिए टाइम अरे तीसरा भाई के लिए करेंगे ना तीसरा भाई to Reggie. We're actually going to see the Zork on the other side, so the potential speedster switch is there. जैसे भाई नाचेंगे भी वही तेरा तड़पावे वाला स्टेप है ना Hold on. We might. Can we just stop? आता है भाई जसवंत को करने होश में आता है कि नहीं करने पता नहीं बेहोशी में तो दिखाया उसने वाला स्टेप Defender too often, it's pretty tough to make happen, but it is locked in. We're going to have the meowscarada and the Leafeon. इस बार दूसरे ने जोर उठाया भाई इसने Leafeon उठा दिया Fusion bringing their own Zoroark to the match today. Blissey to partner, and we of course have Zynos. ट्रैक्टर कैसे प्रेडिक्ट किया रैंक जैसा असर होता है ना लोग आज बल समझ गए Looks honestly devastating into the enemy. This Blastoise, if it ever gets to the power spike, which will be difficult due to the early game pressure that Leafeon and Meowscarada can provide, because I do need to remind everyone at home, this is the first Unite tournament you're tuning into. You probably haven't seen too much Leafeon because of how frequently it's banned. You're about to see why. That Pokemon is one of the earliest and fastest clearers of the central area. It allows it to be a threat, even while coming through the central at the beginning of the game, into a path 30 seconds, 40 seconds into a match, which is just unbelievably powerful. That is such a strong factor that this evolution can bring to the table. And we have another Pokemon similar to that in Meowscarada on the same roster. Yeah, I'm so interested in how this Meowscarada is going to do. I mean, knowing that it's Sherlock playing it, I'm assuming we're going to have a top path Meowscarada, but there's a lot of ways that they could split up the center area EXP, having two different evolutions, and then deciding where they're going to send all their early aggression, because this team is just early aggression in a nutshell. That is just so much of what it's going to be. Obviously, they're strong late as well, which is a great draft, but we'll have to see. Oh, I can't wait. Basically, two dive-centered compositions on either side. We're truly casting a LATAM match today, Wonder Chef. I am pumped to get into it. One side's got the double speedster, other side has that hammer and anvil of the Zoroark and the Inteleon. What a matchup we're about to witness. I can't wait. And I love the fact that we now get to see such a switch of which speedsters are being used on which side. So everybody just gets to show off so many different things. But starting off, we are, of course, going to see this currently Sprigatito up on top. Cutest Gen 9 starter, by the way. Absolutely agree. Exactly what I chose. So, all right, good. We are agreed, but look at this. Minato on the long-range invade, trying to keep tempo from evolving into that Zoroark and have them remain at the Zorua with the Leafeon double invade, though they abandon ship. And now you're starting to see the pressure that Leafeon can put onto a team early. Yeah, when I was talking about early aggression, that was exactly what I was talking about. We are going to FS Esports Zoroark, but you are in a kind of scary position. It is higher level than this Leafeon, but you get caught one more hit is not what they're going to let happen. Great dodge on the Solar Blade. Yeah, tempo. Is that the real Anna or the Nakli Anna? First engagement of damage as well. There's a lot of resources they don't have to utilize in the next team fight. Minato, though, is taking a lot अली भाई कल की तरह 2-0 तो नहीं करोगे ना? तो बुलवाई ने किया था ना मैं क्या खेला कल तुम्हारे साथ? ये परसों अरे पूरा गेम सोचते रहते हो बाद में मजाक उड़ाते हो ऐसा ही करते हो गरीब लोग चलता है अखिल को लेके 2-0 कर रहे हो क्या रह गया हम लोग पे मैं लॉर्ड अखिल अटैकर है यार मेरा ऐसा मत बोलो For the moment, the bottom path has been a lot more passive, of course, with these Pokemon that we have. There's not a true way, I think, to really aggress a Slowbro and Sobble lane too much, at least early in the game. Bottom path is always defined about your ability to get. गोल भाई ने तो 1000 गोल डाल दिए थे ऑलमोस्ट अगर हम बटन नहीं दबाते So they're going to be kind of standing on. क्या स्कोर रहा है लोग के सामने 2-0 0-2 I did my history. I know at this 0-3 but now we have another war taking place in the center of the map as that first round of birds at 8 minutes is able to be emitted. क्या खेलते हैं गोल भाई मेरे को तो लगा कि वही जा रहे हैं लोग मैं तो बोल ही रहा हूँ एपी ब्रदर्स भाई अंकु पीयूष ब्रदर्स नहीं रुकेंगे भाई एक लेन में डेडली डुओ है छोटा भाई है याद है As soon as it gets online, it's so tricky. एजी फॉर्चून लोगे तो 5-0 भी कर दोगे Yeah, and that combined with everything else. भाई काली भाई के साथ खेल रहा था ना मैं It's such a key part. एजी फॉर्चून का मैसेज आता है डिस्कॉर्ड पे बोलते हैं तुम्हारे अटैकर को रैंक में डिप दे के रखा है काली भाई है अटैकर रैंक में डिप दे के रखा है
3-4 बार हिट्टी और म्यू से मैं बोला प्रो प्लेयर है तो वो बोलते इसके लिए कोई टीम में नहीं लेता है भाई काले भाई का आवाज नहीं सुना बहुत महीनों से अरे आप बोलता है कुछ तो weird है Amazing heads up play from the defender. They see that red line of aiming from the snipe shot. They make sure that their teammates are not getting their scores interrupted. Fantastic respawn. And look at this, immediately transitions to tier 1 goal zone, taking the Regilecki. Of course, that is a direct benefit to take that tier 1 goal zone first, so they like got the points. तेरी फॉर्चून पर टीम में ले लो गाइस कोई हिडन सितारा है अगला There's a lot of pressure coming from Fusion, realizing that they probably were not able to देख compete in झूठ that बोल के झूठ वाली तारीफ भी कर दे टीजी फॉर्चून इसके बाद में टीम नहीं मिला तो तू ही खड्डा है Your Zoroark, there are few Pokemon that they can't win in a 1v1 battle against. भाई जंगलर चाहिए क्या C5 में The Zoroark is always going to be in the Power Goal 33 if they run into Evolution or even an Eldegoss just roaming the map, that would be free experience for them to take. So good adaptation by Fusion. They're certainly not out of this game. The early game has been all rework respawn, but the scoreline has been kept close, and at least their Zoroark is still doing well in levels. Yeah, we also, there we go, the attack coming out from meowscarada just to try to get out of there, and it's going to do a good job of it. Not a full chase down on the Eldegoss. Eldegoss can be a little bit scary by itself, but Tempo is definitely becoming kind of the powerhouse of the game. First level 10 on board, and they are just, wow, that was, where did it go? Oh, it was the, I got tricked by the double team, great. Oh no, double team illusion. There's a lot of trickery going on, and Sherlock is having a tough time defending against this goal zone. I don't believe they know Reggie's there, and they can jump in with a perfect lead play. Oh भाई 20 दिन में पैसा डबल कॉल आ गया It's going to take the KO. Incredible job from Kea and Tempo to work in tandem to find that one. And now it's up to Mewtwo to try to defend this goal zone, but they are working on borrowed time as Blastoise and Zoroark carve through him. Anemo and Tempo, what a duo! As they shatter Lord Shriek defender पे आ गया I think so We've got the fun fact in the bottom too. Not sure वो लोग कभी चल रहे try out से इधर Everything is gone, and it was Espion, which was earlier in this tournament. Right now, it's going to be the one defending on this tier 1 goal zone. As right now, we are seeing Sherlock chased down. Great way to evade, and I mean, really, you're right. It's going to be so tricky with those two fighting against each other. There's going to be a whole lot of dashing around, a whole lot of illusionary tactics. Well, the tough part for Scarada, in fact, is with the double team, giving Zoroark another target to reset their dashes off of, right? So using double team is actually devastating sometimes because all of a sudden, Tempo just gets free dash resets on the Zoroark and is able to chase you down to, essentially eternity to find that KO. So definitely Zoroark favored in that specific 1v1 matchup. We will see a lot of those immediate reactionary. भाई कोई शॉट आके मेरे से कोई ऊपर रखी गई चीज मांगे क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है तो मुझे ऐसी कलर एक्सपेक्टेड है बाय सोसाइटी लेकिन मैं छोटे आदमी से नीचे चीज मांगू तो मैं बुरा यही बोल रहा था दोस्तों मैं जमाल फूक के आता है मेरे स्ट्रीम पे one of the last ones in the game, Regilecki. By the way, girls, I am 6'2" and I hate anti-tate. We're seeing a few members from Respawn run up there to try to steal it back. They're going to get opportunity. User in timeout. Sherlock to take the last. Hey, that top G fans, top G fans. Towards this tier 2 goal zone. With their attempt to score as well, this could be massive to give Rework Respawn a lead at the moment. We're going to have Synons dropping the Inteleon Unite move to defend this goal zone. भाई ये तो कंफर्म बुक जाता है. बात रहे अन्ना इज हियर रे. Hello Anna, how is your duo practice going on? Blackbird is like you answer right. My goodness, this is still, I mean, even with lead changes, it's extremely close. 2 points so far with 1 minute left to go till the final stretch. 50 साल पहले निकल गया जेल से. Not very different either. Actually, I think it might be exactly even numbers. Court case चल रहा है खाली. One difference between the teams. So I expect that we're going to probably end up in a similar situation to the last game, which is great. These teams are such even matchups. You love to see it in a winners finals of one of the most difficult tournaments of all time for Pokemon Unite. Oh wow, Sherlock's going to try to chase down Tempo. Of course, the flower trick landed illusion cleansing that bomb above their head. So we were talking about trickery. It is going to be happening quite frequently. So we're going to carve through these wild Pokemon. नहीं है उधर है. भी बेटर है. Important power spikes. तो मैं
दूसरा छोड़ के नहीं जा सकता खाली I'm updated bro the top G in time 25 seconds till the final stretch final airing टोल में कब जा रहे हो भाई टोल बूट कैंप टोल बूट कैंप आप आ रहे हो क्या रोली पे गिरा दी विकेट मेरी मेरी विकेट गिरा दी ऐसे ही पूछ रहा हूं भाई मेरे को ना माँ बाप ने सिखाया दो सुपीरियर बीइंग्स बात करते हैं ना दो पाजी साथ में तो बंगाली को घोषणा बंद रखना चाहिए मैं कुछ बोल नहीं रहा करो भाई बात करो ट्रक तेल वेल कैसा भरना है बूट कैंप कैसे पहुंचना है जलंधर से मुंबई कौन सा रास्ता बात करो भाई लॉरी में आरजीबी लगी कि नहीं अभी तक लॉरी कौन सी कंपनी में है कितना में खरीदा है पैंसो द टैक्स भरना है कि नहीं बात करो भाई वाला रोड ट्रिप में सिद्धू मूसे वाला बजाने की शौक से बात करो भाई अरे quick meowscarada is going to set this up as a quick 5-4. You got to shoot where they are. From inteleon, and now that's the goal. Energy by naya Pokemon खेल रहे क्या गेम कौन सा है मेरा नो Mimikyu does get a double stun with that wood hammer. Unite move only lands on the dragon. A little bit but Bliss Assistance is going to grab that Blastoise. Now is Fusion's time to try to focus on this main objective. नहीं लग रहा है अरे ज़ोरो की अल्टी किधर है अच्छा उसने S1 अल्टी से बचने के लिए किया ये भाई बेसिक से मिला शायद डिफेंस करके रहे है किधर लो था शायद अल्ट भी है उस पे पता नहीं आ क्यों नहीं रहा देख बाजू में देख रहे रिवर्क रिस्पॉन्स वाला वो लोग आवाज कर रहे थे वो लोग को देख रहे सामने वाला को क्या लग रहे हैं उसका है क्या भाई मेजर है क्या मेजर है क्या भाई नहीं रहा उनको नहीं देख रहे भाई एक दूसरे टीममेट को देख रहे हैं मर रहे एक दूसरे को मुंह देख के अल्टी के बिना आ रहे हैं मैंने थोड़ा वो कर दिया गाइस उनीचान शॉट तो मारते करना था उसको बट घुस गया जोरे पर ये लोग तो एक दूसरे से स्क्रिम्स करते रहेंगे इसलिए इतना वो पैसिव वाला गेम था पैसिव वाला गेम चला पता है दोनों टीम को क्या ओके नो रजिस्टर टू स्क्रीन्स रैंडम स्क्रीन्स हो जाती है सर्वर पे भाई बाकी के तो मैनेजर रहते हैं बाहर की टीम से करना है सिद्धक भाई हेलो कराई वैसे करना है तो मैनेजर लगता है क्या हुआ हेलो मैं बोल रहा हूँ वो इतना मत सोचना स्ट्रीम में टीम डिसबैंड हो जाए मैं कहाँ कुछ करता हूँ भाई तुम लोग ही 2-0 करते हो अरे भाई कल 3-0 किया आज हमको भी करोगे नहीं 3-0 नहीं 0 मैंने 0-3 बोला दर्शकों के सामने अच्छा लोग बैट बीएम कॉकी बन के गए क्या लोग आके कितना मारोगे बोल के गुलबाई बहुत पाप लगेगा गुलबाई बहुत मार रहे गुलबाई ये 4 लोग ही लग रहे हैं स्टार्टिंग क्लाउन फाई सीडी सोल क्लाउन फाई तो बोली मत भाई आरएनटी ने लाइनअप ले लिया तेरी टीम को उठा लिया क्या हां नानी अरे आरएनटी ने क्या नाम है तुम्हारा भाई मिस्टर टॉमिक टीम टीम ही नहीं है यार एमकेएमआर बग है वो थोड़ा यार भाई नींद बहुत आ रही है आज बोरिंग मैच हो रहे हैं यार nowhere near close to being able to predict a winner. Like I said, this might be the closest set that we've had all day. I feel like everybody बंदा बोर मारा ना गाइस थोड़ा मतलब वो नहीं है अननोन टीम्स है ना it was all just about how each little thing went for every team and it was going very even. Like I said, the level leads have been non-existent at the 2-minute mark. The point leads have been basically non-existent at the 2-minute mark. It has just been this dead back and forth, which is literally nobody could guess what's going to happen. I mean, this is the first big opportunity for one of these two teams to throw out something super surprise. ये मस्त स्नाइप खाने गया Oh my gosh, I'm sorry, I just had यार लिफियन इधर स्नाइप खाया अच्छा उसके बाद वो इंटेलियन अल्ट लेके उसके पीछे चल रहा है ना Take a wild guess. It was the Zorak. Making sure that Pokemon was not sad. उसने स्नाइप खाया. Incredible jump
from Tempo, the player on your screen right now. That Zoroark like response pick. I mean, if you want to attribute this to sports or something like that, that's like the effect of your opponent went on a crazy run and you just dropped the three-pointer while looking him in the eyes on the other side. You can do the Zoroark, so can I. 66,000 damage, a scoreline of 206. They were getting value throughout that matchup. Yeah, so far, both Tempo and Reggie, both of them, when they're on the Zoroark, highest score in the game, potentially सामने डेल फॉक्स प्लेयर है भाई हाथ का काप रहा है मेरा मेरे को बुरा टाइम में कोई साथ नहीं देता क्या क्राउड है भाई बुरे टाइम में मेरे साथ नहीं देता ए जल्दी चालू हो गया मैच डैम बहुत गंदे हो बुरा टाइम था मेरा साथ नहीं दिया मेरा क्या भाई Well, that gives them a lot of opportunity to do something fun with the hands. They're going to initially go for the mimikyu, very solo targeted. On the other side, you've got to get the respectabots. Yeah, I was wondering. नहीं दिया यार टीम छोड़ के चले गए बुरे टाइम अच्छा टाइम पे क्यों रखा भाई मेरा पूरा टाइम में मेरे साथ नहीं दिया आपने कौन बोला ये मैं बोल रहा हूँ भाई क्या आप भी बोल रहा ना अरे नहीं ठीक है तो डायलॉग होगा बोला भाई लॉबी में बुला लो भाई 50-60 लोग जितने भी मतलब स्क्रीन पे चले जाओ गाइस स्क्रिप्ट करना पड़ेगा अरे तो बस माइक ऑफ कर देना अपना डिस्कॉर्ड वॉइस जाते रहेगा ये लोग का तो भाई रेप होते हुए थोड़ी स्ट्रीम चलते अरे इसका लैपटॉप पे तो वो चल बस एंड ड्रैगन के अलावा कोई ऑलराउंडर पिक नहीं कर रही थी टीम्स किधर आई मीन ब्लास्टर्स मेन है ब्लेजिकन आ रहा है रेवेनेंट पिक हो रहा है बस है और गैडोस हुआ पर बिगड़ गिर गई If you are a Crustle fan of Pokemon and you were just Hello, tournament, this is new to this year. Season 3, Crustle has a big one. Huge spotlight. We've loved all the Crustle action, so keep it up. We're going to see the Chandelure come out, which is pretty interesting since Inteleon has not been banned nor picked already. Glaceon as well. So with how well these self-fusion do with the Inteleon, they're like, nope, we're चंदू आ गया भाई इधर चंदू आ गया भाई kind of on what they're seeing. अरे ज़रा हो रहा अगर मैं स्क्रिम्स के बाद मैं तब को ज्वाइन कर लूंगा फाइनल अगर ना तो अरे बीच में वेलो खेलने आ जाना ना मेरे साथ भाई कितना पैसा कमा दो यार सिंगर इतना कुछ नहीं ब्रो अमृतसर में खरीद लिया होगा अभी तक फ्लैट नो ब्रो That's actually something Dodrio cannot do. नहीं हुआ चलो भाई वल्लाह बीबी First of all, can I just note, for anybody watching Reggie, assuming Reggie is mainly just a speedster player, Reggie does have an extremely strong पंची आ गया पंची आ गया फिर इस पर भाई इंडियन और क्या वो ये फ्यूजन है ये लैटिन साउथ है मैच में अपडेट आएगा ना आई डोंट थिंक कुछ आएगा मैं ये टूर्नामेंट तो खत्म हो गया फिर ही कुछ पता लगेगा मैं एक सेकंड पानी वानी ले आया मेरा पानी खत्म हो गया यार one thing that I am going to be looking forward to in this matchup, Wonder Chef, is Dodrio versus Talonflame top path. Are you kidding me? Very, very interesting. Both of these Pokemon are going to be stacking as well with the attack weight. So squishier options needing to get to those goal zones and dunk in some points. And you're right, we could see some lane assignments change a little bit, but both of these Pokemon need attack weight stacks. They're going to be forced into the early game to find small goals. Yeah, that is a very strange. This is a generally very strange meta. I was saying this is the first opportunity for some unexpected picks from these teams, and boy, did we get a lot of them. Again, I'm actually, despite all the weirdness, I am mostly looking at this Sylveon to see what it brings to the table that is so highly valued, that has been banned so many games, and then finally unbanned, and then first picked. So we're gonna have to see. We're at game 3, 1-1 winners finals. It's time for one of these teams to make it into our grand finals, but only one can make it. All right, that winner's side advantage so important. We've talked about it at length, but now we are going to see who can take it out. Glaceon going to be the initial Pokemon into the top path, allowing the Dodrio to clear some wild Pokemon in the central area first and make sure they can add an extra head to their repertoire.
Yeah, I like that a lot. Just being able to kind of say, oh, you know what, we're okay. We're going to split this up so that our power spikes hit exactly even. Really, I would say not aggressive top paths quite yet, though. We're not going to have the immediate, like, oh, yeah, we're just going to have an Espeon just jump up, and all of a sudden there's a bunch of KOs. Fletchling does do a lot of damage, though. With that acrobatics, they can dive in and take some of those wild Pokemon that you just saw there. A lot of the contestable wild Pokemon going in the favor of Rework Respawn, despite having a Glaceon, that level 4 power spike, on the other side. But all right, this is where Fusion can really tip the scales. A Dodrio already double buffed up, both red and blue, has found their way to the bottom side. Steven checks one of those pieces of tall grass, but they have no vision yet. They have not checked that top Elbush of the Ray Pit. Ooh, and here we go, finally going in, and it's going to be Tri-Attack off the bat. Misses the first few hits, does manage to land the enhanced auto, which is not going to be quite enough to get the full KO. Could have gone a whole lot worse, and so Rework Respawn got to be pretty happy about that, kind of accidentally dodging that Tri-Attack. Yeah, dangerous territory. However, with Tempo playing on that side, it allowed Glaceon to get a lot of the wild experience in the middle with those birds spawning in, and of course, slow down Sherlock on this Talonflame, who is still at the Fletchender spot right now. That's a little bit tough. We've got to see that pop off. But also on bottom, we're still looking at a Litwick, I believe. Or no, maybe it is Evolve. But we are going to see at least the first push to try to get a few points in that 14. Oh, just barely stopped. The AoE damage coming out from this Fletchender is going to be very, very nice in defending these goal zones and making it hard for really anybody to score. We're at 0-0. And then Nemo has built this Glaceon to be so counter-dive in every single way, right? You have the Snow Globe passive that we talked about before, but they have gone Icy Wind as that main build. They don't want these shards to be ignored. They're just going to go for that burst damage. So Icy Wind going to find that KO. Sherlock going to be sent back to base. Yeah, and also there's a lot of manual blocking potential from the Crustle, I believe, so maybe they just want to make sure that it doesn't end up happening if they do need one of these back targets, because there are some very juicy, squishy birds on the other side that they are definitely going to want to burn down. But in the meantime, we're playing pretty safe. We have scored a few more points on both sides, but everybody just trying to hit some more power spikes right before we hit these first Reggies. And of course, this center EXP is going to be really nice, but again, not a full overcommit for anybody. Man, the more this match goes on, the more I'm really falling in love with Fusion's composition. I think this Chandelure with Flamethrower, while being a risky pick, is stuff to land on the Sylveon or even the Talonflame, but everybody else is pretty easy and a devastating attack if it does land. Of course, Flamethrower resetting its cooldown if you hit the explosion hitbox onto any Pokemon, either wild or enemy. And we're just going for this last hit here, and it's going to be the Glaceon going to last it on that Regieleki. That is huge for Fusion. They're going to be trying to push this down. The defense is pretty strong here, especially with the fact that Reggie's going to be able to kind of back up. If they can get away unscathed, then they're not going to be able to. A full dive from Fusion. They're going to try to make sure that nobody's out of there. A ton of points on the ground as well. They can set up, some sort of overdunk. They're getting a little bit more, a bit at a time, just making sure, getting those extra stacks. And eventually this is going to go very much to them with a gigantic overdunk of, I believe, 25? Or wait, did they do wrong math wrong? No, that was 25. Yeah, honestly, just get stacks in the Dodrio at any point you possibly can. That is going to be so important. On the other side, only 13 points scored in total. Reminder, Sherlock is running the attack weight on that Talonflame. So having no attack weight stacks on their bird of choice. I believe the Decidueye has gotten some, though, on the bottom path. Reggie is doing quite well in levels, almost at that level 9, but Tempo is at level 11 right now, shutting down so many targets. You got to see a really cool maneuver before with that jump kick, and you see it again. Why not use the Talonflame like a Goomba and just jump stomp over them? It's perfect. Switch places with them, but this is a lot of birds trying to find a lot of other birds. Hello, boys. And right now I'm telling you, the three-headed bird is stronger than the two birds with singular heads. It is finding every target. What is the notification? नहीं यार, सोचा एक ही horizontal stream है तो एक ही इधर कर लेते हैं ना. Twitch पे कौन आता है अपने को देखना anyways. I'm surprised that Sylveon managed to be quite so Me no, bro. But in the meantime, we still see so much aggression from Fusion, not only on the top here. Nemesis जीतनी चाहिए. ना. NAU की विकेट हो, मजा आएगा. मजाक भी नहीं कर रहा. बहुत मजा आएगा. जिनका टूर्नामेंट था जिधर का उनकी तो विकेट हो गई. और मैं दिलवा दूं.
दिलवा दो getting stacked up at this point, and Reggie is almost at level 10. These spirit shackles are threatening, but we haven't even. फ्रूट खा लो guys. Make sure to stay hydrated and eat plenty. Right boys, मेरी तरह पतले मत बन जाना. Behind the fight, if there is no super pack far behind the fight, like you are just the target the entire time, and maybe Rework Respawn can make something different happen if they can group up and get into one big coordinated team fight. But at the moment, there's so much pressure on them from Fusion that they're not even close to being able to get that situation. They are just playing defense. मैं सपोर्टिंग काफी चांस बाजी. Damn, मैच उनका नहीं है बट अभी के लिए यार. थोड़ा नीचे करना पड़ेगा कैमरे को. रुको रे. ज़्यादा नीचे नहीं भाई. औजार नहीं दिखना चाहिए. Oh, this better. This better. And this early game lead is doing wonders to help with that. तो exactly इसमें पूरा. पंची आ गया. अब ब्रेबर्ड है क्या फ्लाई है ये? एक पंची तो मरा हुआ है, दूसरा पंची जिंदा है. ये रेजर लीफ है नहीं शायद से. Members in that very respawn as they are coming back into the map, but still Fusion again never punished for these pushes onto these overall stretch. ठीक है यार. वेपन दिख जाएगा ये. अरे नहीं दिखता भाई. बकचोदी कर रहा हूँ. In the middle of that fight. Okay, finally a KO, a return KO. Obviously the most important target as well for the return EXP. That's going to be a first great step, but again, they are down. चढ़ने वाली बात दिखा. पंची दूसरी बार. Attention screen matches. We've seen, which is so surprising with how close this set has been. Yeah. डोडरियो भी दूसरी बार दिख रहा है शायद. पहला उन्होंने दिखाया था ओशियाना वालों ने. So a much mightier threat than previous. They were struggling to get to double digits in the first place. Boot camp नहीं करते हो भाई. Boot camp पे plushie ball कहाँ से आ गई? In this set is going to be taking a page out of Fusion's book and trying to chase away and steal a blue buff if at all possible. Takes the fly damage towards the Dodria, which will be giving up that blue buff, but really that was their only means of escape, and even that was shut down. Fusion with a great collapse. Yeah. That 1v1 was looking okay though. Honestly, if they can find a situation, Rework Respawn can find a situation where they can maybe catch out like the Dodrio early in this final team fight. पूरा aim कर दे रेजी भाई. पूरा aim कर दो. Shield डालो. To basically get a full team wipe. We're 45 seconds away, and it doesn't look like they're going to be catching up on points at all. So they've got to get every member of their team essentially to score. And even then, if there's a counter score and every single member of their team dunks in a Hunterburger, they still lose. 400 points for Fusion. One goal zone remaining for Rework Respawn. They are going to still try to fight over this objective. Fusion might let this one go through. That being said, we actually got Dodrio. सिल्वियन लेगा तो दर्द तो होगा. देख मेरे को मजाक नहीं कर रहा. वो मेल्ट क्यों कर रहा था? मेरे को समझ नहीं आया. Why was he melting? जल्दी दिलवाना चाह रहे थे, फोर्स कर रहे थे उधर. वैसे का कुछ सेट नहीं हुआ है. What the hell? वैसे मुश्किल ही है 13 गोल. मरना पड़ेगा डेसी को चेक के लिए. At least that's the necessary thing. We do have the knock. The Unite still available from the Decisive. On the other side, the slow beam. We've got the Chandelure. You've got to at this point. It's going to come down to a last hit, and you really truly have to win this. But there's so much. Three members down from Rework Respawn. Only 2 left. It's going to be tough to make happen, and that's not even going to be an option. As Fusion will get the full team wipe, take Rayquaza with already a 350-point lead. It's only going to grow. Fusion from last ये क्या बकचोदी करी? with a dominant win in game number 3. Game 1 and 2. ये क्या फाइट ली? एक दूसरे की शक्लें मत देखो. सबने एक साथ पुकारिए गाइस. मत देख एक दूसरे की शक्लें. पुकारिए. Fusion is one of our grand finalists now, boys. स्वागत हो इनका. Latin America South. Latin America टीम इतना आगे नहीं आई मेरे ख्याल से, right? इतना आगे तो at least. Is just certainly unnavigatable from global Respawn. They will be headed down to your losers bracket. Fusion will be remaining in the grand finals. अब ये लोअर फाइनल में गई. Rework Respawn. If the other team kind of just stops playing, but even at that point, it doesn't look like this is possible. The players have somewhat ended their attempts to even get the push going, and not even a single tier 1 goal zone going down. Rework Respawn completely shut out. Maybe they can get one right before this ends, but even once again, the talent is going to be going down. So क्या बात है विजीत भाई, क्या स्वागत कर रहे हो? अपर फाइनल में कौन? As we said earlier, that has repeated their wins in the monthly finals so far in this UCS season of 2024 is going to be the only team left in the winners at the end of this bracket. Unbelievable tempo. Just having
अभी भी जाकुली amazing performance from them, honestly, lights out. Hello Kaniki bhai. In that game number 2 when they grabbed that Zoroark, and then in game number 3 they're Kaniki bhai हल्का सा पीछे करना और टॉप राइट देखना स्क्रीन पे क्या लिखा है. Congratulations to Fusion for being your first team to enter the grand finals. हाँ Kaniki bhai हल्का जब मैच चालू हो रहा है ना, मैच चालू था जब मैच का स्क्रीन था, उस पे जाओ टॉप राइट में देखो कुछ लिखा है. Which is fully understandable. That set was so incredibly close until that final game. ठीक है Kaniki chan. It seemed like all of the surprise draft choices went ये to भाई the म्यू favor गीला हो गया इधर से. पानी में नहीं गिर गया. Their opponents, I'm going to say, obviously. They went for some too, and honestly, they looked okay, but not quite enough. Yeah, this trio, I think, just too Fusion has done it, boys. मोटा-मोटा खेल के चले गए. That I believe I got to have was too good of an option in that Decidueye. How the fuck they choose Desi instead of जंगल में ले लिया शायद, but हाँ, I think roll flip करने का कुछ ऐसा. Like we mentioned, Tempo going to be moving, her Tempo But Fusion. वही पढ़ाई करनी है, finally let's go. Rework Respawn will ये be वो going हमें down to पास the है, ठीक है losers भाई. bracket to क्या await पास the करना है भाई? winner of is going to be Nemesis and of Kabi-chan's. Yes, give it away. I think 4 teams left in the bracket. Latin America South is the only team left in the winner's side. Down in losers, we've ये दुविधा में लग रहे हैं. we've got North America. नहीं ये तो फ्यूजन है ना. So But this नहीं. has been such an रिवर्क evenly रिस्पॉन है split शायद. tournament. Every region is so close, but let me tell you right now, one of these regions is telling us that they are at the top, and we're looking at them right now. Oh man, I can't wait to see this. Yeah, fusion है भाई, मेरे को confusion है. I think fusion है. I mean, they're I used think to ये winning fusion है. tournaments. Why not another one? Why not one on person? Let's take a look. मनीष भाई ढूंढ दो. With 8 KOs, Zyna's close behind though. That Chandelure early game in the bottom side was looking fantastic at 6. हाँ rework respawn थी actually. My bad. नहीं sorry, fusion नहीं थी. My bad. भाई damage ही नहीं है इनका कुछ. Crystal 30, Desi 45, 31, 30, Tail का. Sylveon Hyper was इसके इतना कम damage. Blissey slow bro थे भाई. कुछ भी obviously इतना फास्ट जरूरत चलाने के लिए लगाता था. देख लिया चलो. देख लिया. अब बताओ upper final क्या होता है. Especially when you have a threat that's diving you so often. Might be nice to have that Espeon Unite move. Rework Respawn definitely going to be going back to the drawing board for their match later today. Fusion on the other hand. थोड़ा बहुत अच्छा खेला मैं देखा ही नहीं यार. नींद में हूँ. अच्छा मैच चाहिए. आँख खुलवाने के लिए अच्छा मैच चाहिए. And every team that's going to fight these two teams is actually one of the most low-key. Fusion Latin America से yes. और Rework Respawn भी Latin America से South and North. Sorry, South and wait. North South whatever. North South. Control the entire pace if there was any species on the other side, which is maybe a reason why we ended up seeing something like the Talonflame. It's a little bit harder to lock down with just one slow beam. We went for a little bit more range with the Decidueye, and it was just kind of what shaped अब देखना है Psycho Zoro केस का. I think it's super cool. So Slowbro, Nemesis अच्छी है. was it Slowbro? I think that said Slowbro was like kind of like the secretly best character. Maybe true. That is true. All right, well let's Nemesis already एक जापानी नहीं जापानी तो नहीं मतलब एशिया की विकेट गिरा चुकी है. क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? I am here with Tempo from Fusion. Big time win. Next match Nemesis versus Kabi-chan's. You've just punched your ticket to the grand finals, my friend. How do ये रे you ब्रेक feel? को लेकर आता हूँ. Bueno, acabas de ganar una posición en la gran final. ¿Cómo te sientes? Bueno, emocionado por haber llegado a la gran final junto a todo mi equipo. Creo que esta es la revancha que tuvimos por el Mundial de Londres, al cual no pudimos asistir. इनमें से कोई नाइट से जोरो खेलेगा क्या? नाइट से कोई नहीं खेलता इधर. इंटरनेशनल में नाइट से चलता भाई. काइंड अटैक की जाता. वो रीजनल में चल जाता नाइट स्लैश भाई. क्योंकि उधर वैसा ही है. मोस्ट जापान वाले खेलते हैं नाइट स्लैश. I don't know what to say. I just feel very emotional right now. Well, we're going to try to get you to say a little bit more. In going into Game 3, what was your strategy? I mean, you brought out the Dodrio, the Glaceon looked great. What was your strategy for Game 3? Para el juego 3, ¿cuál fue la estrategia? Traiste el campeón y el otro, pero ¿cuál fue la? भाई ट्रांसलेटर की आवाज सुनी क्यों लग रही है भाई किसी फिल्म में? फिल्म में डॉक्यूमेंट्री में सुनी लग रही है. ट्रांसलेटर की आवाज मजाक नहीं कर रहा. De Dodrio, ya que se nos dan un poco mejor los ágiles. भाई ये वाले जो की तरह मत मारो, चिल करो. Ágiles, pero en lugar de mandar al Dodrio en la top, revisamos que tenga un confort o una línea más cómoda hacia la jungla. पेंटा की ज़्यादा चलता है. Ayudándonos a ganar la partida, ¿no? भाई शश नहीं चलेगा.
So we ये use लो the Dodrio on नेमेसिस का भी चांस अब जो भी नेमेसिस का भी चांस है जीतेगा वो जाएगा लूजर फाइनल में रीबक रिस्पॉन के अगेंस्ट एंड जो जीतेगा और फिर ऊपर जाएगा ग्रैंड फाइनल में और अगर जो नीचे से आया उसको जीतना है तो इनको 2 बार हराना पड़ेगा फ्यूजन को ये बकवास स्किप नहीं हो सकती कि भाई तुम्हारा अपने लिए बकवास है उनके लिए मूवमेंट है उनका भाई Yeah, so that we could use their own weakness on that. Okay. Well, let's ask one more question here. You were in the grand finals. इनका ट्रांसलेशन की विकेट गिर रही है. In the grand finals to crown yourself champion. Who do you want to beat in the grand finals to become AEOS Cup champion? Bueno, están en la gran final. ¿Quién quieren jugar contra en la gran final para ser el vencedor? Me gustaría enfrentarme al equipo de Nemesis. Es un equipo con el cual hemos estado escribiendo bastante tiempo. Nemesis बोल दिया भाई. काबिचान नहीं बोला. Bastante, la verdad. Me gustaría topármelo. We would like to play against Nemesis. Yeah, we have नहीं been था. training against them. ठीक है यार. That would be great to काश कम्युनिटी में जाती है विकेट गिर जाती है भाई वॉलेट NA fan myself, I'd also like to FS see पर you this play player last against hope. Nemesis in the grand finals. One last thing for all the fans watching Fusion at home. Couple words First for translator them. overload. Sorry भाई. Una última cosa para todos los fanáticos y los apoyadores de Fusion en casa. ¿Qué quieres decir ahí? Muchas gracias por estar viendo la transmisión Sorry, y por भाई, माफ कर दो apoyarnos उसको भाई. en toda la fase del torneo. Y nada, que disfruten de lo que resta de बैटल la कब स्टार्ट competencia, होगी इंटरव्यू के बाद हल्का ब्रेक आएगा so much उसके बाद स्टार्ट for होगी supporting and watching us इस साल लास्ट पार्टी मुझे नहीं throughout the पता भाई tournament, and बताओ मैं I जो hope कितने you कौन सा enjoy मैनेजर what is left of the tournament. Well, we रिवील still तो have a किसी का नहीं great होता है भाई show. देख That's Tempo. I'm रिवील तो Snacks. किसी का नहीं Back to होता the desk. Let's कुछ get भी this कर thing लो going. हर कोई बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट Thank होता you है so much. Great to hear from Tempo, and after such a brilliant performance on stage as well. You can see the emotion. They're excited. They're happy. How could you not? ज़्यादा नहीं be मिलता. after a showing like that. Yeah, and it's so wild to hear how much that they train with Nemesis a lot, because that means that these 3 teams, everybody here except for Kabichan's, has trained together, which does make sense, right? I mean, LATAM, North America, not the furthest as far as ping. It's not as bad as like. कितने मिनट लगेंगे तब आऊँगा 10 मिनट मिनिमम Clearly, I think any team needs to be a part of that group if they want to, if they're in that area. It's good training team. Really good. Yeah, I think Fusion primarily playing out of Peru. 10 मिनट तो I think लग ही जाएंगे. So they are always trying to look for any tournament or any opponent they can have. I'm sure if you talk to a lot of the teams in this top 8 and you say, who do you practice with? Always Fusion will be coming up. Teams love screaming Fusion, and Fusion loves getting as many screams as they possibly can. And so far, we're seeing the results of that work, the practice paying off up into this point, because they are our first grand They played good anyways. काबिचांस को टक्कर उन्होंने नहीं दी है गाटलू ने. और किसी ने नहीं दी. हाँ शिंगड़ी लोग ने दी है एक्चुअली. बट काबिचांस को अच्छी टक्कर दी है इन्होंने. गाटलू लोग ने. काफी ऑलमोस्ट सब मैच किया है. टूर्नामेंट के 2 बैनर दो बैनर sufficient considering how many Pokemon are in the game right now. 2 wins are more than sufficient as of now. Some pretty big changes, and that's really what I think pushed Fusion far ahead. Yeah, some really sick play to K there, by the way, in that last clip on the Blizzy. They actually go for the egg bomb, and then Zoroark fakes scoring, and then attempts to actually attack and buy time for K to score. So just really good coordination between those 2 team members. You see the Rayquaza being knocked out in that second game. And having, of course, these chase downs of Rework, Respawn, and Fusion were tied up 1-1 in this final moment. And Rework, Respawn came with a very creative, a little bit strange draft, and it felt like Fusion had that comfortable spots and definitely walked away with the win, clearly. Yeah, I think maybe there was a lot of focus being put on the Chandelure, right? We saw the Chandelure picked, and then immediately saw both of the birds, right? The Decidueye मुश्किल है भाई. and both of them extremely strong. काबिचांस का मैच इसके बाद ही ब्रो. ये ब्रेक के बाद जो भी आएगी ब्रेक उसके बाद चालू होगा. Hello सोनू भाई. In the end, I mean, obviously it was a problem, but kind of enabled by the rest of the problems. This was the problem right here. Tempo. Yeah, Tempo running the attack weight, charging charm, and Low guys. Stone. So the second Bahubali 2 आ गया. held items, giving them extra move speed, something that Dodrio absolutely adores.
source, and has a ton naturally, but 69,853 damage कौन on this जीता फ्यूजन? Pokemon Yes. is so fantastic. Try attack, great, getting those extra टेम्पो boosted कितने टाइम से autos खेल for रहा है that भाई? big सीजन 1 damage राइट? moment. सीजन मतलब Honestly, वो the पहले jump साल से kick ही है. play was a highlight reel in itself. Being able to get extra KOs, dodging key abilities by using the jump kick into enemies or even objects around the map. Really, really sick to see. EU eliminate हो चुकी पूरी. Zoroark in that game 1 and game 2 about that high Asia गया. expression Pokemon. He can just tell the difference between the top players and everybody else. That is definitely the same with Dodrio. Extremely strong player in tempo, very similar to our co-captain. 2 EU, 2 NA. Exactly like Sprinkles. But I gotta दो say एशिया, too, दो I just gotta लैटम. comment again on this again. Exactly what you said with the jump एक kick. एशिया It बची, was good against जापान को 3 अगर Pokemon. इंक्लूड It's करें great एशिया में. against Sylveon because you get behind the दो high लैटम level, बची हैं of अभी. course, against the Talonflame because you kind of 4 टीम बची है past ना. them as they're trying to dive you. 2 EU which आउट is हो up चुकी, many एक NA times. बचा है And then it's strong नेमेसिस. against the Crustle because you get the Rock Tomb and you're like, I'm getting out of here. I'm literally just jumping नेमेसिस away. बची And NA I से. think that was very, very smart. काबिचान ने It was विकेट गिराई awesome. तो Of course, NA they're भी gonna be आउट. playing later today. Our फिर next होगा matchup is going to be जापान Nemesis versus वर्सेस Kabi-chan's. We're gonna have that one right लैटम after में. this. पूरा लैटन अमेरिका की बेस्ट टीम दोनों साइड की. जस्ट नाउ के क्वेश्चन बाय द वे. रसगुल्ला या गुलाब जामुन? रसगुल्ला. मी काइंड ऑफ a रसगुल्ला guy, but I would happily have a gulab jamun as well. Both are kind of favorite. इंडियन डेजर्ट में काजू कतली, रसमलाई, फिर रसगुल्ला, गुलाब जामुन. अरे लिचोंग भाई, क्या हाल चाल लिचोंग भाई? लॉन्ग टाइम नो सी. सूंघ दे भाई. ये क्या सूंघना क्या चाह रहा है उसका? ये गलत जगह पे हाथ डाल रहा है, गलत जगह पे नाक डाल रहा है, मजाक नहीं कर रहा. इनके अलग अलग शो चालू है. व्हाट द फक. ये तो वो है ना टेलीपोर्टर एरिया 0 का. ना उनके लिए बुरा अच्छा खेले कोई ना. जी होगा भाई. और कुछ दूसरे को बहुत अच्छा ही खेले भाई. फिर भी दो DLC आगे दोनों ले लिए मैंने. मुंह की कमर तोड़ दी. कहाँ भाई? नेमेसिस का मैं तो नेमेसिस वोट कर रहा हूँ आई गेस. बट काबिचान आल्सो सुपीरियर. नेमेसिस अगर ढंग से खेले तो नेमेसिस जीत जाएगी. देख नेमेसिस बकचोदी कर देती है बीच में. अगर दिमाग से खेलेंगे तो जीत जाएंगे. दो मिनट और. काबिचान का साइको जोरो आ गया. शिंगड़ी के जोरो की भी तो विकेट गिराई है भाई. शिंगड़ी के जोरो की भी तो विकेट गिराई है. इस वाला फॉर्मेट मैच को इंटरेस्टिंग बनाया था. यहाँ कुछ मैच नहीं, इधर काफी मैच ट्रिप में हुए ना. और मैच मेकिंग ऐसी हो गई वियर्ड. अच्छे मैच तो पहले हो गए थे. टॉप एट भी उतनी इंटरेस्टिंग मैच नहीं जितना ग्रुप स्टेज और उधर थे पीछे. ACL है भाई. ACL नहीं बट वो फॉर्मेट ACL में वो टेस्टिंग के लिए रख देते हैं भाई. सिंह भाई को तो इसमें मैं पहली बार जरूर खेलने देखा. बट खेला तो अच्छा ही खेलता है भाई. पहले भी टेराकिन इतना गंदा क्यों दिख रहा था? लेजेंडरीज छाकराम क्यूरम रेशीराम क्यूरम ने फाड़ी थोड़ी. इतना कुछ है क्या DLC में? बाप रे. मोटे मोटा कंटेंट है DLC में. तो लेनी पड़ेगी क्या? आज तो मुझे नहीं पता. आई डोंट थिंक वैसे कैसे बात कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए. इनके इधर तो सब चालू है नॉर्मली है. देयर इज नो नीड फॉर एनी अनाउंसमेंट मोस्टली. अरे ये स्टार्टर्स भी आ रखे हैं क्या यार? ये चाहिए मेरे को. इनफर्निप चाहिए. ये ओगर पॉन है ना?
ये राइकू का उधर, ये कोबालियन का प्राइमल। चलो भाई, पीओ को वो सब लोग करके आ रहे हैं, मुझे बता दो। बैक सीट तो करना है आधे बंदों को। और शिवा नहीं खेलते? नहीं कम खेलते हैं, स्ट्रीम नहीं करते। We are back. Only 4 teams remain in our tournament, and North America and Japan are 2 of the regions. Nemesis versus Kabi-chan's is our upcoming match for our losers semifinals elimination game. I am Zoinks, this is Wonder Chef, and we have an absolute gigabanger of a game coming up for you. That's right. We are now in the final stretch of this tournament. Every single match will be an elimination match. 3 teams in the losers bracket, 1 team in the grand finals. The only chance is an elimination is if there is a reset. But right now, we are going to have one of these 2 regions disappear from this tournament. Nemesis coming from North America. यहाँ तो इन्हें निकल रहा है, यहाँ जापान निकल रहा है. Open bracket up against Kabi-chan's from Japan. And both of these teams starting today in the losers bracket, able to take down their initial opponents, and then of course take down whoever was able to fall towards them in the bracket from the winner's side. These teams seem unstoppable for their own reasons, kind of to each unto their own. However, Kabi-chan's has been unbelievable with their Dragonite play and Trevenant play, but Nemesis has had moments of their own. This is going to be really, really exciting to see. Honestly, a lot of questions into this game in the drafting phase. Is someone going to ban the Dragonite against this team? They should. Most likely they should. And I do hope we get a chance to see that. One thing to note is that it's very interesting, right? Kabi-chan's, again, coming into this tournament is maybe the favorite from the majority of people, or at least tied for. And they only lost to 1 team, Shin and Rode, who lost in turn to Nemesis. So the only team to beat Kabi-chan's also lost to Nemesis. Do you get that sort of like, oh, we beat them, they beat you, so we can win? The transitive property. I don't know the Nemesis. I mean, this guy idea by parents were. Can't blame them. Going to be following it, but these are going to be the mainstay. Team Kabi-chan's not their player pictures, but we will be getting them up. We're getting a lot of camera shots of them momentarily because they're worth it, honestly. This squad is so good. ये विटोफो है पहले पे, उसके बाद ये केटा, फिर बीच में था नोडा वाजिरो, उसके बाद रॉम होगा आई थिंक, एंड फिर बैठेगा अपना वो कौन बचा, टमाटो. एंड के प्रीफाइनल होंगे नेक्स्ट वीक से आई थिंक सो, बट वो वॉच पार्टी नहीं कर रहे हैं. ये सब वॉच पार्टी इतनी वॉच पार्टी नहीं होंगी भाई. टायरिंग रहता है वॉच पार्टी. ये तो इसलिए करते क्योंकि मतलब ना मोटी टीम्स हैं, बड़ा टूर्नामेंट है. Loud all day for Nemesis. I mean, they are just a fun team to watch. Yeah, trainer. Currently one of the fan favorites, and boy, they have, like I said, certainly earned it, going undefeated in the open bracket, defeating so many well-known names today. There's just so much that they had to do to get here. Yeah, this is the Kabi-chan squad we've been talking about all along. Vajiru. Opportunity to interview Noda on stage a match ago and just ask them about their communication and their secures. And I asked them about that question specifically because I was watching Kabi-chan's play both in the group stage yesterday, and their communication is unbelievable. The calls and secures are perfect. There's no Nemesis versus Kabi-chan's. Nemesis purple side any team, Kabi-chan's orange side. Japani. Dragonite ban! Nemesis starts it off with the Dragonite ban. Yeah, speaking of secures, you know, you're talking about how strong. Either Joro is coming or blaziken is coming, guys. But the I like that ban. Elda bhi le liya. Nice. Extremely a big fan from Nemesis, especially with Rex's playstyle, liking to play a lot of just off the beat. गुल्ला बैटर भाई मैंने बोला मैं दोनों एक पहले गुल्ला ज़्यादा खाता हूँ बट गुल्ला दोनों अच्छा लगता है. वो हम लोग लेंगे नहीं तो मत लो यार. No. Support slot. We give them some options, but yeah, actually this is the one that I would recommend. Let's lock down that. दिमाग लगाया. Chance goes with their draft and then respond. Right, we got to see how they can flex around with their support. वो तो पक्का लेते हैं लोग.
we've got a few different options kind of coming Blaziken? in. This is big. Okay, the immediate switch to Blastoise. That's going to certainly be a safe pick, but the Blaziken very early on. Okay, so the Blaziken going to be locked in, taking both of Metallic's mainstay options away. Their Blastoise and Blaziken are going to be gone. I'm very, very curious where Metallic is going to go. We're going to save that option for later in draft, as we're going to have the Mew later pick कर सकते हैं, अब इनको open है option, but मैं भी wait करना चाहते हैं उनके final pick का. Good one. I know we haven't gotten to see the Blaziken play very much from them in this tournament, but if you were watching Asia Champions League, you are well aware of the Blaziken dominance this team is capable of. ड्राइवन जा सकते हैं, कैरेडोस अच्छा है. अगर जंगलर 4 का लेते हैं तो कैरेडोस अच्छा है. सरीना डिफेबल इनटू प्लीज नहीं, सरीना नहीं, सरीना नहीं, सरीना नहीं, नहीं 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 टैंकी ले लो. यस ट्रेवेनेंट ऊपर बेटर ऑप्शन था ना. नहीं नहीं ऊपर हमेशा बेटर ऑप्शन नहीं होता भाई. घर बेचता हील होने के लिए, इसका मतलब नहीं हील अच्छा है उसका. फाइट के बीच हील और फाइट के बीच डिसेंगेज होके हील अलग चीजें हैं. Tomato's response is going to be on that. I know, Travenant yes, can help countering. यार सिंगल से थोड़ी काउंटर करना है उनको. टीम फाइट है टीम भाई. हाँ मैं जानता हूँ सपोर्ट कर रहे हो, बट इतना भी अंधा मत करो यार. Come on, be neutral. I do love the fact that I'm assuming going to see the top path. Trevenant though. अभी भी हाइड्रो स्पिन जाएगा I guess. The picks for it. हाइड्रो स्पिन नहीं जा रहा है. जोरो भी अच्छा था. Blaziken kind of अच्छा ही है. जोरो अच्छा है, but सपोर्ट में नहीं है उनके पास ऑप्शंस. कॉम्पी लेंगे तो इनका ओवरऑल गेम फक होगा. इस समय में नाइस डिसेंट चल रहा है. And Curse Bangle, one of the only options to slow down the immense healing that Clefable has access to. You can get that. नहीं वापस ड्रैगन हिट आ जाएगा रुका भाई. Healing stuff. एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड रुकना. A really key item in this matchup. Yeah, so do we have to assume it's going to be Curse on the Trevenant? I think so. I think so. Against this team, against Kabi-chan's, it feels like you want more secure options rather than less, right? And that is going to give you another opportunity. Snipe shot from Inteleon, or I imagine it'll be Icy Wind from the Glaceon. All will be options. But here we go. Loser semifinals, elimination match. The last team from North America, the last team from Japan. Let's get into it, Wonder Chef. That's right. We're going to go down to 3 regions after this, but I think both these teams want to be that region that stays in, and we do get to see where everybody's going. The torch will be in the center area. Very good call. कौन जीतेगा वोटिंग कर दो. Kekata is going to be bringing the Blastoise into the top path. Looks for that secure. I believe that was given over to Rex, so Metallic will at least have AEOS energy in pocket to get an early stack. I believe their focus band has already been procced, but the passive of the Trevenant has not. So at the very least, they have that option, and there it is. The final focus band healing going to be coming through. All the resources gone for Phantom. They're going to try to make the escape. As Noda was going on the in. I don't think focus proc हुआ होगा इसका. अगर पैसे भी नहीं proc हुआ तो focus कैसे proc होगा? वो पोशन था उसका I think. पोशन है ना Trevenant. Focus नहीं proc हुआ. They did manage them, but only one punished, the other one not. We're actually going to see, by the way, the Blaziken go down to the bottom path. In fact, we were going to see both center area Pokemon go down to the bottom path. Read अच्छा कर लिया I think. I think read अच्छा कर लिया उन्होंने. Yeah, that's interesting. Neither Trevenant or जल्दी बोल दिया मैंने. particularly having a strong level 5. But Intel कर सकता है काम इधर. Nice बे. नहीं. यार नहीं मिला उसको. उसने टाइम पे दिया था यार, नहीं मिला. हाँ पैसे प्रॉक हुआ Trevenant का फोकस नहीं प्रॉक. उसने बोला फोकस भी प्रॉक हो गया. इनको इन्फो नहीं था क्या ऊपर आ रहे हैं? I think इनको होना चाहिए इनके पास. नाइस ब्लॉक, बट नहीं आगे नहीं जाना था. विकेट गिरवा ली. अर्ली गेम एनए वाले अजीब खेलते हैं भाई. ऐसा लगता है सोलो खेल रहे हैं. इम्पैक्ट ओरिएंटेड नहीं खेलते. रोटेशन पता नहीं लगता. एनिमेटिंग पूरे रोटेट करके ऊपर वाले को पता भी नहीं है. हाउ पता नहीं. टैग हो गया ब्लेजिंग वही. And they do. Look at all the space. That 8-minute spawn of birds goes completely in the favor of Kabi-chan's because no one from Nemesis was even remotely close. Yeah, Nemesis playing from the back foot the entire time. Again, I saw it earlier. The trainer on the Glaceon was not
quite up top when the spawns happened, and then went back, and then the push happened, and they weren't quite there again. And again, it's just Kabi-chan's and their tempo, you know, to use the name of a player that we just saw on a different team, but their tempo is so good. They make sure that they like hit you once, and then they just keep you off balance the rest of the game. Yeah, exactly. They are not missing a single opportunity to take a team fight or even a little mini skirmish or steal your wild Pokemon. There is no time wasted with this roster. Big Solar Beam going to take तीन बंदे कंफ्यूजन क्यों खा रहे हैं? फॉलो में भी लिया है। ये गंदा कॉम्बो पड़ेगा। भाई का कंफ्यूजन फॉलो में खा दिया, बहुत गंदा कॉम्बो है। मजाक नहीं कर रहा, बीच में ब्लास्टर्स का हाइड्रो। ब्लेजिकन के स्टन है, ये फुल स्टन कॉम्प है भाई, मजाक नहीं कर रहा। मोटे-मोटे स्टन है, बट इन्होंने भी नाइट मारा। काम तो कर रहा है। Gets the kill. ये फ्लिप नहीं कर सकते थे, इतना डैमेज नहीं है इन पे। बट रीसेट हुआ, ट्रेवेनेंट आया, ब्लेजिकन डाउन। Now they can do. बाप रे, दे दिया। ओए वे पुप्पो कर दी नेमेसिस ने। हेलो रेक्सी भाई, क्या हालचाल? Snipe shot does land into Keikana, making this initial push a little bit more difficult. प्लास्टिक आल्ट है, फ्लिपेबल का आल्ट आ गया। फ्लिपेबल अभी भी छोटी वाली वो क्यों दिख रही है? क्या नाम था इसका? क्लिफा, क्लिफेरी। क्लिफा तो है नहीं इधर। सपोर्ट्स का कोई 3 एवोल्यूशन वाला सपोर्ट नहीं है ना, मोस्टली सिंगल एवोल्यूशन वाले हैं या डबल एवोल्यूशन। ट्रिपल एवोल्यूशन सपोर्ट है ही नहीं, डबल एवोल्यूशन, सॉरी मैं बैड, सिंगल एवोल्यूशन है। Fight is staying relatively even. It's already, I can say, looking considerably better to me than the previous game, but Kabi-chan still feels ahead. भाई उसको ब्लॉक, भाई इतनी गंदी टाइमिंग कैसे हो सकती है? ब्लॉक मिल गया उसको, सबको धक्का देके ला रहा है। पूरे नाइस भाई, टाइमिंग में मारा उसने, ओवर हीट और स्नाइप के बीम के बीच में। लेजी डाउन, ब्लास्टर रिजल्ट है, बट अरे बट हग दिया, चक्री घुमाने में हग दिया। इनको स्टैक करने थे शायद, उसको स्टैक कराने थे। अरे उसके स्टैक कराने थे यार शायद। एंटी रे, एंटी एंटी एंटी। बस लीच लाइफ ऑन लीच। गुड कॉम्बो। गुड रिकवरी, गुड रिकवरी। ब्लास्टर्स यूनाइट है, बट अभी ब्लिस यूनाइट नहीं है। ब्लिस यूनाइट आ जाएगा मोस्टली, बट उनके ऑलमोस्ट सब यूनाइट है भाई। फ्लिपेबल का आ जाता है जल्दी, म्यू का है, माइम का भी है। ए माइम बिना यूनाइट, बाप रे मोटा मारा। म्यू का फोर्स हो गया, बट अब इनको एडवांटेज लेना पड़ेगा, उसका यूनाइट नहीं है तो इसलिए। बड़े ब्लास्टर्स का ध्यान से भाई। ट्रेवेनेंट बिजी रख रहा है, नाइस 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 भाई। ट्रेवेनेंट पूरा वो उसको रख रहा है भाई। भाई ट्रेवेनेंट तो जोरो को दे रहा है, उधर ब्लेजिंग को दे रहा है। ब्लास्टर्स ने यूनाइट मारा, बट नहीं मिला। अरे भाई ट्रेवेनेंट क्या खेल रहा है dude? Dude, Metallic is playing insane. भाई माँ कसम, माइम ने धक्का दे दिया, नहीं तो उसको भी ला रहा था। Dude, भाई मस्त कर स्ट्रेउड भाई, हॉलिश मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। माँ कसम, क्या फाइट बना के दे रहा है भाई, क्या फाइट बना के दे रहा है। ड्रेड कैरी किया, ब्लेजिकन को आने नहीं दिया, उस एक और को नहीं आने दिया। बाप रे, उसके बाद टीम फाइट भी कैरी कर दी। फोरमैन पूरा जोन कर रहे हैं भाई लास्ट फाइट के नाम पे। इसको भी 2-2 इधर लेकर आ जाएगा। तो अच्छा मोबिलिटी, बट स्टिल उन पे है काउंटर। इट्स नॉट लाइक कि वो फर्स्ट पिक करता, फर्स्ट पिक जरूर कर भी नहीं सकते ना, या तो वो ब्लेजिकन लेते।
वो भी तो blaziken ले सकते हैं, metallic blaziken खेलता है. Draft is not a easy thing, bro. उसका blaziken भी अच्छा है, metallic का. इसका अल्ट आ जाएगा. किल मिल रहा है, स्कोर भी हो गया. बट ये नीचे का रेजी, इस पे थ्रो नहीं करना है, इस पे बिल्कुल थ्रो नहीं करना है. प्लीज बी ऑन टाइम गाइस. ट्रेवेनेंट फटफटा, इधर लेट नहीं हो सकते. अरे रेजी स्टील है ऊपर से यार. ये रेजी स्टील बहुत कम. नाइस स्नाइप है, ब्लास्टर का फोकस गया शायद. ये फाइनल फाइट ले रहे हैं ग्लेशियन के. एक्चुअली वैसे ग्लेशियन का यूनाइट इन ये फ्रीज एंड आईसी विंडो में उतना वो नहीं है, लाइक मैटर करता है ना, बिकॉज इफ यू मेंटेन योर स्टैक्स यू गेट द बफ. थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट यू नो आई थिंक वर्थ इट है. गुड चॉइस. अगर रजिस्ट्रेशन बफ मिल रहा है तो ग्लेशियन यूनाइट इन दिस मूव सेट इज काइंड ऑफ वर्थ इट मेरे हिसाब से. This is a very tense situation. Because he can stack anyways. Saying, but Kabi-chan's, they're taking their time. They know that they're behind by so much. But every moment that you delay is more time for Nemesis to build back their unites. Oh, it just feels so strange to see this team, Kabi-chan's, being the slow and patient ones because of how they have been forced out by Nemesis. Metallic with a great touch and nice snipe फिर से भाई. ये दे रहा है, ये snipe दे रहा है. Immediately retreat, try to bait out some cooldowns. Well done from that. अरे freeze time मिस किया. Trainer's getting very close to building back that unite. They've got only a minute and 15 seconds left. Kabi-chan needs to make a move. इसी टाइम में फाइट हो सकती है. Nice dodge. But they're just taking so much poke damage from every direction, and they're by all stuck Mota. together. If they get one big initiation, it's gonna be Unite, Cursor, unite. on Azumarill, but Azumarill not going down. Oh, nice timing by 1 HP. Dude, 1 HP है वो. Running in with the unite, but there's nobody to target. Blaziken down है, flip नहीं कर सकते. No, flip तो गया, flip गया. ए तुम मत करना, हक मत दो. Blaziken bot time नहीं है. Mew का net waste, Mime waste, Diffable गया. कुछ है ही नहीं, किसी का net नहीं है. Mime down. 30 seconds. भाई क्या स्टॉल कर रहा है ट्रेव, क्या स्टॉल कर रहा है. अरे बाप. अरे हग रे. थोड़ा पुप्पू करा है, बट गोल कर दिया इन्होंने. 3 बंदे लाइव हैं, 4 बंदे. माइम स्कोर करने नहीं पहुंच पा रहा है. इसका गोल हो रहा है. आई डोंट थिंक 4 बंदों का गोल हो रहा है. नोप 4 बंदों का गोल नहीं हो रहा. 4 बंदों का तो गोल नहीं हो रहा. एक बंदे का गोल हुआ है. भाई फुल सप्रेस किया भाई. वेल प्लेड भाई. भाई आंखें खोल दीजिए पानियों की. भाई रियली वेल प्लेड यार. कंसीडरिंग ये शिंगड़ी लोग के साथ कैसे खेले. वेल प्लेड भाई. गुड कमबैक ड्यूड. गुड ड्राफ्ट, गुड कमबैक, गुड स्ट्रैट. ट्रेव ने 100 ने पहले बिसी नहीं करा, फिर ट्रेव ने करा. थोड़ा जल्दी भागना था. I mean, जल्दी भागना था. क्या कर रहे हो टीम में. बट यार अच्छा खेले. कूडोस टू नेमेसिस. भाई बहुत गंदा काउंटर प्लान बनाया भाई. बहुत गंदा से अच्छा. माइम स्ट्रेस कर रही है पे. थोड़ा सिक्योर भी तो करना है, डैमेज भी तो देना है. यार मैंने क्या खोल दिया भाई. वो क्रसल का उधर यूनाइट ना खुलता ना, विकेट थी उधर. पॉइंट एचपी पे यूनाइट खुला उसका. लिटरल पॉइंट एचपी पे यूनाइट खुला है. इतना गंदा क्लच हुआ है ना उधर. लिटरल पॉइंट एचपी. ने भी दिया जोरो से. I mean, उसके बाद इन्होंने भी दिया जोरो को. उसी जोरो को वापस दिया नेमेसिस ने भाई. ऐसा मत बोलो. वन ऑफ द बेस्ट मैचेस यार टूर्नामेंट में. मजाक नहीं कर रहा. मस्त खेले दोनों से. काबीचान ने उम्मीद नहीं हारी. टूर्नामेंट कुछ पर क्या अनाउंसमेंट करेंगे. सब कुछ अनाउंस तो है यार डीएम भाई.
have a क्या target. नॉस होगा? The Mew as well had to use हाथ Unite, गर्म but करना there पड़ता है wasn't a जोरों पे। target. It was just Nemesis with the spacing. They were just perfectly harassing without putting themselves at risk. Oh yeah, and Metallic has been doing things like this all day, showing up late to these team fights, but always because they want to get a good flanking position. It's on blaziken, it's on Blasphemous, it's on Trevenant, whatever option they have that they can really push the enemy into disadvantageous positions and pop off in return. That Unite move was so sick. I can't believe Trevenant this बहुत move भाई was- Trevenant में MVP I भाई। really thought Trainer was going to be able to close the gap, but honestly, pushing your advantage that much, that's Giga Chat maneuvers. Let's go, Metallic. It is, and of course with that Unite, the क्या better पता you वो लड़ are, गए the भाई more you घंटा hit, the stronger you become. But we can look again at this final fight, these last 40 कैटा seconds. You ब्लेजिकन can खेल see सकता है ना, here, ब्लास्टर they're टैंक कर just लेते not फिर able to catch the key members. कैटा क्यों ब्लेजिकन खेलेगा? Nemesis, and even though this was close, obviously they did win the fight in the end. It was about delaying that as उनका long ब्लास्टर्स as करना तो possible. Where if they were वो 5 पिक क्या है, seconds फंडामेंटल। earlier, they win this game. Absolutely, yeah. If all of Kabichan's is able to score, Metallic's not able to respond in kind with their own. It's a लिटरल completely MVP है different dude, result. लिटरल MVP। इसका Game डैमेज is, सेट of नहीं course, दिखा है, going to डैमेज go नहीं towards होगा, Metallic. We've been talking बट about MVP him है भाई। enough एक that it ऑब्जेक्टिव has लिया है to इसने, be this player. एक Curse ऑब्जेक्टिव Spangled attack weight and और focus band. इतने A really, स्टन दिए really हैं। interesting build and a great अब answer किसको to मैं that पहले भी for नेमेसिस Fable पे कर रहा था। Yeah, I mean, we've been literally talking to Metallic as well. A lot of confidence in the team, a lot of confidence in his own skills. पहला है भाई लॉन्डे ने। For sure, been the interview target भाई every झुलाया single है। time that team Yep. has won, I believe. No, actually, maybe we got one other person, but many of the times, at minimum, Young and, talent भाई। certainly proving it without a doubt. And can I just say the छोटे चेतन ने झुला दिया भाई, छोटे चेतन ने आंखें खुलवा दी जापानियों की। used for, you know, getting into पार्टी भाई, मैं नेमेसिस की सपोर्ट क्यों हूँ? स्टार्ट से सुन ले, नेमेसिस Resetting the एनए की विकेट गिराना है भाई, जब अच्छा खेलेंगे तो करना पड़ेगा parts सपोर्ट। about being at these events in person is that me, अगर अच्छी टीम अच्छा खेल रही है तो सपोर्ट बनता है। अगर ये सब कर रहे हैं, लॉन्डे कमबैक करके आए भाई। I'm really happy to be here and I hope everybody एक तरफ बोल रहा है इन्हें कि विकेट आ जाए, पर एक तरफ सपोर्ट भी कर रहा हूँ मैं। going to be immediate from the side of Capuchons, who did choose that first pick position, and we're running it back with the Dragonite ban. Oh, but the respect चलो ban भाई। from the side of Kabi-chan. They said no. काबिजान ने ट्रेवेनेंट बैन कर दिया। Tree out of his hands. And Blaziken banned on the side of ब्लेजिकेन और ड्रैगनेट दोनों बैन कर दिए। अब जोरो ओपन छोड़ा है बस। एटलीस्ट इन स्पीडस्टर्स। will be available for either team, and honestly it feels like ब्लास्टर्स ले दिया। ये ब्लास्टर्स इनका अकाउंट वो पिक है भाई, फंडामेंटल पिक है। now what's Metallic gonna play? एमजे की टीम That is मतलब? a great question, especially with Blaziken gone. I mean, there's got to be some other लिसी पहले ले दी, एंड अब It'd be silly. I mean, we'll see where these teams लिसी ले wanna दी go और ये with ले their रहे हैं अब। opportunities, but we will have the क्रसल Blissey ले and दिया। Crystal locked in on एल्डा छोड़ दिया इन्होंने। आई थॉट एल्डा लेंगे। भाई ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? आपके दोस्त कौन लोग? That is certainly a potential वॉच पार्टी right भाई there. दूसरे Whoa, टूर्नामेंट wonder की। what top path. We're just sitting here यू के like, टूर्नामेंट well, चल रहे maybe the हैं। most popular top path in the game. ये शामिल Maybe. दिखता है। मैं स्पेशल बोला ना वही। वो फिर वो बैकलाइन गेमिंग आ जाती है फिर। विटो पे एग्रेसिव जाना जाता है ना थोड़ा। ड्रैगनाइट, ब्लेजिकेन, आई थिंक मे बी शिफू भी खेले। टी सरीना इज बैक। टी सरीना इज बैक। लिफेबल नहीं लिया है उन्होंने। बट ब्लास्टर थोड़ा तंग तो करता है सरीना को। in the past. Final two selections for Kabi-chan's. Glaceon's a great option. Take that away from Trainer. It's been happening all day. Leave it, Weber, bro. The selection is Mammo Swine. Not a mispick, folks. That is भाई intentionally क्यों भाई क्या हो गया? Japan loves this Pokemon. क्या हो गया भाई? And I think all of you are about to as well. Well, it does have a 100% win rate on this broadcast over the past 2 days. From Nemesis. उन्होंने आपका दोस्त का भी बताया ठीक है भाई। डिजिटल भाई का है। आइसिकल स्पीयर। स्कोपलेस लिया है। स्कोपलेस थोड़ी आइसिकल स्पीयर वाला होगा। ना 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 ना। स्कोपलेस पे आइसिकल स्पीयर थोड़ी लगता है। फ्री वो होगा ना आइसी विंड। बट बोरा इज अ गुड पिक। बोरा इज गुड पिक। बोरा इज अ गुड पिक। Right, light, long stream. Yes, welcome back. In North America, really enjoys this Pokemon. Tends to go with इंडिया को the भाई अब उधर ओपन था तो ले लिया। rather एंड उधर देने का एक रीजन भी था कि अपने बंदे भी तो थके हुए थे। उसकी जोरो का चलने का रीजन एक थोड़ी था भाई, मल्टीपल रीजन थे जोरो चला। just that generic team fighting move is a little Multiple reasons. rather than the Hello, more Nikhil bhai. sweep style of build. एल्टी कैरी कर लेगा अच्छा तो खेलता है लौंडा। अब ये सरीना को 6 कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। रेशन नहीं देना है। प्राइवेट स्ट्रीमिंग 630 कितना? चल रहा होगा 1 घंटा चलता है स्ट्रीम। Now, when we have seen in the past from the Espeon in Yeet fans' hands, it has looked Hello, Nikhil bhai. It is a really good option. आप तो बात ही कर रहे हो, hello क्यों बोल रहे हो? Damage, but
they've been playing so much inteleon in this tournament and having so much success with it. It does feel strange to see that option kind of lost in this, but at this point in the tournament, in this point in the meta game, Espeon is just kind of a must pick, and so we're going to have it locked in from Nemesis. Here we go, Nemesis leading the series 1-0. दूसरा निकला है यार, एक और निकला है. 2-0 हो जाए दुख लगेगा. I mean, बिग भाई ऐसा तो है नहीं कि हो गए थे मैचेस, क्लोज नहीं गए, क्लोज ही गए थे मैचेस यार. तो 2-0 क्लोज जाता तो अच्छा ही है. Yeah, Kikata going to try to put on some early pressure into Metallic. Both these Pokemon not having the strongest of early games, but the slowing effect that Squirtle has with a lot of its moves and boosted auto attacks is going to be detrimental for Metallic's poor लिया भाई, लिया to have to deal with. Yeah, and of course just being a double ranged ये नहीं मिला, एल्डा ले लिया. ये हार्ड रहने वाला है इनका. सरीना को चेक कराना बिल्कुल. One team's A button is real strong. मैं तो बस एक बार ये निखिल हेलो बोलो एक दूसरे को. Trying to get those last hits on those experiences, which is a very, very big deal because you do not want to get kept on either of those Pokemon up top from Nemesis. Yeah, exactly. Azumarill landing in, and some more key rock slides in 2016. Fan going to easily clear up that shot with the, I believe it's Growl still, that Espeon has access to. But Espeon having great secure tools even in that EV form. They're shadow option for last hitting wild shadow claw नहीं होना चाहिए. Speaking of last hitting, ये shadow claw दिखा क्या? Very, very quickly, and we are going to see nice rotation बे. go in, getting the first KO on the war turtle. जापानियों को outrotation कर दिया, outrotate कर दिया. That's good. Even going to go for the greedy score on top of everything else and be able to make it out intact. Wow. Sariina के stack भी हो गए. He's going to dodge away. Metallic does get one stack. Great heads up play by the Eldegoss. दो stack steal minimum. that extra AEOS energy. Make sure ये that कितने का पड़ा याद नहीं है यार. trans. I mean, these top players aren't letting anything by the way. ये बाप रे, ऊपर गैंग करके ये भी ले रहा है. One of the biggest tournaments that United has ever seen. And Translate बोल रहा हूँ. in for an invade. क्या बोलते हैं रे currency का देखना. Defend against it in their own central area. A jack button across the wall. As Tomato is playing Ice Fang Man. मारा बे, मारा मारा. Gets the KO Electro Ball with enough damage. This is so exciting for me. I'm not going to say I was a one-trick Ice Fang Mammo for an entire season, but I certainly was. Okay. I think it's so strong. Actually, Ice Fang is a good pick इधर. Game बदल सकता है Ice Fang. Nearly going down. Coordination दिख रहा है भाई. क्या बात कर रहे हो? Meantime, that allows so much space for a huge मैक्रो में कभी-कभी हो जाता है इधर-उधर. Okay, so Kabi-chan's ये lag क्यों कर रहा है? पहले तो नहीं कर रहा था stream. For giving up the experience in the middle of the map. That is going to be Nemesis taking Exchange करने देखना पड़ेगा. Sorry, you always exchange got to करते weigh हैं the Clinching. positive and negatives of any push, especially against top teams like this. They're not going to let you get away. ये सबसे महंगा push है for free. So a score बड़े वाला. is there. At least जो maximum size था उधर. On that Espeon, able to take a lot of that experience. वो तो फिर आपको import duty पड़ रहा है ना भाई, क्योंकि इंडिया में available नहीं है. This is from Japan only. I don't know NEU से तो और महंगा पड़ेगा, but जापान से कुछ पड़ता है. इंटर ओपन नहीं था कि नहीं इंटर ओपन था. But हर बार को इंटर नहीं ले रहा भाई. हर बार इंटर नहीं ले रहे हैं. ए ट्रिपल in a minute as well. Feels like a bit of a throwback tournament. Momo साथ हो गया. Ice Fang, Mamoswine, Grassy Glide, and triple axle of Serena. So Metallic going for a more brawly team fight option, and not with the slowing effect of dropkick we normally see. Wants to pull those enemies off the pad, and of course enable the brawling effect of Mimikyu a bit more. If you can pull the enemies towards Mimikyu, have that Shadow Claw lineup, you're more likely to get the Shadow Sneak resets, and of course then on and then on. I mean, that makes sense. That's exactly what Metallic was doing with that Horn Leech in the last game so well. I don't know if this Blizz is going to be able to get out of there. It kind of looked like it took a wrong turn at one point right there. They were running with their मैं teammate, and then all of a sudden they dashed across the wall, and they're like, I can't do that. I can't follow you. Wait a minute. ये ऊपर घुस गया. अच्छा बोरे में ले दिया होगा ना. बोरे में ले दिया होगा. बोरे में ले दिया होगा. Good strat actually. बोरे में लिया. बोरे में लिया. बोरे मिया. बोरे मिया. ये किल लेने से प्लान कर रहा है क्या? ये वर्थ इट था क्या जाना? Although आउटलेट दे चुके हैं स्कोर के नाम पे, बट ऊपर डिफेंड करने टाइम पे आना चाहिए ना इनको. एक मिसी क्या डिफेंड करेगा? 8 का गोल है although. छोटा गोल खा दिया. नाइस. सिर्फ 20 का 12 का ओडन. अरे बॉडी ब्लॉक नहीं हुआ. ये क्या किया नहीं? स्ट्रैक करने जा रहा था. बड़ा टाइमर खत्म हो गया उसका. This is exactly what Kabichan's hunts for
every single game. They're seeing one moment where they can get a pick. They did manage to get that pick, and now look at them. They're rotating immediately towards another target, fully coordinated, and just getting every single KO that they can along the way. Rex just barely staying up. It looks like you said, Mamoswine needs to turn to Mamoswine, and it finally does manage to do that. Just about the 5-minute-20-second mark, so it's going to be a lot scarier now. Yeah, great poke by Kabi. Half game done. 10 level almost common है, बस Mew over level हो रखा है. भाई Mew को over level देख के डर लगता है, मजाक नहीं कर रहा. Nice turn. Memo का net force हो सकता है. Serena का net cancel हुआ क्या? I think so. I think Serena का net cancel हुआ, देखा नहीं मैंने. बोरा वापस आ गया है. Shadow Sneak लगा क्या उधर? ये damage है. अरे पर इसका तोड़ दिया, इसका बोरा तोड़ दिया. Serena का net used है, नहीं आ रहा वापस. बट इधर तो ही मिल रहा है. Nice turn again भाई. Blasty फंस सकता है, no world. Russell nice hold करने को जिंदा बचने. Blasty down. भाई इसको तो मोटा चल गया. क्या लैग हो रहा है? Memo का unite यूज हो गया. Unite कुछ नहीं बचा है. Mew का आ गया बट. ए ये क्या लैग हो रहा है? We're going to see actually the Crustle and now the Blissey fall, so no more tankiness on the side of Nemesis, really. They've got to back up. They've got a very, very low... Pointing on Nemesis. Sorry, मेरा face cam आ रहा है उधर. Just going to give that up. You got it. Yeah, Nemesis, they're going to give up the goal zone, and technically the point lead I think I shouldn't cover there. Wait a second, yeah. I don't think I should cover there. Having to give up that goal zone is really tough, but with only 3 members, you would just be delaying the inevitable, and of course, you would not have rotated in time for this Reggie Alecki, where Metallic currently is. We have Trainer in the enemy central area trying to steal as much experience as they possibly can on mimikyu, and so far they've been good for the red buff. This is better, I guess. Hitting is unfortunate, mostly because it's going to lose the mimikyu. Its disguise passive going to take that damage and have to run away. It's going to take a little bit of time to earn that back. Being able to take that Reggie Alecki is pretty big right here. Every little bit of advantage that you can take in this kind of tie situation is huge. He got Mew with the Shadow Sneak at a max range. They're not going to follow up with it, and poor Rex is picked up by that Ice Fang again. It feels like they are jumping in front of this. Their teammates can make it away, but every time they do, it's just too much damage for the rest of the team. A small score from Nemesis is going to break that goal zone as National throws in just a few points. Control ले लिया इन्होंने मैप का T1 तोड़ के छोटा गोल से तोड़ा. Team Kabi-chan's. It's going to make them a little bit less safe, but Tier 1 is not what Kabi-chan's going to be hunting for. They like this Tier 2 quite a bit. The Glacier stage is going to come out. Mew और inteleon का nerf चाहिए भाई. अगर इतने attack कर रखने हैं इनको. However, there's a lot of experience that's being hunted down from Kabi-chan's in Nemesis. Mew को nerf करते हैं एक चीज, बाकी चीज. We're going to see immediately Rex go down as the first. That was weird looking with Mew jumping over. ये fighting की हो सकती है. ये बोरा 241 पे. Mew as well hitting its target. I'm sorry, not Mew, mimikyu hitting its target. 241 पे बोरा. It's a whole lot of damage for Team Kabi-chan's, and they're going to be winning that team fight. They of course can rotate towards this basement Reggie. Lish ने भी करा क्या? I don't know if they want to put all the resources into it. They will be able to defeat it. They'll be Regice. Regice normally an objective that a lot of teams want to ignore because of the HP recovery. T2 लेना तो चाहिए, but jungle protect कर रहे हैं. But इन पे है T2 farm है ना, level है. Level is almost equal है. Serena थोड़ा under farmed है बस. Blaster 13, Serena 12. 13 हो जाएगा Serena भी. Almost 13 है. Defenders Crustle थोड़ा ये defender support level कम है. Blissey हो गया 11. Crustle भी 11 हो तो अच्छा है, almost है. फंसाया. Memo unite use. Blasters unite है नहीं. Elta unite use. Extremely low, has to get out of there. Rex is going to be able to bring that up. Unite use हो गया, but that was the perfect target to go into because you knew they did not have the Hydra Typhoon, but the Mammal Swine and the Eldegoss both uniting to give that teammate coverage. Perfect team play from Kabi-chan's as they're able to strike again as Rex goes down. KO streak of 3 from this Lexion as they are carving their way through all of Team Nemesis. Ethan has just got to run, but at this point they have no HP to work with. ये तो मोटा कर रहे हैं भाई, ये मोटा कर रहे हैं. ये तो गया, ये गया. Nice one Kabi-chan's. मस्त खेले. With no one in range to secure it out of their hands, and they're going to be charging these goal zones. All 5 members up, all 5 members with ray shields. Kabi-chan's going to be tying up this series. Wow, and हो गया, let's go. अब मजा आएगा.
even Good fight, bhai. Equal matchup tha ye. Interesting timing for a pause, but I mean there is a minute left in the game. Nothing is for certain. However, Game an pause? amazing final team Bhai fight game there pause hua hai. from the side of Rayquaza lene ke baad game pause hua hai. read that was completely wrong early on, where I saw immediately the 1-1 hua par game pause hua hai. and I was like, they're done. There's nobody around them. Kisne But aap coming from ko behind, Unite from the Mammoth Swine. इस बार किसी और का इशू है इस बार इसका ही है काटा का इशू है यार के काटा I believe को that काटा Mammoth Swine is running the buddy barrier as कुछ well. तो So just disconnect giving हुआ है that शायद extra इसलिए इशू support है for their team is getting that extra shielding. I think switch का इशू है डॉग का कुछ इशू हुआ है तार बार डिले हो गई है Unite move at that moment, which if they get caught out in a moment like that, it could be devastating. But yeah, we're just getting a quick technical thing Defender sorted का level out on था stage. But with defender का Kabi-chan in level a डिफना मैटर position नहीं like this, करता I think we can all understand क्रिस्टल where का काम तो वही है this ना game's headed. एक लेवल पे भी दीवार तो डालेगा ही वो Yeah, I mean that was gigantic, and also you pointed out so perfectly before that fight, the Reggie buff may have made the difference there with how low that Blastoise got and how it was able to run away and then still be effective in that fight. Right, it had to come back, and obviously it's not like a ton of healing that the regen gives you, but just that little bit Blastoise तक पूरी fight ठीक थी in combination with other उनका things, एल्डा like यूनाइट the गया for example, from the उनका Mammoth मैमो Swine, यूनाइट it गया just keeps your entire team इनका up सिर्फ लिस्सी when यूनाइट you गया need it to happen. उधर So सरीना नहीं मरना चाहिए था सरीना मेटालिक थोड़ा भागू को भी चला गया आई थिंक अकेला गया नहीं रिस्टार्ट इनका इशू है ये थोड़ी रिस्टार्ट करेंगे खुदा रखे इनका इशू नहीं है नेमेसिस का नहीं है उनका इशू है क्या बोलते हैं काबी का खुद का मैच क्यों रिस्टार्ट करेंगे वो 4 बंदे स्कोर करे फिर भी जीत रहे हैं Mammoth Swine is some wild stuff for sure. Very exciting to see. So far, it's been poor Rex having to take the brunt of that jumping in front of the Ice Fangs consistently so that their team can make it away. But it has been tricky for the Mimikyu to get an engage into a Pokemon team that has Mammoth Swine on it with that Ice Fang. The one will appear with that Shadow Sneak and start doing damage, but as soon as you appear, that Mammoth Swine is grabbing you and buying so much time for their squad. And then, of course, everybody's just turning and firing every ability they have. Yeah, Ice Fang, truly an extremely powerful ability. The bigger issues with Mammoth Swine, of course, are, like you said earlier, you've got to evolve it, you've got to get it to its maximum strength, and then once you get your Unite, it's not the scariest Unite in the world by kind of a long shot. So that's the rest of the package. But I mean, the fact that we actually get to see it pop off and use Ice Fang, I think is great. That move is so scary. It does a lot of damage by itself. It throws people back into your team when you've got a coordinated team like इनका सेट था भाई ब्लास्टर्स का बेट तो सेट भाई जब तुम्हारे टीम का 2 यूनिट यूज होते हैं तो बेट तो नहीं हो सकता भाई Gosh, yeah, it's going to be really, इनके really साइड से interesting to मैच see हुआ what happens in Game 3, where we are most likely going to. Technically, Improvise कर दिया अलग left बात on the clock, but with all वेट 5 तो नहीं था members वो of Kabi-chan's having ray shields available for their scoring attempt, things are looking a little bleak for Nemesis. लिटरली 2 मिनट वेट हुए फिर डिसएंगेज हो गया फाइट एंड दैट्स अ गुड थिंग फाइट डिसएंगेज हुआ बीच में वो सरीना शायद ग्रेशन को मारने गया almost undoubtedly raining down on to Nemesis. So हेलो शाहरुख भाई probably going to see it, but who knows? You know, we actually see a few members back up. टोमेटो एग्रेसिव डिफेंडर खेलता है जो इंडिया में देखने खेलते हैं इंडिया में भी एग्रेसिव डिफेंडर क्या बात कर रहे हो But there's 4 members of Nemesis that are up. रोले भाई का एपीए दिखाओ को आईडी देखनी पड़ेगी But you know, with 4 members up, do we have any unites up? No, nothing from Nemesis. And honestly, the Hydro Typhoon is still up. Mimikyu Unite, but yeah, the Hydro Typhoon and the Play With Me is still available. क्या सीन 1-1 चालू है एंड पॉज हो रखा है रिक्वाजा पे पॉज हो रखा है भाई आई थिंक हो गया ठीक क्या We now have 4 regions left within our tournament. Reminder, whoever is able to win this series will be moving on to play against 4 regions 3 regions भाई who has been दो नहीं एक्चुअली एलए नॉर्थ और एलए साउथ का अलग-अलग कर दिया इन्होंने recently who have been playing an absolutely unbelievable tournament, but you got to just think about what's in front of you at any given moment. That's what these teams are going to have to do, as of course the competition throughout the entire event has been fierce. And we know that Nemesis is the most aware of that. They have had to play through the open bracket, the only open bracket team remaining in our tournament, and are now poised to try to make it into a top 3 position. Kabi-chan's, though, in that exact same spot. Yeah, yes, I'm a woman. They're about to be in the exact same spot. Most likely, it looks like we're getting back into this game. Let's watch the closing final minute as we do see a few members defending from Nemesis on that bottom side, but that's going to be a Hundoburger going in the center goal zone from Tomato, and then that bottom tier 2 as well being destroyed. Yeah, Mew's shield did get broken. Glacia not within scoring contention. Shadow Sneak channeling around it still, I thought, but now we're going to have Trainer trying to chase down this Mew and earn themselves a KO.
I mean, Nemesis could make a push, but they only have 40 seconds to do so. Ethan does 40 find second. the Mammoth Swine. ये actually हो सकता है ओए. Only 3 members of Kabichan's remaining. But 3 unit है, 3 unit है, 3 unit है. It's pretty low though. It's a little unfortunate. Any of these unites can come up soon. That would be big. Every unite for every member is available here from Kabichan. They've got the Hydra Typhoon undoubtedly coming out very soon. Just trying to push them back as far as they possibly can. They are going to be initiating the glacial stage. अरे बाप रे. सब गए. एक साथ सब गए. Everybody, Psychic Solaire is going to try to counter that, but they don't just need the CC, they need the damage, and they're not going to be able to get in the points. So Unite के साथ तो नहीं हो रहा था. इनके unite से थे वापस. Nemesis having maybe a चलो भाई 1-1 finally. Right, the unite move is just a bit too much to overcome. लॉली भाई का वो agent type कर रहा तो BT रहेगा. So Nemesis will be having this match tied up, or Kabichan's rather, will be tying up this series 1-1. And wow, what an exciting one it's been. The Dragonite bans again and again trying to slow down this team, but now Kabichan's adapting to that and finding a new look. Yeah, yes. Of all things, I love how many out of left field picks we've had over the course of even just these final 3 matches that we're going to, well, final 4 matches. Damn, this is another one though that I think. Damn, mime खेला गया है, guys, mime खेला गया है, mime खेला गया है. Before when it was trying. Mime खेला गया है. Over the course of even just these final 3 matches that we're going to, well, final 4 matches. Lolly भाई playing Bora. This is another one though that I think we really have to look at again from the side of Nemesis. Now, Slow, we bro, do know it worked pretty well before when it was trying to target down the Zoroark, but I feel like it maybe did not get the Mime mileage. खेला गया है, guys. Mime खेला गया है. अभी EUIC के भी pick हुआ था. खेला गया है. Back to Snorlax. अरे Garchomp खेला गया है. It's really blaziken. I felt like the mimikyu from trainer as Zerora खेला गया. Damn. was kind of becoming a liability against this Mew a few times. Triple Mew Blasty. Getting shut down time and time again. Honestly, if we're gonna look back at anything from game 1 that I'd like to see again from Nemesis, was this Eldegoss ban? Or sorry, they ran away that blaziken rather, but taking away this Eldegoss necessary, I think would be a good look. Because they did that in game number 1. Took away the Dragonite and the Eldegoss. I really like that drafting strategy, and now Nemesis will be returning to that first pick again. Yeah, and Kabichan's has been so solidly playing this comp in so many of their games that's so dependent around just being tanked, being really hard to deal with. We've seen a lot of very aggressive teams that just kind of try to play speedsters, but this is an aggressive team that just wants to never get KO'd themselves, and they do a great job of it, especially because of that Eldegoss. Of course, yeah, this Eldegoss has been so powerful. I mean, we even watched in that final team fight them bailing out that Blastoise, who was caught out in these big moments, but yeah, again, just a great response from the supports makes that team fight okay, and Kabichan's makes it even better than that as they bounce back and win that second game. Oh yeah, more than a bounce back. I'd say that was a really funny moment looking. Anytime that somebody gets thrown over and they have an effect around them, it always looks really funny, but so many unites were used right there. And honestly, I feel like a lot of the unite usage going kind of into that moment was really big and kind of led to Nemesis's downfall. You can see they didn't have everything when they needed it here at this fight. They assumed, I think, that there was going to be a little bit more of a fight early on, and that re-engage was just so good from नहीं क्लच पिक किया उन्होंने पिछले मैच लफी था किसी मैच तो because of great target fire from Kabichan's, but even with the Espeon unite move to try to LD ऊपर पिक होते हैं because वो ring support करते हैं it still wasn't even enough, and again the Mimikyu just felt like it भाई हर जगह अलग-अलग मेटा है I mean, one more chance. We can take a look हर at जगह अलग-अलग मेटा है कंपेयर नहीं कर सकते एंड हर एक का मेटा किसी ना किसी टाइम वर्क करता है ये तो है नहीं कि उनका मेटा पूरा सही है हमारा मेटा पूरा गलत है off screen through the Ray pit saying you're not going to hurt my friends, and of course on Mamoswine. Of course, and running that eject button too, we've already seen the value of that getting around walls, of course, but when you're running Ice Fang, it's a very low range style of move. One of the best ways to get around that is either target or using that eject button to extend your motion and grab the Ice Fang. एक साइड डिसएंगेज हो गया उधर एंगेज कर दिया आई थिंक Yeah, that was a great strategy. बस पता नहीं लगा It's हमारा time to see what strategies are going to be भाई सोच रहे इसने दिया है शिंगड़ी को win per team again.
again, this is loser. आधी नींद में लग रहा है. One of these teams makes it into the top 3. One of them goes home. Both of Final the draft. representatives of their own respective. NA निकल रहा है कि जापान निकल रहा है. Dargunite ban again. और Eldagos ban आ रहा है. Yes, they're sticking to the original plan. Our same first pick strategy of banning away both Dragonite and Eldagos. I think losing team pick कर दिया ना साइड तो इनको फर्स्ट पिक प्रेफर हुआ. उधर दोनों EVs बैन हो गए. Blaziken वापस कि Zoro वापस? Plasty के support? I think support. His first actual pick is. Are we going to go for this Blaziken? Really saying, okay, let's see what you can do with your supports. And last time they went for Clefable, didn't quite work out. Yeah, they were definitely confident playing into that Clefable. I think Nemesis. Last shot confirm. Mew ले रहा है क्या? Blaziken नहीं ले रहा? Now going to grab that Blastoise first. That makes sense. Mew लिया, Blaziken नहीं लिया. Now, I wouldn't be surprised if we see Metallic actually prioritize in the draft here. You grab Espeon for sure, but give Metallic one of their best options because before we saved it for a little bit later. पेड़ open है guys. पेड़ open है. Here, but they are going to grab the Trevenant. बेवड़ा पेड़ आ गया. Something to Trevenant as far as well, look, this is two great defenders just to be picked. बेवड़ा पेड़ is back. बेवड़ा पेड़ आ गया है. बेवड़ा पेड़ देने वाला है. Having the opportunity to नपाट अब देगा बेवड़ा पेड़. more surprising, and they're going to go for the Comfey Zoroark. And it's back, boys. It is back. To go with that single target, that Serena that was so good. Zoroark is back. Taking it down that Zoroark. However, the mimikyu. इसका build अभी भी night slash वाला है. Yes, feint attack वाला कर रहा है Zoro अभी. Night slash वाला build था. Feint attack वाला किया just. Okay, so we're gonna have to play with me, grab both of those two Pokemon, and then slow. Bora और Slowbro counter actions. ये अच्छा fight होने वाला है. ये अच्छा fight होने वाला है भाई. कौन पहले किसको पकड़ेगा या किसका पकड़ेगा? This is a lot to think about. This is exactly what you want to see in Zoro versus पेड़. उसको पेड़ थोड़ी मारना है. अरे night slash थोड़ी है, change कर दिया वापस. Feint attack है वो. We don't need to talk about that much, but this Mimikyu, it's got to अब feint attack का build है. That's going to be huge. But again, also, Mew was putting in a lot of work against the Mimikyu, and then risk choosing that as their first choice is, I think, a यहाँ तो विटो पका जी होगा. इधर ये Mimikyu versus a Zoroark. यहाँ फिर ये होगा. Central area Pokemon is going to be really, really interesting. समझ जाओ. We are live here at AEOS Cup, so folks, I want to hear from you. Are you? भाई उसने पिंक कलर के बाल कर रखे हैं क्या? Finals, Nemesis versus Kabi-chans. The last remaining teams, one from North America and one from Japan. इतना क्या सैड हो गया जिंदगी में जो पिंक कलर के बाल करने पड़े. Which of those regions will make it into the top? Mimikyu semi slow bro. Yes. Can going down to a game 3. बच गया भाई गिरने वाला था. We want this to be, and it's क्या लगता है गाइस क्या होगा विटोपो का? Option 1. Nemesis versus Kabi-chan. Option 1 होगा विटोपो का. विटोपो के साथ ये वाला. या फिर Option 2 एकदम. क्या लगता है? Option 1 और Option 2. What's gonna happen with Mr. Vitopo-chan? Want that top 3 with what's on the line, but let's see where everybody is going. We are going to see the Mimikyu go to the center. Everything basically pretty as expected. Comfey is going to be holding on to that center a little bit just to make sure there's no sort of invasion or mean things especially come out from potentially Rex could have run in there, but instead they're just going to be focusing safely on the top path. Of course, Yakikata actually going with a very quick clear to try to be there in contest for the contestable ball toy. Going to come up just a little bit short as now Metallic and Rex are chasing down their own safe ones. Never feel safe in the hands of Kabi-chans. We're always वोट्स डाल देना जरूर गाइस. थैंक यू. पानी पीते रहना भाई, मेरे को नींद आ रही नहीं तो. आज तो टंकी खाली होगी भाई. And that's going to be one of the first power spikes that we're probably going to see in this game. We've got already, I mean, I guess the evolution, if we could potentially see that right there, and that's exactly what we're Joro going is to back. The bottom path is a lot less welcoming for Kabi-chans. A great way to defend. I mean, the Zoroark, if it can dive on that Espeon, is going to be great, but the way can go exactly like that, actually. और Zoro टॉप जा रहा है. I think इनको जा चुका है. Yeah, full early Espeon combo is going to be able to take out that Mew as Zoroark इनको जा चुका है शायद. to that top path, understanding that Metallic is not hit level 5. Oh, nice. Metallic को farm मिला, but मर रहा है mostly. Push that advantage in the top side. Metallic going to run all the way back. Has not grabbed any citrus berries yet. It's going to grab that second one. Time stall कर रहा है. Time stall कर रहा है. Must time stall कर रहा है. Zoroark will dunk in that 23. One thing that Metallic was गोल नहीं होने दिया 16 का. on this goal zone as उनको kill चाहिए. ये score चाहिए. Score. Clearing wild Pokemon, waiting on the attack. भाई उसको मिलने वाला था. Comfey jumping back onto Zoroark though as they head down into that center area, trying to steal the Excel Gore, but they see now two. टाइम क्या? लगा है कंट्रोल में डाला है. कंट्रोल में डाला है. He's going to make it very, very hard to stop, and actually Vortoril kind of running in as well as the slow bro. So a whole lot of the members of Kabi-chans playing that usual style they're used to doing, running into the enemy center area. But Revenant को farm हो गया. अब ऊपर Revenant को इनको करना पड़ेगा. Blissey का गोल हो जाए तो वो evolve हो जाएगी. Taking this time to stack their
attack weight as पुलिसी frequently as they could on the top का side. साइड हो We're seeing गया। Bill go down. I think Rex was trying to get a score to I earn think अबे himself time that buy Blissey करेंगे। evolution अरे नहीं मिला। because they are still at एंटी that एंटी level 3 एंटी chance. एंटी एंटी Heatman gets yet भाई another नेमेसिस उनको KO. जोरा को तो टेंशन नहीं था, सिंपल बात। Definitely paying for itself in dividends. ड्रैगनेटर Committing डाल गया so उन्होंने। much damage. The shadow sneak plus the Espeon जो लोग काउंटर with कर the सकते कर दिया। scald on the slow bro. A great response to that Mimikyu. Reducing the attack damage of any target it hits with that skull is devastating for Mimikyu to have to deal with once they get in the mix. Yeah, some solid choices for Scald in this. Till now Nemesis अच्छा खेल रही है भाई। Kind of poke a little bit वो more early game उतना बीटी नहीं दिया जितना देना चाहिए। Damage alone is something. 20 seconds away from the first Reggie's spawning, and it looks like we're going to have a lot of members of both teams up top here for the Reggie Alecki, and we're going to start off immediately. ये थोड़ा sad हो गया। Comfey Trainer just barely getting out of there. I think they realize there's a little bit too much defense. Is actually we're going to start see the rotation down bottom. Yeah, Zoroark not hitting level 9 by the first set of objectives even with that Comfey duo. So a lot of resources used, but not hitting that big benchmark. As will just try to eject button to safety, and they will make it up for a moment, as well, trying to get as much HP recovery as possible. And now with that, they're going to have full ये position. पकड़ा उसने वापस बट मेल्ट हो गया। सैड बट इधर ही तो ओए भाई मुझे लगा इलेक्ट्रो बॉल रेजियस पे आ रहा है। ओह शिट वश है ब्लास्टर्स ऊपर ले रहा है क्या? कौन सा ब्लास्टर्स है? हाइड्रो स्पिन का रैपिड स्पिन ये देखा नहीं मैंने। ये हाइड्रो स्पिन तो नहीं लेना चाहिए इतना जल्दी। लगने दे छोटे छोटे लगने दे। हाइड्रो स्पिन one more tiny little score. They are going to be prioritizing the Master scoring on being Kabichan's the side. propensity of Yeah, Metallic just going to let that hit the goal zone so they can instead knock out the Ndidis that spawn on their side of the map as soon as that outer tier goal zone emits, and they're not giving up a huge overdunk. Metallic को फार्म करा रहे हैं बट जापानी को कहाँ T1 तोड़ना। जंगल पे तो जा रहा है, जंगल पे तो जा रहा है। Trainer, but not going to find a single target. बट ये क्यों जा रहा है अब? ना 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 ना। locking them in place, but with Trainer having to rotate back to defend their own central area, I don't know if we'll see that option. It's going to be a big 1v2 for Trainer LGC here, locked in the grass knot. Landed. They're going to engage. Slow smoke, and we slow them down long enough for a deterrent. भाई मारा है जेन्युइनली अच्छा शैडो स्निक मारा है। मैं कभी नहीं ऐसा शैडो स्निक के लाइनअप सीखने पड़ेंगे। ओए नाइस इजेक्ट पुश कर दिया पूरा। कुलिल गया लोवर कार्ड है नहीं और even with the Comfey unite to counter that. The strategy working extremely effectively. 3 members down now from Kabichan's as they put 30 भी हो गया उसका। मोटा वडंक हुआ है। 40 नहीं बट 30 is also good. ब्लास्ट विदाउट यूनिट गया। म्यू भी पकड़ दिया। नहीं 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 उसका गोल हुआ। अब मौत है अब मौत है अब मौत है अब मौत है अब मौत है। बट ऊपर गोल कितना हो रहा है? 10 और 6 ना ना बट ट्री नीचे जा रहा है। ट्री होल्ड कर लेगा। अल्ट है ट्री का? नहीं अल्ट नहीं है। कैन ही होल्ड प्रोब्रो अल्ट। ओ तेरी a strong start to this defense. Also with the Reggie spawning right now, this is not just a push for KOs, but for positioning on the next objective. कार्तिक भाई बैकशीट करना इजी है भाई, चिल कर लो ना। Nearly unKOable. They don't care about that though. The only KO they want is ये सब नहीं बोलते भाई, ठंड रखो। Once again, I was talking about the horn leeches from Metallic, and he just keeps proving it. Oh, it's so good. Now Nemesis has a choice. Do you push that tier 2? Do you play for mid, or do you try to contest the Reggie Alecki? That final option is going to be really tough. Already working through that main objective, and of course Metallic wants to just दोनों टीम ने अपना बेस्ट दिया, एक टीम जीत गई। That's a little more free. Reggie Alecki Anyone can win यार। Nemesis playing it a little safer and a little closer to the chest. एक टीम एग्जॉस्टेड थी, एक टीम फुल पावर पे आई। और इसकी गलती नहीं है कि वो एग्जॉस्ट क्यों थे, वो फुल पावर क्यों थे। एक टीम लूजर ब्रैकेट से आई, एक जीत के विनर ब्रैकेट से आई। अब विनर ब्रैकेट का कुछ तो फायदा होगा ना। Can't just complain all the time यार। Either you win, either you lose. That's it. Nice turn. स्लो रोल्ट दिया ब्लिसी अल्ट को, ब्लास्ट असर्ट, बट मिरमी कभी भी नहीं मरा है। बोरा वापस है, कैंसिल हो गया। नाइस क्रसल स्टन। अरे क्रसल बैक टू बैक स्टन, बाप रे। ब्लास्ट इज 1 HP। ये थोड़ा सैड हुआ, बट इनके बहुत यूनिट्स वेस्ट हो गए। ट्रेवरन कभी भी उधर रोटम ब्लॉक करे। ये 4v5 चालू है, ये 4v5 इतना होल्ड हुआ है, एंड आई थिंक उसका गोल नहीं होगा। नहीं रुक गया कर दिया फिर से टाइम बाई करा। अरे 40 हो रहा था रे लाल, क्यों रोका? जोरो का गोल के लिए क्यों रोका? क्यों रोका जोरो के गोल के लिए? लालची हो गए। 5 का अब 40 हो रहा था मजे से।
40 हो रहा था मजे से, 5 से तोड़ना पड़ा है। ये कौन है ज़ोरो? विटोपो, जिसने टीजी को दिया था ACL फाइनल्स में। वही ज़ोरो है गाइस। बट यार लिटरली बेस्ट गेम में चल रहा है। ये रेजी मत इग्नोर करो यार प्लीज, ये रेजी मत इग्नोर करना, ये रेजी नहीं इग्नोर करना यार। पिछली बार भी रेजी ने बीटी दी थी इनको। रेजी का बफ बहुत बीटी देता है यार प्लीज। 46 हो गया, अरे नहीं वापस उठ गया। इस बार रेजियस है चलो, बट रेजियस भी काम कर जाता है कभी कभी। आई थिंक लास्ट टाइम भी रेजियस था। नीचे ओह गुड 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 गुड, सौरभ से दूर है वो। एक्चुअली सही जगह खड़ा है भाई, सही जगह खड़ा है। बट ये नीचे जो एसपीओन अकेला ये बीटी हो सकता है, बिकॉज उसको फुल हील है, विकेट गिर जाएगा इसका। ग्रास नॉट है ना वो ये। वो भी उसके विजन का वेट कर रहे हैं, बट अब बीटी जोरो नीचे जाने वाला है। आया 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 आया, विजन मिल गया, मिमिक्यू नीचे आ गया। क्रसल फंसा है, बट क्रसल फंसा है। ए नाइस शैडो, बोरा स्लो ब्रो हेल्ड। मिमिक्यू ब्लास्ट हेल्ड फोर्स हुआ। ट्रेवरेंट बिजी रख रहा है। एक कॉम्फी पकड़ रखी है उसने, नहीं म्यू पकड़ रखा है, सॉरी। एसपी यूनिट स्टिल बचा है। नाइस साइड शॉट, स्लो ब्रो के म्यू को लगा। सिर्फ जोरो हेल्ड बचा है और उधर एसपी उनका। लास्ट मिनट टू गो। ये फ्लिप नहीं ये रिस्क हो गया थोड़ा। जोरो कॉम्बो वेस्ट हुआ। ट्रेवेनेंट यूनाइट नहीं है एक्चुअली। हीलर गया, हीलर गया, हीलर गया, हीलर गया। अब गोल्स का बीटी हो सकता है। ट्रेवेनेंट नहीं 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 हो गया, विकेट हो गई, विकेट हो गई, विकेट हो गई, विकेट हो गई, विकेट हो गई। बट कैन दे सिक्योर? एंटी 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 में एंटी एंटी एंटी। एंटी बॉयज वेल प्लेड बॉयज। भाई बेस्ट मैच, ये फाइनल्स हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा। ये फाइनल्स फील आया ये। दिस वाज लिटरली फाइनल्स फील। क्या लगता है कि फाइनल्स मैच लगा था? नहीं ये फाइनल्स मैच लगा था ना, लिटरली ग्रैंड फाइनल मैच लगा ये। बेस्ट मैच है भाई टूर्नामेंट का, मजाक नहीं कर रहा। भाई बहुत अच्छा खेली नेमेसिस, बहुत अच्छा खेली। कुडोस टू नेमेसिस भाई, बहुत क्लोज मैच किया भाई। इनके गोटे मुंह में है, इनके गोटे मुंह में है। अरे बस वो प्रिजर्वेशन प्ले हो गया ना कि वो गोल करने जाएंगे, बट अब इन पे एडवांटेज था, इनको रुक जाना चाहिए था। क्योंकि अगर गोल करने जाते, 2 बंदे जाते, ये 5v3 एंगेज करते उधर। वो सैड हो गया, वो गोल करने चले गए, ये रोकने चला गया और वो फाइट ले लिया। इन्होंने सोचा गोल करेंगे। सबकी फट रखी है। उसका डिसीजन भी गलत नहीं था, इट वाज जस्ट उसका डिसीजन बेटर प्रूव हुआ। दोनों का वो मिम्यू का डिसीजन गलत नहीं था। लोग उसको भरेंगे कि रिकॉल क्यों किया, लिटरली भरेंगे लोग मिम्यू को रिकॉल क्यों किया, बट वो करेक्ट डिसीजन था रिकॉल का। बट वो दूसरा डिसीजन भी करेक्ट था, उधर रुक के अगर दोनों स्कोर करने जाता है। 5v3 विकेट। की स्ट्रीम स्ट्रांग थी पर उसको बैन स्ट्रांग थी पर उसको बैन तो पहले से हो रखा है भाई, रीजन स्पेसिफाइड नहीं है। यूएसए से पहले बैंड है वो, 1-2 मंथ हो गए उसको बैन हुए। भाई आंखें खोल दी है गेम ने। फाइनल क्या? नहीं लूजर फाइनल है बिटवीन रीवर्क रिस्पॉन
एंड काबी चांस to win that कौन जीता final केस team काबी fight. चांस वन Obviously, these teams very, बहुत very क्लोज मैच था भाई happy. जेन्युइनली बहुत क्लोज मैच Well, था had to fight a very difficult path, especially through today. Yeah, definitely. They've had so many opponents that have been so difficult. Nemesis, obviously, one of those in the list now. Is there's the damage numbers that we were कॉम्फी looking ने at क्या किया था earlier. उधर वैसे मैं Plus the देखना है Zorak at 67,000. कुछ मैं मिस किया हूँ शायद मैं फाइट में कुछ मिस किया हूँ कॉम्फी वाले फाइट में कुछ मिस कर रहा हूँ मैं कुछ मिस करा क्या मैंने For unhealthy unites for engagement on Kabi-chan's side. So in waiting again, defending on the pad exactly what they were doing before. Zorak's gonna be the one. The ability is huge, especially using Shadow Sneak. They can counter-engage if they find the right target, but Zorak's gonna be the one that's moving in, and Blissey Rex is gonna be going down, the first member of this fight. वेट ज़ैप लिया क्या Focusing on this Rayquaza. As the score did go in for Kabi-chan, they currently have the lead. अरे ज़ैप लिया As the score did go in for Kabi-chan, they currently have the lead. मुझे लगा जोरो को गया है As the score did go in for Kabi-chan, उसका साइशॉक टाइम पे था they currently have the lead. यस लुका सिंह पे वीडियो पर था बट आई डोंट थिंक इनका ये कितना था 213 and 266 ये लोग जिंदा तो नहीं बच के जा रहे थे इधर से क्या तीन बंदे चार बंदे इधर हैं दो बंदों का इतना ओपनिंग गोल 10 सेकंड में आई डोंट बिलीव पॉसिबल है Congratulations, that was such an incredible game. My first question for you is, Mostly how हार did चुके your थे team deal with the Dragonite ban, that targeted ban towards your team? 相手のチームが野田さんのチームを対策するために好きなポケモンの回避をバンしたんですけれども、これはどうやって対応しましたか？他にビトコ選手の得意なバシャーモやグレイシアを出して、勝とうとしました。ब्रिसी का फ्रंट फ्लैंक पर रहना सही था बात यह कि 45 हो गया था क्या मिस्टेक नहीं है यार डिसीजन का थोड़ा वो हो गया गलत डिसीजन में नहीं था वो 45 मैटर किया ना इंडियन को 45 बीट हुआ बिकॉज मिमिक्यू वाजंट देयर सो एंगेज हो गया उधर リスポンっていうチームと対戦するんですけれども、このチームに対してなんか एंड थोड़ा सैंडविच हो गए बिकॉज वो जैप फाइट के बीच में इधर से है ना ये बेसिकली अपना जैप का ये बीच में जैप है इधर से वो दोनों पाथ हैं वो दोनों पाथ से सैंडविच हो गए थोड़ा थोड़ा जब तक मिमिक्यू आया इनके एचपी बहुत लो हो गई थी विकेट गिर गई एंड थोड़ा सैड हो गया हल्का पीछे करता हूँ नहीं तो लैग होगा Chance, yet another incredible performance in our AEOS Cup tournament. Invited to this event, and they've been showing why. What an incredible performance all day long today. Zoro backup karta hai, then Nemesis. We're going to continue to get to see this team. Yeah, they could have done 5v3. They could have initiated them. इन पे सिक्योर नहीं है इन पे सिक्योर नहीं था इन पे एसपी ऑन है इन पे मिमिक्यू है फाइट लेने को इन पे ट्रैवल एंड स्टन देने को एंड पे जोरो आता सिक्योर के टाइम पे बट आई बिलीव दे वुड हैव 5v3 देयर बाय देन दैट्स वही है भाई टूर्नामेंट है वन टीम विन वन टीम लूजेस बट या बोथ टीम्स प्लेड वेल यार बहुत अच्छा खेले भाई नेमेसिस जेन्युइनली एक कहने के मैच से बहुत वही है भाई कंसीडरिंग एनी टीम्स की क्या हालत है ये टूर्नामेंट में नेमेसिस पहले नेमेसिस भी लाइक सैड हो रहा था फिर उनका कमबैक किया भाई मस्त खेले हैं शिंगड़ी के जैसे अगेंस्ट खेले उससे तो वे बहुत अच्छा खेले भाई मैं बोलूंगा मेटालिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है जिससे सबसे अच्छा खेला है भाई ऑल्दो ऑब्वियसली काबी चांस का एमजे की टीम ब्रो क्या एमजे की टीम एमजे के तो है भी नहीं itself and the KOs maybe weren't super huge, but also kind of having that slow beam effect of its Unite did manage to be a key part of why they were winning a lot of their fights. Just, of course, not quite the entire game. So I do love the Mimikyu. I feel like we haven't still seen it pop off quite yet. Yeah. But it does show exactly. Yup, Nemesis बहुत अच्छी लग रही है भाई अगर ये फॉर्म कंटिन्यू किया ये आ रहे हैं भाई वर्ड्स में हेलो डीसी किंग भाई the Unite move of course a good matchup into anything with that Confei combination मेटालिक बेस्ट तो नहीं बोल सकते अभी तक हीरो पुल उसका तो देखा नहीं है क्या देखा है ट्रेवनेंट देखा है एंड व्हाट देखा है ट्रेवनेंट और एक और कौन सा हीरो था ब्लास्टर्स नहीं क्या देखा गाइस ट्रेवनेंट एंड ब्लाजिकेन देखा सरीना देखा राइट और कुछ भी देखा क्या वे भी कोई जगह नहीं मिमिक्यू वाज अ गुड प्लान जोरा को शटडाउन करने के लिए मिमिक्यू इज गुड एंड शटडाउन किया अभी दे शटडाउन जोरा
Unfortunately, LG is out from AEOS. कैसे टीम भाई? NA के क्वालिफायर्स भी तो होंगे? क्या हो गए? क्या पॉइंट सिस्टम के बेस पे क्वालिफायर बचा है बस उनका? Obviously going to be quite different, and Vitopo will be the player of this game, of course, using that Zoroark speed to zip around and get so many points. Yeah, a player that in the Asia Champions League, a lot of people became wise to with how strong of performances they had in a high-profile event like that. Well, they're following it up with great performances in yet another one as well. 67,000 damage in total, playing that shot. Points but lost for LG का. But वो नहीं है क्या tournament जीतो qualify करो वाला scene? West qualify I think सिर्फ चल रहे हैं या फिर tied हैं. I don't know. We're down to 3 teams left. It's going to be Lada अरे Frost भाई क्या हाल चाल भाई? and Japan. निब्बा निब्बी कर रहे हो क्या अभी भी? Go down to 2 after a short break. Don't go anywhere. We're going to have the losers finals right after this. LG का क्या हुआ? विकेट गिर वो तो 21st प्लेस है ओपन ब्रैकेट में, लास्ट प्लेस है ओपन ब्रैकेट में. NH से है बस ओपन क्वालिफायर, बट वो फिर खुद का पैसा खर्च के आना पड़ेगा ना वो ओपन फाइनल ब्रैकेट, फाइनल स्टेज ब्रैकेट जो भी है NSC जो आई डोंट नो. 4 मिनट्स क्या करें 4 मिनट्स गाइस? बताओ 4 मिनट्स क्या करें बाबूशकास? रिवर्स रिस्पॉन वर्सेस काबी चांस. बिना जंगल बुक कीरोस खेल बस नहीं था. आई मीन क्या बोले, मेटालिक बहुत अच्छा खेला भाई, हर हीरो अच्छा खेला भाई. सरीना से भी उसने अच्छा खेला है, मजाक नहीं कर रहा. एक ऑफ मेटा हीरो लेके खेलना अच्छा होता है भाई, कुछ भी बोलो. कल एलजी ने खुद से लास्ट मैच नहीं खेला, गुस्सा हो गए. लॉल. तो उससे पेनल्टी पड़ा क्या? कुछ पेनल्टी पड़ा क्या? यस एलजी के प्लेस चेंज हुए. पेनल्टी पड़ा क्या वो बाय विन देने का स्विच ब्रैकेट पे? एलजी वन वाईटी से भाई, वाईटी से आ रहे तो वाईटी कॉम्फी सिक्योर से हारी है और फिर भी जीत के आई है, क्वालिफाई होके आ गई. वाईटी तो अलग क्लच किया है. देखना है क्या ये 2023 वाला ब्रैकेट? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का था कि यूसीएस का था? वो इंडिया का है सिर्फ, 2024 का नहीं है क्या इधर? ये 2023 अपने वाला नहीं है इधर, नहीं था क्या वो? दिखाओ म्यूजिक कोड. थैंक यू ब्रो. अप्रैल क्वालिफायर में नहीं वेट, अप्रैल में एलसीक्यू और फिर एलसीक्यू के बाद रीजनल प्लेऑफ्स. ये जोरो भाई था. यस बट जोरो काउंटर कर दिया था भाई. जेन्युइनली अच्छा जोरो काउंटर किया था इन्होंने. कैसे हम म्याओ भी खेल सकते हैं? खेल तो सकते हैं बट म्याओ उतना वायबल नहीं है ऐसी कॉम्प्स में ना. म्याओ लिमिटेड वायबिलिटी है. ये गलत इमोजी कैसे यूज हो गई? क्या हो गया भाई? अभी भी गलत इमोजी यूज कर रहा है. नहीं अच्छा वो लाल वाली सैड. डिंग 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 डिंग. ये रहा भाई अप्रैल क्वालिफायर और इधर से हमारी विकेट गिर गई थी. हा 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 ही. छोड़ो भाई, यादें क्यों ताज़ी करनी है, दर्द होगा. आप ही मुझे कुछ नहीं कर रहा भाई. म्यूजिक तो अच्छा है भाई. पोकेमॉन का तो जो भी बोलो भीड़ रहती है भाई, बहुत मोटी. इनके 3000 के ऊपर तो कॉम्पिटिटर होते हैं. न्यूट्रल है क्या भाई? न्यूट्रल है, न्यूट्रल. भाई पोकेमॉन के 3000 के ऊपर कॉम्पिटिटर होते हैं अलग अलग हर जगह पे. No bro, no gender, because he is the creator of all Pokemon जिसका gender नहीं है. No gender. He is the supreme being. रियोगा भाई क्यों कर रहे हो भाई? मैं बैन दूंगा फिर ऐसे. उसने कुछ बोला आपको? मेरी चैट में बकचोदी मत करना. थैंक यू. ये लो भाई सेरोलेस का ट्रेलर आ गया क्या? रंबल इन द रिंग से क्वालिटी इतनी गंदी क्यों आ रही है?
वो ड्रैगन टेल फैंटम फोर्स है कैसे ये फैंटम फोर्स है क्या सैरोलेज एवरीवेयर पोकेमॉन गो है क्या ये नेक्स्ट ईयर है वो तो लेजेंडरी नेक्स्ट ईयर है भाई AEOS Cup has almost come to an end. Live here in London at EUIC. Teams from all over the world have come and win बस कांड कर दिए थे थोड़ा that secured spot to Worlds, and now here we are in the क्या चल रहा है भाई मेरे चैट में मैं बैन देना चालू करूंगा फिर short matches before we know तुम your दोनों चिल करो ना भाई Yeah, Kabi-chan's up against it with rework, respawn. What a showdown by Nemesis, though. I'm going to tip the cap to them. Finally, my player to watch, Metallic, is out of the event, and I have to give them a shout for making me look so smart all weekend long. The only team to ban Dragonite, and also the only team. स्प्रेगा सूट अच्छा है बट आज मजा नहीं आ रहा स्प्रेगा उसके सूट में Let's take a look at it right इसका सूट दूसरे सूट बेटर So थे we are in our losers finals like we said. Nemesis went up against Kabi-chan's. They went to 3, but Kabi-chan's able to take them down. Kabi-chan's taking down Nouns Esports. Kabi-chan's taking down Kapi Babas, and now they're going up against Rework Respawn. दो यू की टीम की विकेट गिराई एक एनए टीम विकेट गिराई काबी-चांस ने मतलब यू का तो पूरा सत्यानाश किया एक एनए का भी कर दिया एंड एक एनए की टीम जो थी वो एनए की विकेट ही गिरा के आ रही थी Now 2 regions, technically 3 regions: Latin America South, Latin America North, and Japan. All the Western regions and crown themselves champion like चलो guys, NA is out, EU is out. जिनका टूर्नामेंट था उनकी विकेट गिर चुकी है. Western region invites home with them. Of course, and again, take it to Easy Street all the way to Honolulu. However, these Latvian teams have looked so good. Yeah, both of them undefeated up until the winners finals, right? So they've been doing an incredible job. But any team that is this deep in this competition, a few things go right. उसने Dupes Next ने पिन लगा रखा है, I think EUIC का Championship Europe. Sprague ने से Cerulege लगा रखा है, right? I think that's Cerulege. जो पिन है, कुछ तो उसकी शक्ल जैसा दिख रहा है. Yes, loser final है अभी. Rework Respawn, Kabi-chan. Touch these LatAm teams. It's going to be really interesting to see the clash of these two metas right here. Yeah, we almost have like the chaotic, in-your-face approach of the LatAm squads. Again, even more so aggressive, it seems, than the NA and EU teams when it comes to brawling. And Kabi-chan's just kind of cold calculated, has their game plan over and over and over again. And somehow, like I kind of said, it's like the play action of Pokemon Unite strategy. Run, play, run, play, run, play, fake the run, and then they're in your face, going deep downfield and taking big-time KOs and wins. कितने पैसे आते हैं इनके बटे कौन से कितने इनके पास want to fight their opponents. They have all these other things that they are doing on the map, and then their opponents just show up to kind of annoy them. They have to get rid of them really quick, and then back to what they are trying to do, which is win their game of Pokemon Unite, their style of Pokemon Unite. Well, let's give the folks at home a little bit of a inside look at Kabi-chan's and their comms at the end of that last set. Let's tune right in. Organizer भाई Pokemon है, Pokemon है. This might be the most. पैसा है भाई, ये Pokemon है यार, Pokemon. This is sound. Yes. Wow. I mean, they were pretty hyped. Yeah, they're pretty excited. I heard a lot of nice at the end. It is banned. Twitter देख लो मामे का. Although not confirmed, it's banned. Honestly, it was a pretty nice moment. Comfey with the secure right there. Huge moment for Kabi-chan's. They're running into Rework Respawn right here. Yes, player भाई. समझ आ रहा है. Oh, सीधा draft. Let's go. Seems to figure out their opponents, and even when they're drafted against, they have a strategy that works. Minato bhai is back. I ask him on stage, what did you think about? 8 बज गए भाई, 8 तो हो रहा है भाई जीजी. Picking something else.
pretty chill about it. Yeah, we just picked a different Pokemon. Yeah, I mean, if it's there, sure. Yeah. If it's not, you know, whatever. There's other Pokemon in the game. Let's go there. Mimikyu banned, Leafeon banned. Loser finals. पिछला semifinals था loser का. Yeah, a little bit. And there we have the Dragonite ban. I think this was the smartest thing I've seen from Nemesis throughout this tournament, who's had an amazing run. Banning away that Dragonite, I think, is Dragonite ban लग रहा है दूसरों से इंस्पिरेशन ले ली इन्होंने. और मिमिक्यू, अरे इन्होंने मिमिक्यू नहीं खेला है. तुम मिमिक्यू ban क्यों किया? Loves to get aggressive, as you mentioned before, with these Pokemon. Leafeon Zoro. इस Zoro इन्होंने ban कर दिया. रेजी का Zoro देखा है लग रहा है. बोल डाल रहा है ना. Thank you for reminding बाबू. आज तो जाएगा अब नहीं इतना लेट नहीं होना चाहिए. I mean, they have other in their arsenal, and Blaziken is actually one of those. You and I haven't actually watched Kata's Blaziken yet, but we have seen plenty of that Blastoise, and Rework Respawn maybe using some lessons learned from the weekend on all the games they've watched and saying, okay, Kata is also Dragonite's a problem, Kata is also a problem. Let's take that Blastoise. I'll tell you, that Mew from Kabi-chan's is absolutely brutal. That Pokemon is just incredible. We have the Buzzwole pick up on the side of Rework Respawn. Again, Kabi-chan's feels like the Buzzwole they don't even worry about it at all. वो भी गाली देता होगा. गाली दे रहा तू? गाली दे रहा है? I think they're probably stoked to see it. There's like, man, I can't समझ नहीं आ रहा हरिजन की टीम एक ही टूर्नामेंट में कैसे खेल रही है. Mini birds है. Mini birds है. Venusaur. Better dance. Buzzwole's great, right? ये ब्लास्टर्स भी ये एक्चुअली गुड है. ये तो खेल गए. Macam नहीं. All weekend long, no surprises there. Yeah, we're going to see the final pick I here. think match चाहिए रहेगा. Yeah, और support नहीं, sorry, my bad. They are going to be grabbing their supporter. There's the Eldegoss, and now our final pick for Kabi-chan's. Buzzwole चल सकता है. Buzzwole चल सकता है. Buzzwole चल सकता है. Buzzwole चल सकता है. ये दो प्लेयर्स के नाम में TTV क्यों है? TTV org नहीं है. TTV का मतलब है twitch.tv. Basically channel promote कर रहे हैं अपन. जैसे YT होता है ना एंड पे कुछ लोगों के वो YT उन्होंने बस नाम रख दिया. वो टीम YT मतलब YouTube है. 3 अटैकर क्यों हैं? ओके Venusaur टॉप लेन है बाबू. काटा यूजुअली ब्लास्टर खेलता है. बज़ोल का टेंशन नहीं है. अब टेंशन लेना पड़ेगा बज़ोल का. भाई अच्छा खेल गया. रिवर्क रिस्पॉन ब्लास्टर्स ले दिया. अरे मारना कहीं मेरे को है. शायद नहीं दे बैन बाय वर्ड्स पे होगा वो आई थिंक रोल. या फिर बिकॉज ये अभी वो खेल कर आए जापान क्वालिफायर तो क्या पता नेम लॉक वगैरह कुछ हो बोला हो गया. नाम चेंज मत करना. होता है कुछ रहते हैं लाइक रिस्ट्रिक्शंस. Zorak is undefeated at EUIC. Scissor, Scyther in this case. Reggie Zorak is undefeated. I'll say that, man, that's both 100% when you look at it like that. Win rate. That's pretty high. It might be the highest. I'll check with production. Stats hey guys, team, talking just to production right here. 100%. Highest number, or do numbers get bigger? Get back to me here. All right, we're heading into our game. Game number 1 between Rework Respawn and Kabi-chan. Hey, Blasters bot lane. Oh, sorry. भूल गया. इनका तो top lane वो है बज़ोल है. We're getting after it. Minotaur and Rev going into this bottom path. क्या हो गया भाई? किसकी आंख अंदर चली गई? कहाँ गई भाई? In their pocket. Let's see pretty well made, sure man. Do in the face of Kabi-chan's here in the losers finals. Yeah, here we go. Just a lot of aggression here in this bottom. Vina already आ गए. How much they can secure? Looks like that does go over. This is stack कर रही है. This ने बैरी उठा ली. This ने पीछे का फार्म भी छेड़ दिया. You can see the Blissey just causes This का कट गया. trouble for him right here, making sure that these wild Pokemon walk. This जा रहा है invade करने. Right now. They have almost a plan for everything, right? Chansey going straight towards that central area. BT हो गया Tons कुछ. of time for the Glaceon to get online. Of course, a lot of faith that they have in Kata up top. कुछ तो दबा रहा है उधर. All by themselves against a Gossifleur and a Buzzwole as well. Yes, chemistry मस्त है. यहाँ पे कैसे स्टार्ट दिखता रहे हैं प्लेयर किसके कितना स्ट्राइक रेट होगा. I mean, the biggest thing for me is, can any team use Buzzwole well against Kabi-chan's? Or is it just a fool's errand? You just keep picking Buzzwole and you keep losing against this squad with it. It was interesting when I saw the Japanese qualifiers and I saw the statistics, and I noticed that the Buzzwoles that were picked there were losing that. TTV all-made YT. मेरा all-made fit नहीं आता पूरा ऐसे टूल के साथ. I was really confused. ये बिल्ला जापान से रही है. Kabi-chan's for the past 2 days. ये पूरा पीछे जापान से है भाई. पूरा सेट पीछे जापान से है. कुछ इंडिया की चीज नहीं है पीछे. They're like, yeah, I guess it picks things up. Get him out of here.
Well, I mean, the last time Buzzwole has looked good against Kabi-chans was for free game 1 when they got that first pick and it looked phenomenal. If you recall, that was a big win by 4-free, and that was kind of the beginning of the beginning of the end for the Buzzwole train here at EUIC when it comes to playing against Kabi-chans. And it hasn't really looked mast hai yaar. It really hasn't. It has not been able to do too much in these games. Pura aayega nahi kyota bhai. It's going to be an interesting pick right here. I actually really like it into Pokemon like Glaceon, Venusaur. I think it's extremely powerful. Mew even it does pretty well against Kabi-chan almost out होने वाली थी, but NAU out हो चुके हैं टूर्नामेंट से. NAU की दो टीम्स थी आउट. लेटम अमेरिका की दोनों टीम बची हैं. एक ग्रैंड फाइनल, एक लोअर फाइनल इनके अगेंस्ट खेल रही है. और शिंगड़ी लोग आउट हो चुके हैं. शिंगड़ी लोग को नेमेसिस ने दे दिया. ऑलमोस्ट काबी-चान को भी दे दिया नेमेसिस ने. लुमिनोसिटी 21वें नंबर पे ओपन ब्रैकेट पे. तो लुमिनोसिटी 21 पे आउट है. focus and just attention to कॉम्फी ने रिक्वाजा लिया है इस मैच में टूर्नामेंट में 2 बार कि 3 बार. From Kabi-chans. It's really a clash of two पवन भाई बिल्कुल. We're going to take a look right now at this video. You can see Duke and I popping into frame. You know what? LG is no more LH. Behind the scenes right here on this. Oh wait. LG is no more LH. This is the Japanese cast. अभी लूजर फाइनल चालू है. Oh, they like the hop. Who doesn't like the hop? Japanese वाले देख रहे हैं. कैमरा. Let's go. Let's go. And you know what? मैच में यार बग हो रखा है कुछ. Right there is how ours ended. When we dropped back down and ये उन दोनों की बकचोदी कर रहे हैं. A lot of people would say, "Hey, Snacks, Sprinkles, did ऐसा you नोट बाजी. calculate that?" ए उसने भी तो लिया LG के कॉम्फी. नहीं LG. किसका मैच हुआ था? YT का किसके साथ मैच हुआ था? YT के They see a meta somewhere else, they absolutely crush it. शिंगड़ी लोग ने लिया. हाँ एक्चुअली हाँ. Frame even better than you and they do. I guess so damn भाई. क्या हुआ मैच को? अरे कुछ इशू आ गया. ये जो साइड में प्लेयर है ना एकदम कॉर्नर में इधर को वो देखो एडमिन कर रहे हैं. उसको डिस्कनेक्ट हुआ है उसका. टेंगी भाई भी जॉब कर रहे हैं. दरबारी भाई यूके में है. दरबारी इधर हो सकते हैं लंदन पे बाय चांस. दरबारी भाई देखते हैं सब. Well, in the moment it felt like of course we're going to pop down. No doubt. I didn't know you were popping down. We call that a no-doubter in the biz. In the biz, we do call those no-doubters. Everyone hates that we call those no-doubters. I can tell you that. We're going to keep laying it in. You can't stop us. Just like the volume of milk we drink. लो भाई लेपर्स पकड़ दिया. Huge रीस्टार्ट होगा. पॉसिबली रीस्टार्ट हो सकता है. बट मोस्टली रिज्यूम भी हो सकता है. लंदन में ठंडा है क्या? अभी पूछ के आता हूँ. It gets a little shaky. We get to see the audience from it a little bit. You can see our players just waiting to load into this game right here. Obviously, if you have a player disconnect or if there's a problem with their device, you want to make sure you pause the match right away. So that we have the best match possible for these players. We're taking a look at our 2 captains right here, Sherlock and Noda. Captain of Rework Respawn. Sherlock is the defender. Main Pokemon is that Blastoise. अपडेट करना पड़ेगा. कुछ अपडेट आया कल 2 दिन में. मोटा अपडेट आया. I know के भाई ये जीतेगी तो हाँ वो yes. Then they can't participate in Japan qualifiers then. Basically Japan has अभी 3 slots है ना जापान को. KS जीतेगी 4 slots हो जाएंगे. 80% win rate Eldegoss. Fun fact, last time they showed us this metric for Noda, it was at 75%. Picked up another fat Dubsky with the Eldegon while they're at it. You know, that's a good way to do it. Notice what they're putting on broadcast. You say, all right, I'll start doing more of those. You got to pump those numbers Get that number a little bit higher, especially if you're one of those, you know, we show जैकेट वैकेट पहन के बैठे हैं. मैं हुडी पहन के बैठे हैं लोग. क्या बात कर रहा है? Let's bump this thing up to 60. We need to get the stats team to pay attention to me a little bit more. And also, why would they say hello, boys? 50% metric up there? I'm hello. sure better on one of the other Pokemon than that. Hello. Yeah. I mean, not me, like not. टोपी उतर नहीं सकती by the way. Max is dog water on most of the Pokemon in the game. But you know, these are pro players here. These are some of the best of the best. We might be looking at 2 of the best teams in the world. Worlds में पता लगेगा. This mini worlds that we have. Worlds तक तो सबको कुछ ना कुछ लगता है. वापस आने आ जाती है. A little preview of what it's going to be like in Yes, Moxie-chan. Seeing a little preview. Also है क्या इसे के लिए I don't. इंडिया के लिए नहीं है शायद. चालू हो रहा है ये पॉडकास्ट मोड आ गया. In every different region. NESC open bracket है. But NESC is not open to worldwide. NESC is only open to NESC. Indian qualifier nah. Well, what we do know is they evolved and left with that buff. बहुत BTLN में. That's a win. That's a win for बहुत BTLN में आज. Sending that Chansey on a mission, coming out and on top, and of course the Bulbasaur able to stick
it to them in the top path while they're out here. Still level 4, but it doesn't matter. No knockouts coming. ए बड़ा भी उनको गया क्या? The way it was moving in that fight, by the way, correct number of hats. Let's go. The way it was moving in बिना बदल से पहले 5 हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा. Drill peck maneuver. It was trying to pull a Pokemon or a lot of the wild Pokemon towards their side. Yes, it is. Drill peck. यू के लिए भी ओपन है वो, तो फिर नहीं यू के लिए ओपन होगा. Finds the KO. Mew, by the way. ये हो गया खत्म मैच. ये तो हक दिया. Look at this, 4 members of Copy just diving on this top goal zone. भाई क्या हगा है, क्या हगा है, क्या हगा है. मारना चाहिए इनको भाई जो हगा है इन्होंने. इतनी बड़ी पुप्पू कैसे कर सकते हैं? ये एक मार के पकड़ने वाला है शायद. It doesn't like getting कोचिंग वाले को भी पकड़ रहा है. At the same time, it's able to get out there. It is using the drill peck to try to get something right there. But yeah, Mew's got the boosted, follows Dodrio. Mew's got that electro ball, follows Dodrio. Tough thing for the. They already have the coaching loaded up, switches over to the Glaceon, so the chase couldn't even happen either. I mean, free trap पे तो चलता ही है. Mew has been a work of art. यार इसमें फर नहीं है तो मजा नहीं आ रहा. Just incredible. Softy feeling नहीं आ रही. Interesting seeing a lot of these top teams on the icy win. 4000 पे आ जाती है. We saw it from Nemesis. Back to Mew guys. From Kabi-chan's. A lot of teams also running Ice Spear when you see that Glaceon, but this is sort of the higher skill build, higher burst, better secure, and you know Kabi-chan's loves their secure. Without a doubt, especially if they're going to be going Giga Drain pedal ये freeze होने वाला है. Venusaur, you want a way to be able to secure those objectives. There's no way they're entering a map without one. As they're pressing forward here, nice egg bomb catches 3. No real follow-up because Kabi-chan's is composed. Yeah, Kabi-chan's is calm, cool, collected. Nice big superpower. We get at the drill peck right here, but there's nothing that can happen to that Trevenant. They're going to continue pushing on 13. this goal zone. All these fights have just been so good from Kabi-chan's. We talked about rework being aggressive, but Kabi-chan's is just pedal to the floor right now, and they are not stopping. I mean, ये मैच में बस चलना चाहिए, but भाग रहा है वो. Surgical kind अर्ली of गेम हक approach दिया. to how they're doing these हम सिक्योर में. They're not just throwing haymakers, they're hitting और अब pressure लेट गेम में points, फार्म मिला है. inflicting your बट knees ये with फाइट a के लिए lot from क्या under कर रहा है? you, क्या 'cause कर they're रहा still है? putting the क्या pressure on you क्या all क्या over क्या this क्या? buzz roll again, finally picking up a slam, can't quite get the KO, has to eject over the wall, and meanwhile, we got a Regieleki flying in their face. Yeah, easy Regieleki. Force कर रहे हैं फाइट को ये. The question is, do they want to push with it? जब Do they want to do जरूरत something नहीं in है. this bottom goal zone? It looks like they're going to decide to push right here. They have a unite move on Mew. They're getting pretty aggressive. 4 members of Rework up here to try to fight this back. Yeah, all 5 players are showing up. Rework Respawn shows that it's going to be 5, and they're showing up with all their players as well. ए देख skill miss कर रहा है randomly यार. Electro ball, we got a KO, we got some action. Out nice Espeon Unite catches a bunch of players. This is an opportunity for Rework Respawn. Kill मिल सकता है Rodovina का. Nice trap का kill मिला. Blissey का kill मिला. One player down on Rework Respawn. They find 2 the other way though, as the Espeon takes out Blissey. All right, great goal zone defense. That got very scary for Rework Respawn there for a Plastic moment. को हो जाएगा. Not able to take advantage of that level lead right there, and actually giving a little bit up to the side of Rework Merry Respawn. Christmas. But when you've got the advantage inside of a game of Pokemon Unite, you need to make sure you use it to extend your lead, and that's what Kabi-chan's is trying to do with a play level like equal that. हो गया buzzer winner का. That's nice. Already being a problem with this Pedal Dance Giga Drain build. Yeah, and they've been leaning into it hard to build ये Latam के Espeon बहुत aggressive खेल रहे हैं. अगर ये passive खेल गया इस मैच तो जीत गए. Espeon game बना के दे रहा है. Pseudo engagement, just peel back, you know, play it a little slow. And then other times, like you said, pedal नहीं हो रहा तो क्या रहा fight में help show करते. what aggression really is. And you can see right here another easy objective there for Kabi-chan's. They're able to take these with no members of Rework. ये एक गोल नहीं रुक रहा, ठीक है. To do something about a unite move coming in from अभी the Blissey buzzword, क्यों नेट खाएगा ये? right there, pushed by the Horn Leech. ये पक्का मेरे से सीख रहा है हीरो बनना. That भागना was फिर. such a sick Horn Leech by Tomato. और इधर अभी तक As soon as push the नहीं हुआ है by the ball way. lands from their unite move, which the Blissey stepped in front of अब हो and गया. caught most of. Quick little Horn Leech and push them off, get a quick KO. That top goal zone being at 1 sets Rework Respawn up for a nice overcap later, but it's 182-114. Yeah, obviously the way Dodrio scores right there, that is not going to be ideal, breaking that top goal zone, right? I mean, just such a small score, but they don't भाई care lane at farm this ले और point. 11 They हो. just need some positional advantage on the map. Dodrio in the central area right now of Kabi-chan's. As Kabi-chan's 40 setting हुआ up नीचे, another nice. objective right here, just getting ready to see if they can take it. We're getting a buff here for the Dodrio, but it looks like they're losing a Regieleki. They lost the Regieleki, and now they're going to see if they थोड़ा want goal to push ref रह it गया. in.
बट ये अर्ली फाइट लेना ये तो मौत है ये बाबू को रहे हैं भाई मजाक नहीं कर रहा है एसपी आते पैसे प्रॉक मीन एसपी कल्ट वेस्ट हुआ नाइस ब्लास्ट असल्ट बट ना मरना नहीं ये ब्लास्टी को पहले नहीं मरना था बहुत गंदा पकड़ा गया ये टोमेटो तो भाई बेस्ट रेवेनेंट वर्ल्ड का मेटालिक एस्पर मेटालिक टॉप लेन ट्रेवेनेंट बेस्ट लग रहा है और टोमेटो डिफेंडर ट्रेवेनेंट बेस्ट लग रहा है Obviously, Kabi-chan's is getting super aggressive right here. Apparently, their new objective focus is just win this game and absolutely dominate Rework Respawn in their central area. They've been हो चुके अब तो जा सकता है कुल्ला Yeah, I actually missed when the Regieleki was taken, but we might have a game-winning scenario, and that means when the Regieleki shows up before 2 minutes, if you can send it, because they cleared the first and second goal zones, it goes all the way towards the base, which opens up a different avenue for winning for the team besides just Red. My goodness, this Glaceon, by the way, level 14 right now. I mean, this is going to be absolutely brutal. Okay, Blaster को ठीक खेलना पड़ेगा भाई मिनाटो भाई है क्या get this Reggie Rock down here, obviously, and have पैसे those प्रॉक करा defenses for this fight. Really nice for their bulkier characters, and also really nice for that Venusaur. Just give it some more defenses so it's able to survive even longer with that pedal dance build. Yeah, if it can take up to level 13, what a prize that would be in these final few moments. Still up on the scoreboard, and you can already see Kata working through Wild Farm so they can hit that point. And here we go, the Woodhammer, they're looking to get Reggie right here. ये मेरा डोडो था Full combination. ये मेरा डोडो था They take the bottom objective. They are in total control here in game number 1. I mean, Rework Respawn is going to need a big time catch. ये बज़ोल नहीं लग रहा है भाई ये बज़ोल प्लेयर नहीं लग रहा है मेरे को शर्लॉक Whether it's tomatoes, horn leech, जेन्युइनली नहीं लग रहा है लाइक पोस्ट कराया गया पिक शायद इस पे कि कुछ तो हो जाएगा इस पे hyper or solar doesn't matter, you're taking a ton of damage. Yeah, and here we go. Really nice job to let that leash so that there's no way they were able to secure that and set up another win condition. Basically, the Buzzwole 13 हो गया somehow. onto the map. But क्या Buzzwole walking in towards that center goal काम कर पाएगा? Again, Rework Respawn is behind just about on every metric right here, and they're going to need to make यार Buzzwole safe नहीं है बात नहीं है properly use नहीं कर रहे हो Buzzwole को push back a little bit. Mew zoning them out as well with that electro ball. Everyone just kind of dancing. You sort of know where everyone is, but everyone's a little ऐसा लग रहा है वो worried like about how they're force going किया to गया take उस पे this fight. However, Kabi-chan's, they're pretty cool. easy hero है कुछ ना कुछ हो जाएगा They don't. easy hero नहीं है भाई लगता है अरे यार but tomatoes taking a ton of damage. Half HP actually gets punched up by Sherlock. Now we have Kata getting the pedal dance going to see if they can catch anybody with it. Here we go, Tomato walking down, just getting more vision for the squad. They're tapping Rayquaza, but I think Rework Respawn knows they're not really going for it. Looking for another catch right there onto the Trevenant, just like really the last Pokemon that you want to hit with your combo. If there was any way you'd want one of these squishier Pokemon possibly, but they are not able to get close to them. Incredible zoning, beautiful solar beams right here. They're tapping Rayquaza once again as Dodrio is continuing to score right here. Nice big Horn Leech, Woodhammer, there's the Eldegoss Unite. Forcing that out is perfect. Pedal dance, Giga Drain, passive गया blaster down है Giga Drain on top of the Blastoise, catches the corner of the ball, solar beam does in fact नारियल वे blaster निकाला नारियल ने डोडो यूनाइट यूज हो गया किधर मारा डोडो यूनाइट मारा किधर Can they actually find a target? Oh, the cold front's coming through. ए Buzzwole यूनाइट जमीन पे लगा Make it 3 मां Respawn. Kabi-chan's looking to pivot. Yes, BO3 on top of this Rayquaza. The Buzzwole's not going to be able to make it in. The Dodrio's going to be late, and it's going to be taken by who else? Kabi-chan's in a calculated fashion, and they're going to score to do a little math and get that number 301 way. Here we go. The Hundo Burgers are reigning in for Kabi-chan's as they are winning game number 1 right here. And I'll have to say, I don't think there was a moment they were losing game number 1. Beautiful plays from this team from start to finish. You know, I know they say the Buzzwole but I think it might throw your games if you're playing Kabi-chan. Nemesis better थी भाई. So difficult to deal with this team. I mean, they're sadly वो नीचे आ गए. ये पहले से नीचे थे. I forgot. Nemesis शायद पहले से नीचे थी ना. पहले से नीचे थी. Good run भाई. NA की टीम की विकेट, शिंगरीलो की विकेट, इनकी ऑलमोस्ट विकेट भाई. Good run Nemesis का भी. With Reggie back capping, they had their eyes and understood exactly what was going on. They picked off
3 in a heartbeat, and then it was just Reggie and Sherlock left, and that tandem could not get it done in the face of 5. Yeah, incredible stuff there from Kabi-chan's. A team that got knocked down to our losers bracket. It's kind of shocking to think that someone was actually able to do something about this squad, because when you see them in these games, it feels like they have everyone's number. We're going to take a look at some of these big moments right here. There's that electro ball onto the fight. Another KO for the Mew. That's a double KO as they are now pushing this top goals. Yeah, I mean, they were stressing the map in very unique ways. You know, there was a 5-person rotation to make that push happen. In the early parts of the game, they're showing up with 4 players way earlier than Rework Respawn anticipated, able to get tons of value there. And now Rework Respawn actually has a pretty good defense of this goal zone spray. Goes off the back of that Psychic Solaire, that Espeon Unite. But it still didn't happen to be enough because Kabi-chan's roared right back later onto that T2. Yeah, here they go fighting here. This tier 1 goal zone. Buzz will come in and try to make something happen, but multiple members of Kabi-chan's just dispatch them immediately. You called out the great play with Horn Leech right there. Dodrio actually felt like it was doing some pretty good work inside this game, but it never showed up to the final fight. No, I mean, maybe they're thinking there's a little bit more AEOS energy on the side of Kabi-chan's map, that they could kind of cheeky score and bring this thing to closer parity, but that was not the case. And now we have a Hydro Typhoon, a nice little push, but this is a great fight out of Kabi-chan's to try and get this Here we go. Right there. That was beautiful. So perfect, so pretty. Here was the fight. Obviously, they sold this Dodrio out. The Mew goes to chase it right there. All of them are around. It's the Glaceon, the cold front coming through, picking up all of these KOs. Buzzwole is zoned out from this, and it's an easy secure for Kabi-chan's. Basically, every objective they took this game, including Rayquaza, they were all alone. They set themselves up perfectly, and they're like, all right, go. Well, they managed to do enough damage to Sherlock there to actually saw Sherlock peel to the bottom path, and they're actually trying to reset most likely. Go back to base, get some HP. But Vitopo on this Glaceon not willing to relent, and actually got a great KO streak in the final throws of that one to seal the game. I mean, look at this, 190 scored, sure. 14 knockouts. That was more than every member of the other team combined. To be fair, they only had 2 total. But 14 knockouts here from this Glaceon. I feel like every Glaceon we've seen has been so impactful, and you've actually talked about this. We don't see it enough. It is still so good. I'm so dumb. You said, you've said this before, and you said it, and then I said, oh yeah, I agree. I hope I agree with the thing I said. You've said this before. Well, it sounds like it's right. Well, it sounds pretty good. 2-0 khatam karo, please. I'm such a loser, man. Here we go. फाइनल जो देखना था वो हो गया. पेलो काबी-चान अब काबी-चान जीते. अब काबी-चान जीते. फ्यूजन में भी टक्कर दे पर अब काबी-चान जीते हैं. And it looks like we must have a bit of an issue there, because oftentimes one of the teams would ban. The first team would ban. Yeah, I really think they would. In a high-level competitive setting like this, you typically do have the teams use all their bans. कि भाई स्विच पे पहले रिलीज हुआ था और जो लोग पहले पोकेमोन का गेम खेलते होंगे उनको आदत लग गई. A more relaxed situation, do people elect to not use their bans? Yeah, it's strategically insanely valuable. So it would be I think really background पे picks हो रहे हैं और वो picks खत्म होंगे वापस restart होगा draft. मत डालो ना सर, ठीक है यार, मैं खुद नहीं चाहता गेम 3 जाए. पेलो भाई काबी-चान पेल दो इधर पेलो और 3-0 हार जाओ या 2-0 हार जाओ उधर फाइनल में. बीसीएस के साथ इशू आएगा वापस. ये नोटा बाजी है ना क्या रोम है. आई थिंक नोटा बाजी है. शक्लें भी तो सेम है नोटा बाजी और रोम की. A lot of TI-83s got pulled out instantly when we asked that question. We can see them from where we're at, and they are all just sweating over the notes right now. Yeah, I mean, we got guys and gals back there running back and forth with reams of paper in their hands. Someone's glasses are kind of falling off. Someone like undid their tie pretty aggressively as they're trying to crunch this. And I understand it because I can't figure it out here in the booth. NASA mission control is what we're seeing right now to calculate this number. Just a lot of sweat. Too much sweat, to be honest. And it's not that hot in here, but they are dripping sweat back there. That's just what we demand out of our stats and production team. So if you ever are interested in joining it, heads up. Yeah, I mean, you have to be willing to work in this kind of grueling environment. They're
passing out again. They're working too hard. I don't know if we're ever going to get it. It's going to be tough. Somebody just dropped to their knees screaming. These are great mics. They only catch our voices, but trust me, they are screaming in the venue right now. I would consider the scream blood curdling. It curdled my blood. It was a scary sound, but I understand it's because they're under so much pressure. Full circle, you know what else is curdling? The milk that we've been drinking all day long that we keep under this desk. Hey-o! Do you like the milk bit? Let us know in the Twitch chat if this has been one of the worst bits we've ever done. It's pretty awful. It is terrible. And I'm the one that keeps bringing it up. So shout out to me. No, I think it's a solid bit. It's all it's all we've got. At this point, yeah. We've got milk, birds, gasoline. Look, we don't have enough. Okay, and that's on us. We should have brought more bits. We got sleight of hand magic that doesn't work. We got popping into frame, not telling the cameraman about it. You know what? We got a few solid ones, okay? We did get, with all the L's we've been racking up, it was nice that we did get a couple big W's here as our players are still waiting to load back into this game. Again, if a device disconnects or there are any issues, you have to make sure that everyone gets the 45-minute break तेरी भैंस को चाह रहा able to play that inside the match, especially when these games are so incredibly important. Here we are in the losers finals. The winner of this has an opportunity to head up to Grands. They have an opportunity to dispatch Fusion, and they have an opportunity to secure their spot for the World Championships. We talk a lot about that, and we talked a little bit about the prize pool, but it is also a $100,000 prize pool that they are playing for. That I would like to have. Yes, that is money I would like to have. I feel like every time I walk off broadcast, I just look at somebody here in production, I go, $100,000, not too bad. The money is literally in a wheelbarrow behind stage. Yes. It's don't tell them where it is. Yeah, that was a mistake. Come on. That is a security risk. Jeez. Which is also just my nickname backstage, the walking security risk, because I am just unplugging stuff. Yeah. In my defense, we both do that. I think when you are at a production as big as this, you'll notice a lot of extra cords. I like to tidy that up. Just great cable management out of the Smack Sprinkles combo here. He's actually the cable cowboy when he's backstage. When I'm here and I'm not on mic, cable cowboy. When I'm on mic, content cowboy. Yeah, it's great. And security risk off camera. On camera, discount being Spraggles on camera. And here we are. Teams are loading back in right now, getting ready for this game. I think you expect me not to transition away from it, but I'm gonna. Somebody has to. Somebody has to carry us away. Let me ask you a question. Sure. Let me ask you a question. I want to hear. Rework Respawn had difficulty kind of breaking through what Kabi-Chans has really established multiple times throughout this tournament so far. How does Rework Respawn pivot here in this game to give themselves a little bit better chance? I wonder if Rework Respawn needs to, first off, drop the Buzzwole. I just feel like for what you may have the best Buzzwole in the world, we have a lot of teams that have insane Buzzwoles, but at this point, this team just has that figured out. They've solved that puzzle. There's no need to bring it around anymore. Drop that and possibly go for something that has a little more dive. You could pick up something like Blastoise instead, so something not necessarily with dive, but you could take that away possibly from Kabi-Chans, use that in the top path instead of Buzzwole. You also could sort of start to play a similar game to them where you are looking to take objectives and get aggressive around those wild Pokemon, get aggressive around some of those, Regis and Rayquaza. At the same time, though, it felt like last match, Kabi-Chan said, yeah, not only do we take objectives, but we take bodies. We pick up KOs the entire time. I don't know. This is a hard team to beat, Dubesnacks. You can see why they've gotten so far in this tournament. Yeah, I actually liked the Nemesis approach. I believe it was game one where it was Dragonite, then Eldegoss banned. I thought that was pretty solid, and then you try to build your draft from there. And I do think taking Blastoise out of Kata's hands is also kind of crucial. So I think that's where I would go with the first couple moves here. But they disagree. Dragonite, Mimikyu off the table, Leafeon, Zoroark as well, and Sherlock is going to load up perhaps a first pick. And they are, Rev actually jumping on the Mew, and that's a great way to isolate Rom. Well, I mean, look, this Mew is just so unbelievably powerful. Right. Even if your Mew isn't as good, and I'm sure every player thinks they have the best one, but even if your Mew isn't as good, the opportunity to take that away from this unbelievable Mew player, yeah, that could be the way to go. We see Mewtwo X being hovered. I'm sure they'd like it right now. They said that game was tough. Yeah, that was Let difficult. me get the EX Pokemon out here. While they're locking in their selections here, Kata and Blissey unsurprisingly locked in. We've seen that multiple times out of Kabi-Chans. We still have Rom's Inteleon in the mix.
So, like, that is still a Pokemon that we literally watched them get a Penta with earlier today. And that almost seems like a no-doubter, as that Inteleon was fired up real quick. हेलो बॉयज सॉरी डस्टर ढूंढने में थोड़ी मशक्कत हो गई इंडिया में होता है क्या ना एक स्पेसिफाइड कपड़ा नहीं होता डस्टर में घरों में आई थिंक पीपल कैन रिलेट विद मी रैंडम कपड़ा डस्टर बना रखा था और बच्चों को पता नहीं होता है अभी पानी पूछ दिया पानी निकालने जाना है मेरे को ड्राफ्ट के बाद 2-0 Nostar, yes. And you know what? Copy chance 2-0 kar do, Singular please. could be interesting. We'll see if they want to bring out possibly a different range special attacker, but there is a lot of value there. Yeah, I mean, हर एक बंदा अपनी रीजन को सपोर्ट करता है, right? Loser finals है. Just in general, as we move through this tournament. Chompy, Sherlock, I think main है. या फिर like one of the few mains है. But how are you going to get to अरे the मूत्र विसर्जन आयुष भाई. going with this Clefable to round out as their supporter Inti here, against. and that's a Glaceon, and yeah, flamethrower वाला खेल रहे हैं. Yeah, it's just okay, so fix हो scary. गया. मैं फटफट आया guys. Literally फटफट आया. हल्का होके. होके. Sorry for the delay. And it's also kind of got an easier time to hit most of its moves. All these Pokemon have some good options to poke at their opponents, but Icy Wind Glaceon specifically, it's just if they're in this massive targeting range, you can fire it off at them. And it will hit. I mean, it's very similar to Icicle Spear in that regard. Like, if you're able to lock on, you can hit them. But the range on Icy Wind is absurd. So it's going to play at extreme range. So is Candle. So is the Mew. We're going to have to see what they want to do here. And I mean, this is just like a story of range here on the other side. We also have the Inteleon. Yeah, I mean, what gaps everything else's range is, of course, Inteleon's Snipe Shot. So, you know, these Pokemon are never truly out of danger when they are far away, because it's one Fell Stinger and a Snipe Shot, and that is a lot of map covered instantly. You know, I gotta say, I do like Garchomp into things like Inteleon. Inteleon has a lot of mobility, right? Especially with that eject button, Fell Stinger, we just talked about this. But Garchomp, if it can get its Dragon Claw combo, you know, the Dragon Rush, Dragon Claw combo, eject button, boom, grab Inteleon, you could set up a huge moment for a team. You instantly grab that Inteleon, you Unite move, Inteleon has to find something to back to, but they can't Fell Stinger far enough away, and you're able to pick up a quick instant KO. We'll see if Garchomp is the answer here in game number 2. Rework, respawn your purple team. Kabi-chan's your orange team, as Kabi-chan's is looking to head to the grand finals. Rework, respawn needs this game to stay in this tournament. Well, Sherlock is picking up this Garchomp, and Garchomp, despite needing a Stage 2 evolution, is pretty good early in the game, much like Blastoise. You know, they scrap pretty well. You can actually see all the damage he was able to put onto that Squirtle this early was the Gibble, and now they're just securing. Nice. Cat is like, not as just slowing these players down by themselves, as the Blissey's literally stacking behind him. Blastoise is just so incredible right here. Look at that. Unbelievable. And yeah, Blissey's just got, you know, free range on all of this experience right here, the ability to stack. We have Clefable moving down here, possibly looking to get a secure. Obviously, they have a chance, and they do. Beautiful disarming poison to a basic. Well, you know, if it's getting it done. I mean, we've seen these support players go across the map on each other and been incredibly successful on these invasions. Chansey game 1, of course, Clefairy now Clefairy now Clefable game 2. 73-53. किसका मैच है? What they can out here. किसका मैच है? Flamethrower on that Chandelure, which is going to be interesting. I mean, I don't really think there's a bad look on Chandelure. I think all the moves are really, really solid. Flamethrower obviously gives you a little better burst, a little better security. 73-53 कौन है? What they're able to do with that here in this second game. Well, we're taking a look. 73-53 क्या है? Rework respawn on the left-hand side is paying attention. किसका स्कोर है? Out हो गया क्या कि not out? Gone after having a top lane presence, has been into the central area, and they actually pivot back with 2 players to make sure that they can secure all their stuff. Here they are up. वही सोच रहा हूँ. Here of Rework respawn, possibly just out the हुआ one अभी. waiting here for this objective in the center. We have Inteleon, still not Inteleon yet. Looking forward, just getting hit by this surf. And no one's really क्या बात ready कर रहे for हो? this सही में out fight. हो गया. अच्छा Max तेरी. Yeah, we're decent spacing there out of Minato, I believe, on the Slowbro. As honestly, Kabi-chan's is playing to their side of map, but Slowbro is able था to किससे get मैच? मैंने opponent नहीं देखा. here on the Clefable. मैंने opponent नहीं देखा. Bro, है I feel किससे like the मैच? start of this match is a little slow, bro.
I mean, they are moving in the central area a little bit with the supports, but और क्या मैं देख रहा हूँ सब clear मैं भी full screen में देख रहा हूँ Pokemon और वैसे से ओके flamethrower pushes right the other way. Nice big flamethrower right there and इधर भी आ रहा है दोनों तरफ आ रहा है out here is the tree tomato with just a wood hammer secure and दोनों तरफ आ रहा है guys क्या आरआर की विकेट गिरेगी आज kind of saying this off camera here when you or I were watching लग रहा है आरआर की विकेट गिरेगी आज traps all over the map so आपको फायर क्रैकर की साउंड आ रही है क्या मेरे बीजी से ये बताओ क्योंकि मेरे कान में फट रहे हैं किसी को तो शादी है गली में कल रात से नाक में दम कर रखा है दबा दब चालू है और घारचम भाई बस बहुत हो गया I must say I do like follow me on Clefable here. Yes, Taku bhai. Yes, Taku, Mr. Taku. I do support Aship, Mr. Taku. To cause some static on any Pokemon that's playing front, you can close the gap fairly quickly on a Glaceon and have them focus fire on you, so you get a chance to actually knock it out. Looks like we just kind of Passive traded objectives right here, right? So they Mew का unite है. At least better खेल रहे हैं Nemesis वाले. That worked out great for rework respawn, and you've seen more and more teams prioritizing this top path. Better खेल रहे हैं पहले से तो better खेल रहे हैं. Score lead, take away opportunities for their opponents to move around the map easily and have vision. It seems to be a very powerful strategy right here, especially against a team like Kabi-chan's, where it doesn't seem like they always nice want team fighting. मिनाटो भाई कर दे भाई मिनाटो भाई येलो फ्लैश का नाम ऊपर रख रहे हैं Yeah, and I think that's because Kabi-chan specifically, United Holics have forced is absol good for rank push can be not the best but not the worst either ये तालिया की साउंड क्यों आ रही हैं Here we go. Nice big catch right there into the flamethrower. Obviously, you get those crazy मेरा कुछ पीछे चालू तो नहीं है catches like that. They keep hitting them right there. If you're able to hit right at the end of that flamethrower, the cooldown is just incredibly low on this move, so you can continue to zone your hey stinger मारा close right there. Very, very close. And भाई again, उसको स्नाइप लग गया because of बेचारे the को Chandler, of course, it has decent range, but what I'm looking at is can it hit a key imprison at a key moment? Because that's a great way to shut down and absolutely sputter the engine. भाई जीजी जा रहा है Here we go. We got the objective in the top path now. 20 seconds. Garchomp is up there waiting for it. We possibly have Blastoise moving towards it. As we have members of Kabi-chan's moving around the map. 3 that could possibly start moving top, and even a 4th here if this Inteleon decides to walk. It looks like they do. They want to take this objective. They don't want this to push towards their tier 2. And they could want to put some points on the board because Kabi-chan's is behind. Last game it felt like they were in control the whole time. This game it feels like they're a little aimless. I'll be able to come up and draw all the attention away from this Regieleki. So the rest पीछे आ of गया can take it. स्काल्ड वेस्ट एंड रेजी गया But ट्रिपल आ रहा है Now, पूरे नाइस कॉम्बो ड्यूड keep saying Minato. Tomato still stands. Nice Garchomp Unite right on top of the team. They're going for the engagement. Shield force, Glacial force, Garchomp मरेगा I think Garchomp मरेगा he's not surviving nice slow bro Glacial तो मारते ही Garchomp Trevenant nice way almost And Kata still stands themselves. They eat a soft-boiled egg. वो Blastoise मरना चाहिए भाई Regieleki hits in the meantime, and now they're dunking 3 covered Beautiful stuff there. Still 3 covered का बस Some bad math, but I guess they did not care in that moment. They wanted to break that goal zone, but what a fight! They just ज़्यादा बड़ा back camp नहीं है dominated that. You saw the play from Garchomp. It went for the Dragon Claw Garchomp combo. play Right into its Unite. Boom. Bliss assistance. बच तो नहीं पाएगा Garchomp sacrificial play है This Glaceon, biggest thing on the map, level 12 right now. They're looking for more KOs. Glaceon picks that one up as well. I mean, poor Minato working on the birds didn't know that Tomato was sitting in that bottom left bush. They get Hornleached right into 3 players of Kabi-chan's. That's a quick KO, and you'll take that any day of the week. नहीं अच्छा मैच जा रहा है अच्छा मैच जा रहा है secure by who else? Better than the first match. These objectives Comeback तो है भाई must have रिवर्स Kabi-chan stamped on They're them doing because better. they are the owners. Yeah, incredible stuff here. I just feel like Kabi-chan's feels a little unbeatable in some of these moments. We're going to have to see if Rework Respawn can really do But team fight better करती है get a KO right there. Team fight में better हुआ कि नहीं although Cliffable नहीं था इन पे इसलिए थोड़ा beat हो सकता है KO. They need some of those as they head up to the top path here. Regieleki 11 12 level diff तो है थोड़ा good Regieleki. थोड़ा नहीं ज़्यादा 13 हो चुका है Glacial walks to your opponent's tier 2 चंदू है ना इनका जंगल 12 हो रहा है अभी वो deal with right around Rayquaza. फार्म ले लेना One thing that is in the advantage of Kabi-chan पानी है is the भाई level, पानी but the score lead is in the hands of Rework जब Respawn. बढ़िया है So but they can not play everyone's this thing in a way where, you know, they don't necessarily have to take this Regieleki, but showing up to it's probably a good idea, or looks like they might go
downstairs to push this score lead in a different way. Yeah, they could be moving towards this tier 2 right now. It looks like Blissey has noticed that and is possibly sitting on that jump path. However, they're going to be able to take this Regieleki in the top path. They did go to the bottom path to score. They were able to get 14 points in as multiple members now of Kabi-chan's are rushing towards it. But score अच्छा है भाई. Rework Respawn still way ahead on score after that Score play. तो मस्त रख रही है. 266 to 83, and Garchomp just absolutely rips this Regieleki to shreds. Rework Respawn in control. 13 seconds, 2-0 हो रहा है. Hopefully हो जाए. So it's going to be Kabi-chans who need to make a play at Rayquaza, and normally they. I hope इनको पता है ये bush clear नहीं है. Oh, Kana पता है. Forces them out of the bush. So now Rayquaza hits the map. तो zone गया इनका. Kabi-chan's kind of reeling. Yeah, they're just waiting. अब आती है बात कि स्नाइप से कितना बुली करेगा ये. Because they are quite a bit behind. दो I स्नाइप don't तो think इंस्टेंट they're मिस going to be हुए. able to get it through any of these. भाई इतना जल्दी backcaps रिपोर्टिंग since कैसे they करता है ये failed स्नाइप मुझे समझ multiple नहीं आता. members of Rework Respawn. We have the अब तो Garchomp slow मारा, with अभी some slow मारा. aggressive positioning up in that top L bush ahead of the Rayquaza. And no, they're not even positioning in the L bush. They're actually running to that tier 2 to score. We're going to see what Kabi-chans wants to do with Okay, this Jumpy information. आ रहा है They are पीछे now पीछे. ये coming पता लग गया. towards Jumpy this का पोजीशन fight. तो पता लग गया. नहीं पता लगा? या फिर जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं. Over the wall with the Dragon Rush and pick a key target here. But I know that Kabi-chans knows they don't have vision on the Garchomp yet. Yeah, they don't know where this Garchomp is. And it's made it all the way back around. Like, look at its positioning right here. We're gonna see what they want to do is Blastoise starts moving in, and here comes Garchomp. They forced out the Unite move from the Clefable. Now they're moving up. Garchomp's right behind him. Dragon Rush picks up 2. They're going for this engagement. Blitz Citizens right on top of Glaceon. The Glacial stage is out. Kada doesn't really hit much with the Hydro Typhoon, but it finds 2 markers there from Rework Respawn. Now Rev is on the backside shooting solar beams, the best of their ability, and Garchomp's rolling up top. They need to close this gap, and Inteleon Unite is out. Rayquaza is getting low, and Sherlock is looking for their opportunity. Dragon Rush in. They do. It's a little early, but it doesn't matter. It doesn't matter. It's the ROM show out here. The CD ROM cooldown on getting it done. Kabi-chan secures. Now they just get burger time. They need to score right here. We have a shield Score on तो हो जाएंगे. Inteleon. Score We तो हो have a रहे हैं. shield Score on तो हो the रहे हैं. Trevenant. Points go in for the Inteleon right Score here. तो कोई नहीं रोक पा Trevenant रहा. can now walk towards चंदू कहाँ गया मुझे वो देखना है. चंदू कैसे मरा? But I know the Kabi-chans चंदू नीचे से आ रहा है. knows they don't have vision on the Garchomp yet. Yeah, they don't know where this Jumpy इधर आ Garchomp रखा है. is, and it's made it all the way back around. म्यू का विजन चंदू नीचे से Like, अभी look भी at है. its position इंटेल आया. right here. We're gonna see what they want to do is Blastoise उसको फ्लेम थ्रो लगाया तो कुछ लगा. starts moving in. एक बेसिक Here लगा, comes दो बेसिक Garchomp. लगा, स्नाइप लगा. I think 2 बेसिक और स्नाइप और विकेट. The Unite move from the Clefable, and now they're moving up. Garchomp's right behind him. चंदू को कहना नहीं जाना था. They're going for this engagement. Blitz Citizens right on top of Glaceon. The Glacial stage is out. Kada doesn't Garchomp really पे hit अच्छा much with पिक नहीं the लगा Hydro मेरे को Typhoon, but यार. it finds 2 markers there from कुछ Rework कर नहीं Respawn. सकता वो. Now it's a little cool down. Need to score right here. We have a shield on it right there. Draft Dave. Kabi-chans, I mean, I feel like when they are चलो भाई. playing their game, they just look to be GG. but they are one of the best teams in the world. Kabi-chan They are is so giving them. in these games. And somebody do something about this Glaceon, man. Can Fusion stop them? Glaceon Is the real question. Insane performances here. We're taking a look at Kabi-chan's. They had a little bit of a chaotic final comms there, and that is the most energized in a moment I've usually it's cool, calm, collected, and it doesn't matter if that's like their Papa flavor, their Papa energy. They're getting it done on the big stage today. But उधर भी नहीं मरता वो. डिफिकल्ट है भाई. काइट होता है. Throughout this गार्चम क्लिचिंग के पहले लिया था क्या? के बाद में लिया था. one of the, unbeatable teams. पहले लिया तो ठीक है, but बाद में लिया तो super really impressive. क्लिचिंग बहुत तंग करता है I गार्चम. gotta say, I mean, they might have set up a real powerful गार्चम is literally the you just play second pick Dragonite all day. Everyone's like, फिर fine, तो we're banning it. second pick पे तो वर्दी नहीं है गार्चम. That was the real plan. Yeah, now we get real characters. Yeah. Golly, I can't believe they're banning Dragonite against me. I mean, this rework Respawn, what उसने an हाथ नहीं amazing मिलाया run. क्या? Like, they were in the winners finals. They earned their spot there. They dropped down to the losers finals here. Obviously, Kabi-chan's has been rolling, right? They've been playing a lot. They're warmed up. They're feeling the flow. And they're able to get a quick 2-0 नहीं, but मैं बोलूँगा 2-0 हो जाए अब. ahead of Kabi-chan's. जल्दी खत्म हो. Absolutely. I mean, they're going to need to head up to these grand finals, win a best of their 5 third official grand final. bracket, Third reset official against an unbeaten पहला team. ACL, Let's take a look तीसरा grand at some final of the कौन सा में? stats here. Kabi-chan कौन से Talked grand about final this में गया? Glaceon. Most और कौन KOs से in grand the final match, में गई? 9 KOs. Unfortunately, सब आ जाए भाई. फाइनल अलग दिन क्यों रखेंगे? मुझे पता है. never able to secure वो ड्रैगन a वो नहीं मैंने KO. देखा So यार. we saw what they were looking Sorry, for. They Babu. had a few opportunities for it, but they just weren't able to get it done. Yeah, I mean, Rev grabbing on Mew, leading Rework Respawn and KOs there. Dragon के मैंने follow किया मैंने. Rev, Rom,
both Mew players. Best of but 5 we'll nahi, take best of Inteleon 3 on this with go black round, no and worries, t-shirt. and they secure the Ray with it. Yeah, I mean their Inteleon's play has been incredible. Ryuga bhai There are kya so cheez many matlab scary pure roster looks, mujhe nahi so pata. many scary Pokemon Unka on the roster side alag of khel rahe hain. Kabi-chan's. Tomato on Trevenant, unbelievable. Kata on Blastoise is really scary, and it feels like they get it Nastar every wo bhi ho single gaya bhai, kind of jinx ho gaya. And the fact that High-five the ऐसे fact जीती, that उसके बाद OG ने sign Tomato's करा. defender फिर कुछ pool नहीं is so जीती. deep. I mean, we saw them select High-five Nemesis पे sign करा था once. ना? Like that is never going to be banned. No. You can get that Am I so right? late in draft if that's the direction one you go. And it was super impactful in their match against Nemesis. So I mean, Kabi-chan is using a lot of these underutilized characters and having huge impacts, which is kind of negating the whole draft phase almost. Yeah, I mean, you're getting Old some डाल देते हैं, डाल targeted देते हैं. bans, which I think is really smart when you have a team like this, but clearly their पहले match तो Pokemon चालू दो. pool is pretty deep, so that's pretty amazing. Well, we have Noda for an interview, so let's get on Noda stage is with back. Noda and talk to the Kabi-chan's player. Well, congratulations, Noda. You बाप qualified for रे, grand wondership तो भाई. finals. I've got to ask, how much did your team prepare for the Latin American teams? 決勝戦まで進んでおめでとうございます。今、2回目、南アメリカのチームと対戦するんですけれども、南アメリカのチームをどうやって準備しましたか？何か準備しましたか？準備対策とかする時間はなくて、もう準備はしてないので、もう自分たちの得意なKabi-chan का कैप्टन आपके सामने.勝負しました。 नोड़ा भाई, you don't care that India stuff. देखो भाई, क्रिस्टल ने बोला था, उससे किसी ने पूछा इंडिया क्यों नहीं है इस रीजन में? Like इंडिया नहीं खेल रही क्या? उसने बोला इंडिया है नहीं, तो इंडिया is undefeated. We are undefeated boys. इतना किसने टाइम? कुछ हो जाता है भाई बीटी. 日本代表としてその決勝戦まで進むのはどのような気持ちでしょうか？そのレベルまで。とても嬉しい。 Honorifics भी होता है ना बीच में इनके. Honorifics words भी होते हैं जापानीज में. トロフィーを日本に वो 持ち帰りた सिंपल いと ट्रैक 思 भी い नहीं ます。 पूछते. We're very happy about going this far as a Japanese representative, and now we want to bring it home. All right, well then my last question, how confident are you in grand finals? 決勝戦のこと自信がありますか？あります。Of course. I am. All right, that's great to hear. Well, you've Sorry, got we are. one more match. Congratulations. I'm going to send it back to the desk because we are near the end. Wow, here we are. It's almost grand finals time at the AEOS Cup. One of these two teams will be the first team qualified for Worlds. Let's take a look at some of these moments from these incredible losers finals. Yeah, I mean, Dodrio, unique pick, something that Rework Respawn loves to play, but this Mew, Rom's Mew, is just a shutdown machine. Quick Electro Ball and a nice Tier 1 goal zone siege here. Yeah, just really amazing stuff. चलो guys, Kabi-chan के साथ ये हो गया अभी. Kabi-chan के साथ ये हुआ, दूसरा वाला नहीं हुआ option. And you know, it doesn't sound like they prepared Will for Luminosity too much. stop? It just sounds like they are Luminosity इस टूर्नामेंट में 21st पोजीशन पे आई ओपन ब्रैकेट में. They had the Buzzwole there. मतलब अगर 21 plus 8 teams कितना हुआ guys? Yeah, I kind of mentioned that when your Pokemon pool is so deep and you're able to really 29 teams में 29th position पे है the Luminosity power बाबू. level of some of these underutilized Pokemon, So- the draft screen is almost negated. You know, you're getting people to ban stuff like Dragonite, and you're like, okay, who really cares? And you just grab a bunch of other stuff, and you're able to destroy the other squads. ऐसे का कैप्टन Here कौन we मुझे भी are नहीं पता in वैसे game तो. number देखना 2. पड़ेगा You पूछता saw हूँ some रुको. beautiful moments there. अच्छा Mew भाई. coming in, trying to pick up a KO, but look at this. Kata is just unbelievable. अच्छा है on this क्यों भाई होंगे. Blastoise. I think we're going to see a big rise on ladder of spin pump. That's without a doubt. Yes. Because Kata has been playing it all day, has put up huge numbers, and has looked terrific. ये I क्यों mean, नहीं it करेगा doesn't give you the crazy speed that Actually, you get disqualified from the other because refused build, to but play it last gives you round, a lol. lot of control and a ton of burst, and it also gives you mean, a much उनका loss. better move when you are not inside अरे नहीं क्यों हटा मैं that menu. spin. And we can see the Don't worry, Garchomp बाबू. actually chasing that Inteleon up there. Eight They weren't April able to मुझे get तो it. क्या चाहिए The शाहरुख भाई? Inteleon able to get the big secure, and that gave Kabi-chan's the win. I mean, that was a terrific attempt by the Garchomp. I believe that was Sherlock to jump in there, but who else but Vitopo on this Glaceon? I mean, 14 knockouts last time, 9 knockouts this time, 58k damage, nothing to scoff at. Yeah, incredible ban खत्म कब हो रहा है? Just amazing. I for think ban ज़्यादा Kabi-chan. लंबा है They भाई. are on I don't think an ban. unbelievable Usually Pokemon run का ban right usually एक now पूरा to season our रहता है. grand finals. Basically एक Once साल. they get there,
So who knows? I don't know कितना duration लगा क्या हुआ है, but I don't know if they're participating or not. They have to be a ton of games. It's like so many games. It's like it could be like 1,000 games. I don't know how many. Production stats 5, and they have to win that twice. They have to win it, reset that bracket, and do it again against the undefeated Fusion. Like Fusion is the only team from the Cup regions, we'll say, that has won the AEOS Cup qualifier, has won their March Cup, and now sits in the grand finals to square off against Capitans. We're going to take a quick break. We're definitely not going to drink a bunch of milk. We'll be right back for the grand finals. Grand finals time, baby! Break देखते हैं, ये मैच के बाद उठाएंगे break कितना है. If there will be head-to-head competition, am I asking Kabi? Current to ministry is not horror like that. At least what we have seen. Kabi is like way superior, dude. कितना break है? Oh, small break ही है. Nice. बड़ा break नहीं है. Oh, no bracket reset, guys. Grand finals is a best of 5. No bracket reset. I am seeing a best of 5 over there. यहाँ पर reset है. Who knows? डीएम भाई मेरे को क्या मतलब क्या चाहते क्या हो कुछ कॉपीराइट ऑपरेटर लिख जाए ये योकोहामा क्यों दिखाया इन्होंने योकोहामा दिखा रहे हैं भाई इधर तुम भी थे इधर भी थे लाइट शो हरामी ने मिस किया ये भी मिस किया ये होटल से बोट दिखती थी ये वाली जो बोट आई थी ऊपर ये पोकेमॉन सेंटर ये ओपनिंग सेरेमनी थी म्यूजिक तो मस्त बनाया जेन्युइनली अरे थैंक्स फॉर द 40 रुपीस सुपर चैट इज मंगा यार ये कल बोलता मस्त बना अरे चलेगा भाई ये स्ट्राइक नहीं आता इनका अलग रहता है बट चलेगा वर्थ इट था देखना भाई BO5 लिखा है यस क्या अच्छा चालू है चैट में ओपन ब्रैकेट से यस EUIC के ओपन में सारे रीजन के जा सकते थे पोल टाइम यस करता हूँ करंट में इसके बहुत लंबा हो रहा है ना यस 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 प्लेयर रिप्लेसर पर बैन पड़ा है कांड किया तो बैन पड़ेगा ही ना स्वीपिंग 6 डैम हो गया क्या सेंचुरी लेट्स गो एनए के पिछले कुछ टूर्नामेंट में ऐसा हुआ इसलिए मुझे लगा इसमें भी होगा विनर बैक आई थिंक BO5 दे दिया वही कुछ है ऐसा कुछ टाइम बचाने के लिए वी आर बैक बॉयज Championship Series live in London at the Excel Center. Thanks again for the 40 rupees super chat दोस्त ये सॉफ्टवेयर कहां से था जापान से Grand Finals. Every
everything comes down to this match between Fusion and Capi-chans. What an incredible day of Pokemon Unite it has been. What an incredible weekend through our open Swiss bracket, our group stages with our invited teams. This has just been unbelievable. $100,000 prize pool is on the line, and again, that coveted spot. The first team to auto-qualify for Worlds will be given in a few short moments. Doob Snacks, are you ready? I am shaking like Make a sure leaf, to my enter friend. your It's votes, taken a while boys. to get here. A lot of hours Let's yesterday, go. a lot of hours today. Let's take a look at this day 2 bracket. Of course, the grand Japan finals. se bola to. Fusion, Capi-chans, This is Japan Fusion merchandise, bro. winning and winning and winning together. Yeah, Fusion Fusion requires 2 wins. Absence requires 3 wins. ऐसा है क्या? They lost a game to rework. I don't think Respawn, so ऐसा they're है. not Although it will invincible, अच्छा है but you know actually, what? but I don't know. Capi-chans has lost games as well. They're down through our losers bracket. They lost 99 one to है. Nemesis right here. Looked Come on, insane century, against century, rework century. Respawn, and now they are back up on the big stage for one more epic battle between Fusion I think ऐसा and होगा. Capi-chan. होना तो वैसे चाहिए. कुछ एडवांटेज तो रहना चाहिए. अगर ब्रैकेट नहीं है तो एडवांटेज तो रहना चाहिए. ACL champions make it happen, or is Fusion the current best team in the world? ये We're उसको gonna बता find रहा है. out very soon. देखते हैं ये बता देंगे अगर Fusion, ब्रैकेट like I रिसेट said, है. one in February, one in March. A win here would definitely solidify them. I don't know how. वेबसाइट ब्रैकेट में भी सिंपल बेस्ट ऑफ नहीं दिखा Team certainly in the West, without a doubt. उधर रिसेट नहीं. वेबसाइट में हम कभी भी रिसेट नहीं दिखाता है. Time the last Unless Asia, force हुआ हो. tournament they played in, come here, didn't make top 4 there, and they're on a tear. रिसेट नहीं And दिखाता you है just वेबसाइट पे. heard the confidence out of Noda up there. फ्यूजन का से लैटिन अमेरिका, नॉर्थ है, साउथ, I don't know. Are you watching us भूल play? गया. That's pretty much how he said, like, you watching us play? What Bro, do you, Chef, do you not get it? We're winning right now. We're crushing it. you saw that. You saw the game, right? And here's a question I had for you, Spraggles. Fusion, another LATAM team. BO5 reset नहीं, BO3 reset के साथ होता है, BO5 reset rework, होता है. Respawn, and there is some देखते हैं ना, regional देखते हैं. टाइपो भी हो playstyle सकता है भाई, that टाइपो भी हो goes into सकता this है. equation. Do you think Capi-chans has it figured out, or can Fusion maybe throw them a curveball and take this thing? Well, that's the real question, right? The real question is, which style is going to win this? Because it feels like we are seeing a clash of styles. And there are some moments that Capi-chans looks not as good as others, and then there are some where truly they look unbeatable into this more team fight aggressive Western meta. So we're gonna have to see what happens People here. are sitting. Fusion is undefeated so far. एक साइड पे उसका बेकअप सेवल है वगैरह शाइन हो रहा है. ऑडियंस भी मोटी मोटी है भाई. ऑडियंस गई नहीं है. यू की सारी टीम बाहर हो गई, ऑडियंस नहीं गई. ऑडियंस इज स्टिल देयर. Win time after time after time. Fusion has, like you said, kind प्रियंशु of भाई ने 2-1 मिलेगा to कि get नहीं here to the मिलता grand है. finals. इसलिए तो चैंपियन चल रहा Capi-chans है. pretty much today has only lost to These are Nemesis, exclusive that Pokemon one game merchandise, bro. where Nemesis put together a Literally very exclusive. clever So I strategy don't know if and India draft. में And maybe that available है कि नहीं. curveball अगर that I हैं was तो बहुत talking मुश्किल about, होंगे. Spraggles, they threw one that was a little down and out. They took a World big Grand Final hack तो भी and अपने whiffed, दी है. and now नहीं, Nemesis वो भी found भी themselves उसकी in शायद. game 3. Yeah, I Does don't know. Fusion pivot into that manner and throw them that curveball? I'm curious because when we watch Rework, Yes. Respawn, and Fusion NA की एक go टीम तो at NA it, बाहर की थी. they were going at it. Yes. They were at each other's throats, and we know that Capi-chans नहीं पता doesn't रिसेट है कि really नहीं do that. दोस्त. No, they don't. पता लग They जाएगा. don't मैं like भी to आपकी fight तरह like वेट ही that. कर रहा हूँ When यार. a team doesn't like to fight like that, it clearly is throwing a lot of these teams off, right? Then there are other times where I want to say game 1 from that last series between Rework and Capi-chans, where it felt like, oh no, they were fighting. They were fighting the whole EUIC time. ने ऐसे They rules were अलग हैं, insanely normal tournament से वो. aggressive. Clearly they have a lot of looks, they have a lot of strategies, and they have a deep pool of Pokemon because these targeted bans have not stopped them. Yeah, we see here on our screen we have Design, who's the captain of, holy smokes, Fusion. On the Chandelure, pretty high win rate, 66%, and Nada doing the interviews here as the captain as well, supporter player. Eldegoss is their go-to, and their win rate is solid. Rules are rules. I mean, incredible stuff right Rules here. होते हैं. You पहले don't से set see होगा too भाई. many team captains that are attackers. You know, you'll notice that you see a lot of them as defenders, a lot of them that are supporters, often shot calling in some of the matches right here. But we've got the attacker captain from Fusion. Best of 5, best of 5. No reset, I think. Japan. Which region will get that first and only spot so far to Worlds? Capi-chans, like I said, they have a lot in front of them. And Thumbs one of up the दे दिया गया है. great things about a Grand Finals Best of 5 with the Grand Bracket reset
is it is a lot of time for Fusion to figure this out. You're getting like a live data down. May the best team win, boys. You can only do so much New watching map, when you're no in new the map. game, you're understanding new map announce how होता they're है भाई. applying this style, the moves that they make. You ये might सब expect pick करना up बंद करो on MOBA some, से at least. I don't know United वाले क्या करेंगे, but some new map things तो they do, नहीं. some tendencies. Rework and हो then you सकता can है, build that but into your mostly rework approach, होता है into off your season में. communications, and you can use Not the during time worlds of or before fortitude world as tournaments. the winner side team. Players की विकेट गिरानी है क्या तुम्हें भाई? कॉम्पी प्लेयर्स की विकेट गिराना चाहते हो क्या तुम लोग हमारी? अगले महीने टूर्नामेंट है. New map. Obviously, we Hello. see that Dragonite going right away. Dragonite destroyed again. I get rid of it as well. Yeah, okay, Blasters, good win. Banned out from Kabi-chan. Eldeos का प्रश्न नहीं है तो बस. Love this choice, Blastoise. I mean, take it away from Kata. It's क्या so बात है देवेन भाई? I'm sure they've उसकी got एंट्री भी other बैंड है क्या? Pokemon. I know they have एंट्री भी something बैंड है else that क्या? they want to throw out बट हाँ there. एंट्री इधर But वो नहीं man, होगा. that Blastoise is just so tough to deal with. Grand First bracket pick reset over होगा to पूरा. Fusion. Fusion needs to take a deep breath here and think about this. They're going quickly to a Blissey, which of course means that our captain, Nada, is going to be able to go either to Hoopa or to Eldegoss whenever they want in this draft at this point. Yeah, there's no risk essentially of that Pokemon being taken away. We see Mew as a possible first pick opportunity. I think हम प्रैक्टिस कैसे करें? हमारे तो स्क्रीन बचेंगी. Right away, Clowns however, Unit they बंद said, करती no, है. we मैटर want to make sure that we get that here. Ifs And तो they बहुत है are भाई, picking up बहुत ज़्यादा Mew, ifs हैं. also maybe taking a बहुत move ifs here हैं. to hide some of their later सिर्फ ड्रैगन picks. थोड़ी है उसके No one पास. knows exactly मल्टी where हीरो the पूल है भाई strategies उसका. go. क्या बात That's कर a रहे great हो? call. Also, you know, Blissey does play pseudo tank, right? It can't play it. Buzzwole is back. Buzzwole is back. Okay, we'll take Eldegoss I too. think Dragonite ले लेना So now the question चाहिए. is this Buzzwole gonna be a problem? Because for Kabi-chans, I feel like I see that pick and I smile. बोलेगा सेंचुरी. Let's go. They know we put the rake out here, मुझे right? अपना घर जाना है. Yes, and every team just keeps stepping on it. But we saw for free having an insane Buzzwole match against them. So we'll see if that For can free be ने एक तो अच्छा Buzzwole recreated खेला here इनके against. by Fusion as we have Kata on that Venusaur. We've seen that before. Tomato on the Okay, Glaceon and Chandu. Good picks, good picks, good picks. Melter चाहिए, melter चाहिए. Snap next Melter pick तो by अच्छे हैं. Kata is that Venusaur. If they haven't already selected Blastoise, which I'm sure Tomato can play a sick Blastoise anyways, so if you got that, you pivot up to Delphox, I'm not sure, guys. Venusaur anyways. But now we're going Delphox Glaceon. I love Anemo's Glaceon. We saw it against Rework Respawn. It's been वो flip incredibly का risk solid नहीं है. in Bracket tandem years with में I'm not tempo. sure. Those two I'm players not work sure. very well together. Risk भी है, but forcing वो भी है the उसका. Scizor Scyther Mid out game the बहुत other strong है side. Dragonite. Yeah, we're gonna have to see how they exactly want to play this, right? I mean, Especially if it against is range Scyther, it attackers. has some incredible dive, the ability to होता. chase down Glaceon and Delphox for sure. If it is Scizor, which I mean I would probably doubt, if it is Scizor, we'll be able to see it try उसने to anti लटा brawl दिया. here with some of these Pokemon. So we're उसने gonna see muscle what लगा they दिया. want to bring out in this match. Moving it over Wait, to Beam Kata. Masaur जा रहा है. Very Venusaur जा रहा है, interesting. Does Venusaur जा that रहा है, mean we're Venusaur taking जा to रहा है. the top path, maybe going with a Venusaur like into the middle area? A lot of questions that are going to be asked here because this is, quite honestly, a pretty fresh look. Top on the Venusaur, guys. This is something new. But Scyther in lane, maybe I think Scyther 5 होकर आएगा और Veena lane hold करेगा. And after that rotation होगा There jungle is a का. possibility that we do see a Scizor in this match. You don't see a defensive item on this Pokemon, so it still leads me to believe that we're probably seeing a Scyther, but I would be really interested to see Scizor here in the grand finals. Our two teams loading in right now for game number 1. Dude, I am so excited. Not only because we are in grand finals of the AEOS Cup, that's absolutely insane. Look But at उनका I these think drafts. plan भी थोड़ा We're fail just हुआ ना. getting some उनको कुछ nice और pick fresh करना looks था. out of Kabi-chans, अब some थोड़ा great आगे looks गए out हैं. of Fusion, and we're about to go Normal Veena नहीं bullseye. खेला है. That's right. I think they are also predicting. Here we go, everybody. चलो For the boys. thousands of you It's watching at time. home and everybody here live, these are the grand finals of the AEOS Cup. Fusion versus Kabi-chans. Fusion, your purple team. Kabi-chans, your orange team. Let's get this thing started. $100,000 and a slot to Worlds Double on because the secure line. heal तो weekend And का. that is a Scyther right Okay, now. Scyther Of top course, lane ही है. moving through, we'll see where its movesets go. And they are But I don't think Scyther top going lane. overall. They say we'll meet Fusion Equal head जाएगा, to head right equal here in the जाएगा, top equal path. Gossifleur peeling ये नहीं back a करना little चाहिए. bit. BT हो जाएगा इनको. But हाँ 4 का early gank आ सकता है. Tempo. Wait Yeah, तो look कर at रहा है, that. wait तो They're कर रहा है, just wait gonna तो keep कर रहा है, pushing forward wait here, तो कर रहा है, push wait them तो कर away रहा है. from some of their experience, make sure that they can't get aggressive, make sure that they cannot get a stack, getting aggressive positioning themselves to see if they're able to steal. Hey, Buzzwole को मिला. Nice, 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 They nice, actually get nice. pushed away from that. Here comes the Glaceon. Icy wind Okay. able to pick up the KO. Anemo making a quick rotation here. Hey, Glaceon हगना नहीं, हगना नहीं, हगना नहीं. Double buff. Can they put enough pressure बच back गया, the बच other गया, way? बच गया, बच Ivysaur गया, not बच गया. as ये 5 हो strong सकता है, 5 हो in the सकता है, early 5 हो game सकता as है. that Glaceon. भाई But Buzzwole ठीक despite खेल the गए love for it, finally. they did what they
5 का बजोल देखने
नहीं मिल रहा है पहले 20 पे कभी. Well, the thing I like about this sludge bomb right here is oftentimes when you see people playing this beam, they're playing Giga Drain because they're worried about being dove on, but there isn't that दिया पहली बार जंगलर मर रहा है पहली बार. This doesn't even look like the Kabi-chans we've been watching, to be honest. This Blaziken is taking over. Anemo, I said I love that pick out of them. And it's looking good early. 59-0, but really what's going on is the action. Man, look at this here. That's a stack, that's a stack, that's a stack over and over and over again in the top path. Buzzwole getting crazy powerful already. And look at this Blissey, absolutely criminal behavior from Fusion. Hitting the moonwalk out of there. और म्यू ग्लेशियन को मार नहीं सकता. म्यू के विकेट गिर जाएगी. Supports have been running across the map doing great. And what an easy KO for Anemo there. Wow, I mean Fusion. इनकी एक ही स्ट्रगलिंग लेन थी वो थी डेलफॉक्स वाली और वो डेलफॉक्स 6 हो चुका है. और म्यू भी 6 है. इसको आई डोंट नो यार शायद रेस्ट कर रहे हैं रेस्ट में. Well, so far Fusion is looking fresh and ready. किसी पे नहीं हो. As they are dominating every single fight that we have seen so far. 78-0. Level wise it's insane. They have a level 8 and 2 level 7s. I mean, this is just brutal so far for Kabi-chans. Yeah, this is a problem. Kabi-chans need to settle out. They always do. Right? That's how they play calculated. But now you need to do some quick math, figure out how you can balance these levels out because you are behind. 4 players up, and they're kind of kept at bay by 2 as the rest of Fusion rotates. Yeah, obviously at any moment right here, they're able to get a big combo there from the Buzzwole. Moving nice down. Do anything. I don't know if we've seen, yeah, it looks like it is going to be that dual wing Scyther, so they are not moving over to Scissor. Massive wood hammers there, but they are going to possibly back off right here. Might be too late for With the level lead so intense, even if they catch them with a few moves, they're just able to delete them here. Here comes the Buzzwole. Let's go. Not able to take down Tomato, but they do get the focus. Passive gaya, focus gaya. Glacial stage, we're going to put some pressure on. Tomato is so low. Nice back. Yep, Sludge Bomb में हो. Scores here. We're lobbing pollen puffs at a distance. Even तोड़ दिया. That goal zone's gone. We're इन्ना को Scyther को फोन करना जरूरी था क्या? बट हाँ जापानी टीम टीमन फोकस करती है तो कैन ब्रेक. Excuse me, Icicle Wind rings true. Yeah, incredible stuff there for this Glacial. भाई यूजुअली केस करती क्या ऊपर का ब्लेड लेने देती है नीचे जाती है. इस बार वो दोनों ही नहीं कर रहे. They are going to now get this Reggie Alecki. They are being aggressive. Be aggressive. Be aggressive. Where do I know that from? I don't know. I think you just made it up. Credit to you, my friend. Draken pivoting back. I mean, they have been almost non-existent in these fights, which is even more impressive. Scyther card नहीं है. Wicket. And just tons of work being able to put on. Now they're putting 2-player pressure while rotating and showing up downstairs, forcing. और ज़्यादा गोल नहीं है. But in the end, नीचे भी 3v3 है और इधर भी. ए अल्ट दे दिया. ये थोड़ा ओवर कमिट कर दिया, but kill चाहिए था उनको anyways. I think Blaziken से kill मिला. Blaziken से kill मिला. करता है. Case attack. That's the thing. Loser bracket. You need to be full power. कोई नहीं पूछता टायर्ड हो कि नहीं. Winner matters. टायर्ड नहीं होना था तो अपर ब्रैकेट से आना था. Tired is a given condition, by. Really matter. Able to pick up nothing is now they're in trouble. Very, very low HP, and it looks like Fusion is going to back off in this moment. Give them a little mercy for a second. 2-15-0. Yikes, my friend. Holy. Fusion is all over the map. Puzzle is doing work. And it really, honestly, in my mind, was facilitated by the quick hit by Anemo upstairs. Teams counter होती हैं भाई. Immediately leverage that attack. Threats counter होते हैं, teams counter होते हैं. Doesn't matter किसने किसको हारा है. Stack early, getting ahead, and that's what's important with Buzzwole, getting ahead. Now, obviously, on the side of Kabi-chans, they have 2 delete buttons. They have the Scyther Unite, and they have the Venusaur Unite. And if they're able to find a couple big moments right here, they can get right back in this game. But they are going best hero है भाई. The fire spin, 0 stack, 0 goal भाई. Able to be put out all the time, disrupt the enemy team. Scyther never a good matchup against, stronger, proper all-rounder. Catches right here. If they But can hit वो क्या with this Venusaur Unite move, they can be right back. खेला. टमाटो ने खेला है. टमाटो ने गेम बनाया है. Tomato. Eviscerated here by the Scissor. Delphox United is out. Fanciful fireworks. Down, just like that picture on your phone. Nariyal आया. Delphox 1 HP. Vertinanger comes out, doesn't hit anything. ओ ये गंदे खड़े हैं, ये गंदे लाइन में. Buzzwole का Unite अभी भी है. Scyther गया. Nice on leech. But ये जा रहा है. But वो on leech वापस आ गया. लग गए. ये Buzzwole थोड़ा मर सकता. Oh, nice shield for power.
through, and we're on top of the Delphox. Mew from Unite back the other way. Trevin They're down. trying to collapse on top of this Trevenant. They get it done. Yeah, incredible stuff right there. Kabi chance, I just said, I mean, if they Recovery get हुई है, but catches, they can BTA get भी वो है. right back in this 11, 11, 11, 10, 10, Score-wise, 9, 9, they're not there 11, yet, 11, 10. but fight-wise, that Score हो रहा है, looks score हो रहा है, stack हो रहा है incredible. उसके. Signs of life from Kabi chance in a match that was looking very, very dreadful. Yeah, and honestly, Kabi-chan's kind of went across and then started playing back to their pad and were able टमाटर to का be ध्यान pretty रखना पड़ेगा successful इनको. in that दो exchange. stack. Ended up catching the Glaceon. Great I think दो stack ही पड़े हैं उधर, और stack नहीं कर Does go सकता. down, and now pushing और forward ult है is उसका, ये Draken. Glaceon They're हग ना trying to दे get in बस. the face of the support core here as Registeel is getting low. Solar Beam is a little early, and this is going to get an दिया opportunity उसने for Mew, side and Rom clutches it out. Yes, Tomato goes down, but that is a heck of an exchange. Yeah, और ऊपर great अटका दिया. exchange right there. Solar beam was early, but not the solar beam. You know, the one solar beam, but not the other. ये फपल रहे हैं, अब ये फपल रहे हैं. That's all I'm saying. Well, the sun Fusion covers फपल a रही है lot of real guys. estate, my friend, and so does Rom as they're ejecting forward. Bliss Unite just to stay up 3-14 as Bliss they are Unite. both peeling back. Tempo makes it back to pad. Electro Ball catches them, and Key is able to be kept standing. Moving back through, Revert and Anger on top of the goal zone, and now we're a huge solar beam Okay, as सब well. units We're commit हो रहे हैं. spaced This out. is gonna be a Glaceon good on the fight. backside has opportunity to go to work if he can get a little bit forward. Pulling back his Draken, and they're the Nice fire spin. everybody's fire. Nice eject Tomato tomato. gets on top of the Delphox. But And it now disengage है. finally Kabi-chan's might Oh, be अल्लाह से able to beam pull खाते रहे back ऐसे. here. Tomato kind of running it down. अब so the Blissey rest of the BT team है, can अब get BT on आएगा, it. Blissey Unite Fusion late है. finally able to find some daylight in that fight as he just got Blissey beat up by late Kabi chance है. over and over and over again. Great fight from Kabi chance into वीना a great Unite भी late secure actually. in वीना that Unite भी bottom late. अब path. पंप चालू है. And now you can वीना see Unite that यूज़ they हुआ, are एल्डा Unite back यूज़ in हुआ ना. this game. Score-wise, they're in trouble. Fight-wise, they're doing amazing. Level-wise as well. 13 साइतर हो गया है. Glaceon भी 13 है. Delphox 12, Buzzwole 13 हो जाएगा. Delphox नहीं 13 हो रहा. The opportunity to farm up on the map, so they're not Okay, Blissey के लिए extremely melt high कर रहे level हैं. heading into this Rayquaza for as XP मिल रहा है, dominant as they were 13 वीना, throughout 13 this साइतर, match. 13 10 Mew. seconds right now until the Attacker levels first उनके better हैं, Rayquaza defender levels of our equal हैं. AEOS Actually Cup Slowbro का better है, Grand 11 Finals. पे. In a match where Kabi-chan's Slowbro looked 11 तो compulsory absolutely होता है. dominated, now it is much closer. Glaceon अरे उसको लगा However, steal करेगा, पर they're नीचे gonna shield भी तो मिला उसका. play because score-wise, they are quite behind. Look at that. They're saying, hey, if we're checking bushes here, we're doing it with 2 beams. Both 2 barrels at you at once, my friend. Rayquaza getting chipped right here, and they are just seeing if they can find where members of Fusion are Front to back hiding. gameplay दोनों Fusion, side. on the other hand, don't really need Glaceon? to do too much. Look at the coordination of the Glaceon? solar beams, man. Yeah, just calling out, hey, bottom right out, let's go for it. Let's check out all the bushes उसको we अच्छा can. वो They're के gonna स्कोर find के a लिए couple बैठा है there और अपने as they're icicles just पे मेंटेन settling कर out रहा and है. they're getting in position. Yeah, just getting ready for this. But again, Fusion does not need it. They are well aware that Kabi-chan's do. They are starting Rayquaza right now. They're going to need to make a decision here at some Nice Amnesia. They're trying to get on top of Hey. Draken. That solar beam does catch Oh, a few. oh, The eject fire spin force. is out, the eject Speed button as well. force. We chip Trevin off पकड़ा Tomato. गया. This might be our target that we're going in on. Let's see if there's a follow-up. Fire spin to catch some targets in the back. Bert and Anger is out. Double beam back through Force Curse as well. ये Blissey Unite हक दिया. Blissey Unite हक दिया. But nice low bro, nice low bro, nice low bro. Scyther down. Trevenant low है. Is there another opportunity for Fusion to push forward? They're Unite up straight हो huge गए on the but scoreboard, सब Unite so straight they're हो गए not Mew gonna छोड़ give के. it to Kabi-chan's not just yet, but Glaceon getting caught is huge. Yeah, Glaceon getting caught is huge. It's going to have a very इनको Scyther big के आने से time. पहले थोड़ा We're सा play going to बनाना have पड़ेगा. Mew Scyther का Unite back force करा हुआ before ऐसा that कुछ. Glaceon. And right now we're just going to need to see what Fusion wants to do right here about the aggression onto this Rayquaza. It's getting low, and they've got 2 beams right now as they're looking for the secure. Buzzwole Secure, हक they're दिया. going for it. There's 2 players down. They're trying to line it up. Delphox on the backside. क्या कर रहे हैं ये Delphox? Delphox? Middle. Solar beam is through. They need to queue up another one. Can they go through? Coaching back, and now it's just the Venusaur and the Eldegoss sitting there. Can they get this done? Delphox. ना हक दिया, हक दिया, हक दिया, हक दिया, हक दिया. बहुत जल्दी दिया. Japanese team brings the double barrel shogun, and they lock that down as they scramble. ए बट गोल कितने का हो रहा है? They have to score 35, here. 50, They're still quite a bit 43. behind. Perfect score. अरे उसने Trevenant को छोड़ दिया but 50. Within just a few points. 52. Going to the top. वो कूद गया. Are they able to make it happen? 100 in the bottom path. 86 20, at the top. Venusaur 40. scoring bottom. Blissey scored the 40. कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. Kabi-chan नहीं, मुझे लग रहा है नहीं. वो है, अब वही है, वही है. Kabi भाई उनका है भाई. 250 का डेफिसिट था ऑलमोस्ट. उन्होंने गोल मारे हैं. वो ब्लिसी का नहीं रुका था तो भी हार गए थे वो. अब साइथर का मत भरना कि साइथर नीचे की कूदा. साइथर की गलती नहीं. I mean, थोड़ी सी गलती है बट ब्लिसी पे अगर ज्यादा गोल होता बट ब्लिसी पे उतना गोल नहीं था. 40 गोल मारा उसने. ब्लिसी गोल से नहीं आ रहे, उससे पहले हार गए थे.
देखो आजू के yes. Kabi-chan's obviously very disappointed right there. But you know, part of the reason that ended out like that was not just because they were able to break some shield, stop some 40 से नहीं जीते 40 से पहले जीते रहे थे 40 भी ना होता तो भी जीते रहे you know, even once Kabi-chan was but उनको तो अपने गोल करने हैं right they need to do their goals because of that they couldn't really formulate any type of defense, they couldn't set up a, you know, a really well protected score with some of their shields. Some of those big moments and one more win best of 5 है भाई Game 1. I've been right about two भाई बस सही खेला बस एंड पे थोड़ा वो बस से हो जाता है एंड पे वो कि रुका हूं बैठे रहूं सिक्योर के लिए रुका हूं बैठे रहूं सिक्योर के लिए बैठ रखा हूं बीटी होता है थोड़ा बीटी होता है yeah, I mean, it's just been amazing right here. We had some big moments here, some big fights. I gotta say, Tomatoes Trevenant is absolutely bracket reset है कि नहीं I don't know wasting all I don't know on it because it does he does such a good job of protecting his allies and positioning himself. There really is nothing else that they can do except put all of their damage onto this Trevenant that never seems to go down. Yeah, yes B5 है अरे टॉप राइट पे मेरा स्क्रीन है बस लेकिन बैक पे massive up. प्रेशर बना के रखा ड्राफ्ट मिस्टेक and you never really see them make the same pushes more like draft नहीं ड्राफ्ट मिस्टेक बोल सकते हैं when it's active. Yeah, बस बोलना काम किया आपने past the beginning of this match, or obviously the beginning of this match was the fusion show. It was the Harlem Globetrotters and Kabi-chan's were the generals to play against, just absolutely dominate them. But Kabi-chan's stuck with it. They ब्रैकेट रीसेट नो इन्फो यार मेरे को नहीं पता मैंने सुना नहीं कभी जब ब्रैकेट रीसेट बोलते हैं ना फॉर्मेट में ब्रैकेट रीसेट दिखा मेरे को इधर साइथर को मस्त पकड़ा ग्लिशन थोड़ा सैड हो गया ग्लिशन के साथ मरना नहीं था उसको ग्लिशन ने मरता तो जीजी ही था ये देखो ना कितना एग्रेसिव गया ग्लिशन बहुत एग्रेसिव चला गया था आगे डबल बीम का है विकेट we had I think it was an auto attack from Slowbro ends up being the thing that KOs Mew around this situation. So Mew chasing वो Mew के हुआ ना इसलिए जीतते हैं वो अगर ये Mew के ना होता ना गाइस ये विकेट था Slowbro और ऑटो अटैक से जीत हुए हैं there's that basic attack thank you. The secure on Rayquaza really early fire blast from the side of Fusion right there and they are not able to get it but they are able to stop them and counter score. Yeah, I mean, great heads-up play by Draken to go ahead and peel. Because, I mean, they were in that fight the entire time, but the moment it went down, Drake and getting credit for it here, 164 points, and I think that 100 per points they put in is probably the most important. 87k damage taken because they were getting shelled on by this Kabi-chan squad. Yeah, they were in there, they were fighting, they had a few amazing slow beams. You can see they run the eject button, a lot of slow bros running the eject button. The reason for that being they can close the distance on an enemy Pokemon that they want to slow beam very, very quickly. They can get back to their allies if they need to make sure that they grab that speedster, like we kind of saw there, that Scyther jumping on into their back line. Really great stuff. Not surprised that they are the player of the game. And actually, Buzzwole wins against Kabi-chan's finally. I'm really not following this. Sorry. I mean, the Anemo jumping up top again with the Glaceon. अच्छा वो वीडियो FTW ऐसा कुछ वो चल रहा था क्या जस्ट का ट्विटर पे No, you might have stepped on it, but I can hear you just fine. +1 You're next to me, brother. All right. But Anemo with the top side pressure with the Glaceon early to actually allow Tempo to get points in, get stacked up, and get ahead early is the difference between every other Buzzwole we've seen against Kabi-chan's and that one in this particular game. You know, one huge difference maker, and I wonder what's going to happen because of it. They did not have that Blastoise. We've seen Kata on Blastoise all day. It's been incredible. And finally, Kabi-chan's bans a Buzzwole. They don't want to deal with it. Buzzwole ban आ चुका है guys. उनको पता लग गया ये Buzzwole नहीं रुक रहा. Over to Kabi-chan. I feel like they've deferred to second pick a few times, but maybe they've also just been forced to. Wicked. First pick, possibly going over to the Blissey. Hi guys. Yeah, I mean, not a bad selection. I'm kind of surprised that they didn't go with the Eldegoss in this particular scenario, but it gives Fusion a wide array of choices. Hello, Duji, कैसे हो? Hoopa's been Welcome to stream. It doesn't seem like anybody's interested. You know, they had a Zoroark ban last game on Kabi-chan's. I wonder if that's going to make a return, but you know what? They want that Glaceon right away. Yeah, they recognize how powerful that was. And then Draken, player of the game, with that slow Mew is back, bhai. So many moments, they want to bring that back. Relations Mew bro. on the side of Kabi-chan. Style is back. Is unbelievable. Maybe seen a Crustle. Tomato on the Crustle. We haven't seen that in a minute, but we're going to see it right now. I believe Zynews as well for Fusion has a pretty great Mew. So taking that early is just making sure that Rom has one of their power picks in there. I don't know they ban by. Rom, I'm not sure. The ability on this Mew is unparalleled.
Here we go. Venusaur possibly being locked in on the side of Fusion. We're going to have to see what they want to play. Tempo not selecting I7 better than Pokemon yet Icicles. either here. Spear. The clock is ticking down. Pick phase at 5. Burst है ना? Eldegoss is a solid choice. Plus blockable नहीं है. KO going to be happy अच्छी about team that. block कर लेती है. Extreme range on the side of Fusion so far. And you know, they don't have a ton of dive yet on the side of Kabi-chans. Let's see if they decide to change that right here as we're heading to finish out this Plus round. dash है. We've got Scyther Dash being is better, covered you know. once again for the side of Kabi-chans. Unless हमने इतना backup है कि आप spear non-stop मार सकते हो. We're going to see what we Dash is select better. here. Scissor definitely being hovered and doesn't seem like there's any interest in changing. So we're going to let the pick phase ticker go down, and that's what's going to be locked in. Espeon and Scissor / Scyther. All right, and here we have our final selection for Fusion. Let's see what they want to bring here into game number 2. अच्छा भाई देख लो मनीष भाई क्या बोल Mimikyu is रहे a हैं. possibility right here. We're going to see if they want to use this. Mimikyu hasn't seemed Switch पे अच्छा ये भी है क्या? amazing today throughout this tournament, and they say, yeah, I know, I'm bringing. I think the targeting Talon अच्छी है Flame, the इसलिए goal getter. because Lock it in, and then phone पे तो BT होता है. Like if there is a minion and objective, वो IC20 कभी-कभी minion पे चला जाता है. Does it? Wow. Okay, so a Nemo. I was going to say. बादशाह पे खुद पे नहीं है क्या? क्या बात है बादशाह भाई? आपने बुरा मान लिया. Wow, a Nemo giving up the Glaceon seems like a bit of a surprise. FS का Talon Flame आएगा. Nemo Rare and भाई. Glaceon. Kaya going to be picking up the Talon Flame तो FS ने भी लिया था ना? By the way, अरे हाँ ना FS ने भी Talon Flame लिया था. Charging Charm and the Float Stone plus FS ने भी Talon Talon लिया Flame's passive था. when it's high HP. This is going to be the fastest thing you've ever seen on AEOS Island. The question is it going to be able to catch these Pokemon from Kabi-chans like Mew? ए let him. You का नहीं. You तो विकेट गिर चुकी है. You इन्ने एशिया बाहर. Which is a mean thing to do. It is Japan and let him. You shouldn't eat other people's lunch unless you've asked ये मत first बोलो and भाई. you've been जनता सब given जानती है. बादशाह जनता सब जान रही है देखो. Talking about Zoinks a lot. चारों का He's पता not है. here to defend himself. Notable lunch thief Zoinks. Yeah, I mean, I didn't want to say it, but we had to. NEU वाले watch It's party about कर रहे time. हैं. It's grand finals time. You're never gonna get more हमारे eyes first on the show. First than the world grand के finals time. So second में. Zoinks अरे तो eats first world में तो people's था lunches. Talon यार. And you First know world में what? तो When you Talon confront him about prominent it, pick he था acts kind like of. he did. Prominent But नहीं he's still मतलब eating viable and pick था. talking. Brave bird वाला वो भी where we are. शायद. Kick us Flavor I don't Here know. we go, everybody. Game number 2 of your grand finals. Kabi-chans, your purple Let them team. south say Fusion, your orange team. We're in our first best of 5. Fusion doesn't want to see a second one. Already up 1 game. Well, what a statement it would make to 3-0 Kabi-chans Ultimate after Talon, all damn. of their work that they put in to get to this point now. I am so excited about this Talon Flame because we don't get to see it too often, but Just when we do, world it tends to be out, what the pretty hell? fun. Yeah, it's going to be in a little bit of trouble right here, having to back away from this fight. The ये Storm top Power lane doing a Talon ton of S-Pen damage. के सामने SPL but हाँ already चलो level Glaceon 4, so it is really able to chase down Talon in a big way. We're going to see if Talon actually even wants to try to make it back here. With the Glaceon, they decide to move in, and they're actually able to make it all back to their goal zone. And now it is the Espeon that needs to run away. Yeah, I mean, Anemo giving tons of cover so that the tempo could quickly get back Tempo to का Pat, तो far get some मुश्किल HP, है. some shields, Fly and most into importantly, some Supersonic. berries. And now I they don't can know. start scrapping again. Yeah, Talon Flame, it's going to take him a little while to get online. अरे 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 DM Chan? Huge move. We're going to see DM Chan has done it again. DM Chan has done it again. I would guess with both of those move speed Thank items, you for the it's going 10 to fly, gifted, but at DM the same Chan. time, if I say that, it means it लो भाई रेक्सी को तो नहीं मिली. रेक्सी को तो नहीं मिली. क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? क्या कर क्या रहा है ये? नहीं मिली तेरे को. मनीष भाई देवेंद्र बोल्ट भाई अटम भाई प्रशांत भाई उष भाई आरन भाई एस भाई एडिट भाई ओजी नॉट फंड भाई कर दो भाई. DM भाई की चर्चा कर दो. DM भाई ओपी लिख दो. DM भाई ओपी लिख दो भाई आज तो. ये हर बार होता है 11 को भी. अरे मेरे को भी नहीं मिली. चिल करो. Thanks again DM भाई. DM Chan. Looks like they might have missed that dual wing beat, so they didn't have their extra dash, and now they are pulling away here into the central area of Fusion. Glaceon, not amazing early in this match. You can see कोई same तो मेरे thing with Twitter पे login Delphox. कर They रहा have है. a few Confirmation Pokemon code आया that take a little while to get on. Best of 5 best of 5 best of 5. Membership से फायदा क्या? Emojis मिलेंगे. On the other side of Kabi-chans that can chase down a little easier early. I'm just Rexy taking का a quick count look ban here. है. Did you What the see hell? how Rexy well भाई Kabi-chan क्या हो गया? moved into the central and then peeled back, causing static. Talon जिंदा हो गया वापस guys मर के. And now that we're able to Level तो है but leverage Talon पे 6. upstairs, leave Tomato down in the bottom, and get some points in and break a goal zone this early, my friend. Wow, look at that aggression right there, and they're continuing it. भाई तो पीछे पड़े हैं. The chase on. Here comes the boosted. ये तो नहीं छोड़ They रहा. are looking for this KO on Glaceon. Pollen Puff barely saves him, and Mew goes down to the Eldegoss. What a legendary play by Kia to get in the mix with that Pollen Puff. And भाई वो बंदा सोच
बेहतर होगा मैंने इलेक्ट्रो बॉल क्यों नहीं रखी. Who is literally on 1 HP. Great support play. Great support play, and like you were saying before, I'm loving the rotations, the aggressiveness here from Kabi-chan's. Giving up that tier 1 goal zone Dude, early, this though, is does give a Nemesis lot of match was experience good, over to the side of but Fusion. this match is We're also gonna have good. to see if they are able to use that to get a huge advantage here in this game. Biggest level on the map, Tempo on the Talonflame, also Scyther on the other side of the map here. So You're trying to reset or what? Pokemon's doing really well already. Oh, Immediately goes in, Blissey gets the knockout. Now let's see if they can get more opportunities here. पहला नेट हो चुका है. They're standing in front of these icy winds. Nice X's are on Anemo to cause separation. Almost जा रहा था. Scyther ulted. Alolan is running. The rest of the team's on top of him. Scyther Unite is out. We have to force out the glacial stage. Dual wing beat falls short, so we can't re-engage. Okay, Delphi is back on a good time actually, but oh तेरी. Tempo lands, Tempo crash lands. Wicket. Because they don't hit a single target. Draken is low. Draken is down. Draken is staying in the pocket, and no way Draken makes it out. Now they're trying to score on this bottom path. The fire spin and fire blast coming in. Nice fire blast. Is back. Glaceon in some trouble, having to peel away Scyther from this अच्छा क्या goal. kill नहीं देना चाहता, पीछे चला गया बट अब आ रहा है. Insanely aggressive on the side of Kabi-chan's. Now they've broken. Hello, welcome to stream दोस्त. बेसिकली दोनों क्यों नहीं दिख रहा अभी. भाई टीम को डिपेंड करता है ना. इट्स नॉट लाइक वो सोलो कैरी करेगा. टीम गेम है यार. आयुष भाई आप बड़ा हेलो बोल रहे हो. आंख खोल के क्या इसकी. ओ पैसे. Looking for a possible KO right here, but not getting much done. Jumping back, Hey! missing with their fly in that moment. The Bliss assistance keeps the Espeon up, and they go down. Yeah, I mean, they went for the थोड़ा इज्जत से पेशेंस रख के मारता फ्लाई कुछ नहीं होता. सीधा हक दिया. Kabi-chan's right now playing so fast, so aggressive against Fusion. A team known for being aggressive. हम चक्करी में बैरी मिल गई. चक्करी में बैरी मिल गया. अरे सीरियस. ये फिर उसको मारने में लगा है. इसकी तो मौत है. ये वॉल में टकरा है. Pushing onto this tier 2. It looks like they picked up a KO on ओ Eldegoss. तेरी. It looks like they are raining points in. पर्सनल दे दिया. Something that I love about Tomato's rock tomb play. स्लो ब्रो ने फिर भाव ही नहीं दे रहा. निकल. The target they want or doesn't land where they exactly want it to. They dissolve it immediately so they can keep pushing forward and cause pressure. Goals at least letting it stay there and to see what not work they can do around it. bad but not perfect, good either. It's coming down and we're trying again. And because of that, they were able to pick up क्या another बात. KO. ये DM पे आयुष को टाइमर देना चाहिए. Right back in this tournament, you know, with चैट में लाइनें मार रहा है. चुपचाप गेम देख. unfortunate for I mean, it was a real bad look for Kabi-chan's Game team. It was looking completely different right here. This is the most aggressive we've seen. Okay, गोल हो रहे हैं ऊपर. 19 and 14 though, not that big, but थोड़ा बहुत मैटर करता है. Pushing every single fight, securing Reggie Rock. ये अटक रहा है. Tons of opportunities to take down. गया. Beautiful combination. Tomato, rock tomb, couldn't close the gap. Eject button, X scissor gets the KO themselves. टमाटर तो एक्स्ट्रा as कॉम्बो the डमा रहा है defender भाई. player on a prime target Anemo. And here we go. They're having to defend their own. ओरे Unite was coming out looking for something on Mew. भाई ये क्या कॉम्बो था. जंप पैड सिस्टन. एल्डा हवा में उड़ रहा है और फिर भी नहीं मरा. Glaceon looking for a KO. Crystal Unites right back. साइथर ने विकेट डाल दी. टेलन किधर है. अच्छा टेलन मर चुका है. वाओ. ओ गया साइथर गया. Fire blast to the face that takes it down. But still 4 members of Kabi-chan's in the central area of Fusion. दूसरा कौन है. I mean, I am all about this player. Tomato is so good. Taking the skies crash landing going for a flame sweep. ये मेरा ये मेरा भी नहीं है. ये अपने टीम में किसी बंदे का टेलन लग रहा है मेरे को. Not all the times, but sometimes. They're going to land in the tall trees and settle down for a second. Yeah, no, we have an unfortunate objective for Fusion right now. It's that top Reggie Alecki. I think if बेस रोटम आ गया guys. बेस रोटम को दे पाएगा. make sure that this isn't walking to their goal zone later in the match. Even if they don't get it, they just get to deal with this चलो अच्छा कर रहे earlier हैं. than Rayquaza. Nice They fast haven't spin. been doing too well this match. I don't know if they're even worried about securing it, but luckily for them, they also do. Here's the slow beam on the side. Nice and they kill. pick up a KO. That's nice. Nice Okay, eject. Tempo chasing Mew down मर the सकता Mew है. here, but अरे. Mew has so many escape tools. Caught the ओ. fire spin. Fire blast क्यों नहीं मारा. They don't get the KO, but Tempo's there for the follow-up. भाई अब यूनिट्स बहुत ज़्यादा कमिट कर रहे हैं. Right on top of the pad. We're going to get Tomato. Tomato's the only one still kind of hanging out in the mix on the backside. 20 मार देना. 20 मारना. Kata looking for an opportunity. Anemo 1 HP yet again. The Kata wants that KO. They finally get it, but that goal zone's gone, and that Reggie Alecki keeps marching. दोबारा का गोल होता. 20 भी मारता. So obviously Kabi-chan's did not want that to walk. There was 22 in that goal zone, so it gave him an opportunity for a huge overcap. But at the same time, they could break
with that. They could break before Regieleki walked in and possibly have it move towards the tier 2. If nothing else, it gives them an opportunity to farm on this map. 265, 167 within 100. Ults नहीं है, Slowbro ने 3-10 पे ult दिया है. 20 सेकंड लगेगा. Levels हल्का सा लीड है वो. 13, 13, 12, 13, 12, 14. I mean हल्का एक लेवल लीड है. 12 but defender supporter एक लेवल आ गया. Okay, equal हो गया. Quote unquote caught by something. They see Talon scoring right now, and it looks like they can push forward for a fight. Slowbro पकड़ा गया. Nice fire spin, nice fire spin, nice fire spin. Want to engage on this, or they just want to let them move back? भाई 2 स्कोर का लीड है. 2 स्कोर का लीड है. And इनको पता है इन पे लीड है. Talonflame actually going straight to go score again to stretch the lead. और अब तो बिल्कुल लीड है. +8 there, and they definitely know where the Talonflame is. This Kabi-chan, and now Fusion is hanging out. They know they've got the lead, and they're going to put some pressure on, but they're completely zoned out. Yeah, they're completely zoned out right here, and we can see that they are starting Ray a little bit. Talonflame takes this guy Talon अच्छा काम किया. Talon good job भाई. Talon good job actually. Mewtwo force. इसका eject force. ये heal दे उसको, heal दे नहीं तो विकेट गिर जाएगी. मार गया. एक गया. उधर साइथर मेल्ट कर रहा है बट. नाइस स्वीप. डेल फॉक्स को नहीं मिला. बट नहीं सब गए. Slowbro ult. Blitzcrank इनको हर एक का विजन है. And now we can see members of Fusion dashing to score right here. Members of Fusion also trying to stop this massive shield. ओए ये हक गया. ओए नाइस eject. एक शील्ड गया. They are up 275. I don't Slowbro know गोल हो गया. knows how incredibly close this is, and I don't think they have another shield available. So they will lose this match if they don't figure out a way to make a score happen. ये तो हो गया. टाइम नहीं है. भाई Talon मस्त खेला है. अच्छा Talon है भाई. भागो. This might be the second game in a row where Kabi-chan has taken Ray, but Fusion has found a way. When there's a Ray, there's not a way. साइथर ने काम तो कर दिया. Huge win for Fusion here in game number 2. भाई. दे दिया भाई. दे दिया. Fusion ने दे दिया. And now we're taking a look, and it's like, well, if we take Chat Ray and we still can't win, किधर? what options do we have left? Fusion क्या मतलब आयुष भाई इतने रोल नहीं है कि वो अपनी सेकंड आईडी पीआर लाइन मार रहे हैं. आयुष भाई सेकंड आईडी क्या बात है आयुष भाई. That's right. We know we talked about Fusion being undefeated. Well, you're seeing why right here. टीजी वाला काम हो रहा. पर टीजी को तो ब्रेक पे लगा था ना. टीजी का मैटर नहीं था कि वो टायर्ड थे. टीजी का मैटर था मैच के बाद ब्रेक हो गया. तो वो जो एड्रेनलिन रश था वो थोड़ा सा काउंट डाउन हो गया. इधर तो नो ब्रेक. बेस्ट ऑफ 5 था. Multiple Best of 5 games to give. They could lose 2 in a row and still take 1 and beat this team. That means they can get extremely aggressive in some of these अभी भी comeback हो सकता है. ऐसा नहीं है कि comeback नहीं है. that maybe Kabi-chans would not expect. Let's take a look at some of these moments from our last match. Yeah, I mean, this was just that hero Eldegoss support play to make sure Anemo doesn't go down on Fusion. Amazing play here by Tomato and a sick convergence by Kabi-chan best of 5 onto this other team. They're able to take this Regirock here and keep on going, and really thought for me that this was going to be a turning point for Kabi-chans. Yeah, it really did. I mean, Kabi-chans had so many amazing. अब I think ये comfort picks पे आएंगे. अभी ये strategic picks पे थे. अब comfort picks पे आ सकते हैं Kabi-chans. They might be on comfort picks now. Yeah, Zainu's there. We get a quick knockout by Tempo, kind of their target. ऐसे टाइम पे comfort As picks we काम have this आती हैं. scrap in the middle, you were calling it. I mean, a lot of Unite moves here used right at the 4-minute mark. Kind of if you use it, you lose it till Ray type situation. But really, Kabi-chan's able to stay in the central and do great work. Yeah, do great work. They did eat that fire. Bazol का 81% ban rate है. Dragonite का 3% है और 3% इनके मैचेस का है Kabi-chans का. Little slow beam. Blasters भी 21% mostly इनका ही है. Talonflame looking to get something right there, looking to chase down Mew. Such a hard Pokemon to KO, and somehow even with the fire spin it doesn't go down. Talon needs to re-engage.
Well, now, just another doorstep, but this was a great move by Fusion. They actually close out this goal zone, and the Reggie Alecki keeps marching forward. So it was a quick overdunk, just 1 point, but that was important because it built undue pressure on a Kabi-chans. Yeah, and here we go. We see a lot of this fight happening. Glaceon using the Unite move right there. Talonflame moving in to see what they can make happen. Obviously, everyone on Fusion looking to KO everyone on Kabi-chans. Kabi-chans looking to do what they do best, take objectives. But even after they took it, not enough of them were up. They couldn't keep their shields. They do get KO'd, and Fusion takes another win off this, all-star Japanese team. Kabi-chans has looked almost untouchable up until this point. Fusion has found a way, not taking Ray, but taking bodies and playing their own style of game, really getting clever with their scores near the end. What can Kabi-chans do to bounce back here? I mean, that's the real question, right? Because Slowbro ne must mare. Slowbro ne bahut अच्छे hits mare. In their draft, they still have a lot of great picks, but they are being target banned, and it is working by Fusion. They said, all right, we don't want to deal with the Buzzwole. You've actually got a great one, Fusion. This is the one we're worried about. Didn't matter. They were still able to pick up a win inside this game. I know there are other Pokemon. There are other things that Kabi-chans could be playing right now. We're gonna have to see if they are able to bring them out. Draken, player of the game once again. Well, taking a look here at Draken, another, as you mentioned, MVP, Slowbro back-to-back, and it's been solid. I obviously am a personal fan of this Pokemon, the Surf build specifically, and it was just putting in work all game. Yeah, it really was. And you can see Kabi-chans, they have to figure out what they're going to do right here. Obviously, if you're Fusion, you're feeling good. There is a weight that has been lifted off your shoulders. The fire is still there. You want to end this right now. You want to prove to everyone that you are the best team at the AEOS Cup, possibly the best team in the world. Latin America South versus Japan. Japan, the invited team from ACL. Just this phenomenal group able to climb all the way through this bracket, but will they take down the reigning monthly winners? Will this be the final draft of the tournament? Here in game number 3 as our Dragonite Vanities again. Dragonite banned. I am and Blastoise. And appalled. I mean, Dragonite right into Blastoise, really cutting off those two Pokemon, unsurprisingly. Leafeon, Delphox the other way. That Delphox Fire Spin was causing problems. They just don't want to keep dealing with this Pokemon. They're like, you know what, that was annoying. That was annoying. Let's get rid of that. That was pretty annoying. First pick over to the side of Fusion. We're going to see what they want to bring out here in what could be their final game, taking away Blissey. The Blissey chat ko kya hua meri? Ekdam se recovery chat. What the hell, dude? Mere ko ekdam se chat aayi. To save their Pokemon. They are so good with that supporter, so I understand wanting to steal it away. Drop side no ko dikh nahi hai, zoro to dekhna hai. Not available to take their Eldegoss here, and they snatch it up right away. And of course, Glaceon, phenomenal pick, difference maker in every single game we've seen. Not this match, all day Glaceon has been an impact player. Let's take a look at this. We possibly have Buzzwole coming back. I mean, hey, if you're Fusion, Buzzwole is back. I know Kabi-chan's pretty good against Buzzwole, but not your Buzzwole, they say, as we have Slowbro also being locked in. LG और now LG tournament में last है और now obviously you would want to bring that back. The slow beams they hit are the exact ones you would like. They're not hitting the slow beam. Fusion का team है Latin America South. On the other side, they are getting those high value targets that they are able to KO. Quickly locked in is Kata on the Venusaur, but game 1 they switched it to go to the beam build. Back to Veena, but इस बार इन्होंने Glaceon से क्या किया? ये अच्छा किया कि Glaceon पहले early pick कर लिया. They pick Glaceon early. They know वो Mew नहीं ले रहे. Mew sacrifice किया, Glaceon ले लिया. But Intel is a good pick against some EVs. I mean, here's the thing, Zoroark, it sees some strategic picks हो रहे हैं भाई, strategic picks हो रहे हैं. Yes, Veena top 10 खेलता है वो. And it's the better Veena. Zoro इधर आ गया. Blissey के साथ. Mimikyu ले सकता है. But नहीं, actually defender लेना है. Revenant. Blissey को क्या हुआ? Slowbro के सामने hard है with Eldegoss. This person is incredible. Yeah, top team change, bro. Top team change. And this tree is no exception. They did phenomenal assumingly work on top teams. Top teams change. Assumingly top teams. But it wasn't a lack of effort out of the defender player Tomato. That's for sure. Let's pivot back to Fusion's draft because देखो दोनों तरफ से strategic picks ही हुए. उन्होंने Glaceon उनको नहीं दिया because वो Glaceon ले रहे थे इनको avoid करने के लिए. इन्होंने Mew की जगह Glaceon पहले pick कर दिया और इन्होंने किया कि Mew लेने दो, हम Zoro ले रहे हैं और Intel ले लिया. Mew दे दिया और Buzzwole पहले से shoot कर लिया. नहीं तो वो Buzzwole भी खेल सकता है. यहाँ पर जापानी वाली Buzzwole खेलता नहीं है. And Tomato तो end पे लिया क्योंकि उसको पता है उसका prio pick नहीं है.
which we've seen a bit. Wow, that is a full crowd out there. A lot of people tuning in. It's a packed house here at the AEOS Cup Grand Finals. Hello, everybody. Hello, everybody. Can we get a crowd yeehaw? I probably shouldn't ask that. Can we get a Spriggles yeehaw? You're not allowed to say no. No. And I get nothing. I'm saving. Zoinks, can I get a yeehaw? He's eating my lunch, can't talk. He did say yeehaw backstage. क्या लगता है final match? Somebody's looking out. केवल देर पे comeback. Somebody's looking out for it. Fusion literally one game away, and I can't understate the exclamation point it puts. That's right. One game away. This is game number 3 between Fusion and Kabi-chans. Could be our final game of the AEOS Cup. If Fusion wins right here, they are your AEOS Cup champions. They are heading to Worlds. They are winning the lion's share of $100,000 and a fourth thing that I haven't thought of yet. High fives and hugs from your TG के साथ हो, काबी के साथ हो रहा है. यहाँ हो सकता है. हुआ तो नहीं. Okay, Buzzwell better कर दिया इस बार. वो secure करने नहीं जा रहा. पिछली बार करने गया था, बिगड़ी हुई थी थोड़ी. Hello, small mid bhai, welcome back. We're gonna have to see. Yeah, I mean, of course, with the Zorua in there, it's very tragic in the early stages of the game. He really only activates until it does hit Zoroark, so guarantee it, it's level 5. By just hanging out for a moment, make sure Mila. Yeah, Buzz will sniff it around, possibly looking for a secure or possibly looking for a stack. Not able to make it happen. Glaceon makes his way up to the top. Tomato in some trouble. Ooh. You can barely see that HP bar, but Tomato knows. Thorfinn and small mid, I don't think so. Yeah, just enough. What are you worried about? Huh? Very good Tomato's feeling fine. Tempo is a Zoroark. Tempo spinning in the bush. Tempo looking for an opportunity, but the Icy Wind Glaceon is here. Vitopo looking to do some damage. Immediately on burst, but they engage on the body. Straight into the backline is Tempo. Can't quite close the door on Kata. Unfortunately, Buzzwole not able to move in on that fight. They were level 5, but they weren't able to jump in right away to get that massive superpower and start off a huge KO. Kata getting extremely low there in that moment as Glaceon is now walking out. Mew getting aggressive right now, trying to take down this Zork. अरे यार, ये फिर 1 HP बच के जा रहे हैं. अरे eject भी waste कर दिया हुए. Outside of it, and they do not pick up the KO. Tomato is a tree, steps up and gives just a little bit more shade of support onto them. Use they get out. Next time से इधर गंदा हो गया ना थोड़ा. Wash करूँगा. हल्का सा ice गंदी हो गया. I have to wash it. Scrap in the face of this Eldegoss and Bulbasaur. अरे फर वाला है ना, बाकी सब clean है. ये फर वगैरह ना फर थोड़ा catch कर लेती है. Yeah, I mean Eldegoss just so incredibly difficult to deal with. I mean at every stage of the game, but especially early. उनको धोना easy थोड़ी होता है. With it, it's just hitting you with all of these auto attacks. Glaceon now moving up to this top path. They really like this on the side of Kabi-chans. You know, take equal game area where you have an advantage. But Glaceon level up हो गया ज़्यादा. Up there and see what we can do. और टमाटर का टमाटर पकड़ दिया उसने. Passive गया. Back out. Here comes the Zoroark. Nice eject button by Tomato. नहीं ये सब नहीं, hand wash only, hand wash only. He's going to settle it out for just a moment because there's a lot of players on Fusion ready to sit on that pad and take some bodies. That's right. We can see them waiting up here in this top path for this fight. Nice big icy wind and freeze dry right there. They're not able to do enough damage to take the Buzzwole down. They do push it back automatic गंदा होगा, ऐसा नहीं है भाई. Watching, waiting. ये तो watch parties पे आता है बस, बेड पे पड़ा रहता है. ऐसे पड़ा रहता है बीच पे बेड पे. Passive there of Glaceon. Tomato picked up, put down right into the hands of that Zoroark, and Tempo, keep the tempo up, getting a KO. And now we have the Inteleon moving up to the top path right here. As we talked about throughout this tournament, more and more teams prioritizing this top path, prioritizing scoring, prioritizing getting that early lead. We know Kabi-chans loves it. Yeah, and Nemo tried to go in for a snatch on Noda, the captain. Okay, इस बार ये जल्दी नीचे आके start करने का try कर रहे हैं शायद. But it did give enough space and time for this Regieleki to be taken by Fusion, and they're sitting on this goal zone. They're going straight after Tomato. Good engagement, nice little illusion switchback to make sure that their Regieleki hits. And here we go, just taking this opportunity to stack up for this Buzzwole. So incredibly important. They are able to take this objective in this bottom path. They're going to continue this push right here with the Electro Ball, chasing it down with the Icy Wind. That's a slow bro. Pretty hard to take down here, but it's going to try to defend this bottom goal zone as it eats another boosted attack. Electro Ball looking to get some of this wild Pokemon experience. Snipe shot comes in for this Glaceon. We can see the chase by the Inteleon. They get him with the snipe shot, the quick draw. I mean, that looks so sick. Now the Mew Unite is forced out because the pressure that Zinus is putting on with this Inteleon. ये miss होना बनता है ना? They want this Mew in a bad ये auto ये भाई auto मार रहा है क्या? ये aim तो नहीं लग रहा है ये. aim तो नहीं लग रहा है. literally tap करके एक direction देके मार दे रहा है. और वो लग जा रहा है.
कुछ वो नहीं है क्या? विगल विगल डालो भाई कुछ। ये फेयर चीज नहीं है भाई। और सिर्फ ये नहीं, बाकी लोग भी पूरा टूर्नामेंट अगर टैप वगैरह कर रहे हैं डायरेक्शन देके तो दैट्स नॉट गुड यार। थोड़ा डिस्पैरिटी तो होना चाहिए। क्या कॉम्बो मारा है जोरो ब्लिसी वाला। एक के दिमाग में कुछ था, चलो सपोर्ट गया। Now Tomato's sitting there, of course, Nemo is very low. Hornly straight onto the Inteleon Zainus. That gap is closing. Look at their HP, it's still at 80%. Tanks बचे हैं, अब tanks बचे हैं। Solar beams from the Mew in the long range, and Blissey और ये हक दिया, Blissey और ये हक दिया। saying this is my home and we're sitting on this goal pad. Amazing stuff here और from उसको कॉम्बो रुक गया। I feel like there were a couple of weird misplays there from Fusion in that fight. The Bliss assistance just seemed really awkwardly timed. Maybe they thought they उधर मरता था गाइस, अगर जोरो जाता उस पे। their moves were on cooldown in that moment. बिना पे क्यों गया? Wasted a lot of the surprise there. They ड्रिंक का didn't डैमेज the bowling that you get with that massive Bliss assistance, and then at the same time they once again spent so many resources. वो ब्लिसी कार्ड लगता तो काम था। जोरो भाई पता नहीं। Finally take it down. मिसकम्युनिकेशन हो गया। In the whole while, Kabi-chan was KOing members of Fusion. Yeah, because they had to do it like through the pedal dance. Yeah, Venusaur was just, Kata was just there all the time and hitting multiple targets with the Giga Drain, which is why their HP was staying so high. Yeah, and here we go. Registeel getting pretty low right here. It doesn't look like the Slowbro is going to make it in time. They are not secured right there. However, on the other side of the map, we have Fusion. इसको 11 करवाने में फोकस करो, सामने का भी ना 11 हो गया। Just to see if anyone wants to walk by and fight, and they're like, all right, they're not here. I'm check buttoning in. Let's make this happen. Big time moves here as Eldegoss is forced to use their Unite move. Buzzwole Unite the other way. Regieleki is extremely close. Venusaur Unite takes down the Buzzwole and they peel away. That was a great Verdant Anger to just secure a knockout so they could deal with this Regieleki before it hits their goal zone. There's nothing more than Fusion, or excuse me, than Fusion would like to do to close out that goal zone early. Yeah, absolutely. Get a huge point lead. They still have a lead right here as they are up in this top path. 5 members now of Kabi-chan's converge on this goal zone. Here comes the Zoroark. Is there anything they can do about it? They eat a solar beam right away. Another Bliss nice combo, but oh तेरी Blizzard I think लगा ही नहीं। I think लगा ही नहीं। Blizzard लगा नहीं उसको। यह Blizzard हो गया। लम्मा। Now Kabi-chan's ahead. The only fortunate part of that Bliss assistance is that the Zoroark was knocked out before the Blissey actually got there, so they retained their Unite move. That's important, because that thing takes a minute to get charged up, and mostly Blissey has to just do it on pure time. Yeah, and here we go. Zoroark looking for a KO right here down ये Zoro तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। Pressure on Tomato, but here comes स्टन हो जा रहा है। सामने से आ रहा है। Hornleech moving forward. मुंह से आ रहा है Zoro यार, पीछे से नहीं आ रहा। और आ रहा है तो स्टन हो जा रहा है। Coming down as they're continuing this push. The big time boosted gets the KO. Solar beam on Decisive. What was that? Well, that was a Bliss assistance, all right. I don't know. We got some slippery fingers. All right, I'm going to move on from it. But I didn't. You know what? I'll tell you what. I don't know if you can tell by my reaction. I didn't like that. Can somebody get Kea some of those tactical finger grips, please? Yes, tactical finger grips to the stage. You know what? Bring some backstage too. As we get ready for this multiple members of Kabi-chan's ready to go here, and we have only one from Fusion. अब काबी को एक information है। Not stepping up to the challenge. Blissey को यूपीआई हो गया है। 50 points separate these two teams. 8 seconds still. Zoro 11 का है यार। जंगल Zoro 11 का कैसे हो सकता है? 3 level डिफ है जंगल से। 3 level. How they want to play this, but they know that they're going to have to deal with this Regieleki. They are starting Rayquaza, but they are not insanely aggressive on it. Of course, they Blissey got at least 30 seconds late. At least. Walks in this top hey, nice damage. HP very, very low. Huge solar beam catches 2 right into a boosted right here. Slowbro still doing okay as Rayquaza is at about a quarter down. Well, they Trevenant पकड़ा हुआ है। Trevenant में नहीं हट गया। और Zoro भी गया। Tomato going down that early is not bad. Icy went on top of Draken, not the target they want. Rayquaza's getting eviscerated very quickly. Solar beam comes through and it's taken by Kabi-chan. Now, can they actually win a game when they take the Ray? That's the big question for me, Spriggles. They're looking to take all the bodies on Fusion, saying we're making this a no-doubter. Just the Inteleon remains standing. Just the Inteleon. It looks Zoro थोड़ा फपल दिया। Zoro को वापस नहीं जाना था। No, they actually have Zoroark popped out, so Mew is going to have to be the one to score right here.